to rock back and beautifully placed it down to deep between cow point and backward point region for a excellent boundary. With that boundary score jumped into 6 on the board without loss of any wicket. It's a bright sunny morning today. It's a little bit of windy morning as well. Outside the flag stamp going to be a wide and the first exercise of the morning here for umpire Shriniket. And one more addition to total with the addition of that single scoreboard Mozanto. 7 on the board. Kings 11 Ullal, unfortunately, because they lost 2 matches. This time he lofted handsomely with the direction of the wind. If you see, if you notice or not, before he is going for the big shot, he is just checking the direction of the wind. You know exactly the wind is flowing towards the mid-wicket region, and you can't bowl that line when the direction of the wind is towards the mid-wicket. And Anantesh just pays the penalty for that as he bowling around his legs. And the batsman Padmanabh off the toes, lofted that one handsomely towards the mid-wicket for a first sixer of the day, number 2. 13 without loss of any wicket. Anantesh definitely is not a happy man. The previous day, yesterday, he's really played a very good game of cricket. Still, his team is faced the defeat, because yesterday, if they're able to won the match, this is definitely going to be the good match for Anantesh and his team to bounce back. But after losing their 2 matches yesterday, the door which is almost closed for them. But if the fight is here on for Kings 11. This time again the full toss delivery. Great treatment, but this time a little bit squarer towards a deep backward square leg boundary for a second sixer of this first over. Intention is very clear here from Kodial Super Kings that they desperately wanted to win the match. And score jumps into 19 itself in the first over. So morning you are almost talking about the condition of UCC cricket ground. It's an encouragement for the bowler, but the different condition today. And it looks like, as I already mentioned about that huge wind passing in the morning. It's quite a different weather condition compared to yesterday's weather condition. Lofted, but this not quite getting hold of that net properly. Prasad drops the catch. Everything is going in favor of Kodial Super Kings, and completion of first over. 20 valuable runs. 1 ball remaining. Little bit correction. Umpire for today's match. A little bit changes in the umpiring panel. Rajeshwar joining the umpiring panel of this prestigious Panthers Super League 2023. Along with Shriniket is doing the job here. And once again this ball is in the air and going to be 1 more 6 here. The runs are raining here. The 26, the big runs came from that first over for Kodial Super Kings. Now intention is very clear there from Kodial Super Kings is that as much as run they will going to get, as much as the distance what you get, going to get, the winning distance, the net run rate definitely they are going to get. And if you're able to get a very good net run rate, then opportunity for them to qualify for the next round. So 26 definitely going to be a big score. But we can see that the Padmanabh is getting most of the runs which is scored. He's batting on 19 in just 5 balls with the help of 3 sixes and a boundary. Two sixes and 1 boundary. Surendra Pai is batting on 6 with the help of 1 delivery. Just a 1 single delivery placed by Surendra Pai, and he just joins the party. 26 which came from the first over. From the professional career end, Rakshit brought into attack.
There is a deep backward squall like deep mid wicket. Long on is there. Long off is there. Deep cover point. The fielders are in the deep. Short extra cover. Short third man. Short mid wicket. Rakshit again seaming from the far end. Professional career end. This time looking for the big swing of the bat. But the ball will go into travel and he drops the catch. Anantesh. What could be a certain wicket for the Rakshit? Anantesh not really drops the catch, but he pushed the ball out of the park for a 6. Score jumped into 32 now. This time again down to the extra coverage and good placement. Going to be one more boundary here. Runs are coming like a fast flowing waters of the rivers. 36 already on the board and 29 which is scored by Padmanabh Pai in just 7 deliveries. Might be getting some inspiration from the batting of Surya Kumar Yadav yesterday. And now it's a 417 is the strike rate. And yesterday Surya Kumar Yadav scored a quick fired century. His third in T20. It's a no ball. Absolutely, it's a no ball. Because ball is, of course, coming into the batter, but ball pitching outside the pitch. So that no ball called by umpire. Couple of runs, 3 no balls in the occasion. And scoreboard now moves on to 39 on the board. It's going to be a free hit delivery. The Kings 11, of course, they lost 2 matches, but I'm not really impressed with the body language. It's what Kings 11 Woolen has got today morning, because each and every team suddenly wanted to finish their journey with at least 1 victory. But so far we can see that again the full toss delivery. This is really giving some batting practice for the batters. And the full toss delivery and Padmanabh saying thanks to that full toss delivery. 1 more 6. It's a 37 is batting on out of 45 and 411 with the strike rate. 9 balls, 37. I request the organizers to give one used ball. This is over number 2 is in progress. .45 without loss of any wicket, and bowler Rakshit once again back to his bowling mark. A golden opportunity for Padmanabh. 3 balls, 19 runs. This time reverse stroke, and this time he will go and get a boundary for that. 1 bounce over the rope for 4 runs, and with that boundary, 49 on the board, and his individual score moves on to 41, and Padmanabh has got a golden opportunity to get his first 50 of this tournament. Rakshit bowling from the professional career end. Nicely bowled, good line in the negation. Padmanabh equally well played that one down to deep, long off for an easy single. With that single score, numbers on to 50 comes up for Kodial's Buckings. 50 came in just 1.5 deliveries. Padmanabh is batting on 42 in just 11 balls.
381 strike rate. This time Surendra Pai looking for the big shot, but straight to the hands of fielder in the mid wicket. The Gaurav, the fielder there in the mid wicket, takes the catch. The wicket number first is back into pavilion after scoring 50 runs for the first wicket. And the partnership has been broken. Run rate is 25 runs per over for Kodial Subha Kings. Now, these kind of runs I want to see. It is not a good sign for team Indo Super Warriors Alapi. Change in bowling. Jersey number 9 is introduced from the committee box end. Advait Rao will going to bowl third over. In front of him, Padmanabha Pai, batting on 42 in just 11 balls. Advait, this time appeal for leg before wicket, full toss delivery, and Padmanabha couldn't manage to take advantage of that one. No damage done. The score remains on 50 for the loss of 1 wicket. The wind is not constant. If we see today morning, sometime it is moving towards the mid wicket, sometime it is moving towards the offside region. Went for the reverse sweep, missed it completely. 2 dotted delivery. The first time we're watching that some better line and length is bowling there by the bowler Advait Rao. 2 dotted deliveries to start with the over number 3. Advait again bowling away from us. Right arm over the wicket he bowls. This time nicely bowled. Just following the batsman, seeing that Padmanabh is shuffled across the line off the delivery. And he bowled that one on the block hold so that Padmanabh managed to pick the single for that. 51 for the loss of 1 wicket. Over number 3rd in progress. So new batsman in his Pranav, but will go into face Advait. The lovely delivery. Ball just missing the outside edge of the batter in the negation. Nicely bowled there by the bowler Advait in the negation. And now Padmanabh is coming down the track, having some word with the Pranav, but so far it's a very good over, quiet over, single run in 4 balls. Advait bowling away from us. Right above the wicket, lofted that one. Will it going to be a 6 here? It's the one bounce over the row for 4 runs. The long on is there, but it's on a straighter version, but he's choosing a right gap between mid wicket and long on. Towards a wideish long on boundary for 4 runs. Just breaking the shackle in this particular over. Pranav Bhatt, just look at that one right in the gap towards a mid wicket region. 55 for the loss of 1 wicket. Beautifully bowled. Change up pace, a slower one. And Pranav Bhatt managed to get the single. Overthrow comes into play. They're coming back for the second. Leg by call by umpire. And the scoreboard is 57 for the loss of 1 wicket after completion of over number 3. Better over compared to the previous 2 overs. 50 runs which is came in 2 overs. Now it's a 7 runs is a better over from Advait Bhatt. 2 overs remaining and Kodial Subha Kings are cruising towards one of the highest total score of this tournament. So after this match, the lots will going to be taken for the next round.
So far, it's a 65 is one of the highest total score in this tournament by Kodial United. Now, Kodial Super Kings are cruising towards to break that record of highest total score of the tournament by any teams. Prasad brought into attack, beautifully balled. This time they're going up. And wicketkeeper behind the stump is so confident, but umpire is not confident enough. Squalling umpire is also not confident enough. But wicketkeeper is so confident. Prasad is also not that much of enough confident. Sometimes it's very difficult for the umpire to judge. Again, the wicketkeeper behind the stump did the rest. Ball which is kept low. Sometimes, of course, we were listening some noises, but it was maybe from the grip of the bat. Maybe the batter hitting the ground, or maybe the bat brushing your legs. Something is hearing you, and that's why the wicketkeeper behind the sometimes is so excited, and so difficult, isn't it? Sometimes for umpires. So 57 for the loss of one wicket, especially when in the international cricket grounds when there's so much of noises. But there is a provision of third umpire for caught behind the wicket, leg before the wicket. Line slid one towards the mid-wicket region. One more addition to total. And of course, we are talking about international rules. The bowler can, the fielding team can review the decision. The international cricket. Just to find the ultra edge of the bat. So again, Prasad balls. Beautifully balled. Fantastic one. And again, the batsman trying and trying. Pranav but missing the ball completely here. The score remains on 58 for the loss of one wicket. Good piece of bowling there by the bowler, Prasad. From the professional career end. Right arm over the wicket, he bowls. Again, the batsman going for the stroke on the onside region. Misses it completely. Good over. Excellent. One run came from that over. The great over from Prasad. This is what I want to see from Kings 11 Ullal. Of course, you have lost 2 matches, but finishing your journey with one more loss, it's not a good sign, because losing and winning is a part of cricket, but losing your confidence, I think, is one of the biggest loss in cricket. The mistake is common, but correcting the mistake is so important when you're going to the next match. Last over going to start from the commentary box end. Something is going out of the stadium there. Some funny thing is happening in the dugouts. But here is Advait will going to ball this second over. Right arm over the wicket, beautifully ball, just like what he did in the previous over. He's been outstanding. But look at the Padmanabh. After he's got a quick fire, some runs, but now he still is batting on 44. And searching for his first 50. Advait again bowling away from us. Right arm over the wicket to Padmanabh. Padmanabh nothing much to do with the delivery, seeing that ball is going away from outside the line of leg stump. Left the ball rightly so. The wide call by umpire. One more addition. 59 for the loss of one wicket. Advait once again back to his bowling mark. Bowling away from us. Right arm over the wicket to Padmanabh. Padmanabh this time, he got the 50 in a style. The first 50 of this tournament. Panthers Super League 2023. Padmanabh registering his name as the first batter to get the 50 of this tournament. Congratulations, Padmanabh, for your wonderful display of stroke making. In the morning itself, it's been out entertainment for the cricket lovers. And he got his 50, and he got a 50 in a style in just 20 deliveries. Fantastic innings. Drives that one down to deep long on region for an easy single.
They're looking for the second as well, and they will more going to make very easily in the end. And 67, and this is the highest total score of the tournament. The Kodial United, they got a 65 the yesterday's match. Now they are Kodial Super Kings. Both the teams from Kodial, they're getting that highest total score of the tournament. 67 by Kodial Super Kings. Advait again, bowling away from us. Right arm over the wicket balls. Beautifully bowled around the legs. That ball is passes and hits the stumps. Entertainment innings comes to an end of Padmanabh. He's not really feeling very well. Looks like he's little bit paining. The back pain looks like that. So, and he's back in the pavilion. But I think he's did a job what he really wanted to do in this last match of their league. If they wanted to qualify for the next round. And scoring of 50 valuable runs. 67 for the loss of 2 wickets. Here in O number, last is in progress. New batter is just came into middle in the place of Padmanabh. It's Rakesh. 2 deliveries left in their innings. Loss going to be taken after this match. One more league matches remaining. The final match of the league. Oh, what a shot. Stand and delivered. It's going to be a chance for the fielder there in the deep long. Once it looks like it's going to be a maximum, but I don't think it's going to be enough bat onto that. He played that one very high, isn't it? When you're playing very high means you need to have some the wind direction. You need to get some help from the wind direction. But you can see that's in front of the wickets. The wind which is not flowing here. And he just pays the penalty for that. 67 for the loss of 3 wickets. Rakesh is out for duck. That means Advait is on hat-trick. So one hat-trick so far in this tournament. And Advait has got opportunity to get the second hat-trick of this tournament. Panthers Super League 2023. Witnessing some extraordinary batting performance. Witnessing some unbelievable bowling performance. Witnessing some astonishing the fielding performance. This time he lofted down to mid wicket, deep backward square leg division. So catch has been taken in the deep. So that's the end of and a hat trick which is taken by Advait. Congratulations Advait. 2 very good achievements in this particular matches. One is the first 50 of the tournament. Then it's the second hat trick of this tournament, and Advait registering his name, the bowler who picking the second hat trick of this tournament. I request Yoda as well as Deadly Panthers captain to be reported for the toss. I request GSP Yoda captain and Deadly Panthers. The captain please be reported for the toss for the last and final match of the league. So 67 going to be target for Kings 11 Woolal, and Kings 11 Woolal definitely they need to climb that mountain of runs, and wait and see how well they're going to climb this mountain of runs. Of course they wanted to finish their journey with the victory, but Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
धन्यवाद सतीश. So 68 the target for Kings 11 Ulla set by Kodial Super Kings. Very good morning सतीश और सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ. तो जहाँ तक सवाल है, वेरी फैसिनेटिंग डे. दूसरा दिन का पहला मैच खेला जाता हुआ पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत, और यहाँ पर एक लंबा सा लक्ष्य किंग्स 11 उल्लाल के सामने रखा है कुडियाल सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है. एक रन बिना किसी नुकसान के, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सुरेंद्र, जबकि सामना करने के लिए तैयार प्रसाद भट्ट. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, स्क्वायर लेग मौजूद, एक्स्ट्रा कवर गली इस वक्त तैनात. मिड ऑन 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, और ऊपर की अगली गेंद लेकर इस वक्त सुरेंद्र पई गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रसाद भट्ट के लिए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद पैरों पर टकराई, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, और गेंद पहुंची इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. लेग बाय का इशारा, लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के. निस्संदेह एक विस्फोटक शुरुआत, एक्सप्लोजिव स्टार्ट है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. विस्फोटक शुरुआत की इस वक्त जरूरत कुडियाल, माफ कीजिए, किंग्स 11 उल्लाल के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें 68 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीची रहती हुई, टिप्पा खाने के बाद हवा में स्विंग होती हुई आई थी, और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाया, और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के. एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सुरेंद्र पई अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद भट्ट इस वक्त सामना करते हुए. 68 रन बनाने हैं, 3 रन बन चुके हैं, यानी 65 रन और बनाने हैं. अब इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, इस वक्त तक गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, वाइड लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए, और जब तक वो गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के पास समय था कि 2 रन के साथ वो अपना छोड़ यहाँ पर बदल सके, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. तो यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को झाला मिड विकेट पर, और वहां पर कैच को मेरे के हिसाब से लपक लिया गया है. स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं था, और ग्राउंड के सबसे लंबे हिस्से को उन्होंने चुना था, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड जिसे कहते हैं, डीप मिड विकेट पर. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, मैदान पर मौजूद टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, और डीप मिड विकेट पर इस कैच को सफलतम फील्डर ने लपक लिया सीमा रेखा के अंदर. पहला विकेट गिर चुका है 5 रनों के ऊपर. इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. इनफैक्ट इट्स ओवर कंप्लीटेड, और एक धीमा शुरुआत यहां पर कर चुका है किंग्स 11 उल्लाल. 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. अगला मैच लीग दौर का अंतिम मैच खेला जाएगा, हालांकि वो मैच दोनों टीमों के लिए कुछ खास जरूरी नहीं है, दोनों टीमें लगभग श्रृंखला से बाहर हो चुकी है. एक टीम क्वालिफाई हो चुकी है, जबकि एक टीम श्रृंखला से बाहर हो चुकी है. तो इस वक्त उस मैच में कोई भी जीते कोई भी हारे, कुछ खास फर्क नहीं गिरेगा अंक तालिका में. 1 टीम ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड 1 टीम ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द नेक्स्ट मैच. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए प्रोफेशनल एंड की ओर से गेंदबाज प्रणव भट्ट ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ
ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अनंतेश पर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद पटके हुई गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए जब तक गेंद को वो फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के, रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज प्रसाद महाले गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बाउंड आउट, एब्सोल्युटली परफेक्ट लेंथ यॉर्कर, और इस यॉर्कर लेंथ गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके गेंद लगभग हवा में स्विंग लेती हुई अंदर की ओर आई, ब्लॉक होल पर टिप्पा खाने के बाद सीधे मिडल स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। तो 2 विकेट गिर चुके 6 रनों पर। अब ऐसा कहना पड़ेगा किंग्स 11 उल्लाल काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ, स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो, 62 more runs now they have to score for victory in 3+ overs, and at this situation they absolutely need some miracle batting at this stage to get back into this match। और इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर बल्लेबाज कदम बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन हो चुका है सुहास, जो कि प्रणव भट्ट की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए, लेकिन विकेट कीपर चूके और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। नो बॉल का इशारा यहां पर हो चुका है। तो जहां पर मेरे ख्याल से एक अतिरिक्त खिलाड़ी, ज्यादा खिलाड़ी ऑन साइड पर इस वक्त मौजूद, तो इस वजह से शायद अंपायर ने यहां पर नो बॉल घोषित किया है, तो 1 रन उनके खाते में जुड़ेगा। One plus one, 2 runs added to the total, और इन 2 रनों के साथ 8 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। और फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। सुबह का वक्त लगभग 10:40 इस वक्त बचते हुए, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर मैदान पर बढ़ता नजर आता हुआ। फ्री हिट इस वक्त घोषणा कर चुके हैं अंपायर, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಇವತ್ತು 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कोडियाल सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने दिया, फलस्वरूप उनकी टीम 67 रनों का विशाल सा स्कोर यहां पर खड़ा कर चुका है और एक विशाल सा लक्ष्य प्रदान कर चुका है 68 रनों का। एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 8 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और निसंदेह यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त बल्लेबाज किंग्स 11 उल्लाल के अपनी सही राह को तराशते हुए, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। लीग दौर का दूसरा अंतिम मैच यहां पर खेला जाता हुआ और अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। डेडली पॅन्थर सच कॅप्टन आणि योदाचा कॅप्टन स्टेजर येऊ का टॉसा खातीर। तो अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा चूके और गेंद लगभग पैरों पर टकराने के बाद निकल चुकी है शॉट फाइन लेग पर। जीएसबी योदाचा कॅप्टन आणि स्टेजर येऊ का। Swayed for the loss of 2 wickets, just a second over in progress in their innings. Still they have a long way to exactly 60 runs more. Now they have to score for victory. अगली गेंद के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार, एक लंबा ओवर गेंदबाज का यहाँ पर प्रगति पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार टिप किया लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, कलेक्टेड बाय द फील्डर क्लीनली जस्ट इनसाइड द फेंस।
द बैट्समैन हैव गॉट जस्ट सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति सो 2 overs completed it's 9 for the loss of 2 wicket and still they have to score 59 more runs for victory in remaining 3 overs and the Ash team run rate is now gone up to exactly 19.66 runs per over 59 रनों की दरकार बचे हुए 3 ओवर में अगला मैच लीग दौर का अंतिम मैच यहां पर खेला जाएगा तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं कि अगले मैच के दोनों टीमों के कप्तानों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें टॉस प्रक्रिया के लिए फॉर द टॉस प्रोसीजर। तो 40 मिनट इस मैच में इस वक्त हो चुके हैं इस मैच में और इस श्रृंखला के नियमानुसार हर टीम को 5 ओवर पूर्ण करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है और यहाँ पर 40 मिनट एक मैच का समय जो कि समाप्त हो चुका तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को आगे बढ़ाएं जल्द से जल्द। प्लीज कंटिन्यू द मैच इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल। और इस बीच गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से राकेश जबकि अनंत पई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत मिड विकेट पर फील्डर को प्राप्त करते हुए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जस्ट swung it away this time down to a deep mid wicket after being shuffling across the line not connected that one cleanly and finally deep mid wicket fielder no mistake he just took the catch inside the fence and that is the wicket number 3 for Kings 11 Ullal they are looking deep in trouble 9 रन 3 विकेट इस वक्त खो चुका है और निस्संदेह परेशानियों के बादल इस वक्त साफ किंग्स 11 उल्लाल के ऊपर मंडराते हुए। तो गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका बचे हुए 11 गेंदों में 59 रनों की और दरकार 59 रन्स मोर नीडेड इन रिमेनिंग 11 बॉल्स और 17 बॉल्स इनफैक्ट। इस बार कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद चूंकि आखिरी मौके पर मैं समझता हूं लगभग बल्ले का बाहरी सिरा टकराया था। He's got a nick on that at the last moment. Just wanted to cut that one after being rocked on the back foot. और निस्संदेह क्रीडा स्फूर्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर दिखाई बल्लेबाज प्रणव ने सीधे वो जानते थे कि यहाँ पर बल्ले का बाहरी सिरा लग चुका है और खुद पेविलियन को चलना उन्होंने शुरू किया और यहाँ पर क्रीडा स्फूर्ति उन्होंने दिखाई और हर खिलाड़ी को ऐसी क्रीडा स्फूर्ति दिखानी यहाँ पर जरूरत होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिस अंग्रेजी में कहते हैं। और इस बीच एक विकेट यहाँ पर गिर चुका है नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर थर्ड ओवर इज नाउ कंटिन्यूइंग 59 टू गेट फ्रॉम 16 डिलीवरीज ऑन अ हैट्रिक डिलीवरी। ये गेंद पुल किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट गेंद पहुंची डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा। दूसरा रन लेना चाहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। फुल टॉस स्विंग करना चाहा प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। प्लम्ब इन फ्रंट लेग बिफोर विकेट और यहां पर विकेट नंबर 1 का पतन हो चुका है। इनफैक्ट द डिसीजन हैज बीन विथड्रॉन बाय द अंपायर। इट्स गॉट अ इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट बॉल। इट्स गॉट अ बैट ऑन दैट और इस वजह से अपने निर्धार को वापस लेते हुए अंपायर। तो यहां पर सब कुछ सही सलामत और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि और गेंद लगभग उनके शरीर पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिले। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी 58 रिक्वायर्ड इन 2.1 ओवर दैट मींस इन 13 डिलीवरीज। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद फुल टॉस पुल्ड अवे एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस 6 रन्स और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर में रन से चाहिए इस वक्त 52 टू गेट फ्रॉम 2 ओवर्स और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब
उनके लिए काम कर सकते हैं अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है। तो लगभग 12 गेंदों में कम से कम 7 या 8 या 9 चौके छक्कों को उन्हें इस वक्त लगाना होगा, चौके छक्के को लगाना होगा, साथ में मिलकर 9-10 गेंदों पर उन्हें चौके और छक्कों को झड़ना होगा बचे हुए 12 गेंदों में। So in the next match, Yodhas, after won the toss, they elected to field first, and I request all the players of the next match to please get ready for the next match. Yodhas, in fact, they won the toss. They elected to bat first. So 2 overs remaining in overall calculation in their innings. So bowler starts the fresh proceedings from professional end और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। दो ओवर का खेल बाकी, 52 रन चाहिए, 52 to get from 2 overs. This time swings it away, not quite getting middle of the bat. He gets in a single for that stroke. एक रन इस बीच जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 17 for the loss of 4 wickets, 51 more runs, and now they have to score for victory in remaining 11 deliveries. Only boundary and sixes can change the picture of the match on the sides of Kings 11 Ullal at this situation. और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Wanted to play reverse shot, not succeeded. Ball running down to a short fine leg. In fact, he gets in a single for that stroke. 18 for the loss of 4 wicket. Exactly 50 runs more required in remaining 10 balls. 10 गेंदें बाकी और 50 रन चाहिए विजय के लिए. और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए. Lofted and a clean hit, 6 runs. जैसे ही गेंद बल्ले पर टकराई मैंने अंदाजा लगा लिया कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी और गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है. 24 रन, सिर्फ छक्के इस वक्त काम कर सकते हैं किंग्स 11 उल्लाल के लिए इस मैच में. तो अब 9 गेंदें बाकी हैं, 44 रन चाहिए. 44 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 9 बॉल्स. गेंदबाज देवदास एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया, नॉट क्वाइट मिडिंग इट एट द लास्ट मोमेंट. ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. 25 द स्कोर नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट in the over number 4 in progress. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. Gone for a mighty one, missing the line completely. Short third man fielder के हाथों में गेंद और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. It's 26 for 4 now. बाई का इशारा अंपायर का. 7 गेंदें बाकी, 42 रन चाहिए. 7 sixes required in the last 7 deliveries and this is the last chance in front of the batsmen of Kings 11 Ullal. 7 छक्कों की जरूरत अंतिम 7 गेंदों में विजय के लिए. अंतिम अवकाश Kings 11 Ullal के सामने. इस बार 6 number 1. Yes, now 6 sixes required in the last over. तो अंतिम गेंद पर छक्का झड़ने के बाद किंग्स 11 के उम्मीदों को कुछ हद तक बरकरार रख चुके हैं बल्लेबाज. अंतिम ओवर में 6 छक्कों की जरूरत बचे हुए अंतिम 6 गेंदों में. 6 sixes required in the last 6 deliveries. और यहां पर थोड़ी सी बातचीत चलती हुई
कुडियाल सुपर किंग्स के गेंदबाज फील्डरों के बीच में, और थोड़ी सी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है प्रणव भट्ट के हाथों में, जो कि अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा द लास्ट चांस, अंतिम अवकाश बल्लेबाजों के सामने। राजेश नायक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। तो 36 रन चाहिए अंतिम ओवर में। राजेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। Here he comes. First ball of his fresh over. 6 sixes required in the last 6 deliveries. पहली गेंद रिवर्स शॉट, delicately played, but after one bounce it's crossed over the fence. तो चौका जरूर मिल चुका है, लेकिन ये चौका उनके लिए पर्याप्त नहीं विजय दिलाने के लिए। अब 32 रन चाहिए 5 गेंदों में। 32 रिक्वायर्ड इन 5 बॉल्स। तो राजेश एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। Good one, absolutely fantastic one this time. A flighted one and went into the hands of a wicketkeeper after beating the batsman. There is no possibility of any run. Scoreboard stays at 36 for the loss of 4 wickets. निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि, और अब ऐसा कहना पड़ेगा कुडियाल सुपर किंग्स की विजय निश्चित है अगर कोई नो बॉल या वाइड इन बचे हुए 3 गेंदों पे गेंदबाज ना फेंकते हैं तो। $32 required in just 3 deliveries. इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला डीप मिड विकेट पर, जस्ट अ सिंगल इज गॉट। 37 now for the loss of 4 wickets. 31 required of last just 2 balls. Absolutely impossible task now in front of Kings 11 उल्लाल। तो अंतिम 2 गेंदें इस मैच में इस वक्त बाकी, और राजेश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस बार चूंकि विकेट कीपर के हाथों में गेंद रन से नहीं मिलेंगे, और स्कोर रुक चुका है 37 रनों पर। एंड नाउ द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप। 31 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट डिलीवरी। राजेश बाउल्स, पटकी हुई गेंद उछालना चाहा चूंकि, और जस्ट अ सिंगल, दैट्स इट। 38 द फाइनल स्कोर एंड दे लॉस्ट द मैच बाय 29 रन्स। So 29 runs comprehensive victory for Kudial Super Kings against Kings 11 Ullal, and with that 29 runs comprehensive victory, they back the complete points. So next match will be the last league match of the tournament, is now going to begin within just short while, and I request all the players of the last league match to please start the match immediately because of shortage of time. और इससे पहले कि अगला मैच शुरू हो, आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर मैं मेरे साथी सतीश को बुलाना चाहूंगा अंग्रेजी में। Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. I request extra player from Deadly Panthers, please be reported here immediately. Deadly Panthers, extra player. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So first over. Vishwanath will go into start the proceedings and Shivanand will go into be the striker. The first ball and right on the middle stump, and batsman played a copybook style of defensive stroke down to extra coverage and there is no chance at all for any run. And just coming back to these two teams, and there is nothing much in this particular match as the Deadly Panthers, they have lost 2 matches in this particular tournament. So winning this match definitely not going to disturb already the teams which is qualified for the next round. Even Yoda, GSP Yoda, they are already qualified for the next round of this tournament. So Deadly Panthers just playing for the pride for this match. At least they wanted to finish their journey with some one victory for this particular tournament, being the host of this cricket tournament. And again, very good start there from Vishwa. So one more dotted delivery. Shivanand once again get ready to face the next delivery there from Vishwa. Lofted, Shivanand lofted, and he got the distance as well. He's a powerful striker of the ball.
And once he hits the ball very neatly and cleanly. Absolutely, it's a clinical cricketing stroke. Effortlessly played, just stand and deliver. The ball is in the slot, of course, but you need to get the timing perfect to get the distance. And Shivanand has got his first run in a style by hitting the 6 down to deep long on. 6 without loss of any wicket. Down the leg stump, going to be a wide. Umpire Rajeshwar has got no hesitation in his mind to signal the wide. The scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket. The experienced umpire Rajeshwar joining today for this umpiring panel. Again, nicely bowled. Vishwa this time bowling the slower one along with the push. They want gets a single here. Shivanand will go into get the single, and with that single score numbers on to 8 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. So GSP Yoda, certainly they wanted to continue the winning run in this particular match, so that they're going to get some net practices for the next round, and that's why they're taking this match quite seriously. But at the same time, deadly Panthers, they at least they wanted to get their first victory. This time lofted, one bounce over the rope for 4 runs. Look at the ordinary effort there from the fielder. This is not a kind of effort when you're playing the big tournament like the Panthers Super League, and the fielder there in the mid backward square leg is not really runs quickly to his right to stop that boundary. The ball is just landed in front of him, a little bit on the right of him, and defeats him, and the boundary comes off here. So 12 came from that over of Vishwa, and both the batsmen have got a very good start from the bat. Well, without loss of any wicket, and just the number 17 is brought into attack. Aditya Pai brought into attack. Keeping one fielder in the fine leg and one at deep backward square leg, 1 mid wicket, and long on is there at the onside field. Next ball, Shivananda off the back foot. Places the ball down to short extra coverage, and before the cow point fielder Vishwa to collect that one. Ample time for Shivanand to pick the single. With that single, score numbers on to 13 without loss of any wicket here in over number second in progress. Left-handed combination, and strikes when rotates, need to change the field set. And Aditya again back to his bowling mark. 24 minutes I request the fielding team to complete your 5 overs quota. Please cooperate with us. Shortage of time. Now extra cover fielder going back to deep extra cover. The 5 fielders outside the circle, 4 inside the ring, 2 in the on, 2 in the off. Again swings and missed. And well pitched up delivery in the negation because of that ball is just moving from the good length spot away from the left-handed batter, and the batsman completely missed out that delivery. Girish Pandit is batting on 4. Now get ready to face next delivery of Aditya Pai. Again, lovely delivery indeed. The batsman once again just moving towards the direction of the ball. Tried to cut that one. The ball just missing his outside edge of the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance at all for any run. Aditya. Full toss. Lofted. Will it going to be a chance here for the fielder? Fielder is a little bit square, it's a straighter version in fact, but he's done a good job to stop the boundary for his team. Once it looks like ball going to win this fielder there, but the fielder has got a very good jump to stop the ball at deep whitish long on region, and 15 on the board, 15 without loss of any wicket. Aditya again back to his bowling mark. Girish Pandit, left-hand batter, shuffled across the line of the delivery, beautifully bowled. Good thinking there by Aditya, following the batsman, seeing the batsman's intention that is wanted to hit the ball on the onside region, so he's bowled outside the line of off time, almost in a Yorker line delivery, and there is no chance at all for the batter to swing his bat. Aditya again bowls full toss, lofted high up in the air,
Will it go into a chance here for the fielder? Yes, it is a chance, but fielder drops a catch. Looks like the Prasad is seeming in from the free deep. Could sprinting in from the deep, but not really not able to control the speed what he's got. Because of that speed, he couldn't manage to hold the catch. It's always going to be very key, isn't it? The judgment of the catch when you are trying to take the catch in front of you. When you are charging from the deep, you need to see how much speed which is required. How much speed which is required. If you run very quickly, then it's very difficult when ball is coming to you. Then very difficult to you to control your speed. That's what happening in this particular match. With a particular drop catch. So 2 overs complete, 17 on the board. Once again, request the fielding team to make it fast. Of course, you are in a time. I needed again the cooperation from you to complete this match as soon as possible. No change in bowling. Then Vishwa came into ball from the professional career end. Shivanand is batting very well so far in this particular match, but in the previous 2 matches also is a key player for the side of GSP Yoda. Lofted high up in the air, opportunity for the long off fielder, and this time he is not really missing the opportunity, just grabbing the opportunity by grabbing that catch. The Shivanand's wicket is back into pavilion. Once again he got a try for the mighty stroke on the long off region. And he just pays the penalty for that. The new batter is walking towards the middle, replacing Shivanand. It's Gautam Pai. One more very good striker of the ball. Team Mangalapura and V4NEWS मध्ये जाऊचार असा या मॅच जल्ली कुडले 2 टीमाचे रेडी असकोमन विनंती. Team Mangalapura and VV Warriors to get ready for the next match. A lovely delivery, beautifully ball, perfect delivery to ball to the new batter, but quite difficult which is taken faced there by the batter in the negation to get the single there. He wanted to work straight on the onside region, got a leading edge of the bat. But there's a possibility of a single for the new batter. One more single, so cover numbers at 18 for the loss of 1 wicket. Girish is on strike. Vishwa. Balls again, lovely delivery. And Ganesh once again, Girish is going for the mighty stroke in the relegation without seeing that line of the delivery. Of course, a little bit shuffled across the line of the delivery, but it's almost puller line delivery outside the line of off time by Vishwa. And there is no possibility of any run. 18 for the loss of 1 wicket. Vishwa again from the professional career end. Right over the wicket, pulls at one handsomely, but he will go in to clear the man out there in the deep backward square leg. Little bit correction in front of square. He pulls that one beautifully. Once it looks like Girish is not complete control over that full shot, but he's got enough bat, the power behind the stroke and the direction of the wind helping that stroke to get the distance right. 24 for the loss of 1 wicket. This time, it's a sweet sound which is came from the bat, but not really quite enough from the fielder there. We want to see whether the fielder touches that wall or not. The umpire have to see, and he's taken cleanly, I think so, is out. Once it looks like the fielder is really struggling to control his body balance. Just I want to see it in a replay. Driven that one, lofted that one, high up in the air. Long on fielder is got underneath it. Takes the catch. Second round of first match सोड देता. मंगळापुर आणि VV Warriors मध्ये जाऊचार असा. 2 टीमांनी रेडी असू का म्हणून विनंती. टाइम अभाव मस्त निमित्त 2 टीमांनी सहकार देऊ का म्हणून विनंती. I request please send the players list of the next match towards the commentary box. Vishwanath balls to the new batter. New batter, of course, steers that one down the third man region for a single. And 25 comes up. 25 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. GSP Yoda. They're going 8.33 runs per hour. It's good run rate maintained there by GSP Yoda.
in the 3 overs, having 8 wickets in hand, having Giridhar in other end. I think they're definitely going to get some good score here in the 2 overs. At least that 15 to 20 runs takes total score of GSP Yoda 45 to 50. They're going to be a very good score in the morning session. So coming back to the weather condition today, just I'm mentioning about, it's a fantastic weather condition. This is a perfect weather condition, isn't it? The month of December is a winter in Mangalore, but yesterday is a total different condition. Very hot. There is no wind in the ground. But today, the perfect condition. There's a huge wind is passing in the cricket ground. There's not that much of humidity. Mangalapura VV Warriors and Kodal Super Kings. Bowler's back opportunity of caught and ball. It's a tough one for the bowler Sharat Prabhu. Again Sharat bowling away from us. Again the Yorker line delivery, beautifully bowled, but again he missed that one. This is what you see, the body language. Sharat Prabhu, everybody knows, one of the popular name as far as in a GSP community. The winning several times the man of the series, the GPL, one of the festival of cricket in GSP community. But this time slashes hard down to deep cover point region, but the protection has been given so that the batsman have to settle for the single. The very good all-rounder Sharat, but his team is not really doing good job in this particular tournament. Again beautifully bowled, slower one in that again from a Sharat batsman going for the big shot, but not really complete control over that shot. It's a 28 on the board for the loss of 2 wickets. Sharat Prabhu bowling away from us. Again appeal for leg before wicket. Umpire rightly so is not interested. Ball is definitely going to miss the leg stump because of that extra movement of the delivery. Sharat is master of doing that. Sometime he's getting some extra turn in his delivery. So rightly so, umpire Viraj not interested. This time not a good line to ball outside the line of leg stump. Sharat Prabhu is looking for some experiment in the occasion and not really looking that much of 100% fit here, and struggling with his bowling arm. 29 for the loss of 2 wickets. This time lofted, delivered, and ball is landing into the commentary box just right in front of me. The 6 signal by umpire. The nice way to finish the over number 4 here for GSB Yoda. Giridhar, a little bit. Gautam Pai this time getting that 6 in a light time. And 35 for the loss of 2 wickets. He's got a very good muscles, isn't it? There's a well-built personality. Once he hits the ball, he's putting all the power behind the stroke. The straight down the ground, as straight as an arrow. Ball just landed in front of our commentary box for youth 6. 25 for the loss of 2 wickets in the over number 4, which is completed. Vinay Prabhu bowling to Deepak Badal. This time for Zerwan, straight to the hands of fieldsman. This time this fielder, the same fielder who really dropped the catch in the last second over. He takes a very good catch in the relegation. Prasad, I think so, there in the deep backward square leg, taken a very good catch. Little bit low down to him, but he's just able to manage to take that catch very well. And just over his knee level, that ball came into him and he got a very good catch. The Badal is back in the pavilion. It's a 35 for the loss of 3 wickets. The new batsman in his Nagesh is walking towards the middle. Last 5 deliveries left in their innings. Right about wicket balls. Again looking for the cut shot. Looks like it's got an outside edge up the bat. The wicket keeper, but no outside edge. By call by umpire. Ball I think is just kept a little bit low. What Nagesh is going for the cut shot. Ball is just passing under his bat. The wicketkeeper fails to collect the ball. Sharat Prabhu. This time lofted. He is just enjoying his batting. A ball is hitting the advertisement board towards a mid-wicket region.
Gautam Pai is looking in a fantastic touch in this particular match. 14 is batting on with the help of 2 sixes and is faced only 5 deliveries. A very good score now for GSP Yoda. Yes, Sam. It's going to be very high. It's going to be very high. When it's a high, it's an opportunity for the fielder. Yes, it does. He couldn't manage to play that one on a flatter version, of course. Gurudat Pai in the swings his bat, swings but not really getting that one right from the middle of the bat. High up in the air. And mid-wicket fielder taken a comfortable catch. Let's just look at that one in. Not that much of shot enough, but he swings his bat, but it's too high. If it is in a little bit flatter version, definitely he will going to get the distance. He got elevation but fails to get the distance, and mid-wicket fielder comfortably taken the catch a couple of yards inside the boundary line. But very good innings comes in from Gurudat Pai, but he need to throw his bat because of that last over. Vinay Prabhu balls to the new batter and dotted delivery, and always when new batter coming to the bat, the bowler definitely going to enjoy to ball the new batter bowling outside the line of off stump. Pawan is the new batter in last delivery of their innings is coming up. 42 is the total score. Can the batter will going to finish this innings with a big shot? No, looks like they will coming back for the second, definitely, because it's the last ball of the innings and they completed 2, but 1 shot called by umpire Viraj at square leg. That means just a single. And 43 is the total score of GSP Yoda. 44 going to be a target for team Deadly Panthers to win their first match. And Deadly Panthers, certainly they wanted to finish their journey with 1 victory here. For that they need to get some the top order batsmen to need to get some good start here, and need to lay the foundation against the formidable bowling department of their against team Yoda, GSP Yoda. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. फर्स्ट मॅच सप्तमी वॉरियर्स वर्सेस आरके स्ट्रायकर्स. सप्तमी वॉरियर्स आणि आरके स्ट्रायकर्स कॅप्टन काही असल्यारी हांगा स्टेजार येवका टॉसा खातीर. एक सान चेंज
फर्स्ट मॅच टीम मंगळापुरा वर्सेस व्ही वॉरियर्स. व्ही वॉरियर्सचा कॅप्टन आणि काही असल्यारी योग्य का हंग तुमका मंगळापुराच कॅप्टन राखून राबला. धन्यवाद सतीश. तो दूसरा गेंद इस वक्त, दूसरी गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछालना चाहा था, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. तो जहां तक सवाल है इस वक्त रन्स बनाने हैं. द टारगेट इज 44 the target in 5 overs. Now 2 deliveries gone in their innings and now they are still none for none in the first over. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर उछाला, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से उछाल दिया छक्के के लिए बल्लेबाज चिराग ने. और इस छक्के के साथ उनका और टीम का खाता खुल चुका है. डेडली पैंथर्स अपना खाता खोल चुका है 6 रनों के साथ. जहां तक डेडली पैंथर का सवाल है, इस श्रृंखला में पहले 2 मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, तो इस श्रृंखला को जीत के साथ समाप्त करने के प्रयत्न में उनके बल्लेबाज. और यहां पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. तो 44 रनों का लक्ष्य और गेंदबाज ये गेंद उछालना चाहे एक बार फिर से. बेहतर कमबैक का इस वक्त विकेट कीपर के चेहरे पर कुछ हद तक उत्तेजना ज्यादा थी, आत्मविश्वास कम था. और इस बीच इस अपील को, हल्की सी अपील थी लेकिन इस अपील को नकार दिया इस वक्त विकेट कीपर ने. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान के. एक बार फिर से चिराग का सामना करने के लिए तैयार पवन की गेंदों का. ये गेंद इस बार स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड एंड इट्स बीट द फील्डर. 6 number 2 in this over. And this is a fantastic start for Deadly Panthers. 13 runs scored in the first over, 31 to get in remaining. Still a ball left in this over. और 12 रन इस ओवर में, 13 रन इस ओवर में बन चुके, 13 विदाउट लॉस. और पहले ओवर में चिराग काफी आक्रामक बल्लेबाज यहां पर अपनाते हुए. और एक बार फिर से गेंदबाज पवन दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार गेंद को खेल दिया शॉर्ट टेक से कवर पर. रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. इट्स 14 विदाउट लॉस. फर्स्ट ओवर हैज बीन गेम्स टू एंड. और एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है. 30 रन और चाहिए, 30 रन मोर. नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री in remaining 24 deliveries, and asking run rate is now straight away coming down to exactly 7.50 runs per over. तो इस वक्त आस्किंग रन रेट उतर कर आ चुका है 7.50 रन प्रति ओवर. और यहां पर एक बेहतर शुरुआत कर चुका है चिराग. 6 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं 217 स्ट्राइक रेट की मदद से. और पहले ओवर में पवन 14 रन प्रदान कर चुके हैं. सो प्रीटी गुड स्टार्ट फॉर डेडली पैंथर्स चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 44 in 5 overs. दे आर 14 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर. सेकंड ओवर स्टार्ट्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड. और गेंदबाज दूसरा ओवर यानी यूटीसी एंड की ओर से अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए. तो ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, शिवानंद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. पहली गेंद लेग स्टंप पर पुल किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और 4 रनों के लिए. इट वेंट ओवर द बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर साइड. इनफैक्ट ही गेट्स एन बाउंड्री फॉर दैट. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर. 18 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार. ये गेंद एक बार गेंद को फिर से पुल करना चाहा, अपील कुछ हद तक लेग ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती है और गेंद लाइन के बाहर टिप्पा गति. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. इट्स 19 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. जहां तक सवाल है डेडली पैंथर्स का, तो जीत के साथ इस श्रृंखला को समाप्त करने के प्रयत्न करते हुए उनके बल्लेबाज इस वक्त पहले 2 मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. और जहां तक सवाल है इस वक्त जीएसबी योद्धास का, तो इस वक्त इस श्रृंखला के दूसरे दौर में वो प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, तो ये मैच उनके लिए उतना खास नहीं है. लेकिन अजय अभियान के साथ इस
लीग स्टेज को समाप्त करना उनका उद्देश्य है और देखना ये कि वे अपने इस उद्देश्य में किस हद तक यश प्राप्त करते हैं। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया और वहां पर फिसल कर फील्डर गिर पड़े हैं और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे दौड़े और 2 कदम दौड़ते ही वहां पर फिसल कर गिर गए, जमीन पर लेटे रहे और गेंद उनके कोसों दूर इस वक्त जा गिरी है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के स्टेज के फ्लेक्स के दीवार पर टकराती हुई। और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले एंड द बॉल स्ट्रेट हिटिंग टू द फ्लेक्स ऑन द just wide of this flex on the stage and he gets a maximum for that. Again just wanted to top that one, is gone. This time he's got a toppage on that. इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, गेंद थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए टॉपेज पर टकराई और सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और इसी के साथ विकेट गिर चुका। लेकिन बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए शरत प्रभु की पारी समाप्त। एक छक्के की मदद से सिर्फ 2 गेंदों में उन्होंने 6 रन बनाए, लेकिन चिराग इस वक्त दूसरे छोर पर मौजूद 17 रन बना चुके हैं 8 गेंदों पर। निस्संदेह उनकी उपस्थिति इस वक्त डेडली पैंथर्स के लिए बेहद जरूरी है। जहां तक डेडली पैंथर्स के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, सिर्फ 19 रन चाहिए विजय के लिए। जस्ट 19 रन मोर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन 3+ ओवर्स। तो first ball, loved that one, down to long on. I think the ball fell short of a fielder at long on. In fact, the batsman gets a single for that stroke. 26 for the loss of 1 wicket at the start of, in fact, the second over in progress. Still a ball left. और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा। इट्स 27 and 2 overs had been bowled. So a fantastic progressing here for Deadly Panthers. Just 17 runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries, and the target seems to be much easier now for them at this situation. So 17 runs to get from 18 deliveries. The last league match of the league stage of Panthers Super League 2023 is now progressing here between GSB Yoddhas versus Deadly Panthers, the host team. They have to score 17 runs in remaining 18 deliveries. Professional and की ओर से गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए पवन, और पहले ओवर में 14 रन प्रदान करने के बावजूद जीएसबी योद्धास के कप्तान ने उन पर विश्वास रखा है और उनको गेंदबाजी सौंपी है, और देखना यह है कि वो कप्तान के विश्वास को किस हद तक निभा पाते हैं। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंचे डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। इन फैक्ट फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, मिड विकेट पर फील्डर को इस वक्त पीछे की ओर भेजा जा रहा है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। दिस टाइम लॉफ्ट दैट वन, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन 1 रन मिलेगा जरूर डीप मिड विकेट पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। आज का दूसरा मैच और कुल मिलाकर इस श्रृंखला का 18वां मैच यहाँ पर प्रगति पर, 18th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड सेकंड मैच ऑफ द डे 2 ऑफ पैंथर्स सुपर लीग 2023 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, इस गॉड इनसाइड एज ऑन दैट, और गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, लेकिन इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर
हो चुका है। 31 विकेट के नुकसान पर कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। अगर इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं बल्लेबाज। और यहाँ पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाने की पूरी कोशिश करते हुए बल्लेबाज इस बार उछाला, लेकिन गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। आदित्य के बल्ले से स्ट्रोक इस वक्त उछाला गया, एब्सोल्युटली एफर्टलेस, just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of long off fence for a huge one, 36 for 1। और ऐसा कहना पड़ेगा अपने विजय की ओर इस वक्त फर्स्ट मैच टीम मंगळापुर वर्सेस वीवी वॉरियर्स। आज कैप्टन अतनी जल्दीतली होगी अंग स्टेज अला येऊका टॉसा कतीरा। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा। और ऐसा कहना पड़ेगा अपने विजय की ओर काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ इस वक्त डेडली पैंथर्स। 37 for the loss of 1 wicket, just 7 to get now, 2+ overs remaining। इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा। ಟೀಮ್ ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಹಾಗೂ ವಿವಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿವಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ immediately for toss procedure. So 6 to get now and 2 overs remaining in overall calculation in the innings, and now Deadly Panthers looking in a commanding situation. So Gautam Pai, the bowler, is now brought into the attack, and just 6 more runs required in remaining 2 overs for Deadly Panthers to register their first victory in this tournament. और गौतम ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, पैरों पर टकराई, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए सही तरीके से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। 39 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए, जस्ट 5 more runs required for victory। और गेंदबाज गौतम पाई एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज मोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त सामना करते हुए आदित्य पाई। ये गेंद इस बार उछाला और गेंद लंगोन सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ही फिनिश द मैच इन स्टाइल विद द 6। सो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर डेडली पैंथर्स। टीम मंगळापुर आणि विवी वॉरियर्सचे कॅप्टन संघासाठी So comprehensive victory for Deadly Panthers against GSB Odas by 9 wickets with 10 balls to spare. And with that victory, they are back the complete point, and then they finished the league stage with 2 lost and 1 won in their 3 league matches. So all cricketing actions of league stage are over now, and we straight away moving on to a second round, and 6 matches to be played in the second round of this competition. The first match of second round is now going to start between VV Warriors versus Team Mangalapuram, and I request both teams players to please start the match immediately because of shortage of time. I request the both teams players to please start the match immediately. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. The fixtures of the second round matches. Toss win जाऊन fielding choose केला.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. So very interesting match here between these two very good teams. Now 11:45 what the umpire is noted the time. 11:45 is the time, and here is the first ball. Right arm over the wicket. Outside the run of half time. No ball called by umpire, rightly so. That's a no ball because the ball is pitches outside the line of the pitch. ತಾರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾರಣ್ಣ. The first run comes up here for team VV cricketers. Vinayak Pai bowling away from us. Right arm over the wicket, bows. Ball him, clean him up. This is a free hit delivery. Unfortunately, not that much of excitement here. Only in our commentary box that has excitement. It's a no ball, free hit delivery. That's why batsman shuffled across the line of delivery too much. Deepak is a batsman. Tried to look for an improvising cricketing stroke. Shuffled across the line of the delivery too much. But fortunately, it's a free hit delivery. So Vinayak Pai, unfortunately, misses that opportunity of taking a wicket. But it's a great delivery to survive from the free hit delivery. Vinayak again bowling away from us. Right arm over the wicket, balls. And the appeal for leg before wicket, absolutely flum. No doubt at all. He is finding himself right in front of middle stump. So now the Deepak, I think he is on the middle stump. His back leg is certainly in the middle stump. Look at that one on replay. No hesitation at all for umpire Shinike to raise his finger. Magnificent delivery there from Vinayak. And even though he bowled one no ball in this particular over, but he came back very strongly. And one for the loss of one wicket. Srinivas Pai
is a new batsman, is walking towards the middle. It's famously known as a Sino, the very good striker of the ball. He's got a very good tournament from the bat for VB cricketers. Now, the fielding team need to be very careful. Need to finish it off the things very quickly. So, look at the body language of Mangalapuram. Absolutely, that's what I needed. That body language of the closing fielders, encouraging the bowlers. Right arm over the wicket balls. Beautifully balled. Perfect delivery ball to the new batsman Srinivas. A little better movement of his front foot where he was standing without touching his front foot to the line of the delivery. Tried to hit the ball on the up but missed it completely. One for the loss of 1 wicket. So far it's a good start here for Mangalapuram. Vinayak. Right above the wicket. Sino swings it hard and he got the distance. It's a huge one. The first sixer of this match. Srinivas, I'm just talking about him. He is a very dangerous batsman. You cannot bowl that line to the caliber of this man. Srinivas is a very good puller of the ball. Just waiting for that short pitch delivery and just getting the right position to pull that one down to deep backward square leg boundary for his youth 6. And scoreboard jumped into 7 on the board. Vinayak again bowling away from us. Right arm over the wicket to Srinivas. Again that ball is going down the leg stump. Frustration and the pressure straight away for the bowler after that 6. He just wanted to bowl the Yorker lane delivery, but the direction is not right here. Ball is going down the leg stump further away. White single on scoreboard was on to 8 for the loss of 1 wicket. VB Cricketers has got a good start here against Mangalapura. Both the teams has really got a very good league matches and they qualify for this round. This time Srinivas lofted up in the air. The fielder behind the ball. Oh, looks like it's going to be one of the best catch, but the fielder is not really able to judge that catch very well because ball is just moving in the wind. Changing the direction is not so easy. Look at that. Srinivas is lofted that one, not quite getting hold of that one properly. But look at the fielder running back. It's not so easy. Ball is spinning and spinning, and that's why he couldn't manage to hold the catch properly. If he is able to get the catch, then it's going to be a very best catch. But he just missed that opportunity. Scoreboard now moves on to double figure 10 for the loss of 1 wicket. Vinayak this time, Srinivas, the opportunity. Second opportunity and the third attempt. He takes a catch. Lakshmish Malli, I think so. He's a very young, talented fielder in the side of the Mangalapuram. Of course, the Mangalapuram has got all players as a very youngsters. The energetic and hot-blooded youngsters in the side of Mangalapuram. Look at the effort there from, oh my goodness, Lakshmish Malli not really left that opportunity. Kept the eye on the ball, even the ball is slipping out of his hand. But in the second attempt, he completed the catch. A big wicket here for Mangalapuram. The wicket number 2, which is back into pavilion. It's 10 for the loss of 2 wickets. So new batsman is Aditya, walking. Bowler is Aditya from the professional career end. The batsman is Yogi Vignesh Karkal. Vignesh Karkal, the walking towards the middle, have to prove his batting ability. The first two matches fails to contribute, but in the last match, he's back with some big shots. And wait and see how he'll going to continue this big match. The first ball of the second over, absolutely perfect one. Seeing the batsman is just moving towards the onside region to make a room to play the shot. He bowled a lovely delivery, lovely line outside the line of off stump. Aditya bowls to the left-hand batsman that pretty hardly hit that one. Varun down to deep long off region, so he gets his first run. Varun is a fantastic left-hand batter. And scoreboard is 11 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress for VB Warriors. VB Warriors has got some fantastic warriors in the side. So far they got a fantastic journey in this particular Panthers Super League 2023. This time appeal for leg before wicket. This time I think the batsman lucky there. That ball is just going down the off stump, isn't it? He's just shuffled across the line of the delivery. Yorker lane delivery.
And Vignesh shuffled across the line of delivery and tried to swing that one. A low full toss. But he wanted to convert that low full toss into big stroke. But he's not happy with himself. He can get the big shot in that particular delivery. And scoreboard is remains on 12 for the loss of 2 wicket. Correction, 12 for the loss of 2 wicket. Left arm. Bowls up. Beautifully bowled. Again, he's testing the temperament of the Varun by bowling that line that is outside the line of off stump. So far, Aditya but are really playing with the mind game of the batter. It's a really good one to see. The bowler is really knows that what is the potential of the batsman, what is the strongest zone of the batter, and he's just bowling towards not his strength but is for the weakness. Again, shuffle across the line, beautifully bowled. One more good delivery in the again. Chance of run out in another seconds. Oh, the bowler is fails to collect the ball, isn't it? If it is a direct hit, I think it's all over. Even the bowler has got a golden opportunity to collect the ball to make that run out. Just look at it on the replay. The fielder is so quick and look at the throw. It's absolutely perfect one, isn't it? That's not that much of enough problem. The fielder that was came in a good height to collect that one, but bowler fails to collect the throw from the fielder. Batsman survive. Again, a full toss delivery, low full toss. Vignesh swings that one down to mid wicket region, but the running between the wicket is not that much of quick. So that both the batters have to settle for the single. Good piece of fielding by the fielder in the deep mid wicket. 2 overs completed. After completion of over number 2, VB cricketers managed to get 14 at the rate of exactly 7 runs per over. And that is good piece of fielding, isn't it, in the deep mid wicket region. And fielder from deep long on to run across his right to field the ball. And the batsman only got a single for that. 14 for the loss of 2 wicket. VB cricketers, just I mentioned about the cricketers, VB cricketers has got a longest history in cricket, especially in non-arm cricket. VB cricketers, Veera Venkatesh cricketers has got sweetest memories in non-arm cricket. Of course, especially in RRP Memorial Trophy, UFC Trophy, the World Cup of one-arm cricket. No ball called by umpire, and with that no ball, I think the batsman survived. The appeal for leg before wicket, before that umpire called it's a no ball. And that means it's going to be a second no ball of this innings, isn't it? The second opportunity for the batter to face the free hit delivery. 16 for the loss of 2 wicket. The free hit delivery for the left-hand batter, Varun. Shanmugh Baliga balls this time, lofted that one. Oh, what a catch taken there by the fielder, but I think it's a free hit delivery. Fantastic attempt there from Lakshmesh Malya. So once again he's proving why he is one of the very key player for the side. The way that he's taken that catch, but unfortunately result is not going in the favor of the fielding team because of that free hit delivery. Just look at the effort that from the fielder, absolutely perfect one, isn't it? This time Vignesh going for a chance of run out in all cycles, and again they missed that opportunity and overthrow comes into play too. There's a direct hit, but looks like Varun is definitely going to be a safe here. We can see the drama out here in the middle, but here is a square leg umpire asking for the third umpire, because whenever the direct hit, umpire doesn't want to take any risk. Whenever the direct hit, there is a possibility of getting a result in favor of fielding team. The third umpire will going to get exact the result of this run out, whether it's going to be out or not out. And the technicians of V424/7 channel under the leadership of Manik and his teams definitely going to give us exact angle and not out, which is the call from third umpire. Leg by call by umpire. Now I think this is what you call the umpiring, and after that decision came, if it is out, there is no run, and it's a not out, so that 1 run in the form of leg by. 18 for the loss of 2 wicket. Shanmugha balls driven powerfully down to long on. Pawan
hits the ball very well in the negation, but not quite enough to get the placement right. It's 19 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. Every kind of battle between these two teams to get the place in the qualifier of this cricket tournament. The 4 teams will go to qualify. This time appeal for leg before wicket and going for the run. Chance of run out. Even though Vignesh survived from the leg before wicket, but it's very difficult for him to survive from the run out. Umpire is calling for third umpire the second time in this over. Just looks like the body language of team, the fielding team, they definitely looks like they're very confident. Vignesh, Shanai Karkal, he also looks very confident that like that he will be safe. But third umpire should be very confident more than anything else, whether it's a not out or out. Umpire Rajeshwar is just getting all the angles provided by the technicians to judge whether it's out or not out. Just a heartbeat of the fans of both the teams kept going very high like that. This is a heartbeat of a commentator. But this is a very slow heartbeat, but I don't think so. The followers' heartbeat might be a little bit high like this. It's a very close one, isn't it? Very difficult to get this best result of this match, this run audition, and sometime it will take a little bit of time. Umpires, please note that there's a timing which is taken for the third umpire, which will be deducted. And time is exactly now 11 past 55. And I think exactly 12. They started 11:45. The 15 minutes which is taken already. I think they are on a time. Is no doubt at all. But all the times definitely going to be noted. It's not out which is a call. That's what I'm mentioning about. Even the more than the fielders very confident, and just look at the pace of batter. Vignesh is so confident that he's home, and I think it's a lot of time which is taken because it's a very close one, and batsman managed to drag the bat. He drags the bat. That's why he's very safe. And here is the next one. Shanmugh bowls outside the line of leg stump, punishable from umpire. Wide call by umpire. One more addition to total addition of that single. 21 for the loss of 2 wickets. Shanmugh, the very young talented bowler for the side of Mangalapura. As the next one, beautifully bowled. This is what a fantastic bowling there by Shanmugh. It's a very young talented bowler.
and each and every matches is looking the complete cricketer. Again, the lovely Yorker line delivery, isn't it? Absolutely perfect one. Varun tried to swing that one, but because of that Yorker line delivery, there's a good over completed by the Shanmugh in the delegation. So over number 3 completed. After completion of over number 3, VB cricketers managed to get 22 by losing 2 wickets. Umpire definitely will going to have eye on the time which is taken. That means need to start their 5th over by 12:07. Please note, Team Mangalapura have to start their 5th over latest by 12:07 as per the time which is given for them. After deducting all the wastage time which is taken for the third umpire. Now bowler from the far end, Vinayak Pai. Second time he is bowling from the far end, bowling his last over of his quota. Starts with a beautiful delivery, but there is nothing a stroke there from Varun. Nowhere near the ball. He is playing that one away from his body at the same time against the line of the delivery. And there's no chance at all for any run at all. Varun is playing a different game today. Batting on 5, but it taken 9 deliveries for that. 22 for the loss of 2 wickets. Vinayak bowls. This time Warren swings, but again a lack of placement. Just a single for him. The wicket single score numbers under 23 for the loss of 2 wickets. Now, very interesting to see that how Vignesh will go into handle the Vinayak. The one great bowler for the side of Mangalapura will going to have a competition with one of the great striker of the ball, Vignesh of Karkala. So far, Vignesh is batting on 1 and faced 5 deliveries for that. But he never bothered about that, how many balls he faced. Once he get going, he's definitely going to be a danger batsman. Vinayak. This time, what you are talking about? He will not bother about how many dot ball he is going to face, but he is only bothered about how to clear the boundary line. This is the one of the magnificent struck there from Vignesh Pai. Just a shuffle across the line of the delivery, and look at the way that the swing of the bat. Nothing wrong, actually, I want to say. Nothing wrong with the delivery. But he made that wrong because by shuffled across the line of the delivery. No bother about that ball is on the middle stump or anything. But he swings that one beautifully down to mid-wicket boundary. Backward square leg boundary. Between backward square leg and mid-wicket to get the distance. And he's just clearing the ground. Not only clears the boundary line, but he's clearing the ground as well. It's a huge 6 from huge man. 29 for the loss of 2 wickets. Vinayak again from the far end. Right, again the short pitch delivery, but he's not really getting that much of elevation, not getting that much of height enough to swing that one once again out of the park. But he swings, but swings only for the single. With that single score numbers onto 30 for the loss of 2 wickets. VB cricketers slowly, they are cruising towards the run, which is they may be thinking about the 45 to 50 is a better run to depend. Vinayak back from the professional career end. Ball swings Varun, but again the protection is given in the deep backward square leg for that pull shot. So you have to settle for the single. With the single score numbers on to 31 for the loss of a 2 wicket. Last delivery of the over number 4 will go into start from the far end. Vignesh, shadowing of Karkal, will go into face final delivery of Vinayak. Swings, second sixer. This is a much better than the previous one. Huge 6. Absolutely, it's a biggie from big man. 37 for the loss of 2 wickets. This is what Vignesh is capable of doing. I already mentioned when he was batting in 5 by facing 9 deliveries, not to bother about the how many dot deliveries we're going to face. Yes, he's scored only 1 run by facing 5 deliveries in the before the start of this over. Now look at the how well he finished that one. He's now scored 14 runs and he faced just 8 deliveries. The strike rate already climbed into 175. This is capability of this some players. It's a 37 for the loss of 2 wickets. VB cricketers has got a plenty. Mangalapuram
need to have one good bowler to check the runs, to stop the flow of the runs. And Lakshmish Mallya, we are talking about the capability, the potential of this very young, talented bowler. Wait and see how he'll going to handle the pressure to bowl that final over. So far in this particular tournament, is given his 100%. Now he need to bowl one more good overs for his team. Starts with the full toss, a slow full toss. And Varun know exactly what's the job he need to do in this last over to pick the single and try to give the strike to this man, the mighty striker of the ball. Vignesh Shanaikakal is back on strike. 5 balls remaining. Deep backward score like mid wicket and deep long on the fielders in the deep in the on. Deep wideish long off, deep cow point. The fielders are in the deep in the offside region. Mallya balls, best time. Quite deliberately, seeing that Lakshmish Mallya, the batsman, shuffled across the line of delivery. He wanted to ball outside the line of off time, but Vignesh straight away knows, realizing this is the one, it's going further away. So left that one rightly, so white call by umpire. 39 for the loss of 2 wicket. Lakshmish bowls beautifully, fantastic delivery, chance of run out in the, oh my goodness, this chance for wicketkeeper behind the stump to make the run out in the strikers, non-strikers end in fact. But he's trying for the run out in the strikers and back and throw, misses a stump. The batsman completed the single. 40 for the loss of 2 wicket. 4 balls remaining in the innings of wicketers. Varun back on strike. So far he's looking very cool and calm in the other end. Just playing an acting role. Again, lovely delivery. This is the speciality of this man, Lakshmish Mallya. Handled the pressure very well so far in this final over. 41 for the loss of 2 wicket. 3 balls remaining in the innings. A very good crowd out here in this UCC cricket ground enjoying the game of cricket. Lakshmish Mallya once again is back to his bowling mark. Right arm over the wicket, passes umpire Shriniket. This time, what a shot! This is the stroke of the day. Ball is landed into the stage. Roof of the stage. What a magnificent striker of the ball. Absolutely audacious. Look at the way that he swings that one from outside the line of off stamp. Nothing much wrong with the line, which is outside the line of off stamp. And this man is muscles that one down to mid wicket for a huge 6. 47 for the loss of 2 wicket. Vignesh drives that one powerfully down to long off region. Vignesh asking his partner to come to the striker, non-strikers end. Come to the non-strikers end. I wanted the strike desperately for that last delivery, but it's not really enough for both the batters to complete that couple of runs. But the last ball of their innings is coming up as Varun will go into be the striker. Full toss, swings, finish the match, finish the innings, hit the big shot, and the score jumped into 50 plus now. Lakshmish Mallya, the last ball I think he did a mistake by bowling a full toss delivery to the batter like Varun Chengi, just taking advantage of that one. 54, which is the total score of VB cricketers, and they set a target of 55 to win the match for the team Mangalapura. The one stage they are struggling. Thank you very much Mangalapura. They finished 5 overs quota before the time which is allotted for them. Thank you very much for your cooperation. ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ 18 ಮ್ಯಾಚ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೈ ನಾಟ್. So this is what you call, isn't it? And nothing called can't. Everything can be can, but you need to knock the T from can't, then you can. So thank you very much. Institute of Creative
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. And the innings of team Mangalapuram is now going to begin. तो पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज लक्ष्मीश और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए विनायक नॉन स्ट्राइक रेट पर विजय राज। तो इस बीच और गेंदबाज इस वक्त नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी कहते हैं। फुल टॉस फुल किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ पहले गेंद पर यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment. Goal is stoppage and long off fielder no mistake. पहली ही गेंद पर यह विकेट यहां पर गिर चुका है। स्ट्रेट अवे दबाव इस वक्त टीम मंगलापुरम के बल्लेबाजों के ऊपर। 0 पर पहला विकेट खो चुका है और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, 55 रन से उन्हें बनाने निर्धारित 5 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 11 रन पर ओवर। और इस वक्त पहले ओवर के पहले ही गेंद पर विकेट गिर जाने के बाद दबाव इस वक्त टीम मंगलापुरम के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ। तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद हरिप्रसाद, जो कि इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए इस वक्त साथ निभाएंगे, साथ ही विजय राज पई का और लक्ष्मीश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। तो ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त लक्ष्मीश तैयार, नए बल्लेबाज इस वक्त हरिप्रसाद जो कि सामना करने के लिए तैयार। अपनी ओवर की अगली गेंद, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को बल्ले तक आने दिया, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंची और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक साझेदारी पार्टनरशिप का जहां तक सवाल है, एक लंबी साझेदारी की इस वक्त टीम मंगलापुरम के बल्लेबाजों को सख्त जरूरत है। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की दिशा में। दोनों बल्लेबाज आपस में टकराने से बचे अंतिम क्षण में और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इस वक्त टीम मंगलापुरम के लिए 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और लक्ष्मीश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज विजय राज पई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन कलेक्टेड बाय विकेट कीपर आफ्टर फर्स्ट पास एंड द बॉल पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल इन द लास्ट मोमेंट। इन स्विंगिंग यॉर्कर थी और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से दबाना चाहता। बल्ले पर गेंद टकराने के बाद, बल्ले का बाहरी किनारे पर टकराने के बाद पहले टिप्पे के बाद गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी। अगली गेंद इस बार उछालना चाहा, मत स्ट्रेट लाइन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली, कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बाय द स्टंप्स। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फैंटास्टिक ओवर।
इन वीवी वॉरियर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अब एक रन सिर्फ बन चुके हैं इस ओवर में और एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए लक्ष्मीश बाड़ीगा अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार है। ये गेंद इस बार फुल टॉस ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन पर और वहां पर फील्डर मौजूद है। सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। तो पहला बेहतर ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है लक्ष्मीश बाड़ीगा का, जिसमें सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक धीमा शुरुआत यहां पर कर चुका है टीम मंगलापुरम। 55 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 2 रन जोड़ चुका है एक विकेट के नुकसान पर। और अगर समीकरण की ओर नजर फिराए तो 55 से 2 घटा दिया जाए तो 53 रन और बनाने हैं, जबकि ओवर्स बाकी हैं सिर्फ 4। आस्किंग रन रेट चाहिए 13.25 रन प्रति ओवर। और निस्संदेह इस वक्त जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त टीम मंगलापुरम के बल्लेबाजों को इस मैच में वापस आने के लिए। दूसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से शुरू होता हुआ प्रोफेशनल एंड की ओर से सूरज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त या सूरज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जस्ट सिंगल दे गॉट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 for the loss of 1 wicket. कैप्टन टॉस आयोग 3 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज इस वक्त टीम मंगलापुरम के अपनी सही राह को तराशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। कैप्टन आणि सप्तमी वॉरियर्स कैप्टन जलतेतले बग्गे टॉस आयोग इस बीच ये इस बार बल्ले का भारी किनारा लेकिन लगा या नहीं ये देखने वाली बात है। और अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था और काफी नजदीकी मामला था इस वक्त, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद कुछ हद तक घुमाव लेती हुई उनके बल्ले से कुछ दूर पहुंची और अपील जरूर था विकेट कीपर का, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने कहा कि जी नहीं, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल बच चुके। एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, डीप मिड विकेट फील्डर गेंद को लपकते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। टीम मंगलापुरम आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। गेंद को ऑन साइड पर स्विंग किया था, देखिए किस तरीके से, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, लेकिन द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। 3 for the loss of 2 wicket. They are looking deep in trouble now. तो पहला दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और दो प्रमुख विकेट यहां पर गिर चुके हैं टीम मंगलापुरम के सिर्फ 2 रनों के योग पर। 3 for the loss of 2 wicket and just a second over in progress in their innings. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, दे हैव टू कंप्लीट देयर 5 overs कोटा इन देयर अलॉटेड 20 minutes। और यहां पर इस बीच बेहतर गेंद थी बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, तो रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 3 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। हर टीम के लिए 20 मिनटों का स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है 5 ओवर्स के कोटे को पूर्ण करने के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद इस बार पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। हालांकि विकेट कीपर के हाथों में कुछ हद तक चोट आई है, गेंद को विकेटों के पीछे फील्ड करते समय उनका उंगली शायद जमीन पर घिस गया था, तो इस वजह से कुछ हद तक खराश आई है और लेकिन सब कुछ सही सलामत उनके लिए। और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, और गेंद इस वक्त लगभग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई और एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। अगर वीवी वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक और बेहतर ओवर समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ यहाँ पर गेंदबाज ने प्रदान किए 1 रन। 2 ओवर के बाद 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि नीला आकाश वाले बादल तो नहीं दिखाई देते हुए, लेकिन परेशानियों के बादल जरूर इस वक्त टीम मंगलापुरम के ऊपर साफ मंडराते हुए। 3 for the loss of 2 wicket, 52 runs more. Now they have to score for victory in remaining 3 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 17.33 runs per over. अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए रामकृष्णा
कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया, स्क्वायर लेग पर गेंद को बेहतरीन तरीके से वहां पर रोका गया है और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। अंतिम क्षण में गेंद को अपने बाएं हाथ से ढकेला इस वक्त डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर और बल्लेबाज के पास समय था सिर्फ 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रामकृष्णा एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, मिड ऑफ से फील्डर दौड़ कर आई, इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े इससे पहले कि डीप मिड विकेट फील्डर अपने आगे की ओर आकर गेंद को जब तक फील्ड करे। 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आज रात को 10 बजे से पहले हमें इस श्रृंखला को समाप्त करना है, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को आगे बढ़ाएं। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस at the last moment and went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 7 for the loss of 2 wicket और फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए रामकृष्णा दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट ओवर द बॉलर सेट और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को बढ़ाते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, चेक कर लिया था और गेंद इस वक्त गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकलती हुई 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा टीम मंगलापुरम के बल्लेबाज अभी भी अपनी सही राह को तराशते हुए। फुल टॉस ऑन साइड पर स्विंग किया लॉन्ग ऑन की दिशा में और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। फुल टॉस गेंद पर करारा प्रहार जरूर किया था लेकिन लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द टीवी रिप्ले और मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। बेहतर कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच। अपनी दाईं ओर जाते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार इस कैच को बाखूबी लपकते हुए सीमा रेखा के अंदर। 8 for the loss of 2 wicket. The problems are more building up now for the batsmen of team Mangalapuram. And a fantastic bowling performance continuing here from V4NEWS. तो अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला है काफी ऊंचा 6 रनों के लिए। Has got that one for many a miles. So huge one from the batsman. और ये छक्का टीम मंगलापुरम के विजय की उम्मीदों को यहां पर बरकरार रख चुका है। तो 14 रन बन चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, 14 for the loss of 3 wickets and 41 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs with the required run rate of exactly 20.5 runs per over. तो अभी भी चंद चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत है टीम मंगलापुरम को इस मैच में वापस आने के लिए। और मैं यहां पर रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि कृपया अगले मैच के दोनों टीमों के लिए कि दोनों टीमों के सदस्य कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और यहां पर संघर्ष जारी है और तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ V4NEWS का और गेंदबाज तो इस वक्त गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए हमसे दूर वाले छोर से प्रोफेशनल हैंड की ओर से गेंदबाज नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की ओर निकलती, बेहतर गेंद नहीं थी इस वक्त और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। 40 रन चाहिए, बचे हुए 12 गेंदें, 40 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 20 overs. Still have a long way to go. And big strokes are badly required for the batsmen of team Mangalapuram to get back into this path. उछालना चाहा चूके मिसअंडरस्टैंडिंग और निशाना चूका इस वक्त और इस बीच बल्लेबाज के पास 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा। दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं तो ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन यहां पर मिल चुका है। कोई बैकअप नहीं था वहां पर और स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर। 17 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over in fact. Still the battle is now on और 38 रनों की और दरकार इस वक्त विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 11
और गेंदबाज ओवर की अगली गेंद, ये गेंद फ्लाइटेड, गेंद को उछालना चाहा, धीमी ऑफ कटर गेंद थी, गेंद की धीमेपन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर और चौके और छक्के ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकते हैं। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग और इसी के साथ ये विकेट नॉन स्ट्राइक रन पर गिर चुका है। नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज स्ट्राइक रन की ओर दौड़ा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा और दोनों बल्लेबाज आखिरकार एक छोड़ पर वाइड का भी इशारा हो चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 18 in fact for the loss of 4 wickets. With that wide run, the scoreboard is now moving up to so number 6 batsman is now comes out to the middle for team Mangalapuram और वो इस वक्त स्ट्राइकर रन की ओर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। V4 न्यूज 24/7 चैनल पर इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी 37 रन चाहिए। 37 टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार फुल टॉस, not quite middling it, in fact a chance for himself, the bowler underneathing it and he took the catch successfully. मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और फॉलो थ्रू में पीछे की ओर जाकर गेंदबाज ने एक बेहतर तरीके से इस कैच को लपका और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। 37 more runs now they have to score for victory in remaining 8 deliveries. बिल्कुल एक तरफा मैच होता दिखाई देता हुआ यहाँ पर और इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का। दोपहर का वक्त 12:30 यहाँ पर बचते हुए और धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों के इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, दाहिना तो द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, ऑफ कटर गेंद और इस गेंद की घुमाव टर्न को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 37 रन अभी भी चाहिए विजय के लिए, सिर्फ और सिर्फ 7 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, शॉर्ट पॉइंट फील्डर के आगे गेंद टिप्पा खाती हुई, 1 रन का इजाफा। 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 4th ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड नाउ 6 sixes रिक्वायर्ड इन द लास्ट 6 डिलीवरीज। 36 रनों की दरकार अंतिम ओवर में। तो समय का परिपालन न करते हुए इस वक्त गेंदबाज वीवी वॉरियर्स 16 मिनट वो ले चुके हैं पहले 4 ओवर के लिए। तो निस्संदेह यहाँ पर उनके गेंदबाज ठीक तरह से जो निगदित समय दिया गया था उस समय का यहाँ पर परिपालन करते हुए और एक बार फिर से उनका अभिवादन इसलिए करते हैं। और टीम मंगलापुरम के गेंदबाजों ने भी समय का परिपालन किया था, अपने निर्धारित समय के अंदर अपने कोटे के 5 ओवर को उन्होंने पूर्ण किए थे। तो दोनों टीमों को धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से मैच की ओर बढ़ते हैं। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, अंतिम अवकाश इस वक्त बल्लेबाजों के सामने। पहले गेंद, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंद, परफेक्ट लेग कटर, धीमी गति की और गेंद कॉन साइड पर उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, रामकृष्णा दाहिने हाथों पर द विकेट, फुल टॉस, ऑन साइड पर स्विंग किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रनों के लिए। 25 विकेट के नुकसान पर, लेकिन ये छक्का उतना पर्याप्त नहीं उन्हें विजय दिलाने के लिए। अब उन्हें चाहिए 5 छक्के जबकि गेंदें बाकी है सिर्फ 4। अगर कोई नो बॉल या वाइड गेंदबाज फेंकते हैं और उस गेंद पर अगर बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो शायद वो इस मैच में वापस आ सकते हैं। इस बीच गेंदबाज की ओर की गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। ये पूर्वानुमान लगाते हुए कि गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रनों के लिए। 31 for 5. Just 2 balls now left in the innings. 24 required. और अब बचे हुए 2 गेंदों में 4 छक्कों की दरकार।
अगर बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो निश्चित रूप से यहाँ पर वीवी वॉरियर्स इस मैच में विजय रहेगा। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछलना चाहा, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन से नहीं मिलेंगे। अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। 24 रिक्वायर्ड इन द लास्ट बॉल ऑफ द मैच। रामकृष्णा अंतिम गेंद लेकर तैयार, बेहतर, दैट्स इट, दे गॉन टू फॉर सिंगल एंड दे गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। 32 the innings is up and they lost the match by 22 runs. So 22 runs comprehensive victory registered by VV Warriors, defeating Team Mangalapuram in the first match of the second round, and with that victory they bagged the complete point in a Pool A. And now the second match of this tournament is now coming up within just a short while. 18 minutes they are completed their quota of 5 overs in just 18 minutes, and this is an absolutely fantastic piece of bowling performance. Just watching the time sense at the situation for the bowlers of VV Warriors. So thank you once again. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
So, start of the match number 2 of the round 2 of this prestigious Panthers Super League 2023. And GSP Yoda will going to play against Saptami. So, wait a minute. Umpire need to tell the start of the time. Its time is exactly 12:37 and the time which is noted, need to complete your quota of 5 overs within 24 minutes and need to start your final over within 20 minutes. First ball and outside the line of off stamp, Shivanand Shanai in delegation not really able to judge the turn of the delivery of the bowler, and he just wanted to cut that one but is not really interested to cut that one. Left the ball into the hands of wicketkeeper and there is no chance at all for any run now. This time, Shivanand Shanai, what he's going for? What a mighty striker of the ball. It's a huge 6 from Shivanand Shanai. His intention is very clear that he wanted to take full advantage of that power play over. Deepak Kamath has been punished by Shivanand Shanai. This is a terrific shot, isn't it? Off the toes, the bowler tried to yoke the batsman, tried to bowl that one around the legs of Shivanand Shanai. Shivanand Shanai almost is stand and delivered in the negation with the full face of a bat. The 6 without loss of any wicket. Again from the far end, professional career end, right arm over the wicket. Shivanand Shanai again tried to cut that one. Good comeback here by the bowler. Seeing the batsman's potential capability. That is, if he bowls on the slot, he will definitely going to dispatch that one out of the park. He's bowled outside the line of off stamp with extra bounce. Slower one, beautifully bowled. Good comeback here by the bowler. This is a good sign of good bowler. Whenever the punishment is given, the bowler have to come back very strongly with some good deliveries. This is a good thinking there by the bowler, seeing the batsman is in a little bit aggressive frame of mind. He bowled outside the line of off and twice in that last 2 deliveries. Again the slower one. This time Shivanand Shanai up and over and he got a huge 6. It's been unbelievable struck there from Shivanand Shanai. It's not so easy to get the distance towards extra cover, isn't it? Just going back, reaching for that short pitch delivered outside the line of off stamp, hammering it down to deep extra cover use for a huge 6. Second sixer of this over. This time slower one negotiated very well by Shivanand Shanai, judging that slowness of the delivery very well. So 13 runs came from that first over of bowler Deepak in delegation. So Shivanand Shanai having all 6 deliveries in that particular first over, and he got 13 valuable runs from his bat. So flying start here for GSP Yoda. Saptami cricketers have to do something special from the bowling. Ratan Kamath brought into attack, one more experienced campaigner for the side of Saptami Warriors. So far he did a great job for his team in the bowling department. Ratan, one fielder is short on man. There is a short backward point, short extra cover, deep extra cover, long off, long on is there, deep mid wicket is there, deep square leg is there, and short fine like this. Shivanand pulls that one, and the fielders are not able to tackle with the bounce. This is a really something went wrong for the fielder in the mid square leg region, isn't it? He's not at all fielder there in the deep backward square leg. The ball is just landed just in front of him, and he tried to catch the ball first. Once he realized he couldn't manage to take the catch, he tried to take that one bounce, but ball is defeating him. And one more boundary which came from the bat of Shivanand. This time Shivanand going for the high stroke, opportunity for Ratan to take the cotton ball, and he completed the catch. Excellent catch taken there by Ratan. It's not so easy. When ball is ballooning high up in the air, Shivanand tried to pull that one, nowhere near to the pitch of the relay. Not a good position to pull that one. He got a top edge, and look at Ratan, absolutely good catch.
Maybe it's a easy catch in the naked eye, but I think the only good fielder can take that kind of catches. The catches win the matches. It was one of the greatest slogan of cricket. And Shivanand Shenai, after playing a small cameo of scoring some quick fired runs for his team, is back into pavilion. 2 sixes and a boundary. The small cameo there from Shivanand Shenai. He scored 17 from 8 balls. So new batsman in is one more fantastic striker of the ball. Kedar is the new batsman in, joining Venkatesh. Kedar this time quite interesting kind of cricketing stroke in the delegation. Almost drags the ball from outside the line of off time towards a deep wideish long on. Ease off the mark with a single. With their single score numbers on to 18 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Ratan, a successful bowler, produced a very important breakthrough for the Saptami cricketers. Warriors, when batsmen is get going, he's really put the brake on that run rate by dismissing Shivanand Shenai. This time Venkatesh drives that one powerfully, but not really getting hold of that one properly. Deep cow point fielders very quick in position, so that the batsman had to settle for the single. With that single score numbers on to 19 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. After that expensive over, and we were watching some good bowling performance there from Ratan so far. Right arm over the wicket this time as hits that one high up in there. Opportunity for the mid wicket fielder. And this time he's not missing the opportunity. The same fielder is did a mistake of stopping the boundary. The same fielder, Pancham, I think so, the very young talented player for the side of Saptami cricketers, completed a very good running catch. Again, the batter Kedar is not really control over that full shot. And finding the fielder in the deep backward square leg. He's not happy with himself. Of course, the full that was a short pitch one, can pull the ball down to square leg, but he is not really getting that one from the middle of the bat. The second wicket is back in the pavilion of GSP Yoda. So new batsman in, Atul. One more physically well-built personality. Atul walking towards the middle. Just like what the name they got, the Yodas. All we can see the Yodas are physically well built it. Ratan to the new batsman Atul. Atul this time plays it down to back to bowler, and Atul finished a fantastic over for Saptami Warriors. The kind of over which is required in the second over, and he produced a very good over for his team. After completion of over number 2, it's 19 for the loss of 2 wicket. And they're going exactly 9.5 runs per over. So umpires for this match, umpire Rajeshwar, and at square leg umpire Shriniket at square leg. Yes, thank you. After this match, VB Warriors will going to take Kodial Super Kings in the third match of their round 2. I request both the teams please get ready for the next match. Kodial Super Kings they're playing their first match. VB Cricketers Warriors playing their second match after they got a victory over Mangalapura. This time Venkatesh hammers, but straight to the hands of fieldsman. Vignesh, the man there in the mid-wicket region, making no mistake at all. Full toss delivery. Venkatesh swings it, but not getting the distance he's looking for. Across the line he swings, but I think it needed a little bit squarer. And the ball is landed safely to the hands of mid-wicket. Vignesh not making a mistake. It's a 19 for the loss of 3 wicket. So Saptami cricketers are really came back strongly in this particular match. After that first expensive over, then bowler Ratan put some break on the run rate by picking up wickets of Shivanan. Gautam Pai
Gautam Pai is a new batsman in, as walking towards the middle, has played a good innings for his team in the last league matches for his team. There's some full toss delivery, hits that one, but not really getting the placement right as a mid-wicket fielder fields the ball, and Gautam settled for the single. Again the full toss delivery, and one full toss he got a wicket. Again another full toss ball dive by Deepak. This time Gautam fails to take advantage of that full toss as he played it a little bit in a flatter version, and that's why that ball didn't travel where he was looking for to get the distance right. Score remains on 20 for the loss of 3 wickets, and over number 3 is in progress. Deepak once again back to his bowling mark. Atul is the striker from the professional career end. Full toss delivery and swings that one down to square leg region. There is no fielder at all in that division. It's not a good bowling there from Deepak. 3 times consecutive he bowled a full toss delivery. 2 times he survived, but this time he's not really survived from that full toss. Just look at that one, juicy full toss, and batsman got the placement right towards the deep backward square leg. One bounce over the rough for 4 runs. Even the fielder is there in the deep backward square leg, but he couldn't manage to stop the boundary. 24 for the loss of 3 wickets. A good comeback as a low Yorker line delivery to almost taking that one the pull by Atul, and he picked up a single down to deep long off, so that scoreboard now moves on to 25 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. So 2 very good striker of the ball for Yoda, GSP Yoda. Again helicopter shot comes into play there from Gautam in the occasion as the bowler is bowled one more Yorker line delivery. Of course he is trying for the Yorker line delivery. Deepak in this particular over 3 full tosses, 2 almost low full tosses, almost to try to york the batter. The scoreboard is 26 for the loss of 3 wickets, and he is bowling from the far end. Swings and missed, slower one, change of pace, good way to finish the over number 3 then, but they got some runs in this particular over. After completion of over number 3, and GSP Oda are 26 for the loss of 3 wickets. 2 overs remaining in the innings. So this is a live telecast of this cricket tournament made by one of the most popular V4 News 24 into 7 channel under the ownership of Abhinav Lakshman Kundar, and here is under the leadership of Manik, and we have technicians Danu, Lishan, Mahesh, Nagesh, Ashish. Thank you very much everyone, because they are the one responsible for the success of this cricket tournament under the leadership of Manik. A very friendly nature, because whenever we are having a V4 24 into 7 channel, we are definitely having a friendly atmosphere in commentary box. That was so important, isn't it? When you're having a friendly atmosphere in commentary box, then outcome definitely going to be the best. This time driven, but straight to the hands of fielder. This is a big fish in the net for Saptami Warriors, as a batsman Gautam tried to hit the ball towards a long off region, but he wanted to get the distance, but he is not really able to do that. So long off fielder taken a good catch in the end. It's a 26 for the loss of 4 wicket, GSP Oda. So bowler Anant Pai is produced a very important breakthrough for the side of Gautam celebrations of the Warriors, picking a wicket of Gautam, and Anant again bowling away from us.
Right now over the wicket, full toss delivery, driven that one right in the gap towards extra coverage, and the fielder will go into chase that one, but ball just winning the race between extra cover and a long off region. Excellent placement there from the new batsman. Of course, it's a full toss delivery, but you need to find the gap, isn't it? You need to find the gap, you need to hit that one in the gap, and Nagesh Pai, he got the boundary, the very first ball that he is faced, and bowler faced the penalty for bowling that full toss delivery outside the lineup of Tampa. 30 for the loss of 4 wicket. There is a long off, there is extra cover, and he's just sending that one between that two fielders. Good placement there from Nagesh. Ananta bowls, slow over one, right on the block hold, but off the toes, nicely turns that one onto mid-wicket region, fumble from the fielder, grabbing the opportunity there, coming back for the second, directed taken place, but umpire Rajeshwar, rightly so, not interested to call that for third umpire, because batsman is safe and no question of wasting our time, and this is rightly so. So 32 for the loss of 4 wicket, and over number 4 is in progress. This time straight to the answer fielder is off the catch. Nagesh has got a life as a fielding which is not up to the mark now of Saptami Warriors. They only worried about that why they're dropping so many catches here. Misfields. Deepak just missed a golden opportunity here. 33 for the loss of 4 wicket. And this time appeal for the stump out. Umpire says not out. Rajeshwar is good enough to tell that it's a not out. Wicketkeeper is asking for Rajeshwar to forcing the field. Squalling umpire to give the decision to the third umpire. But Rajeshwar is not really unmoved. That's saying that it's a not out, means it's a not out. And just I want to see. And in the replay, absolutely his back foot is, of course, the little part of his the back foot inside the line. And that's why umpire Rajeshwar rightly so not to call for the third umpire. 33 for the loss of 4 wicket. Last ball remaining in this over. Last ball remaining in this over. Please note. Anantesh, final time in this over. Atul is a batsman. The fielder going back to mid-wicket region. One fielder. Again, nicely bowled. Slow over one, and Atul negotiated very well to pick the single down to short fine leg region. So keep the strike for the last over. So after completion of over number 4 is a 34 for the loss of 4 wicket. I think the fielding team right in a time, I think so. And yes, Shiniket just observing the time. It's absolutely well within the 20 minutes they completed 4 overs. And thank you very much once again for Saptami Warriors for your cooperation. Now last over remaining. They took 18 minutes and to complete their 4 overs. Now 5th over is going to start from the professional career end. So last over remaining. I request Saptami Warriors to make it fast as quick as possible. They need to complete their 5th over. Deepak Chennai brought into attack. Atul is on strike. Nagesh is in non-striker end. Long off is there. Long off is there. Mid wicket is there. Deep backward square leg is saving the boundaries. The fielders in the outside the circle. Third man shot fine leg and shot extra cover and shot back to point. It's a first ball. Nicely driven by Atul towards wideish long off region for a single. And scoreboard numbers on to 35 for the loss of 4 wicket. Last 5 deliveries remaining. Deepak back to his bowling mark. The very useful bowler for the side of Saptami. So far I think they did a good job. They wanted one good over here against formidable GSP Yoda. Gave the full toss delivery. The batsman, the bowler just survived from that one. He's missed the opportunity. Leg by call by umpire. One more addition to total. Nagesh is not impressed with himself. He can dispatch that one out of the park if he able to connect that one properly.
but he just missed the ball completely from his bat. 36 for the loss of 4 wicket. 4 balls remaining. Atul is back on strike. Deepak back on trial and delivery. Appeal for caught behind. But it looks like the optimistic. It looks like it's again there is no third umpire. Please note there is no third umpire for the caught behind. And it was an excellent delivery there from bowler Deepak in dedication. It's a 36 for the loss of 4 wicket. Great piece of bowling. Atul back on strike. Deepak back to his bowling mark. Full toss again, not really able to capitalize that one. They're running hard, looking for the second. In comes the throw, and they're going against the second and rightly so. Good piece of fielding there by the fielder in the mid wicket, charging to the ball, denying the second from the batters. 37 for the loss of 4 wicket, and last 2 deliveries remaining in their innings. Deepak once again back to his bowling mark. Pass umpire Rajeshwar. Full toss, lofted, but straight to the hands of fielder. Good catch taken by Deepak in the deep long on. The 37 for the loss of 5 wickets. So, Atul's little correction. Nagesh is back into pavilion. Caught Deepak, bowled Deepak. It's a 37 for the loss of 5 wicket. So now new batsman also came into middle, Deepak. So many Deepaks in this particular matches. And here is the Deepak to Deepak. Will it going to be a delivery which is a dotted one? And over number 5 completed. Good performance here from Saptami Warriors. Really good performance from the bowling. The kind of performance which is required in the second round against the formidable GSP Yoda. The 37 they're going to restrict them, and they set a target of 38 to win the match for Saptami Warriors to get the victory here. And it's going to be very interesting because it's competitive total. 30 ball and 38 runs required for the victory for Saptami Warriors. It's going to be more interesting here. And wait and see how well these teams will go into battle for the victory here. And Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
विकेट यहाँ पर बच चुके हैं। और एक बार फिर से मैं खिलाड़ियों से बॉलिंग साइड फील्डिंग साइड से दरख्वास्त करता हूँ कि कृपया 20 मिनट निगदित समय के अंदर अपने निगदित 5 ओवर को समाप्त करें। तो ओवर की पहली गेंद 38 रनों का लक्ष्य। यह गेंद इस बार स्क्वायर था, विकेट खूबसूरती के साथ निकाला। एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। Inside out cricket played by the batsman, just leaving the wicket, just scoops that one in a style, just wide of the mid off feeder and finds the gap as well. And with that boundary, कैप्टन टॉस आयोग का सप्तमी वॉरियर्स आर ऑफ द मार्क। और विघ्नेश भट्ट खूबसूरती के साथ इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त। और अतुल अपनी पहली गेंद पर चौका इस वक्त प्रदान कर चुका है। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो सप्तमी वॉरियर्स के लिए इस वक्त चाहिए एक बेहतर आरंभिक शुरुआत और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अंतिम पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज अतुल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए बिल्कुल एक सतर्क शुरुआत की ज़रूरत है सप्तमी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। अगर उन्हें 38 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 5 ओवर में एग्जैक्टली 7.60 द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन। यह गेंद हल्के से गेंद को अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया एक्स्ट्रा कवर पर। पहले स्टेप आउट करते हुए आगे निकले जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की गति को पहचानते हुए गेंद तक पहुंचना चाहा, लेकिन गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची हुई इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज एक बार फिर से अतुल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। हालांकि वाइड की मांग जरूर की बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। तो 3 बेहतर गेंदें पहले ओवर में चौका प्रदान करने के बाद कम कर चुके हैं गेंदबाज अतुल और एक बेहतर वापसी अपने गेंदबाजी के जरिए वो कर चुके हैं। अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ। गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और सीमा रेखा के अंदर इस वक्त गेंद रोक ली गई है बेहतरीन फील्डिंग की वजह से। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 3 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्कूप किया था एनफील्ड क्लियर करते हुए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और काफी कम लंबा दौड़ लगाने के बाद इस गेंद को सीमा रेखा के कुछ इंच अंदर जब तक ढकेलते फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने के। तो 7 रन यहाँ पर बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। तो पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट यहाँ पर चलती हुई और अतुल इस बार गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए। 7 विदाउट लॉस। ये गेंद चिप किया कॉट एंड बोल्ड, लेकिन मौका जा चुका है। शार्प चांस ऑन हिज फॉलो थ्रू and but unable to he grabbed that one on his follow through and the batsman survived in this delivery. First over completed, 7 without loss after first over. Steady start for Saptami Warriors chasing the victory target of 38 in 5 overs. They managed to score 7 runs on the board. 31 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 7.75 runs per over. और निस्संदेह बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी इस दूसरे दौर के मैच में। कुल मिलाकर इस श्रृंखला का 20वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ 20th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑफ Panthers Super League 2023 is now progressing here, which proudly organized by Deadly Panthers in the celebration of their 15th year. They are organizing this fantastic tournament in the name of Panthers Super League 2023. और गेंदबाजी पवन के हाथों में दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ और सामना इस वक्त करते हुए विघ्नेश। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಿಎಸ್ಬಿ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. इस बीच रिवर्स शॉट खेला चाहा और गेंद सीधे पहुंचे आफ्टर फर्स्ट बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 7 रन बिना किसी नुकसान के। 23 बॉल्स लेफ्ट, 31 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 23 रन
30 गेंदें बाकी है, 31 रन चाहिए। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए इस वक्त पहले ही भाप लिया था कि फील्डर मिड ऑन पर मौजूद है, थोड़ी से वाइडर तैनात था और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 8 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज दीपक और विघ्नेश एक सेंसिबल बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दीपक का, जबकि पवन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप किया, लंग ऑफ पर मौका हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं फील्डर थोड़ा सा सीधे वहां पर तैनात है और इससे पहले कि वो गेंद को थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करेगा। ही दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट स्क्वायरली फॉर लॉन्ग ऑफ फील्ड। जस्ट आई वांट टू लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था इस वक्त, स्क्वायर ऑफ द विकेट और फील्डर खड़े हुए थे थोड़े से सीधे, थोड़ा सा दौड़ उन्हें लगाना पड़ा बट इस लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को रोक कर थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका, 10 विदाउट लॉस। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, मिड विकेट पर 1 रन न मिलेगा। फील्डर क्लीन कलेक्शन और थ्रो पहुंचता हुआ इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके। 4 रन कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज अतुल, एक माफ कीजिए गेंदबाज पवन और एक बेहतर ओवर अब तक उनका साबित हो चुका है यहाँ पर। और बाएं हाथ के बल्लेबाज विघ्नेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद गॉन फॉर अ वाइड स्विंग दिस टाइम, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली। बेहतर गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद कुछ हद तक अपनी दिशा को बदलते हुए अंदर की ओर आई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन से यहाँ पर बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 11 रन, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और कुल मिलाकर इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज पवन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद उछाला टॉप एज, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी, गेंद को उछाला था इस वक्त ऑन साइड पर पुल किया था, हालांकि गेंद ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट नहीं हुई, टॉप एज पर टकराई, लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के रूप में। और इस छक्के के साथ सप्तमी वॉरियर्स एक बेहतर स्थिति में इस वक्त पहुंच चुका है। 17 रन स्कोर्ड आफ्टर फर्स्ट 2 ओवर्स। पहले ओवर में 7 रन बने जबकि दूसरे ओवर में 10 रन बने और अब 21 रन चाहिए और गेंदें बाकी है 18। 3 ओवर के खेल में 21 रन बनाने हैं। इस वक्त कुछ हद तक पलड़ा सप्तमी वॉरियर्स का यहां पर भारी लगता हुआ। तो अगला मैच वीवी वॉरियर्स और कोडियाल सुपर किंग्स केएसके के बीच में खेला जाएगा। तो ये मैच में केएसके ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है। So the next match, KSK, Kodial Super Kings will won the toss. They elected to field first against VV Warriors in the third match of the second round of this tournament. That means Panthers Super League 2023. Exquisite live telecast इस वक्त किया जा रहा है V4 News 24/7 चैनल पर और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए। नई ओवर की पहली गेंद पटकी हुई गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग पर, ठीक तरह से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेने में सफल, रन इस बीच नहीं मिलेंगे, स्कोर रुक चुका है। 17 रन बिना किसी नुकसान के, 17 गेंदें बाकी है, 21 रन और चाहिए विजय के लिए। 21 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमाइनिंग 17 डिलीवरीज। अतुल इस वक्त प्रोफेशनल एंड की ओर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद सफल होते वन साइड पर उछालना चाहा, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। हालांकि बल्लेबाज सफल जरूर हो चुके थे लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी और इस बीच वाइड का इशारा सही तरीके से अंपायर घोषित करते हुए 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को इस वक्त खेला, गेंद ठीक तरह से बल्ले के बीच नहीं आई, पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया लेकिन एक रन इस बीच बल्लेबाज को लेने से फील्डर नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 विदाउट लॉस एंड नाउ 16 बॉल्स लेफ्ट एंड 19 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज
इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विघ्नेश, जो कि एक चौका और छक्का अब तक जड़ चुके हैं। 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से फुल टॉस, गेंद को सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त डीप इन विकेट पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3rd in progress. Still the equal battle is now on. 18 more runs now they have to score for victory in remaining 15 deliveries. और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद है, ये गेंद पटकी हुई गेंद, टॉप एज, मौका हो सकता है मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में गेंद को लपकने में असफल, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो थोड़ा सा मिस जजमेंट अंतिम क्षण में, और अपने दूसरे प्रयत्न में इस कैच को वो लपक नहीं सके। देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था, और मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे 20 गज के दायरे के कुछ बाहर, गेंद को इस वक्त उन्होंने लपकना चाहा। पहले प्रयत्न में गेंद छूटी, दूसरे प्रयत्न में गेंद को लपकना चाहा, लेकिन दूसरे प्रयत्न में भी गेंद को लपक नहीं पाए। बल्लेबाज 1 रन और जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सर, दिस इज गॉन मेनी अ माइल्स, इट्स अ बिग। और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा सप्तमी वॉरियर्स आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द मैच। 27 without loss and a magnificent struck came from the bat of Vignesh Bhatt. 21 runs he is now batting on in just 11 deliveries including 2 massive sixes and the boundary. और उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत सप्तमी वॉरियर्स एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ। ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, 1 रन मिलेगा। छक्का लगाने के बाद ज्यादातर बल्लेबाज अगले गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास करता है दोबारा, लेकिन यहां पर सेंसिबल क्रिकेट अपनाई, वक्त की नजाकत को समझते हुए विघ्नेश ने स्ट्राइक रोटेट इस वक्त किया। ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक खुद अपने पास रखने में सफल, 1 रन का इजाफा, 28 विदाउट लॉस, 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 2 ओवर्स लेफ्ट। और जहां तक सवाल है 20 मिनट के अंदर 5 ओवर फेंकने जाने हैं इस वक्त, और कुल मिलाकर उनकी पारी में 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, जबकि 12 मिनट बीत चुके हैं। 12 minutes completed, and in the 12 minutes they bowled 3 overs for GSB Yodhas. They had to complete their 2 remaining overs under 8 minutes as far as the timings is given for this tournament to complete the 5 overs of quota. Gautam Pai गेंदबाजी इस वक्त तो इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बीच लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, 29 विदाउट लॉस। टेरिफिक ओपनिंग पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर नाउ फॉर सप्तमी वॉरियर्स। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि लगभग गेंद ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 8 रन और चाहिए विजय के लिए, गेंदे बाकी हैं 9 रन चाहिए, माफ कीजिए, 9 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, डॉट गेंद, अब 10 गेंदे बाकी और 9 रन चाहिए। 9 रन टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स। एक बेहतर कमबैक कर चुके इस ओवर में गेंदबाज गौतम पाई, और बल्लेबाज को खामोश रखने में अब तक सफल हो चुके हैं। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद, पुल किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद लपक ली गई है। प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी। तो एक बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है विघ्नेश का। 22 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 14 गेंदों पर, 2 छक्के और 1 चौके की मदद से, और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, अंतिम क्षण में गेंद बल्ला उनके एक हाथ से फिसल गया था, और डीप इन विकेट पर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका फील्डर ने। नाउ 9 बॉल्स लेफ्ट एंड 8 रन रिक्वायर्ड, और चंद और डॉट गेंदे निस्संदेह यहां पर जीएसपी योद्धास को इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ नए बल्लेबाज दीपक, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 8 टू गेट फ्रॉम 9 बॉल्स। और गेंदबाज गौतम पाई इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, 9 रिक्वायर्ड इन फैक्ट ऑफ 9 बॉल्स। तो
गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके, डॉट गेंद। अब 8 गेंदे और 9 रन बनाने हैं। द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। जब पिछले ओवर में विघ्नेश से छक्का लगाया था तब अंदाजा लगाया गया था कि जल्द से जल्द इस मैच को समाप्त कर देगा 7वीं ओवर, लेकिन उसके बाद एक कमबैक बेहतर कर चुके हैं योद्धास के गेंदबाज। इस बार गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया अंतिम क्षण में शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदे बाकी है। 8 रन चाहिए 7 गेंदों में। 8 to get from 7 balls। और गौतम पाई एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए कुछ हद तक बाधा अपने रनअप में। एक बार फिर से शायद गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी अंतिम क्षण में गेंदबाजी करते समय, तो इस वजह से यहाँ पर एक बार फिर से वो अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर, गुड शॉट। गेंद इस वक्त फुल लेंथ गेंद को खेल दिया, वरी स्लॉग ऑफ पर क्लीन कलेक्शन। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर के हाथों में। ओवर कंप्लीटेड, 4 overs completed, 31 run on the board for losing 1 wicket, 7 required of last over, that means in 6 deliveries. I request all the players of the next match, VV Warriors and Kodial Super Kings, to please get ready for the next match. तो इस वक्त बातचीत चलती हुई जीएसबी योद्धास के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और काफी बातचीत के बाद हमसे दूर वाले छोर से यानी प्रोफेशनल एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जा रहा है गेंदबाज दीपक के हाथों में। और देखना यह है कि दीपक अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में। तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दीपक, स्ट्राइकर भी दीपक और गेंदबाज दीपक, तो 3 दीपकों के बीच में इस वक्त मुकाबला जारी है। तो यहां पर देखते हैं इनमें से कौन दीपक अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाता है। और इस वक्त दीपक का गेंदबाजी में तैयार, इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए, और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ सप्तमी वॉरियर्स के बारे में। 6 for tie, 7 for win। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। एंड नाउ 6 of 6। दबाव कुछ हद तक कम हो चुका है बल्लेबाज के ऊपर, और अब देखना यह है कि अगली गेंद पर गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर अपनाते हैं। तो अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दीपक के लिए बेहतर, एंड दिस टाइम कॉट बिहाइंड द विकेट। God is outside Nick, and wicket keeper made no mistake behind the stumps। तो पहली गेंद डॉट खेलने के बावजूद, डॉट फेंकने के बावजूद दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया। अब एक बार फिर से इक्वेशन एक ज्यादा बचे हुए गेंद से। 5 गेंदें बाकी है, 6 रन चाहिए। 6 to get from 5 balls। तो एक वक्त ऐसा लग रहा था जब विघ्नेश बल्लेबाजी कर रहे थे तब सप्तमी वॉरियर्स आसानी के साथ इस लक्ष्य को पार कर जाएगा, लेकिन अंतिम 2 ओवर में एक बेहतरीन कमबैक करते हुए जीएसपी योद्धा के गेंदबाजों ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाए और यहां पर मैच को बराबरी पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। तो इस वक्त नए बल्लेबाज रतन का आगमन होता हुआ दीपक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। तो दीपक नंबर 1 इस वक्त पेविलियन वापस लौट चुके हैं। अब नॉन स्ट्राइकर पर दीपक नंबर 2 और गेंदबाज दीपक नंबर 3 इस वक्त मौजूद मैदान पर। यह गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेल दिया इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 2 रन मिलेंगे। लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, और जब तक इनको फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका, दूसरा 3 रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तो यहां पर 2 रन मिलेंगे, 1 विकेट भी गिर चुका है। 34 स्कोर, 4 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 4। 4 of 4, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। तो मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। निस्संदेह एक बेहतरीन मैच इस श्रृंखला का, दूसरे दौर का दूसरा मैच यहां पर एक शानदार प्रगति करता हुआ यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ।
4 to get from 4 deliveries. GSB योद्धा और सप्तमी वॉरियर्स इस दूसरे दौर के दूसरे मैच में अपना पहला विजय दर्ज करने के प्रयत्न में इस वक्त, और यहाँ पर अगले 4 गेंदों में ये पता लग जाएगा कि इस मैच का विजेता कौन होगा। यहाँ पर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस, स्लो लेग कटर गेंद थी, विकेट से हटते हुए गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेंगे। अब गेंदे बाकी हैं 3, रन चाहिए 4। What a fantastic match is now progressing here. अगली गेंद के लिए तैयार, यह गेंद उछालना चाहा, चूंकि again and now the tide is now turned, और पहली बार GSB योद्धा का तख्ता यहां पर भारी लगता हुआ। 4 runs required and just 2 deliveries remaining, और एक और डॉट गेंद निस्संदेह बल्लेबाज को और दबाव में ढकेल सकता है। इस बार ऑन साइड पर उछलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा, थ्रो पहुंचा, लेकिन इस बीच बल्लेबाज रन पूरा कर चुके हैं। अंतिम गेंद बाकी, 3 रन चाहिए, 2 for tie and 3 for win। तो पहला अंतिम गेंद बाकी है, 3 रन चाहिए, तो यहां पर अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, 2 for tie, 3 for win, and the last ball, the match deciding ball is now coming up। गेंदबाज तैयार, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, मिड विकेट पर मौका, इस मैच को जीत चुका है। सो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच हैज बीन केम टू एन एंड। सप्तमी वॉरियर्स अंतिम गेंद पर विजय दर्ज करके परिपूर्ण अंक को प्राप्त कर चुका है, लेकिन एक बेहतरीन फाइट, यहाँ पर बेहतरीन संघर्ष जीएसबी योद्धा ने दिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवशात अंतिम गेंद पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो एक बेहतरीन मैच यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अगला मैच VV Warriors will take over KSK, that means Kodial Super Kings, and that match is now coming up loud exclusive within just a short while. I request all the players of VV Warriors and KSK, Kodial Super Kings, to please start the match immediately. Please start the match. And we'll taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English for the next further comments. Thank you. Dhanyavad. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Deepak at non-strikers end. Varun is in strikers end. And 1:29 is the time. Please note 1:29 fielding team. You need to complete 149. You need to complete 4 overs. The first ball and hits that one, but not really getting the placement right as Mahesh is standing at short mid and fields the ball, and there is no chance at all for any run. The very good match between two very good teams, Cordial Super Kings versus VV Cricketers. VV Cricketers, they won their first match of the second round, and now going to be a punishable from umpire Viraj as a white signal. The first run coming up here for VV Cricketers, one without loss of any wicket. Surendra Pai bowling away from us. Round the wicket he bowls. This time full toss outside the line of off-stump batsman. Varun missed out that delivery. He's not moving his front foot to play that one on the offside region. Tried to reach that one where he was standing, but he missed it complete. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. One without loss of any wicket. Suri again. This time shuffled across the wicket and he plays it down the ground as straight as an arrow. Going to be a boundary. First boundary coming here for VV Cricketers from the bat of Varun. Full toss one. And look at the batsman. Definitely going to take the advantage of that full toss delivery. Almost a forearm cricketing stroke. Played it just over the head of the bowler to get the boundary there. Mid on up in the circle. Mid off is up in the circle. No one there in the deep in the long on and long off. So batsman capitalizing that area to get that 5. Get that boundary. Next ball, good comeback here by Surendra again. Seeing the batsman Varun is just moving towards offside. He bowled further away outside the line of off stump. 5 without loss. Surendra has having a sidearm bowling action. Wide sidearm ball action. Here is again nicely bowled. Right on the block hold. Fielder Sunil there in the extra covers. A quick fielder in that area. But there's no one there to collect the throw from him. That's why he's not interested to hit the stump. Scoreboard is 6 on the board without loss of any wicket. Now Surendra looks like he's a little bit struggling. After he delivers the ball, you can see that he is straight away is in trouble. And looks like it might be the hamstring injury. Or it was a knee, which is definitely going to be the problem for the bowler, Surendra. Still one ball remaining in this over, so Surendra have to complete that one ball. Now right-hand batter came into middle. Varun is off the strike. Deepak back on strike. First time in this first over of the power play is facing his first delivery. For him, the fielders in the deep, one at deep long on, one at deep extra cover. Here is Surendra. Balls this time up and over towards the deep cover point region. Fielder, and he drops the catch. Once it looks like he almost go into the catch. He was there to take the catch. He's in a good position, but not really able to take the catch. Ball is landed into the ground. One bounce over the row for 4 and second boundary of that over. Look at that one. Slash it very high, and look at the effort that the fielder of extra cover. Judgment is not perfect. He run well, but not quite able to finish the catch. And 2 boundaries in that over for VV Cricketers. Both the batsmen enjoying their the batting with the boundary. The first over completed and 10 without loss of any wicket. Request the fielding team to make it past. But here is a problem here for the Surendra, that can he able to continue, or he will call for the substitute fielder. Looks like Surendra will going to leave the field. So Surendra, after bowling first over of 10 runs, is leaving the field because of the injuries, and one more fielder is replacing his place. Anup replacing Surendra, the substitute. The 10 runs, VV Cricketer once again, they got a flying start.
Pranav Bhatt. Pranav Bhatt from the professional career end. To Varun. Varun is batting on 5 with help of one boundary. Again, that was a low full toss outside the line of off time. Varun is not impressed with himself. It might be thinking about a big stroke for that full toss delivery, which is outside the line of off time. His stroke, which is played a little bit early. Then ball is came to him very late, so that he missed it completely from his bat. Pranav Bhatt from the professional career end. Pass umpire Rajeshwar. Beautifully balled. Perfect one. Outswing delivering again from Pranav Bhatt. Again, the batsman Varun looking for the swing of the bat. Missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. Padmanabh, who got a 50 behind him in the last league matches. This time across the line, swings that one nicely down to deep backward square leg region for a single. And with the single score, numbers on to 11 on the board for the loss of, without loss of any wicket. In the over number first in progress, second in progress. There is a fielder at Exakawa, one at backward point. The fielder there in the short third man. Short fine leg, deep mid wicket, deep backward square leg in front of square. One at short fine leg. Pranav. Balls beautifully balled, absolutely perfect one as Deepo wanted to hit the ball across the line, but missed it completely from the bat. Pranav Bhatt, bright sunny afternoon here. The hot condition, 31 degrees Celsius of temperatures recorded. Again, a lovely delivery right on the block hole. The batsman again looking for the big shot, not getting that much of enough timing in that stroke. Just a single for him. With that single score, numbers on to 12 on the board. So 12 for the loss of one without loss of any wicket. Pranav back on strike. Varun swings and missed, and one more addition to total in the form of leg byes. So good over from bowler Pranav Bhatt. Managed to control that over. Just 3 runs which came from that over. After completion of over number 2, it's 13 without loss of any wicket. So 6.5 runs over is the run rate progressing here. Rakesh brought into attack to bowl third over of the innings of VV cricketers. The opening batter still there in the middle. Left and right combination for VV cricketers. Rakesh bowling with the run up. Ball Srisam tries the run powerfully. Just a single here. The protection has been given in the deep long on, and the scoreboard numbers on to 14. 14 without loss of any wicket. Slow progressing here after that 10 runs which came from that first over. Then Kodial Super Kings bowlers managed to pull the things a little bit back by bowling some economical over, and even though they fails to break this partnership, but they succeeded to put some break on the run rate.
Just lofted straight down the ground, and he got a great distance. The ball is landed just in front of our commentary box, hitting the wall. And what a magnificent struck there from the batter, Deepak. Straight down the ground. When he hits the straight, it's always the safe. One of the safest stroke to play in cricket. And ball is just hitting the commentary box. 20 on the board. Right time, that right blow came from the bat of Deepak. Rakesh again bowling away from us. Right above the wicket balls. This time shortening the line quite deliberately there by the bowler, seeing the batsman not to bowl that delivery which is on around his bat, that he bowled outside the line of off stump, just moving from the good short pitch length, but its ball is a good one for Deepak. Beautifully driven lack of placement, and not a good piece of fielding there by the fielder Mahesh. What could be a certain dotted delivery? Because of that misfield, they got a single. Frustration by the bowler, and the scoreboard is now 21 on the board without loss of any wicket. Varun back on strike. The big cool battle is on between these two very good teams. Rakesh again. Balls again, wicketkeeper behind the stump. Padmanabh misses it completely. Umpire signaled it's a bite, no contact with the bat. But wicketkeeper fails to collect the ball. 22 without loss of any wicket. It's a spread out field. After the power play, there's a mid wicket and square leg and long on and long off and extra cover. Deepak is the most dangerous batter as he's facing next delivery. This time, the same treatment, but this time I don't think we'll go into that distance, but a good piece of fielding there, but the fielder in the deep. Absolutely saving the boundary there. Again, that ball is hit straight down the ground. And I want to see where the fielder is in almost in a widest long off, isn't it? And he's just saving the six. Just look at the effort. Absolutely terrific. He's not saving the boundary, but he's saving the six. Just pulling the ball inside the boundary line, saving 5 runs for his team. That's the completion of over number 3. VB cricketers are 23 without loss of any wicket. Good going, good progress. The time is exactly 12 past 41. Repercussion 141. That means they need to complete their 4 overs within 149. Please make it fast. Rajesh brought into attack from the professional career end. Long off is there. Extra cover inside the ring. There's a backward point shot, third man shot, fine leg, deep backward square leg. Deep long on. Now very interesting. Extra cover going back to deep extra cover region and brought that deep backward square leg in front of square inside the boundary line. There is short fine leg and third man. And one fielder stationed at deep backward point region for a reverse stroke. So bowler Rajesh will go in to start his run. So here is Rajesh. Right over the wicket. Going to be a chance for the wicketkeeper behind the stump. Looks like that though. No signal came from umpire. That means outside edge of the bat. And but as the height of that catch is not so easy for wicketkeeper behind the stump to collect that one, and one more single is added to total score, but numbers on to 24 without loss of any wicket. Partnership is progressing here for VB cricketers. For the first wicket is 24 runs. Varun and Deepak, the opening batters, still hanging there in the middle. This third over is in progress. Fourth over in progress. Lovely delivery.
from Rajesh outside the line of off stamp. Each and every dot ball, which is much important for a team. Kudial Super Kings. There is short fine leg, very experienced Devdas Naik standing at short fine leg. Chip that one, half-hearted chip opportunity, but the fielder is not really going to reach there. But after one bounce, he collected. And in the meantime, Varun has got opportunity to cross off for just a single there. With that single score, moves on to 25 on the board without loss of any wicket. The over number 4 in progress. Good comeback here by Kodial Super Kings. VV cricketers trying hard to get some good score here. Rajesh so far looking pretty good. Deepak, look at that where he was standing. Absolutely good piece of fielding there by the bowler on his follow through. Even Deepak is almost standing in the all for 5th or 6th stamp. Almost standing in that shuffled across the line of the delivery. Try to hit across the line. But look at the bowler following that batter. Ball that outside line of off stump too much. Not really settle the batsman to swing his bat. Good competition and good handling the pressure here by the bowler. Rajesh again from the far end. Right arm over the wicket. This time straight down the ground. Hits that one firmly down to deep longer, but not more than a single for that. So Rajesh is really doing good job in this for team Kodial Super Kings. 26. Very hard to combine the big shot against disciplined bowling, disciplined line by Rajesh in this particular over. Now job is not yet over. The one ball is remaining in this over. The Varun suddenly looked for a big shot. He exactly didn't got enough runs in this particular over. And Rajesh, final time in this over. Coming down the track, wicketkeeper completes the formalities. Looks like it's going for the third umpire, but I think so. The wicketkeeper is confident. And the batsman looks like he's not that much of confidence, and that's why he's walking towards the pavilion. It might be the first wicket for Kodial Super Kings. The VV cricketers are back. They lost their first wicket out, which is a call from a third umpire. The brilliant piece of work there by Padmanabh behind the stumps. Just in a fraction of a second he completed a job. The VV cricketers now looking in trouble. 4 overs completed. It's a 26 for the loss of 1 wicket. Liga last match Liga antu GSB Yodas versus Deadly Panthers match man of the match award Chirag Shanbag. Tani vedike revunu Deepak malla like man of the match award ge oka vanni mungetta. 18 minutes they completed 4 overs. Telecommunication as Deepak Malla. Tani Chirag man of the dealing match with the award last ge oka over. vanni mungetta. Rakesh. Bowling to a well-settled batsman. Deepak. Vignesh Shadai is a new batter. Came in the last over, but didn't got enough runs on the board. Rakesh. Bowling away from us. A right arm over the wicket to the right-hand batsman Deepak. Away from us. This time bowler's back drive. Firmly driven down to long off region. But there is a protection has been given the deep so that before the Suri runs from the deep widest long off to collect that one, ample time for the batter to complete the single. 27, and hero of the previous match is came into bat, but only 5 deliveries remaining. Will it going to be enough for Vignesh Shanaik to get some acceleration in this final over, which is badly required for VB cricketers, as they didn't got enough runs on the board. So here is again Rakesh. Ball stress time. What we are talking about? Will it going to be enough? Absolutely, it's going to be enough for Vignesh Shanaik to get the acceleration. Lofted that one. Just stand and delivered towards a deep long off boundary for a 6. Look at the flow of the bat. Look at the ball is traveling and going and get going out of the park. Magnificent struck there from Vignesh. What a striker of the ball. It's not so easy dealing with the slow deliveries, but he's just waiting for that, isn't it?
They're waiting for the waiting for that ball, transferring his weight onto the back foot, getting that enough power behind the stroke. Again, he tried to repeat that one, but this time he shuffled across the line. Good thinking there by the bowler, bowling that one outside the line of off stamp. But now I think Rakesh need to survive another 3 deliveries here from Vignesh. 33, which is the total score. Again, the bowler Rakesh. Right over. This time, opportunity for the fielder. I don't think his body language, I don't think he will going to take the catch. The Mahesh drops the catch, not only drops the catch, but allow the batter to come back for the second. 35 for the loss of 1 wicket. Mahesh is not having a good time in the field, isn't it? Not only the first time he's doing that such mistakes. In the previous over also he did a misfield in that same area. Now the change in field now. He's going towards a short fine leg division. There's a 35 for the loss of 1 wicket. 2 balls remaining. Important runs came from the bat of Vignesh. 8 runs in 3 balls. Now we're facing Rakesh. Top edge. One more opportunity. This time the fielder charging from the deep and he's also dropped the catch. Again they're coming back for the second. Everything is going in the favor of VV cricketers. This is not good to see that Kodial Super Kings are dropping the catches. So many catches. 2 catches. There are 2 catches in fact. They lost 4 runs. This is the really important runs. They can save that 4 runs if they're able to take the catch. 2 drop catches. 2 plus 2 runs. Altogether 4 runs in for the 2 deliveries. 37 is the total score. And the last delivery of their innings is coming up. And Vignesh, once again he wanted to get the big one. But will Rakesh allow Vignesh to freeze his arm? This time, he's freezed his arm. And he didn't got the distance right as a mid-wicket fielder take the catch. Against the direction of the wind, isn't it? He hit that one. Nothing wrong with the stroke. Something wrong with the placement. The wind direction is not helping him to get the distance right. And at last, VV cricketers managed to get 37 and a certain target of 38 to win the match for the Kodial Super Kings. It's been an outstanding performance from both the teams. And 39 is going to be a target. And thank you very much, Kodial Super Kings. 38 is the target, little bit correction. Thank you very much, Kodial Super Kings. They finished their 5 overs quota within their stipulated time. And thank you for your cooperation. And we are looking for same cooperation from VV cricketers as well. They take a short break here. And after a short break, Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
थैंक यू सतीश। और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का, तो 1:54 इस वक्त बच चुके हैं। 1:54 at the time now, and their stipulated time now going to start for the bowlers of VV Warriors. They have to complete their 5 overs under 24 minutes as far as the time is given for them to complete their 5 overs quota. 24 minutes the bowlers of VV Warriors have to complete their 5 overs. पहली गेंद, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के, तो 38 रन बनाने इस वक्त CSK यानी KSK, माफ कीजिए, KSK कोडियाल सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को, और मोटे कद के बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था। पद्मनाभा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, नॉट क्वाइट मिडलिकेटेड द लास्ट पॉइंट, ही गेट्स एन अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। तो अर्धशतक पिछले मैच में पद्मनाभा में ने जड़ा था, और उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पे आगे बढ़ाने की उम्मीद में वो इस वक्त अपना खाता यहाँ पर खोल चुके हैं। तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुरेंद्र पई, और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सुरेंद्र पई स्ट्राइक लेते हुए, जबकि लक्ष्मीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला है, लेकिन काफी ऊंचा गेंद जाती हुई, और लंगोन पर फीडर वहां पर गेंद तक अंतिम क्षण में पहुंचे जरूर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। शायद वहां पर कुछ हुआ था, शायद कैच छूटा था, हमें यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दिया। और जहां तक सवाल है, गेंद को काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था, और आखिरकार वहां पर फील्डर जब तक गेंद को लौटाया, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर, 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज लक्ष्मीश एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर डिलीवरी, मिसिंग 2 फॉर साथ दी ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पद्मनाभा जिन्होंने पिछले मैच में 52 रन बनाए थे सिर्फ 22 गेंदों पर, पद्मनाभा स्कोर्ड 52 रन इन जस्ट 22 डिलीवर्स इन द प्रीवियस मैच। इस बार क्रीज पर नॉन स्ट्राइक पर मौजूद, इस बार गेंद को मोड़ दिया, और गेंद जब तक पहुंचे डीप मिड विकेट पर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल एक सतर्क शुरुआत की जरूरत है CSK को, अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचा तो। खासकर पद्मनाभा की उपस्थिति उनके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, लक्ष्मीश इस वक्त एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए उन्हें करनी है। इस वक्त अब तक 6 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद पद्मनाभा के लिए उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गॉन टू फॉर अ क्विक सिंगल, एट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर एंड दैट इज एन अ क्लोज कॉल। तो गेंदबाज स्वयं गेंदबाज फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया, उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। अगर पद्मनाभा इस गेंद पर रन आउट होते हैं तो निस्संदेह ये एक बहुत ही बड़ा झटका साबित होगा CSK के लिए, और निर्धार इस वक्त आ चुका है, ही इज गॉन। Padmanabha is back into pavilion disastrously, and CSK are now loses their vital wicket. First wicket fall for them. Padmanabha departs. Unfortunately, he was run out, and they lose their first wicket now in the total of 6 runs. It's 6 for the loss of 1 wicket. So पद्मनाभा से काफी उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन इस बार दौर्भाग्यवशात रनआउट के रूप में इस वक्त उन्हें वापस जाना पड़ रहा है, और CSK के ऊपर इस वक्त दबाव इस विकेट के पतन के साथ कुछ हद तक बढ़ चुका है। तो जहां तक VV वॉरियर्स का सवाल है, एक बड़ी मछली को वो जाल में फंस चुके हैं पद्मनाभा के रूप में, और यहां पर उनका विकेट उखाड़ने के बाद रनआउट के रूप में इस वक्त राहत भरी सांस लेते हुए VV वॉरियर्स के कप्तान। 6 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज राकेश इस वक्त सामना करने के लिए, सुरेंद्र राकेश इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। लक्ष्मीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, पहला और एकमात्र पावर प्ले उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डॉट गेंद, और बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए लक्ष्मीश
इस ओवर में और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज लक्ष्मीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। रक्षण प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद। 7 रन बन चुके हैं पहले ओवर के समाप्ति के बाद। और खासकर सबसे खुशी की बात इस वक्त वीवी वॉरियर्स के कप्तान के लिए यह है कि पद्मनाभा का विकेट रनआउट के रूप में गिर चुका है। और सबसे चिंता का विषय यहाँ पर यह है कि सीएस के कप्तान के लिए कि यहाँ पर पद्मनाभा का विकेट पहले ही ओवर में गिर चुका है। और कुल मिलाकर पहले ओवर के बाद equal battle is now continuing. 7 for the loss of 1 wicket, 38 the target in 5 overs, 7 for the loss of 1 wicket after first over, 31 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. That means in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 7.75 runs per over. So still the match stands in a balance. दोपहर के ठीक 2 बज चुके हैं इस वक्त और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए प्रोफेशनल एंड की ओर से सूरज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सुरेंद्र पई। तो फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई और सूरज अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट सुरेंद्र पई के लिए ओवर की पहली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछाला लॉन्ग ऑफ पर एक और विकेट हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। पटकी हुई गेंद थी, गेंद को उछाला था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन अगेंस्ट द विंड और गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए लॉन्ग ऑफ फील्डर जो खड़े हुए थे सीधे उनके हाथों में हवा में डोलती हुई पहुंची और आखिरकार इस कैच को अपने दोनों हाथों से फील्डर ने दबोच लिया। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, लॉन्ग ऑफ पर आसानी के साथ इस कैच को लपका गया था और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका। सीएसके अब ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ मुश्किलों के दलदल में इस वक्त कुछ हद तक धंस चुका है। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर और यहां पर चाहिए सीएसके को एक सेंसिबल बल्लेबाजी, एक साझेदारी पार्टनरशिप इस संकटमय परिस्थिति से उभरने के लिए। प्रणव का आगमन यहां पर होता हुआ और देखना यह कि प्रणव अपने साथी जो कि दूसरे छोर पर मौजूद है राकेश के साथ मिलकर किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। यह गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को कट किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई कॉर्नर पॉइंट की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। Exactly 30 runs more now they have to score for victory in remaining 22 deliveries। और गेंदबाज सूरज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, बॉल्ड आउट। इस बार यह विकेट गिर चुका है। Just wanted to play with a twisted bat, reverse shot, and he paid the penalty for that. The ball, I think the ball passed between his legs. Have a look at this in the replay. Yes, the ball passed just one of these legs at the last moment and stuck to his off stump. Bells are disturbed, and one more wicket follows. CSK are now looking deep in trouble. KSK in fact looking deep in trouble and now they are 8 for the loss of 3 wicket, 30 required and the ball is remaining 21। 3 बहुमूल्य चोटी के बल्लेबाज केएसके की ओर से इस वक्त पेवलियन वापस लौट चुके हैं और यहाँ पर आसमान पर बादल तो नहीं दिखाई दे रहे लेकिन परेशानियों के बादल जरूर इस वक्त केएसके के ऊपर साफ मंडराते हैं। फिलहाल एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर वीवी वॉरियर्स के गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए और फलस्वरूप रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए केएसके के बल्लेबाज। इस पैंथर सुपर लीग 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस मेगा श्रृंखला का तीसरा मैच है, दूसरे दौर का तीसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ और इस वक्त मुकाबला जारी है वीवी वॉरियर्स और कोडियाल सुपर किंग्स के बीच। तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, सूरज की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार दिस इज गॉन ऑल द वे, यस इट डज, इट्स अ बिग सो एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट फॉर द न्यू बैट्समैन। Just look at this in the replay. He just got that one right from the mid of the bat and lofted that one in a style over deep mid wicket for a huge one. तो छक्का इस वक्त जो बल्लेबाज के बल्ले से लग चुका है, ये छक्का कुछ हद तक आत्मविश्वास का ऑक्सीजन भर चुका है बल्लेबाज के लिए। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर
समीकरण कुछ हद तक आसान होता हुआ। अगली गेंद के लिए तैयार, यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, और एक रन मिलेगा इस बीच अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में। 15 now for the loss of 3 wicket. 23 needed in remaining 20 deliveries. What a fighting match is now progressing here. Still the equal battle is now continuing. और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गौरव प्रभु, जो कि अपनी पहली गेंद पर छक्का जड़ने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके, अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर, यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, एक बार फिर से कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इस वक्त कुछ हद तक दबाव दिखाई देता हुआ गेंदबाज के ऊपर, और लगातार 2 वाइड यहां पर फेंक चुके हैं। और इस बीच विकेट कीपर कुछ हद तक बातचीत करते हुए अंपायर से, लेकिन अंपायर जो कि वाइड के नियमों को उनको समझाते हुए, और आखिरकार विकेट कीपर अपने स्वस्थान पर वापस लौटते हुए। तो 16 रन बन चुके हैं और 22 रन चाहिए 20 गेंदों पर। 22 टू गेट फ्रॉम 20 बॉल्स नाउ। दोपहर का वक्त लगभग 2 बजते हुए, और यहाँ पर धूप का कहर इस वक्त काफी हद तक बढ़ चुका है मैदान पर। इस बीच गेंदबाज सूरज की ओर की अगली गेंद, यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई। सर्टेनली दैट बॉल मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इन फैक्ट दे गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और लेग बाय किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 21 टू गेट फ्रॉम 19 डिलीवरीज। और सूरज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए फील्डर पहुंचे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 18 for the loss of 3 wickets. Still the equal battle is now on. 20 runs they have to score for victory, and remaining ball is now 18. So exactly 6.66 the required run rate for them at this situation. 20 required in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries. और इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ी KSK के इस वक्त मैदान पर आए, क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों को इस वक्त कुछ समझाते हुए कुछ हद तक संदेशा रवाना हो चुका है प्लेयर्स डगआउट से क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों के लिए। और कुछ बातचीत करने के बाद इस वक्त दोनों बल्लेबाज अपने स्थान पर लौटते हुए गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रामकृष्णा, जिन्होंने पिछले मैचेस में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, और यहां पर उस पिछले मैचेस के सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश में इस वक्त नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 3rd ओवर इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। रामकृष्णा starts the fresh proceedings from the commentator box, and first ball of his fresh over is now coming up. पूरी तरह सफल हो चुके हैं, ये गेंद चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, मौका फील्डर के लिए, लेकिन कैच को लपकने में सफल। स्ट्रोक को चेक किया था अंतिम क्षण में, पहले फील्डर ने सोचा कि काफी आगे आकर कैच को लिया जाए, लेकिन अंतिम क्षण में अपने शरीर पर अंकुश लगाते हुए अपने दौड़ को रोक लिया, और गेंद को देखा कि गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने ही वाली है, अपने पीछे की ओर जाकर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने रखा। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। किस तरीके से देखिए, पहले फील्डर ने सोचा कि आगे आया जाए, लेकिन बाद में सोचा कि पीछे की ओर जाए, क्योंकि गेंद उनके सिर के ऊपर से गुजरने वाली है, और अंतिम क्षण में एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। 18 for the loss of 4 wicket. 3rd over started just short while ago. 17 balls left. 20 runs required now for KSK. Number 6 batsman is now coming out to the middle with lots of responsibility for KSK is दामोदर, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच गेंदबाज रामकृष्णा गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 20 रन्स टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स।
राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, हल्के से गेंद को इस वक्त फ्लिक कर दिया, हालांकि गेंद बल्ले कहती निकट टिपा गई थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन दूसरा रन नहीं मिलेगा। पहले प्रयत्न में दौड़ते तो शायद दूसरा रन पूरा कर सकते थे, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने अपने इरादे को बदला और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर, इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इन फैक्ट 16 balls to go, 19 runs more, now they have to score for victory. Still the equal battle is now on. गोबी मंचुरी रेडी झालेला असं कोणाला पुरा जेवण जाईनी त्यांनी वग्गी होऊन स्टेजा मागची फूड कोर्ट जेवण कोरका म्हणून विनंती। धन्यवाद। तो इस बीच ये गेंद फुल टॉस हल्के से गेंद की ऊंचाई को पहचानते हुए रक्षात्मक तरीके से पंजों पर उछलते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया मिड ऑफ पर। बल्लेबाज ने इतनी ऊंचाई की गेंद का पूर्वानुमान नहीं लगाया था, अंतिम क्षण में रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त पंजों पर उछलते हुए और एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को इस वक्त खेल दिया अंतिम क्षण में पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाए एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। रन्स इस वक्त सिंगल्स में बनते हुए और इस ओवर में रामकृष्णा एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 17 रन अभी भी अपने विजय से दूर, 14 गेंदें बाकी, 17 रिक्वायर्ड इन 14 डिलीवरीज। रामकृष्णा एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया था इस वक्त, लेकिन टॉप एज पर गेंद को टकराने के बाद गेंद जब तक पॉइंट पर फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। हालांकि बल्लेबाज ने सोचा था कि गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश करके एक रन न चुराया जाए, लेकिन अंतिम क्षण में धीमी लेग कटर गेंद थी। फूड काउंटर वचून जेवण कोरका म्हणून विनंती। तुमगेल खातीर हुना हुना वेज बिर्याणी आणि गोबी मंचुरी रेडी झालेला आसा, ताजे एक सदुपयोग करूंक म्हणून विनंती। तो यहाँ पर धीमी लेकर गेंद थी और टॉप एज पर टकराई, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और इस बार रन आउट यहाँ पर हो चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। गेंद को हल्के से ढकेला था इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर और नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज काफी आगे निकला है, कोई मौका नहीं क्रीज पर वापस लौटने का और इसी के साथ 5वां विकेट गिर चुका है। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है रामकृष्णा का। अब रन से चाहिए 16, गेंदे बाकी हैं 12, 12 balls and 16 runs. So what a fantastic over came from Ramakrishna. He conceded just 4 runs in this over. And because of this over, VV cricketers are now back in the game now. 14, in fact it's a 16 required in remaining 12 deliveries. So एक 1:52 को यहाँ पर शुरू हुआ था मैच। कहीं असणारी स्टेजा मागची वग्गी होका 2:12 मैच यहाँ पर बच चुके हैं, 20 मिनट में सिर्फ 3 ओवर फेंकने में सफल रहे हैं वीवी वॉरियर्स के गेंदबाज। तो 2 ओवर अभी भी फेंकने हैं और सिर्फ 4 मिनट में। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता वीवी वॉरियर्स के गेंदबाजों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़े। प्लीज कंटिन्यू द मैच, प्लीज द बॉलर्स ऑफ वीवी वॉरियर्स। 20 minutes you are taken to bowl 3 overs. इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर। 11 balls to go, 16 runs required. The things getting little bit of a stiffer now for KSK. This time misses. One more dot ball. Fantastic piece of bowling performance continuing here. And now 16 required of 10 balls, and first time in this match VV Warriors looking on top. तो यहाँ पर इस ओवर को 4 मिनट के अंदर पूर्ण करने होंगे। ಈ ಓವರ್ ಅನ್ನು 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಿವಿ ಓವರ್ಸ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗೆ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿರಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ। इस बार गेंद को उछालना था, मिड विकेट पर गेंद पहुंची और इस बीच इस कैच को लपक चुके हैं और यहां पर विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 6। एंड नाउ 16 रिक्वायर्ड ऑफ 9 डिलीवरीज। द थिंग्स गेटिंग टाइटर नाउ फॉर KSK.
So in overall calculation, it's going to be 9 balls remaining and 16 runs required. New batsman is now coming out to the middle as a number 8 batsman for KSK. और देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं बचे हुए गेंदों में. गेंदबाज विघ्नेश शेना इस ओवर में अब तक बेहतर गेंदबाजी कर चुके हैं और 3 लगातार डॉट गेंदें फेंक चुके, एक विकेट भी यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार. नए बल्लेबाज देवदास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, अपनी अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट, हियर ही बाउल्स टू द राइट हैंडेड बैट्समैन. हियर ही कम्स. ये गेंद अच्छे से गेंद को रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश करना चाह, निशाना टकरा चुका है एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी वन मोर थर्ड अंपायर. तो यहां पर बल्लेबाज को शायद उनको मालूम है कि उनका बल्ला शायद हवा में था, तब स्टंप से बिखेरे गए थे, लेकिन असल बात यहां पर अब मालूम होगी तृतीय अंपायर के देखने के बाद. तो यहां पर द डिसीजन केम एंड द डिसीजन इज नॉट आउट एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड. क्योंकि बल्लेबाज का बल्ला यहां पर लैंड हो चुका था जब स्टंप से बिखेर गए थे, तो यहां पर बल्लेबाज बच चुके हैं और देखना यह है कि अगले गेंदों पर किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं. सो सिंगल कंप्लीटेड, इट्स 23 for 6 नाउ, 15 टू गेट एंड द बॉल इज रिमाइनिंग 8. 8 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए और कम से कम एक छक्के या चौके की इस वक्त जरूरत है केएसके को इस मैच में वापसी करने के लिए. तो अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद पहुंची शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन का इजाफा. 24 for the loss of 6 wicket. In fact, they come back for the second and one more wicket fallen. He keeps the strike for the right-handed batsman. इस वक्त तो स्ट्राइक को खुद अपने पास रखना चाहते हैं इस वक्त, इसलिए वो स्ट्राइकर की ओर दौड़ा है और यहाँ पर दूसरे बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. 24 for 7 now, 14 to get from 7 balls. So new batsman, number 9 batsman is now comes out to the middle. 70 level is remaining, 14 runs they have to score for victory for the last time in this over. The bowler Vignesh Shenoy comes. तो अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. For the last time in this over, the bowler comes. Right arm over the wicket. Lofted this time, down to long on. In fact, they completed one, looking for the second. Slight bit of fumble there. They wanted a second but won't get it. Just a single added. Fantastic over came in from the bowler Vignesh, and 4 overs completed. It's 25 for 7. 13 required of last over. Just 3 runs scored in this over. And a fantastic over came to an from Vignesh, which conceded just 3 runs in this over. 13 required of last over, and the things getting tighter now for the batsmen of KSK. So Ramakrishna starts the fresh proceedings from the commentator box, and his second over. 13 required of last over for KSK, and the last over of their innings is now coming up. First ball, Ramakrishna इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. ओवर की पहली गेंद.
ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को पहले ही भांप लिया था कि बल्लेबाज रिवर्स शॉट खेलने वाली है, कुछ ज्यादा हद तक ऑप्शन से बाहर की ओर गेंद नहीं फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज ने, और आखिरकार गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 13 रन अभी भी चाहिए 15 गेंदों पर, माफ कीजिए 5 गेंदों पर। और यहाँ पर गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, यह गेंद झुके, डॉट गेंद अगेन, व्हाट अ फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता लेकिन इन स्विंगिंग डिलीवरी, और अंतिम अक्षर में बल्ले के कुछ दूर टिप्पा खाकर गेंद निकली इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 13 रन चाहिए 4 गेंदों में। रामकृष्णा एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार उछालना चाहा, 3 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स, और इस बीच यहां पर पहली चेतावनी दी गई है कंधे की ऊंचाई पर गेंदबाजी करने के लिए, और इस बीच डॉट गेंद एक और जुड़ चुका है उनके खाते में। 13 टू गेट। अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के इस मैच में केएसके को विजय दिला सकते हैं। रामकृष्णा अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार चूके, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। 26 12 to get now, 3 fours required in the last 3 deliveries, और इस बीच रामकृष्णा अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस वक्त बल्लेबाज के लिए इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, ही गेट्स इन अ सिंगल, और 1 रन के साथ बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और इस बीच दूसरा रन पूर्ण करने में सफल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक रन पर अगर गेंदबाज विकेटों पर गेंद लगाते हैं तो वहां पर रन आउट होता था, लेकिन वहां पर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया स्ट्राइक रन की ओर, और इस बीच बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। 28 10 required of last 2 balls, 6 and a 4 required in the last 2 deliveries. The last chance now in front of the batsmen of KSK. So 2 of 10, here we go, और गेंदबाज इस वक्त रामकृष्णा तैयार। अंतिम अवकाश इस वक्त बल्लेबाज के सामने, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, मिड विकेट पर into the gap as well, he gets a single, in fact they're looking for the second, and this time I think it brilliantly stopped just inside the fence by the fielder. बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, और यहां पर सिर्फ बल्लेबाज को मिले 2 रन। अब अंतिम गेंद बाकी, और रन से चाहिए 8 रिक्वायर्ड इन द लास्ट बॉल। अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहां पर वीवी वॉरियर्स की विजय निश्चित है। तो लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। रामकृष्णा गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, 8 रिक्वायर्ड, 7 फॉर टाई, 8 फॉर विन, एंड द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। उछाला काफी ऊंचा, लॉन्ग ऑन पर नहीं, मिड विकेट पर गेंद को लपक लिया गया, और इसी के साथ वीवी वॉरियर्स आर थ्रू टू द प्लेऑफ ऑफ दिस कंपटीशन। First team to enter into the playoffs, VV Veera Venkatesh Warriors, qualifier 1. Kelta sir. Tangelo Tanek team kinche amunu next round sir kelta. So VV Warriors registered their consecutive second victory in the second round. In the second round, in the second match of the second round, and with that second consecutive victory, they are through to the playoff round, and in the playoff they will play qualifier match number 1 against which team? Just we have to decide right after 3 matches, right after the end of the 3 matches of second round. And now straight away we moving out to a 4th match of this tournament. Saptami Warriors will take over RK Strikers, and I request. Saptami Warriors, after won the toss, they elected to field first, and I request all the players of these 2 teams to please start the match immediately. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. And we'll be back right after the short break with my friend Satish in English, with the next match we're going to begin within just
art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art and 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Please wait. RK Strikers, extra player. RK Striker na extra player ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, and time which is noted here, 2:28 is the time, and it's the start of the match. First ball. Right, over the wicket. Starts with a well-directed bouncer, almost in the body level of Varun in the negation. Varun almost going back, tried to play the cut shot, but the bowler just following the batter, Varun Shanbag, and bowled beautiful bouncing delivery. This time Warren swings that one down to deep backward square leg region. Long chase here for the fielder. The fielder for mid wicket will going to cut it off. And in the meantime, the Warren coming back, turning out for the second round. And he made it quite easily. So a couple of runs. With that couple of runs, RK Strikers, they started their journey in this particular match. 2 without loss of any wicket. Varun Shanmug is off the mark with a couple of runs. And without loss of any wicket. Bowler from the far end, Ratan seaming in from the far end. This time again the bouncer and wide call by umpire, rightly so. Whenever the ball is going over the head of the bowler, batter definitely is going to be wide. Not only the wide, but one from the over. That means one first bouncer from the over. In Ratan again from the far end. Right arm over the wicket bounce. They ball him, clean him up. Varun is back into pavilion. Saptami Warriors, they got a big fish in the net. Without seeing the line of the delivery, almost he's exposing his stump. Just I want to see Varun little bit is making room to play the shot on the offside region. Misses the line completely. You miss high hit.
What a bowler is did in this particular delivery. The Sarkis strikers really doesn't want to see Varun Shanbag to be dismissed early. Two without loss of an wicket in the over number first in progress. There's a new batsman walking towards the middle for Arcus strikers. Karthik, and Karthik is a fantastic performer from the bat. And responsibility need to be taken because they lost the wicket of Varun Shanbag, and after losing his wicket, I think Karthik need to play some responsible innings along with his partner Ashwath Pai. Ashwath Pai looks like he's promoted up in the order in this particular match, and Karthik drives that one down to deep wideish long on region for a single. With that single, Ashwath, little bit correction, Karthik is off the mark with a single. Scoreboard now moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. First in progress, little correction. And usually Ratan bowling a second over. He always bowls second over. That's why I confused. Ratan today in this particular match is bowling a first over from the professional career end. A little bit strategy which is changed by the captain of Saptami Warriors, Ratan, from the far end. Balls, full toss delivery, negotiated very well by the batsman because it's not a juicy full toss. It was a little bit high full toss, almost in the just below the waist level. The batsman Ashwath in dedication managed to send that one down to mid-wicket region for a single. With that single, Ashwath is also off the mark, and the scoreboard is now moves on to 5 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Ratan again. Right arm over the wicket, outside the run flag stamp, wicketkeeper behind the stamp, diving attempt there from the wicketkeeper, but there is a possibility of run there, but not interested. A good over there by Ratan, justifying the decision of their captain that he come and bowled in the first over of the power play. And he's a very experienced campaigner, Ratan. You know exactly the kind of line and length is required in this power play over. After completion of first over, Arcus Strikers has got a slow start because quite understandable. They lost the wicket of Varun Shanbag in that first over. And scoreboard is 5 for the loss of 1 wicket. 4 overs remaining. That means 24 deliveries remaining, excluding wides and no balls. And out of that, wait and see how Arcus Strikers will going to get some runs here. Coming back to these two teams, Arcus Strikers as well as Saptami Warriors, they came into this tournament as underdogs. And everybody knows that it is Saptami Warriors and Arcus Strikers is not a formidable team, but the way that performed in the league matches is surprised everyone. And Arcus Strikers, they won their first match for 2 matches of the league. They lost 1, but Saptami Warriors, quite surprising entry for them. A little bit luck which is included to qualify for this round. But the first match of their second round, they played brilliantly, and they won the match. If they're going to win this match, they will going to qualify for the playoff round. Going for the full shot, but not getting that one from the middle of the bat because that short pitch delivery, which is a slower one by the bowler Deepak in dedication, so that there is no question of any run. Ashwath maybe is looking for the quick short pitch delivery from the bowler, but Deepak is a master bowling a slower one, and he bowls around the wicket. Look at that one again, a slower one. This time batsman almost shuffled across the line of the delivery, and fulls that one down to square leg region for a single. With that single, scoreboard now moves on to 6 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Bright sunny afternoon here in Urva cricket ground, known as Lords of Cricket, with some very good conditions. The wind is still flowing here in the middle. Strong wind, not just like what we saw in yesterday's. It's quite a different condition today. Deepak. Balls are going for the cut shot, ball a little bit capped low. It's sometimes variable bounce is very difficult for the batter to judge. Sometimes his ball is getting some extra bounce, sometimes ball is kept low. It's not so easy for the batter to judge, and that's why that ball is beaten completely. Again, lovely delivery. This time extra bounce. Look at that one. The 2 same deliveries, one incoming and one out swing delivery. But look at the bounce. When he bowls in swing delivery, they got an extra bounce. The previous delivery is bowled outside the line of stamp, which is kept low. So 7 for the loss of 1 wicket. Good disciplined bowling performance continues here from Saptami Warriors. Deepu
away from us. This time experiment is which is too much, isn't it? Just like we were talking about, a lot of experiment is made. Wide call by umpire from the bowling department. The bowlers have to try something special. This is, I think, is tried to bowl the knuckle ball. Just you can see that the two fingers is coming in. So try to hold that one so that he bowled the slower one. This time pulls that one. No, I don't think he'll going to get that one. Oh my goodness, this is the direction of the wind is helping that strokes. Oh, for Ashwath. Once it looks like he didn't got enough bat onto that when he was full that one. But because the ball is got an aerial route, when you're getting that aerial route, you will get some help from the direction of the wind. Look at that one. Not enough power, but the timing is so good in that occasion. And ball went towards a deep backward square leg boundary for a youth 6. Some much required blow came from the bat of Ashwath for RK Strikers. 14 for the loss of 1 wicket. Ball which is landed into the roof of the dugout of RK Strikers, but one of the player of RK Strikers managed to get that ball from the roof. And now Vijay, thank you very much Vijay, and one more dotted delivery. Good comeback here by Deepak. So 2 overs completed. After completion of over number 2, equal battle is on from these two equal balanced team. RK Strikers managed to get back in this game in this particular over with the 6, and now it's a 14 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 7 runs per over. Deadly Panthers are organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Panthers Super League 2023. That's they completed their journey of a successful 15 years, and they're organizing first time the all-round cricket tournament in this UCG cricket ground. The 12 teams participating in this tournament. Now we are watching the round second of this prestigious Panthers Super League 2023. This is hammering it down to mid-wicket region. That long chase here for the fielder. He's run across to his right to fields the ball. Good piece of fielding there by the fielder. He's been outstanding. Karthik, man, who is finished the match for Saptami Warriors in the first match of the round second. What a athleticism there from that fielder. Absolutely needed such kind of a player in our side, isn't it? That will going to galvanize the spirit of other cricketers, other players. The kind of commitment, kind of athleticism in the field. And here is the next one. Boss Ratan this time outside edge of the bat. They wanted a single, but the partner Ashwath is not interested. Deepak is not interested. Ashwath is very much interested for the single. The beautifully bowled there by the bowler Ratan in the negation. And Ashwath is on strike. Ratan from the professional career end bowls. This is a nice looking drive there from Ashwath, and as for the merit of that delivery, plays it down to long off region, and with their single score Namuzan to 16 for the loss of 1 wicket. Rotation of strike is so important, even though he will go and get for the single for that, but single always useful. Along with the singles, if you get 1 loose ball, 2 loose balls, you can get the acceleration. But playing the dot balls definitely going to be not a good sign to get a good score. As Ratan again from the far end. Right over the wicket again off the back foot, hits that one down to deep long off region, firmly by Karthik for a easy single. With that single score Namuzan to 17 for the loss of 1 wicket. Ratan, what a fantastic bowler for Saptami Warriors. Bowled the first over in the power play, is considered just 5 runs and picked a wicket of Varun Shanbag. Now he's coming in the 3rd over, and so far he's looking pretty good in this particular over as well. Drives that one beautifully there by Ashwath. Is looking pretty good in the middling the ball very well, timing the ball very nicely, rotating the strike, and one more addition to total addition of that single score Namuzan to 18 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress, and last delivery will going to start from the far end. The run rate almost just over 6 runs per hour, having 9 wickets in hand. The RK Strikers definitely they go
look for acceleration again. Off the toes, plays it beautifully down to wide-ish long on region. This time they're running hard between the wicket. The excellent running of the wicket before the throw came from the deep. They completed a couple of runs. Then with that couple of runs, the scoreboard numbers on to 20 on the board for the loss of 1 wicket. 3 overs completed. 2 overs remaining in their innings. They got 9 wickets in hand. And certainly it's a time for the acceleration of run rate for Arcus strikers. And wait and see how well they will going to get that acceleration. So thank you very much once again for the organizers of Panthers Super League 2023 being the part of this wonderful cricket tournament. And we have V4NEWS 24/7 channel having a live telecast of this cricket tournament. It's not so easy from yesterday, from late night, it's till 1 and 1:30, and then coming in the morning again in 8:30 or 9 o'clock. Thanks to all the teammates of V4 24/7 channel making this cricket tournament a most memorable one. And even the thanks to Cricket Heroes as well. Milan Jivan Rai so far is done a great job in our commentary box, being the operator of Cricket Heroes, updating each and everything of this Panthers Super League 2023. And thanks to Nihal is in manual scoreboard, and a great job for the success of this cricket tournament. Start of the over number 4. Lunch area And Anant Bhai is a very experienced campaigner, but bowled very well so far in this tournament. Second time in this over. This time outside the line of leg stump, going to be a wide, but not too far from the leg stump again. But I think that's going to be a little margin for error for the bowler to bowl that outside the line of leg stump. And rightly so, umpire Shiniket called that wide. With that wide, scoreboard numbers on to 21 for the loss of 1 wicket. Ashwath. This time tried to swing that one. Good piece of bowling there by Anantesh. It's very difficult, isn't it? When the bowlers like Anantesh bowling a very slower one, the batsmen have to be very patient because they need to wait for the ball to coming to bat. It's not so easy in cricket. They are very effective, that slow balls. But Anantesh has so far done a great job. 2 balls and 2 runs conceded. It's a 22 for the loss of 1 wicket. Now one fielder coming from the deep backward square leg inside the ring. A little bit correction, deep backward point, because the left and right combination. There is a start man and backward point and a short extra cover. But one fielder in the deep backward point and cover point. Maybe for the reverse stroke, they kept that fielder. Again, shuffled across the line of the delivery, Karthik. But again, I've already mentioned about that was a backup length delivery which is balled by Anant Prabhu. It's not Anant Pai. It's very difficult for the batsmen like Karthik to get going. And again, the dotted delivery. And the ball this time. Chip that one. Not enough bat onto that. Deep wide is long on fielder will go into comfortably take the catch. Ratan the fieldsman, then the deep long on takes the catch. And a little bit struggled innings of Karthik comes to an end. Looking for the acceleration need to be, because they didn't lose many wickets. They are now one of the batter out of these two. I have to take a little bit of risk, but I think he's just choosing a wrong delivery for the acceleration, which is on the middle and off stump, and is shuffled across, try to hit the ball over the deep long on, but not really having enough bat onto that, and long on fielder completed a catch. The new batsman in. Vinayak Pai came into middle. Vinayak Pai know exactly the condition of the game, where Arcus strikers are not really having enough runs on the board. This is over number 4 in progress. Again, swings and missed. This is an outstanding bowling performance here from Anant Pai. What a great over so far. He bowled 5 deliveries. Out of that, he given only 2 runs. One in the form of wide and one from the bat. What a great over. This time, lofted. Opportunity for the fielder. Vignesh going back and he drops the catch. Ball is almost landed between mid-off and long-off. The Vignesh just going back, try to take the catch.
but he couldn't manage to control that run and couldn't manage to judge the catch as well. And just look at that one on the replay and just tried to get over the top of that long off, but ball is going out just outside the 20-yard circle, and Vignesh drops the catch. And meantime, the batsman completed runs here. 23 for the loss of 2 wickets after completion of 4 overs. Run rate now first time coming down under 6 runs per over. So last opportunity for RK Strikers to get some acceleration of the run rate. Bowler to bowl that last over. One more fantastic performer from the ball. Deepak is came into ball from the far end, but RK Strikers desperately required some runs, at least 10 to 15 runs. It just takes them into a good score. Outside edge of the bat, Vignesh complete the formalities of taking the catch behind the wicket. One more wicket is back into pavilion. Struggle time continues here for RK Strikers. The one more wicket is back into pavilion. Replacing him, Sandeep is walking towards the middle. But Sandeep have to do something special in that spy balls, which is going to be very crucial for RK Strikers to get some good score. But Deepak has got a good start from his bowling. The first ball he got a wicket, caught behind the wicket. Deepak to Sandeep. Second time in this over. Right arm over the wicket. Back of line delivery. Beautifully balled. A short pitch, but extra bounce here for Deepak in the negation. Perfect delivery to ball to the fresh leg. Each and every dot ball played by RK Strikers, taking them into more trouble to get a good score. Just a 23 they got. 4 balls remaining. Deepak. This time outside the line of leg stump, going further away, but Sandy is not interested to swing his bat. He just wanted to wait for the next delivery. That's a wide outside the line of leg stump. So 24 comes off now. Last 4 deliveries remaining. Deepak. Balls in the air. Opportunity for the fielder. And he completed the catch. Anant Pai is the man there in the extra cover region, making no mistake at all. And Deepak picked up his second wicket in this over. And RK Striker losing one more wicket here. It's a 24 for the loss of 4 wickets. So new batsman in is a dangerous batsman down in the order, Saurav Bhaktha. Of course, Saurav Bhaktha. And when you are hearing that name of Saurav, we are just remembering the Prince of Calcutta, Saurav Ganguly. I think is one of the favorite player of Jeffrey Boycott. Is a commentator. Dada. Whenever he's coming to the bat and whenever Jeffrey Boycott in a commentary box, he will always enjoy. The Prince of Calcutta is just came into middle. Saurav Bhaktha, wait and see, because he's got the ability of hitting the ball, and plenty of times he's survived his team from some big shots. And wait and see how Saurav Bhaktha will go in to deliver the big shots. Deepak, seaming from the far end, right arm over the wicket, swings and missed. What a fantastic piece of bowling there from Deepak. Again, lovely delivery. He bowled 2 deliveries, which is going out swing, going away from the right hand batsman. This time, little bit in swing delivery there from the bowler. Now, last ball of the over. Last 2 deliveries remaining, little correction. Last 2 balls remaining. Saurav Bhaktha, at least 1 big shot which is badly required here for RK Strikers to get competitive total. Deepak so far looking pretty good in this particular over. Last 2 overs belongs to Saptami. This time again swings, but not really having enough batter to that. Running hard. They're definitely coming back for the second. Oh my goodness, Vignesh. They're going for the third as well. This is a bonus run for the team.
This is definitely going to be a bonus run here for Arcus Strikers. It's not necessary that how the runs are coming for them, but each and every run they will going to enjoy here. What could be a certain single, because of some mixed communication, misunderstanding, they converted into 3 now. The Vignesh is a fielder, he's charging from the deep. He tried to return the ball, but I think he couldn't manage to grip the ball properly. Ball slipped out of his hand and got opportunity for the batter to come back for the 3. So with that, the 3 valuable runs, it's 27. Now last ball remaining. And Ashwath is out of the strike for a long time. Now he's back on strike in the final delivery of their innings. They desperately wanted one big shot from this man. But Deepak doesn't want to do that so. So far he's looking very good indeed. And his final time in this over bowling. Ashwath. He's on strike! Just like I mentioned. He hammers that on, but the fielder, oh, done a great job. Absolutely good job. Even though he knows that he couldn't manage to stop the ball, take the catch, but he stopped the boundary. But here is the batsman toss off for a couple of runs, because run out which is taken place in the non-strikers and 2 runs completed. And with that couple of runs, scoreboard now moves on to 29 for Arcus Strikers, and they set a target of 30 to win this match. So 30 is the target for Saptami Warriors to register their second victory. So fantastic bowling performance here from Saptami Warriors. I think the bowlers did a job for Saptami Warriors. Now the batters of Saptami Warriors need to justify the effort of their bowlers. At the same time, Arcus Strikers bowlers really need to do something special in their bowling, isn't it? But cricket is, everybody knows that the cricket is game of glorious uncertainty. The level of confidence is so important in this occasion for Arcus Strikers. Even they knows that is a small total, but they can depend this total if they bowls well, fields well, and wait and see how well they will going to defend this total. And for that innings of Saptami Warriors, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Indeed, thank you. Right, the time is 2:53 and the match is now going to start. The second session of
The match number 4 of the round second is now going to start, and 30, exactly 30 the target for Saptami Warriors, set by RK Strikers. Their openers are the crease, and we are just waiting for the first ball of their innings. And the first ball of their innings is now coming up. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार कार्तिक का, और इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए विघ्नेश, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इस वक्त इनटू द गैप एज वेल। ही गेट्स couple for that, and in fact this could be in trouble, but the batsman made it at the last moment. जोखिम भरा दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण करते हैं। हल्के से गेंद इस वक्त खेल दिया था खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट का, पॉइंट फील्डर की बाईं ओर से 2 रन यहाँ पर बटोरने में सफल, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट वेल एगो। तो इस वक्त जहां तक का सवाल है रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का, तो 30 रन बनाने निर्धारित 5 ओवर में, यानी 30 गेंदों में 30 रन बनाने सप्तमी वॉरियर्स को इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पहले मैच में सप्तमी वॉरियर्स में जीएसबी योद्धास के खिलाफ अंतिम गेंद में विजय दर्ज किया था। रोमांचक जीत थी वो, और इस मैच में अगर वो विजय दर्ज करता है तो इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ में वो प्रवेश प्राप्त कर जाएगा। तो यहाँ पर इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में इस वक्त उनके बल्लेबाज, और बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को बैकवर्ड डिफेंस खेला इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में, और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 2 रन पहले ओवर में। आरंभिक बल्लेबाज विघ्नेश और दीपक, जबकि गेंदबाज कार्तिक इस वक्त आगे बढ़ाते हैं। विघ्नेश सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है सप्तमी वॉरियर्स का, तो विघ्नेश की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले मैच में विघ्नेश ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद के साथ ही दौड़ पड़े और गेंद पहुंची वाइड स्पीड ऑफर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और स्ट्राइक इस वक्त दीपक के हाथों में, जबकि कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और एकमात्र टीम अब तक इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त कर चुकी है वीवी वॉरियर्स। अगर इस मैच में भी सप्तमी वॉरियर्स विजय दर्ज करता है तो लगातार दूसरी जीत के साथ इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त कर जाएगा। तो इस वक्त कोशिश जारी है उनके बल्लेबाजों की जा रहा है। और जहां तक आरके स्ट्राइकर्स का सवाल है, इस दूसरे दौर के मैच में अपने पहले विजय के लिए उनके गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार हल्की सी गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए शॉर्ट फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर गेंद पहुंची इस वक्त, और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज कार्तिक एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, एक्स्ट्रा क्विकर वन फॉर द बॉलर, और गेंदबाज को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता अंतिम क्षण में, थोड़ी सी गेंद घुमाव लेकर बाहर की ओर निकलते हुए, और आखिरकार विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए कार्तिक का एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर मिड विकेट पर उछाला है, लेकिन गेंद सीमा रेखा जवाब, ऐसा कहना पड़ेगा। He just not quite get that one right from the middle of the bat, but he got the distance. और यहां पर छक्का उछालने में सफल बल्लेबाज दीपक, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। Just off that one in a style of a deep mid wicket fence, not quite mid wicket at the last moment, but he got the distance, and because of that he's got that much for a maximum. बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है सप्तमी वॉरियर्स। 9 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय सप्तमी वॉरियर्स।
after the completion of first over, chasing the victory target of 30 in 5 overs. 21 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs, and the asking rate is now straight away coming down to 5.25 runs per over. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए अश्वत्थ, और नया ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ सप्तमी वॉरियर्स की पारी में विघ्नेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर अश्वत्थ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट। दूसरे लेफ्टी बॉलर इस वक्त ये गेंद हल्के से रक्षात्मक तरीके से उनको पुश किया। इस वक्त विघ्नेश ने ये भापते हुए कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर जो मौजूद है थोड़े से पीछे तैनात, और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं और 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। सप्तमी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को अगर हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज सप्तमी वॉरियर्स के क्रीज पर टिकने की, क्रीज पर जमने की यहां पर कोशिश करते हुए, और फील्डिंग में जमावट करने के बाद एक बार फिर से अश्वत्थ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, गॉड इज आउटसाइड एज, और गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अंतिम क्षण में गेंद थोड़ी सी उछाल ली थी और बल्ले के बाहरी किनारे को टकराने के बाद बल्लेबाज के गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन की स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। 3 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद, इस वक्त गेंद को उछाला, टॉप एज गेंद होती है एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, और इस कैच को लपकने में सफल फील्डर। विकेट से हटते हुए दीपक ने गेंद को उछालना चाहा था स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई, जितना बल्लेबाज ने पूरा अनुमान लगाया था, एक्सपेक्टेशन लगाया था, उससे गेंद को ज्यादा उछाल ले, टॉप एज पर टकराए और एक्स्ट्रा कवर पर इस कैच को एक अच्छे जजमेंट के साथ लपक लिया गया फील्डर द्वारा। तो दीपक का विकेट गिर चुका है, रतन का आगमन यहां पर होता हुआ, और स्कोर है इस वक्त 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो यहां पर रतन स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए अश्वत्थ की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। विघ्नेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए अश्वत्थ, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज रतन इस वक्त सामना करते हुए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हियर ही बाउल्स, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त पैरों पर टकराया, लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिपका दे, इट पिच्ड आउटसाइड द लाइन, और इसकी वजह से बिल्कुल सही तरीके से अंपायर श्रीनिकेत ने इसे नॉट आउट घोषित किया। 1 रन लेग बाई के रूप में स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है अश्वत्थ का, एक सीधी और सदी लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर वो गेंदबाजी करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार हल्के से बल्ले को गेंद को बल्ले पर आने दिया, और हल्के से गेंद के बल्ले के मुंह को खोलते हुए गेंद को स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ पॉइंट पर, धीमे तरीके से ये भापते हुए कि पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थोड़े से पीछे तैनात, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अश्वत्थ एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज रतन सामना करते हुए, यह गेंद रतन के लिए फुल लेंथ गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडिंग एट द लास्ट मोमेंट, 1 रन मिलेगा, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया, और इसी के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति हो चुकी है अश्वत्थ की। सिर्फ 4 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किया। 2 overs completed, and after 2 overs Saptami Warriors going on a right track now. 13 runs they scored for losing 1 wicket, and 17 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries, and the required run rate for them is exactly 5.66 runs per over at this situation. तो 18 गेंदों में 17 रन चाहिए। कुछ बातचीत चलती हुई अंपायर और आर के स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों के बीच में।
और इस वक्त तीसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से प्रारंभ होता हुआ प्रोफेशनल एंड की ओर से। कार्तिक नायक का गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। पहले ओवर में उन्होंने 9 रन प्रदान किए थे, इसके बावजूद उनके कप्तान ने उन पर विश्वास रखते हुए दूसरा ओवर उनको सौंपा है और देखना है कि वो कप्तान के विश्वास को किस तरह इस ओवर में बरकरार रख पाते हैं। तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट कार्तिक नायक रतन के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में जमावट करने के बाद बाएं हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद, ये गेंद चिप किया एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से और गेंद सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है, सीडीओ पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। Just inside out cricket he played this time. After just leaving the wicket, he just smashed that one just over the extra cover fielder's head, and he finds the gap as well between wide long off and a deep extra cover. चौका इस वक्त जुड़ता हुआ रतन के बल्ले से और स्कोर बढ़कर इस चौके के साथ पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. सिर्फ 13 रनों की दरकार विजय के लिए। जस्ट 13 more runs now they have to score for victory for सप्तमी वॉरियर्स to qualify for the playoff round. और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए कार्तिक बाएं हाथ राउंड द विकेट। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडने गेट, बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे, स्कोर रुक चुका है 17 रन। 2.2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। कुल मिलाकर 13 रन और चाहिए, जबकि गेंदे बाकी हैं 16। 16 balls remaining, 13 more runs now they have to score for victory. कार्तिक एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर टकराई, certainly going down the leg side. Single run added to the total in the face of it's of the leg, in fact leg by declared by umpire. और 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए। लक्ष्य ज्यादा कुछ लंबा नहीं है और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरे तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और गेंदें ज्यादा है, बनाने हुए रन इस वक्त कम है बचे हुए गेंदों से। कार्तिक आर के स्ट्राइकर्स को इस वक्त एक घातक गेंदबाजी की जरूरत है इस मैच में अपनी कमबैक वापसी करने के लिए, और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में कार्तिक अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज विघ्नेश इस वक्त स्ट्राइक ले ड्राइव किया, बिल्कुल एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट शैली में इस स्ट्रोक को खेला था, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल। गेंद के बिल्कुल पीछे अपने बल्ले को लाते हुए लॉन्ग ऑन पर तकनीकी तौर पर बेहतरीन स्ट्रोक, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 11 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 14 बॉल्स। कार्तिक अपनी ओर की अगली गेंद, यह गेंद उछालना चाहा और पंप इन फ्रंट, द बॉल स्टक टू हिज बैक लेग एंड हिज बैक लेग शोन क्लीन इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स। 1 more wicket fallen, second wicket down, and it's 19 for 2. Ratan departs. Next match, team Mangalapuram will have to face Kodiyar Super Kings, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. कार्तिक, एक और कार्तिक इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार कार्तिक की गेंदों का। तो कार्तिक के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार।
ये गेंद हल्के से तो डिफ्लेक्ट कर दिया, खूबसूरती के साथ रन के लिए दौड़ पड़ते हैं, इसके साथ एक रन पूर्ण कर चुके हैं। मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद को कलाई के सहारे मोड़ना चाहते थे, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि शॉर्ट फॉर लेग फील्डर गेंद को फील्ड करे। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 20 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 10 रन चाहिए 12 गेंदों में, 12 रिक्वायर्ड इन 10 डिलीवरीज। In fact, it's a 10 required in 12 deliveries. Exactly 5 runs per over. और इस वक्त बातचीत चलती हुई के वॉरियर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। पैंथर सुपर लीग 2023 इस श्रृंखला का मैच नंबर 22, 22nd मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑफ पैंथर सुपर लीग 23 is now progressing here, which proudly presented by Deadly Panthers. So this tournament is organized by Deadly Panthers in the celebration of their 15th year. They are organizing this mega fantastic tournament in the name of Panther Super League 2023, and this tournament is now progressing along nicely. So back to this game. 10 required of 12 balls for Saptami Warriors. Sandeep, the bowler, is now brought into the attack. और इस वक्त वो गेंदबाजी शुरू करते हुए डॉट गेंदों की सख्त जरूरत आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाज को इस मैच पे वापसी करने के लिए। पहली गेंद, ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला, 1 रन मिलेगा। सेंसिबल क्रिकेट अपना ही पहली गेंद पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 3.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 11 गेंदें बाकी है, 9 रन चाहिए। विघ्नेश इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 6 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं और तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। अगली गेंद इस बार फुल लेंथ गेंद, हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 10 balls remaining, 8 runs required for Saptami Warriors to qualify for the playoff of this tournament. गेंदबाज संदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। Right arm over the wicket bowls. Full toss, sensible. 1 more single added to the total. Long off fielder collected the ball just outside the 20-yard circle. The scoreboard is now going up to 23 now for the loss of 2 wickets. 7 to get from 9 balls. विघ्नेश बैक ऑन स्ट्राइक। क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और हर गेंद के साथ फील्डिंग का व्यू में बदलाव यहां पर करते हुए कप्तान आरके स्ट्राइकर्स के। संदीप अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद ड्राइव किया, बेहतरीन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच। गेंद को इस वक्त खेला था और गेंद लगभग ऐसा कहना पड़ेगा तीर की रफ्तार में पहुंची थी इस वक्त फील्डर के हाथ में। देखिए किस तरीके से हुआ था, रक्षात्मक खेल हवे में, लेकिन गेंद को लपकने के बाद अपना संतुलन खो बैठे, लेकिन अपने आप अंतिम क्षण में अपने संतुलन को कायम रखते हुए इस कैच को लपकने में सफल, और इसकी वजह से विघ्नेश का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो विघ्नेश का बेशकीमती विकेट गिर चुका है और एक और विकेट यहां पर खो चुका है सप्तमी वॉरियर्स। इट्स 23 for 3, 8 balls to go, 7 runs required. New batsman is now comes out to the middle और संदीप इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए
डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को इस मैच में वापसी करने के लिए। संदीप यह गेंद चिप किया इस बार इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एट लीस्ट कपल फॉर दैट। वाइड एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर रहा है, डीप कवर पॉइंट पर और जब तक वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और थ्रो जो कि कुछ हद तक उनके आगे टिप्पा खाते हुए 3 रन यहां पर मिले और इन 3 रनों के साथ समीकरण इस वक्त आसान हो चुका है। 4 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 7। जस्ट 4 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 7 डिलीवरीज और सेंसिबली होकर गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप किया था, चिप किया था बल्लेबाज ने खाली क्षेत्र चुनते हुए और ओवर थ्रो की बदौलत तीसरा रन भी बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। इस ओवर में अंतिम बार संदीप और सैंडी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस एंड ही फिनिश द मैच इन स्टाइल और छक्का लगाने के बाद अपना बल्ला बैट को ऊपर की ओर उठाते हुए उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और इसी के साथ Saptami Warriors are through to the playoff of this competition after being registered their second consecutive victory in the second round and they are through to the playoff round along with the VV Warriors. So the next match, Team Mangalapuram will meet Kodial Super Kings KSK. ಹಜ್ಜಿ ಮುಖೇನ ಸಪ್ತಮಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಜಾವನು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾಕು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಜಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 आता जल्दीतली वगी नेक्स्ट मैच प्रारंभ करका म्हणून पूरा निमून घेता टीम मंगलापुरम will take over क्वालिफायर 1 मैच वीर वेंकटेश वॉरियर्स वर्सेस सप्तमी वॉरियर्स दोन्ही वॉरियर्स मध्ये चलता अशा मॅच जल्दीतली वगी मॅच स्टार्ट करका समय अभाव मस्त संघा So Team Mangalapuram will take over KSK, that means Kodikal Super Kings, and I request all the players to start the match immediately. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Yard 4 outs within 340. The first ball. This time slashes, but not quite getting hold of the. Oh my goodness! Total mismanagement by the fielder. Sunil in the negation. He's run back, but it's too much speed. Without seeing the ball, he started to run back, isn't it? This is what you need to see. The good fielder have every time. You need to judge the ball pass. Then as per the movement of the ball, you need to control the run. The speed of your running is so important. This time he runs very quickly to back, but ball is stopping a little bit with the air, in the direction of the air. He couldn't manage to control that one, and the ball is dropping, ball which is dropped away from the fielder. And lucky escape here for the batter. This time appeal for leg before wicket. The ball is definitely going to miss the off stump, what umpire Shriniket is saying. And this is just got a bat or not. It's a leg by call by him. Rightly so. The back foot is a little bit, fractionally outside the line of off stump, I want to say. The fractionally, not too much. Fractionally, the batsman shuffled across the line of the delivery. Good shout anyhow. But I think umpire is rightly said. The good decision there from umpire Shriniket. Ball is an inches, that ball missed the off stump. And the impact of the line, outside the line of off stump, and the batsman crossed off for a single. So with that single, score numbers on to 3 on the board. Vinayak Pai, he's got a couple of runs, but this man, Ramesh, is a useful cricketer, but line is not good in relegation there from bowler Rakesh. Little bit changes in the opening bowling. Rakesh bowling at the power play overs today. It's a liberation in this particular match. Because Cody also King knows that it's a must-win match for them, even for the opposition. Nicely balled, well pitched up delivery, almost forcing the batsman onto the back foot, and Ramesh going back and just getting the placement. Soft end comes into play to get the single down to backward point region. With that single, score but numbers on to 5 without loss of any wicket in the over number first in progress. Shriniket having some extra work to have, because the dogs, which is definitely fried off UCG cricket ground, the more than the fielders, we are finding some dogs enjoying the condition here in UCG cricket ground. And the next ball, which is outside the line of off stump and going out of the reach of the batter in the negation. So wicketkeeper fails to collect the ball, but short term fielder Sunil is complete that job of collecting the ball, but the batsman has got no chance to get any kind of run. Score remains on 5 without loss of any wicket. There's a lovely shot, but not quite able to beat the infield. The fielder Mahesh is not interested for the run out, even though he collected that one innately, but he's not trying for the run out. But he's definitely saying that I am very happy to collect the ball rather than try to make the run out. 6 without loss of any wicket in the over number first in progress. Steady start there from these two opening batters of Mangalapura. Going for the cut shot, and again they're going for the single. Not quite able to make a very good contact with the batter. Ramesh this time off the back foot, tried to cut that one, but not really getting that one from the middle of the bat. First over completed. Decent first over there from the bowler, as he bowls a good one. Just 7 runs came from that over, and with that 7 runs, Mangalapuram definitely, after they lost the match, the first match of the second round, and of course they played against the first match team.
गौतम अण्णा इलाचे वेदिकेर वेदिके घेऊन येऊ का म्हणून निघून घेता. Team Mangalapuram, they lost the first match against VB Warriors. At the same time, Kodial Super Kings, they lost the match against VB Warriors. It's very interesting, isn't it? Both the teams, they're defeated by VB Warriors. So Kodial Super Kings winning the toss, selected to field first. 7 runs conceded in the first over. It's not a bad over. Pranav brought in the attack. Ramesh is on strike. Lofted, but fielder and the deep long off will going to take the catch. Little bit correction, extra cover fielder. Surendra Pai actually is not 100% fit, but the way that he's managed to take that catch has been a really great effort, isn't it? Look at that one. Ball is taken aerial route, not really getting that one from middle of the bat. And look at the effort there from Surendra Pai. Absolutely good one. And just bending down a little bit to his friend to take the catch. The wicket number first which is back into pavilion. And you are watching here in the screen. Some presentation ceremony is going on in our main stage. The welcoming our chief guest for this wonderful cricket tournament, Panthers Super League 2023, which is proudly organized by Deadly Panthers in this most beautiful UCG cricket ground. And you're watching the final day of this cricket tournament. So next match, the 5th match of the round 2. Sixth match of now round 2. GSB Yodas versus RK Strikers. The winner of this match is straight away qualify for the eliminator round. And the winner of next match also they qualify for the eliminator round. First ball. Balls and the balls with the delivery which is called as a wide by umpire. Pranav Bhatt started with the warm-up delivery of the evening. It's 8 for the loss of 1 wicket. The new batsman just came into middle is Prathamesh Kamath. And Prathamesh Kamath, a useful cricketer. And we will go to face next delivery from the bowler Pranav Bhatt. Going for the pull, but not really getting that one from middle of the bat. But there is no protection in the mid-on, so that quite easily getting the single in between that huge gap. And with that single, Skopan moves on to 9 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. So very quiet cricket is going on here, quite understandable. The bowlers of Kodial Super Kings so far they wanted to restrict their opposition for less than 35. Lofted. I don't think he will going to get the distance, but the fielder is there underneath it. The fielder from the deep long on is taken the catch in a straight version. It's a Gaurav, I think so. The fieldsman that the deep long on is completed that catch. Not enough power behind the stroke. Just I want to see it in the replay. The kind of dismissal and short pitch, of course, on the slot. Lofted, but not really get going. The direction of the wind is not helping. And look at that Gaurav. Got a very good position to take the catch. Just a couple of yards inside the boundary line. He completed the catch and Mangalapura lost their wicket number 2 at the score of 9. So youngsters of Mangalapura just looks like they're losing the momentum what they got in the yesterday's matches. They performed really very well in the yesterday's match. But in this today's match, looks like something is lacking. Maybe the lack of confidence. And the youngsters definitely very inspiration in this particular tournament of Mangalapura. But still they got opportunity, isn't it? The winning here definitely takes them into eliminator round. Even for Kodial Super Kings. So Pranav Bhatt is a successful bowler. Bowling from the far end to new batsman, left-hand batter, going for the pull shot. There's chance of run out in the non-strikers and directed. Suddenly is going to be a curtain of the innings of the new batter. Hari Prasad Pai almost struggling to reach his home in the non-strikers end. Wicketkeeper behind the stump tried to make the run out, tried to hit the stumps, misses the stumps, and batsman cross off for a single. 10 for the loss of 2 wicket. Padmanabh behind the stump.
Even though he's got a heavy body, but very athletic, isn't it? The way that he's charging to the ball to try to make the run out is unbelievable. Stand for the loss of 2 wicket. One fielder's calling inside the ring because it's a left and right combination. Hariprasad Pai facing next delivery. Swings it very hard, and he will going to get the distance as well. Ball is landing into the spectators. The one of the spectator, I think, is maybe is afraid of ball is hitting him. I think he will going to catch the ball, but he is just afraid of the ball. Will the ball is going to hit his head? Just I want to see it in the replay. The cameraman of V424x7 channel will going to catch that momentum, and just missing the opportunity. If he any cash prize announcement for catching the ball, and at least the 500 rupees, definitely that spectators will going to try for the catch. But there is no announcement for the cash for the catching the ball for the spectators. Absolutely good comeback. A lovely delivery indeed. The batsman shuffled across the line of the delivery and tried to swing that one. The much required blow came from that over for Mangalapura from the bat of the batter Prathamesh, and the 16 for the loss of 2 wicket. Excellent blow, isn't it? Nothing wrong with the stroke, but Prathamesh just shuffled across the line of the delivery, swings that one with the direction of the wind, and he got the distance what he's looking for. (16) is a very good score now for Mangalapura. 8 runs per over, 100 progressing. I request the fielding team to make it past. You need to see that how many times they need to complete the over number 4 before we are going to start over number 5. You need to take just 20 minutes, not more than that. Please note, the fielding team, don't waste time. The bowler brought in attack. 11 minutes they taken for just 2 overs. Please note, 11 minutes, that means you are taken 5.5 minutes for every over. You need to complete your 2 overs within 8 minutes. First ball, our ball is kept low. Surendra, I already mentioned about, is not 100% fit. Not so easy to come and ball. He's shortening his length. That shows he's a little bit struggling, but line is so good, isn't it? As he bowls second ball. Right above the wicket, fulls that one nicely down to wide, long on region, running hard. Prathamesh wants the second, but quickly realizing, oh, that's the opportunity of second run, isn't it? The throw, which is a little bit higher for the bowler to gather, but both the batsmen are settled for the single, so that scoreboard is moves on to 17 for the loss of 2 wickets. Now Prathamesh is back on strike. Reverse stroke, top edge, but ball definitely going to be landed safely. And before Sunil charging in from the short third man region, ample time for Prathamesh to come back for the second. The Prathamesh is playing a very good role here. The scoreboard is now moves on to 19 for the loss of 2 wickets. He's a very gutsy batsman, very brave and gutsy. No hesitation at all whenever he's trying for any kind of cricketing stroke. He definitely wanted to play with a full hearted. And here is again a bowler. Ball swings it hard. It's going to be a second sixer. Yes, I think so. Ball is just landed over the boundary line. I think so. But with umpire signal. Yes, signal here comes. This is 6 number 2. That came from the bat of Prathamesh. Just like I am mentioning about, he is a brave-hearted person. He is not really hesitative. Whatever stroke he is right to play, he will play effortlessly and fearlessly. The score jumps into 25 for the loss of 2 wickets. Again, sinks that one by the reverse stroke. This time he got a protection there, but here is they running hard for the second run, and they made it quite comfortable. Couple of runs.
Magnificent piece of batting performance here from Prathamesh. It's 27 for the loss of 2 wicket. Just taking the advantage of the bowler's weak point very well. This time bowler bowled nicely. Again he tried to repeat that reverse stroke but missed it completely. Good over for Mangalapura. They got 1 runs what they really wanted. 3 overs completed. It's a 27 for the loss of 2 wicket. Now Mangalapura has got 9 runs per over. They're getting acceleration each and every over. 2 overs remaining. "14 minutes which is taken for 3 overs. That means a little bit 2 minutes behind, but I think they need to complete within 20 minutes. That means they got 6 minutes to bowl the 1 over here before they're going to start. Rakesh brought into attack from the professional career end. Left-hand batsman is on strike. And this time again, not really getting that one from the middle of the bat. Low full toss. Bowler tried to york the batter. But the batsman is so watchful, Hari Prasad, in the dedication. You know exactly. He want to pick the single and give the strike as much as possible to Prathamesh. He is batting on a well-made 17 runs in just 7 balls with the help of 1 6 and 2 boundaries. Entertainment innings, isn't it? Quality innings played there by Prathamesh for his team. 28 for the loss of 2 wickets. But job is not yet over. You need to deal with another 11 balls, which is definitely going to be more important for Mangalapura to get some good run. This time again swings that one nicely down to deep backward square leg region. They're looking for the second, but this time the fielder is very quick and the throw is so good. Just over the bails. Excellent return there coming from the fielder in the deep. And the batsman how to settle for the single. 29 for the loss of 2 wickets. Last 10 deliveries remaining. Hari Prasad just checking the direction of the wind. You know exactly ball is the wind is moving towards the left of our commentary box. They again swings that one nicely down to rightly in the gap before the fielder from deep backward square leg region to cut it off. The batsman crossed off for a couple of runs. Excellent placement there from Hari Prasad. Almost drags the ball from outside the line of off time to pick the gap towards the deep backward square leg and scoreboard moves on to 31 for the loss of 2 wickets. There's a good recovery there from Mangalapura. The partnership is really progressing nicely between these 2 batters, Prathamesh and Hari Prasad. Rakesh bowls nicely played, beautiful stroke, isn't it? Even though he's checking the stroke is the last moment, but checked in the sense he's timed that one quite beautiful, isn't it? And he picked up a single down to deep long on and scored numbers on to 32 for the loss of 2 wickets. And checking the stroke meant the one first intention of the batsman to swing that one, quickly realizing that ball is in the block hole. Then he's putting the bat into the line of the delivery to avoid that delivery to hit the stumps. Again, this time Prathamesh misses it completely. The clever thinking there by Rakesh, seeing that Prathamesh shuffled across the line of the delivery to swing that one on the mid-wicket region. So he bowled further away from the bat of the batter. And there's a much required dotted delivery there from Rakesh. There's a really good battle required one good over here for Kodial Super Kings. This time went for the reverse stroke, missed it completely. Good thinking there by bowler. Absolutely good thinking indeed. Better over there for Kodial Super Kings. Compared to the last 2 overs, this is a one good over there from the bowler. So 32 for the loss of 2 wickets. Last over remaining in their innings of Mangalapura. And I think they're in right time. Kodial Super Kings, they finished their 4 overs within stipulated time, and now they are going towards the last over of the innings of their opposition. Wait and see how many runs they will go into score here. Prathamesh off the strike. Hari Prasad is on strike. Ramesh is on attack to bowl that last over of the innings of Mangalapura. Mangalapura certainly wanted to get more than 10 runs in the last over. Just look at the spectators enjoying the game of cricket here. The good crowd. Probably it's Sunday and
They are really enjoying this game of cricket. This is Amari Prashad, lofted at one. Will it go into a chance here for the fielder? I don't think will go into any chance at all. Ball just defeating the fielder, two fielders, and landed between the two fielders. One bounce over the row for 4 runs. Magnificent stroke, isn't it? Just I want to see it in the replay. Inside out cricketing stroke, using his feet. He know exactly where the fielder is. There is a long off, there is an extra cover, but he's sending that one between the two fielders. One bounce over the row for 4 runs. The much required boundary came here for Mangalapura. Score jumped into 36 for the loss of 2 wickets. Now Mahesh calling that fielder from deep extra cover, little bit straighter version after that stroke came from the bat of Hari Prasad. Match is stopped because the spectators just enter into the ground. Maybe that spectator excited with the stroke of Hari Prasad. Hari Prasad now get ready to face the next ball of Mahesh. Ball capped low. It's absolutely disappointment for the batter, isn't it? Because he's just waiting for that bounce of the delivery. Whenever the ball is capped low, it's very difficult for the batsman, isn't it? But Mahesh has got a lucky escape from that ball. Mahesh, third time in this over. Absolutely good one. Slower one in the relegation. Chance of run out. Direct hit. And now umpire says he's out. Look at the position what umpire really got. Shiniket. This is what you call the quality, the experience of umpiring. No need to call for the third umpire, because when you're having such a good position to judge the run out, then I think it's very easy for the field umpire to raise his finger. Just look at it on a replay. The position. This is really absolutely perfect one. But a fantastic piece of fielding there by wicketkeeper behind the stump to hit the stumps, to get the Bender man Hari Prasad back into pavilion. The partnership is comes to an end. Very good partnership between Hari Prasad and Prathamesh, which is comes to an end. It's a 36 for the loss of 3 wickets. It's a good comeback here by Mahesh after that boundary. Then he's mixing the delivery very well. Changing the line cleverly. Now Prathamesh is back on strike. Last 3 deliveries to spare in the innings of Mangalapura. Prathamesh so far has scored 18 runs in just 10 balls. Mahesh swings and missed. Wicketkeeper also missed out. This time Prathamesh going for the run. And Mahesh searching for the stumps, but still he is not able to reach the stumps here. And one more run is taken in the form of leg by. Look at that Prathamesh, how far he's been across the line to swing that one. Luckily the wicketkeeper just misses the bat of Prathamesh. And 37 for the loss of 3 wickets as Rajesh once again continues. Swings and missed. Good comeback by the bowler Rajesh. After that boundary, look at the way he's come back. It's a 37 for the loss of 3 wickets. Aditya Bhatt. Final delivery of the innings of Mangalapura. Aditya Bhatt missed it completely. It's not a good sign. This is not a good batting there from Aditya Bhatt. But here is a suicider. He missed that golden opportunity of getting some runs in the final over, isn't it? It's not a good sign because they got all opportunity to get that score around 40 plus runs. But after getting the boundary, the good comeback by the bowler Rajesh. So 38 going to be a target for Mangalapura. Relief collection for KSK. 37 which is scored by Mangalapura. 38 is going to be a target for the team KSK. Kudial Super Kings is going to be a very interesting session. Both the teams has definitely they wanted to be in the eliminator round, and for that I think they needed some 100% effort in the field, and wait and see how well this team will go into battle for the victory. Take a short break. After a short break, Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. The target, and as far the required run rate is concerned, exactly 7.60 runs per hour they have to score for victory with the help of 10 wickets to qualify for the eliminator round of this match, of this tournament in fact, and their innings now going to begin for KSK. In fact, Team Mangalapura managed to score 37 runs in their stipulated 5 overs, and they set a victory target of 38 for Kodial Super Kings, and their innings now going to begin. The first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर तैयार पद्मनाभा सामना करते हुए ओवर की पहली गेंद, ये गेंद कट किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद जगह नहीं बना पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। विनायका इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके। 3:45 इस वक्त बच चुके। इट्स ऑलरेडी 3:45 और जहां तक इससे पहले मैंने और सतीश ने कई बार फरमाया है 24 मिनट 5 ओवर के लिए दिए जाते हैं हर टीम के लिए। दे हैव टू कंप्लीट देयर 5 overs quota अंडर 24 minutes as far as the time is concerned given to the bowlers to complete their 5 overs quota. This time slashing square cut and it gets an boundary for that. बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर और कोई फील्डर वहां पर नहीं। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए पद्मनाभ। और जहां तक पद्मनाभ का सवाल है इस श्रृंखला में 52 रन 22 गेंदों पर 52 रन उन्होंने बनाए थे 2 मैच पहले, और इस वक्त उसी सफलता के सिलसिले को यहाँ पर आगे बढ़ाने की सूचना दे चुके हैं चौके के साथ। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर उछालना चाहा, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। तो जहां तक सवाल है इस मैच का, तो इस मैच की विजेता टीम एलिमिनेटर दौर पर प्रवेश प्राप्त करेगी इस श्रृंखला के, और इस मैच में हारने वाली टीम इस श्रृंखला से बाहर हो जाएगी। तो इस श्रृंखला के एलिमिनेटर दौर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, स्वयं अपने आप से नाखुश बल्लेबाज पद्मनाभ। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली। ठीक तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस वक्त विकेट कीपर के अंगूठे पर शायद कुछ हद तक वो दर्द महसूस करते हुए थंब जिसे कहते हैं, तो इस वक्त खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है और कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए अपने पैरों में। 5 रनों पर स्कोर बोर्ड यहाँ पर रुक चुका है। गेंदबाज जो कि अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त जाते हुए विनायका अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
दाहिने हाथ के बल्लेबाज पद्मनाभ सामना करते हुए ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन वहां पर बल्लेबाज के पास समय था कि सिर्फ एक रन वो प्राप्त करे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अभी भी कुछ हद तक दर्द अपने पैर में, पैरों के उंगलियों में इस वक्त, पैर की उंगलियों में वो महसूस करते हुए और अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त जाते हुए। स्ट्राइक इस वक्त प्रणव के पास, जो कि पहली बार इस वक्त विनायक पई के गेंद का सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई और ओवर की पहली गेंद लेकर, अगला ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त विनायक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। 2 गेंदें बाकी इस ओवर में। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड, collected by wicketkeeper behind the stumps and there is no possibility of any run। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है विनायक का, जिसमें सिर्फ 6 रन वो अब तक प्रदान कर चुके हैं। 38 रनों का लक्ष्य निर्धारित 5 ओवर में टीम मंगलापुरम ने तय किया है KSK के लिए और उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर 6 रन जोड़ चुका है अब तक KSK और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज विनायक गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। इस बार गेंद को साइड पर उछाला, मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर या अंदर, अंपायर के इशारे के इंतजार है। गेंद सीमा रेखा के अंदर टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था, पावर प्ले का फायदा भरपूर उठाते हुए यहां पर बल्लेबाज प्रणव और यहां पर चौका वो प्राप्त कर चुका है। इस चौके के साथ एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है KSK, 10 रन जोड़ चुका है पहले ओवर के समाप्ति के बाद। 10 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर। सो लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन। 28 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries and the run rate is now coming down little bit of a easier now for them. It's 28 required in 24 deliveries, exactly 7 runs the required run rate for them at this situation। और प्रोफेशनल हैंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए आदित्य भट्ट और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मोटे कद के खिलाड़ी पद्मनाभ। और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है KSK का, तो इस वक्त पद्मनाभ की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इस श्रृंखला में पद्मनाभ ने बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है। हालांकि पिछले मैच में वो दुर्भाग्यवशात रनआउट हो गए थे, लेकिन एक बार वो अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर जहां तक सवाल है टीम मंगलापुरम का, तो इस वक्त पद्मनाभ का विकेट उखाड़ना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है। पहली गेंद फुल टॉस, पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका, 27 रन चाहिए 23 गेंदों पर, 27 टू गेट फ्रॉम 23 डिलीवरीज। अगली गेंद के लिए तैयार, फुल टॉस, पुल दैट वन, दिस कुड बी कॉट, जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी। नो, इन फैक्ट इट्स गॉन ऑल द वे, नो बॉल आल्सो कॉल्ड बाय अंपायर। और इस बार गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए, तो 7 रन कुल मिलाकर उनके खाते में जुड़ेंगे। देखिए किस तरीके से गेंद इस वक्त लैंड होते हुए ठीक सीमा रेखा के सीढ़ियों के ऊपर और 6 रन इस वक्त घोषित। तो 6 रन, 6 + 1, 7 runs added to the total and the scoreboard is now moving up to 18 now। और 7 रन यहां पर जुड़ चुके हैं उनके खाते में। और इस बीच फ्री हिट गेंद इस वक्त प्रणव भट्ट सामना करने के लिए तैयार, छक्का लगाने के बाद काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए। अगली गेंद फ्री हिट गेंद, फुल टॉस, ऑफ स्टंप से बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन पर रन्स इस बीच नहीं मिलेगा। कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रही थी और आखिरकार इस बीच अंपायर कुछ पूछताछ वहां पर करते हुए डॉट गेंद यहां पर गिर चुका है। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। अगली गेंद, यह गेंद उछालना चाहा, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। कॉट बिहाइंड द विकेट, इज गॉट अ बिग निक ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट एंड विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स मेड नो मिस्टेक। तो
यहाँ पर प्रणव आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे और उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है और कुछ हद तक राहत भरी सांस लेते हुए टीम मंगलापुरम के गेंदबाज 18 रन एक विकेट के नुकसान पर 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस 20 required in remaining 21 deliveries now for Kodia Super Kings to qualify for the playoff of this round. Playoff round of this tournament, in fact. नए बल्लेबाज न्यू बैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. राकेश नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज आदित्य भट्ट की ओवर की अगली गेंद का. यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी. एक्स्ट्रा विकेट बैकफुट पर गए. गेंद को कट करना चाहा चुके गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 1.4 overs gone. 18 for the loss of 1 wicket. 20 required now from 20 deliveries. यह गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला. मिड विकेट पर सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 19 रन बन चुके हैं. 19 रन और बनाने हैं और गेंदें बाकी हैं 19. तो 19 गेंदों पर 19 रनों की दरकार. इस बीच पद्मनाभ स्ट्राइक लेते हुए ऑन साइड पर स्विंग किया है. मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का यहां पर लग चुका है पद्मनाभ के बल्ले से और इस छक्के के साथ द थिंग्स गेटिंग मच इजियर नाउ फॉर KSK. 25 for the loss of 1 wicket. Just 13 required in remaining 18 balls and the equation seems to be much easier now. तो बेहतरीन स्ट्रोक पद्मनाभ के बल्ले से थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला. He just got that one, connected that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style lower deep mid wicket fence for a huge one. तो अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम मंगलापुरम को एक चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है क्योंकि तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ KSK का. तो नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए UTC एंड की ओर से यानी कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से लक्ष्मीश और वो इस वक्त नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो पर द विकेट गेंदबाजी करते हैं. पहली गेंद बैकफुट पर गई. गेंद को कट किया. नॉट सेकंड बल्लेबाज पद्मनाभ आगे निकला. रनआउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. पद्मनाभ खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं इसलिए वो दौड़ पड़े लेकिन स्ट्राइक रेंज पर जो बल्लेबाज जिन्होंने स्ट्रोक खेला था गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में. वो दौड़े कुछ देर से और आखिरकार अपना विकेट बचाने में असफल और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है. 25 for 2. लेकिन खुशी की बात यह है कि पद्मनाभ इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और देखना यह कि पद्मनाभ अब आने वाली गेंदों में किस तरीके की बल्लेबाजी वहां पर अपनाते हैं. दामोदर का आगमन यहां पर होता हुआ. ही इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल एज अ नंबर 4 बैट्समैन और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद. पद्मनाभ सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. 17 गेंदें बाकी है. 13 रन विजय के लिए चाहिए. 13 टू गेट फ्रॉम 17 बॉल्स. पद्मनाभ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और लक्ष्मीश अपनी ओर की अगली गेंद. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद पद्मनाभ के लिए कट किया खूबसूरती के साथ. कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन. एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं. 26 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर. 12 रन चाहिए. गेंदें बाकी हैं 16 और पहली बार दामोदर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार लक्ष्मीश की गेंदों का और लक्ष्मीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार गेंद हवे में लेकिन सेफ इनटू द विकेट एरिया. और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स मिलेंगे एक इससे पहले के लॉन्ग ऑफ पर जब गेंद को फील्ड करने के बाद फील्डर लौटाए गेंदबाज के हाथ में. 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. जस्ट 11 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 15 डिलीवरीज. पद्मनाभ बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया मिड विकेट पर लेकिन फील्डर गेंद को कैच को छोड़ चुके हैं यहां पर. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट मेड बाय द फील्डर. एक्चुअली मैं रिप्ले में देखना चाहूंगा असल में वहां पर किस तरीके से इस कैच को छोड़ा गया था लेकिन बेहतरीन प्रयत्न. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट मेड बाय द फील्डर एट डीप मिड विकेट.
ये देखिए किस तरीके से गेंद को स्विंग किया था इस वक्त पद्मनाभ ने और गेंद हवा में उछली और अंतिम क्षण में अपने अंतिम प्रयत्न में गेंद पर अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपकना चाहा लेकिन लपक नहीं पाया और बल्लेबाज यहां पर जीवदान प्राप्त करते हैं। इस बार इस गेंद पर रन बना और लेग बाय के रूप में 1 रन। 29 for the loss of 2 wicket and still a ball left in this over. 9 to get now from 13 deliveries. Padmanabh once again back on strike. पिछले गेंद पर वो जीवदान प्राप्त कर सके, मुश्किल सा कैच वहां पर छोड़ चुके थे फील्डर और इस बीच ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी। इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed. Still KSK are now looking in a good situation. 29 for the loss of 2 wickets. Just 9 to score now for victory in remaining 2 overs. That means in 12 balls with the required run rate of exactly 4.5 runs per over. Next match will be the last match of second round. Will be played between GSB Yodhas versus RK Strikers. And because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು GSP ಯೋಧಾಸ್ ಹಾಗೂ RK ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So back to this game, 9 required, 12 balls left. First ball, a fresh over is now coming up. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला हवे में, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. वहां पर जब तक गेंद को दूसरा रन पूर्ण करे, दूसरा रन के लिए बल्लेबाज दौड़े, थ्रो वहां पर पहुंचा था धीमे तरीके से और इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर. सिर्फ 7 रन चाहिए विजय के लिए. 11 गेंदें बाकी अपने मंजिल की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ KSK. अगली गेंद, यह गेंद ऑफ द टोज, गेंद को मोड़ना चाहा, फॉरवर्ड शॉट लेग पर 1 रन मिलेगा. पद्मनाभ काफी तेज रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं. 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और सिर्फ 5 रन चाहिए अब, 6 रन चाहिए अब विजय के लिए, जबकि 10 गेंदें बाकी उनके पाले में. और पद्मनाभ इस वक्त क्रीज पर वापस आ चुके हैं. देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी वो अगले गेंदों में अपनाते हैं. तो अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए और यहां पर दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करने के बाद क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज षणमुख बालिगा इस ओवर में गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पद्मनाभ के लिए. इस बार just gone for a mighty heave at the last moment, missing the line completely. The ball gets some extra bounce and went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. Still 6 required, 9 balls remaining. पद्मनाभ सामना करने के लिए तैयार षणमुख बालिगा की ओवर की अगली गेंदों का. यह गेंद लेग स्टंप से बाहर and a wide. Rightly so, declared by umpire. Single run added to the total. It's 33 for the loss of 2 wicket. Just 5 runs to get for victory. 9 balls left in overall calculation in their innings. विकेट कीपर कुछ गेंदबाज से कहने के बाद वापस अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और यहाँ पर पद्मनाभ सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज की यह गेंद bowled out his legs. Perfect yorker from the bowler. And he's got the rid of पद्मनाभ. तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है और 33 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है. अब 8 गेंदें बाकी है, रन्स बनाने हैं 5. 5 to get from 8 deliveries. Still KSK are now looking right on top. लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त टीम मंगलापुरम के गेंदबाजों को. डॉट गेंदें लगातार अगर उनके गेंदबाज फेंकते हैं, विकेटें उखाड़ते हैं तो निस्संदेह इस मैच में वापस आ सकते हैं. क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ ऐसा कहना जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए मुश्किल है और यहां पर बाउंस बैक करने का मौका जरूर है. लेकिन इस मैच में बाउंस बैक करने के गेंदबाजों को यहां पर कड़ी मेहनत मुशक्कत करनी होगी गेंदबाजी में. नए बल्लेबाज का आगमन
यहां पर हो चुका है सुरेंद्र पटकी विगेन straight forward just wanted to push that one but the ball went in the air and straightforward catch went into the hands of short cover fielder. Consecutive wicket for the bowler and now 7 balls remaining and 5 runs to score. हैट्रिक का गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार और देखना यह है कि वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं अगली गेंद पर. So 7 balls left and 5 runs required. 19 minutes gone in their innings. This is the 4th over in progress in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद. हैट्रिक बॉल कम्स फ्रॉम द बॉलर षणमुख का. यह गेंद ब्लॉक होल पर गेंद टिप्पा खाई. इस वक्त रक्षात्मक तरीके का खेल, बेहतरीन ओवर की समाप्ति और अब 5 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 6. 5 required of last over. So Lakshmi starts the last over of the match and 5 requires for KSK to qualify for the playoff round. And as far as the victory of team Mangalapur is concerned, at this situation they desperately have to stop batsmen to making 4 runs in the last over. So Lakshmi is brought into the attack और अपनी पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया स्ट्राइट ओवर द बॉलर सेट. गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े. स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, नजदीकी मामला, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज यहां पर दूसरा रन पूर्ण कर चुके थे. अगर नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो करते कुछ हद तक बात जरूर बन सकती थी, लेकिन स्ट्राइक रन पर थ्रो किया था और वहां पर बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं. 35-35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. 3 to get now for victory. 5 balls left, 3 runs to get. इंटेलिजेंटली गेंद को चिप किया था इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से बल्लेबाज ने और इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा, चूके डॉट गेंद. एंड नाउ 3 required and 4 balls remaining. What a fantastic match is now progressing here. मैच में कशिश अभी भी बरकरार. और गेंदबाज लक्ष्मीश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद लक्ष्मीश की. इस बार गेंद को उछालना चाहा, ठीक तरह से कनेक्शन नहीं. 1 रन मिलेगा. विकेट पर तेजी के साथ गेंद पर झपके, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए. 2 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी. 2 to get from 3 deliveries. Dot balls are badly required for Team Mangalapuram to get back into this match. दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और इस बीच फील्डिंग में जमावट चलती हुई लक्ष्मी इस द्वारा लगभग 4 फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बल्लेबाज को घिरे हुए, बल्लेबाज के अति निकट इस वक्त ठहरे हुए, सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में. Two required of 3 deliveries. Here we go. गेंदबाज इस वक्त तैयार. लक्ष्मी ईशा. यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा, वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े. रन आउट इस वक्त वहां पर नहीं हुआ है. हालांकि दोनों फील्डर टकरा गए और बल्लेबाज फील्डर को टकराने के बाद उनका बल्ला बैट शायद फील्डर के घुटनों पर लग चुका है और फील्डर वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन 2 रन यहां पर जरूर मिलेंगे.
And now it's going to be a third umpire. तीसरे अंपायर के लिए मांग किया गया है. एक रन जुड़ेंगे जरूर वाइड के रूप में और देखना है कि वहां पर रन आउट हो चुका है या नहीं नॉन स्ट्राइकर एंड पर. तो तृतीय अंपायर वहां पर क्या हुआ था नॉन स्ट्राइक रेट पर इसका परिशीलन यहां पर करते हुए टीवी मॉनिटर पर और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है. Not out the call and the match is now finished. So KSK through to the playoff round of this competition, defeating Team Mangalapuram. And now the last league match of second round will be played between GSP Yoddhas versus RK Strikers, and winners of this last league match will meet Kodial Super Kings in the eliminator match. And let's see who will be qualify for the who will be qualify for the playoff in the fourth place for this tournament. Will be qualified for the playoff with the fourth place in this tournament to in the eliminator round to face Kodial Super Kings. Man of the match is so Pranav Bhatt adjudged man of the match, scored 10 runs of 5 balls, including 1 boundary and 1 six, and he bowled 1 over, conceded 8 runs and captured 2 wickets. And because of this all-rounding performance, Pranav Bhatt adjudged the man of the match. I request Mr. Pranav Bhatt to please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. So the last league match of second round is now going to begin between GSB Yoddhas versus RK Strikers, and winners of this match will meet Kodial Super Kings in the eliminator round. And we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will begin within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, the Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. The team Mangalapura, they really fought hard for the victory, but not quite enough for them to win the match against
Kodial Super Kings, and Kodial Super Kings qualify for the eliminator round. Congratulations. Altogether, 3 teams already qualified for the playoff round. Now this is the last one, and wait to see out of these 2 teams which team will go into qualify for the playoff. Especially winning this team is going to qualify for the eliminator round. Shivananda Shanai and Venkatesh, the opening batters for team GSP Yoda, and Karthik will going to start the proceedings on behalf of Arcus Strikers from the professional career end. Karthik is aiming in from the far end. Left arm round the wicket, he bows. This time mix up, chance of run out, and Arcus Strikers just missed that golden opportunity to get a dream start here. The fielder is there in the short mid wicket region. Saurabh Bhakta, the fields the ball, returns the ball, and just look at that one in replay. And fielder is tried to hit the stumps and miss the stumps, and batsman survived. 4:15, which is a time which is noted of the start of this innings. Again, lovely delivery, beautifully bowled right on the block. Called Yorker line delivery there from Karthik. It's not so easy to keeping the batsman like Shivanand Shanai in the power play overs. Everybody knows that the caliber of what Shivanand Shanai has got. He's a very good striker of the ball, and even he's playing some dotted delivery, but he's not really bothered about that dotted delivery. He's know exactly 1 or 2 deliveries if able to get, he will going to clear the boundary line. But Karthik so far done a great job in this 2 deliveries, bowled a very tidy line and length. Karthik again from the far end. Left arm down the wicket, loose delivery, and Shivanand Shanai is just saying thank you very much, my friend, for that loose delivery which is outside the line of leg stamp. And Shivanand Shanai just going after that one, just trying to york the batsman. Look at that one, but that's always going to be a problem, isn't it? And Karthik is bowled 1 Yorker line delivery, the second delivery, but he wanted to try to repeat that one. So while you're doing that, trying for the Yorker line delivery, it's always it's asking for trouble, isn't it? If you just miss that one, and the batter will go into punish that delivery. The full toss outside the line of leg stamp, juicy full toss, and Shivanand has got his first run from the boundary. 4 without loss of any wicket as Karthik charging in from the far end. Left arm bounce at this time almost climbed down to that, isn't it? Shivanand Shanai, a little bit extra bounce as well. He wanted to pull that one down to square leg region. Quickly, he couldn't manage to get under that pitch of the delivery. So he just went with that pull shot, but the direction of the pull shot was a deep, wideish long on there from Shivanand Shanai. And scoreboard now was on to 5 on the board without loss of any wicket. Venkatesh, left-hand batter, technically sound player, will go into face the bowling of Karthik. So far, he bowled 4 deliveries, but considered only 5 runs. Karthik again is coming from the edge of the 20-yard circle. Pass umpire Rajeshwar at square leg Viraj. One experienced umpire, one young talented umpire is appreciating for this match. Again a full toss delivery, no full toss, chance of run out, back and throw, and Shivanand Shanai is well short of his crease. This is the wicket what Arcus Strikers are searching for in the first over. Shivanand Shanai is not managed to complete that run, but a fantastic piece of fielding by the fielder there in the short back point region. Just an underarm throw. Just I want to see that effort from the fielder. Absolutely good one, isn't it? The very good one. It is good thinking from the fielder's point of view. Abhijit Kini down at backward point region, done a great job. Just a hand arm throw, and the wicketkeeper behind the stump, Varun Sharma, complete the formalities. That's what the wicket is. Arcus Strikers required in the situation like this. The Shivanand Shanai is always going to be a big fish in the net. 5 for the loss of 1 wicket. Karthik bowling to new batter. Kedar is a new batsman in. Karthik again from the far end. Left arm around the wicket. Appeal for leg before wicket. Umpire is not satisfied. Might be the height is the factor here. The height, the bounce of the delivery going to be a factor, because
Kedar is a tall man, and look at that where the ball is hitting, just below this, below the waist, and hitting is just above the tie, and that's why umpire not interested to call that leg before wicket. Rightly so, umpire Rajeshwar is so experienced. But look at the confident appeal there from Karthik. That's why I really loves that one, isn't it? If you are getting the result for your favor or not, it's a different thing. But you need to beg for umpire to give the leg before wicket. That's what the body language is required from the fast bowlers. And the 5 in the first over, good start given by Karthik in his bowling. Even he considered one boundary in that over, but still he managed to pull the things back by bowling some good deliveries. 5 for the loss of 1 wicket. Ashwit is brought into attack on the side of Arcus strikers to bowl the second over. Venkatesh, the left-hand batsman, is on strike. A lot of changes in the field. Arcus strikers have to make a little bit fast, quick. Short third man, short cover point, short extra cover. There's a short fine leg. Deep backward square like deep mid wicket and deep long on and deep long off and deep cover point. The fielders set for the Venkatesh. Ashwat bowling away from us. From this end, the UTC end, coming down the rack, they're going for the single and there is opportunity for run out, isn't it? But the bowler is just turning out to appeal for the leg before wicket, but meantime the batsman completed a single there. He can't try for the run out, isn't it? As the fact that he's a little bit turning out to appeal for the leg before wicket, the batter has got opportunity to cross off for a single. So new batsman Kedar Kudwa. Copy ready jallala sir. Second player and copy korkandi mungata. After this match, the qualifier number 1 will go into play. The two teams are already qualified by winning 2 matches. VV cricketers as well as Saptami Warriors. The two teams winning their 2 matches of their second round, and they came into the qualifier round. Here is Ashwat again now. Left arm over the wicket. Beautifully driven down to deep extra cover region. And there is a protection has been given in the deep in the cover point region. He need to let a little bit run towards his right to field the ball. And meantime, Kedar managed to complete the single. With that single, Kedar is off the mark, and total score of UP, little correction, team GSB Yoda, 7 for the loss of 1 wicket. Ashwat again, seeming away from us. Lovely. Oh, this time appeal forgot behind. I think more than the confidence, just an excitement behind the stump, isn't it? We can see clearly. We can see that it's an extra bounce rather than anything else. This is extra bounce, and the bat is nowhere near the pitch of the delivery. The ball is going away from the bat, and rightly so. Both the umpires are unmoved, and even wicketkeeper knows that. But sometimes it's needed some appeal so that to disturb the concentration of the umpires. But umpires are so experienced. This time swings at one, ball is in there, but the fielder then the wideish long one will go to cut it off. But there. Here is a batsman completed single. Venkatesh is trying to get some big shot, but not really getting that one from middle of the bat because of that extra turn what the bowler is getting here, Ashwat. And very difficult against the turning delivery hitting the ball. It's 8 for the loss of 1 wicket. Arcus strikers, after winning toss, selected to field first. So far, they're looking pretty good. But consistency in bowling that line and runs is so important. There's a mid wicket for Kedar. And the bowler asking that fielder to come a little bit front as Ashwat again seeming away from us. Round the wicket, left arm. Oh, beautifully bowled. Absolutely perfect one. But ball just missing the off stamp. Leg by call by umpire. 1 more addition to total. Radhakrishna is trying for the run out. Is standing at short cow point region. Experienced campaigner for the side of team Arcus Strikers. Both the teams knows that importance of winning this match to get the place in the eliminator round. 9 for the loss of 1 wicket.
Again, nicely balled. Yorker line delivery, but outside the line of off-time. Venkatesh got a bat onto that last moment, so that he managed to complete the single. Good over there from Ashwath. Good over after completion of over number 2, and team GSP Yoda managed to get 10 runs by losing 1 wicket after completion of over number 2. Now last 3 overs remaining in the innings of GSP Yoda, and 18 balls excluding wides and no balls, and wait and see how many runs they will going to score. So very interesting move there from the captain of RK Strikers to call Abhijit Kini to ball, because so far in this tournament I am not watching him in a bowling department, but he's a very good bowler. He's got a very good bowling action. He's an experienced campaigner, and certainly RK Strikers captain wanted to use his experience in this particular do or die matches, and Abhijit Kini will go into ball from the far end. First ball, a beautiful bowling action, and high arm bowling action, and first ball right on the money, right on the spot. The batsman able to rotate the strike in the negation. 11 for the loss of 1 wicket. Excellent bowling action. The rhythm of his bowling is so good, isn't it? Smooth bowling action and high arm bowling action. He's got a very good height. And is bowling from the professional career, and now right-hand batsman Kedar is in front of him. Oh, beautifully ball, fantastic one. What a fantastic in-swing delivery there from Abhijit. This is what I'm talking about. I've watched him several times bowling. So one of the best bowling action I've seen. As he got confusion for the batter is that when you were seeing his run-up, looks like he will go into ball the much quicker delivery. But its confusion is that he's releasing the ball very lately from his hands. Again now. This time, top edge. Opportunity for one of the fielder there, but a ball landed safely. They're coming back for the second. Chance of run out, and again they missed it. My goodness. Looks to me it's chance of cotton ball. Looks to me it's a chance for the bowler himself to run back to take the catch. Because no one there in the mid-off region. The backward point fielder have to run. Just look at it one. And but unfortunately, what could be a certain wicket for Abhijit, they got a couple of runs here. Not quite getting hold of that stroke properly, Kedar. But he got a lucky couple of runs for his team. 13 for the loss of 1 wicket. Abhijit Kini. Full toss on! Lovely stop, Radhakrishna. Attempt is so good, but not quite enough to stop a couple of runs here from the batsman. He just tried to take the catch by spreading his right hand, but not quite enough for him to take the catch. But unfortunately, a couple of runs, the ball has deflected from his hand. And again, the two very lucky couple of runs here for K. The scoreboard is 15 on the board for the loss of 1 wicket. Again, looking for the big shot. This time, chance of run out. No one there. No one there. Oh my goodness. What could be a certain chance of run out there? Skater, I think so, is almost given up. He almost given up. He's not really trying for the run, but I think ball is hitting one of the softest part of the body. And it's definitely going to be a more hurting factor for the batsman. Maybe a little bit funny factor for the fielders of RK Strikers, but definitely is going to be a little hurting factor for the batters. When you're not having abdominal guard, sometimes it's very difficult, isn't it? I just realized why the batsman is not running here. Maybe, but after that I realized that we can see that he's feeling a lot of pain. But now he looks fine. He's dealing with some luck, isn't it? 2 opportunity of catching, then 1 opportunity of run out is missed out by RK Strikers.
Abhijit Kini. This time deflected from the bat. No chance at all for survive from Venkatesh. He's walking. And Abhijit Kini's got a very important breakthrough. What a fantastic bowling performance from him. Just look at that one. He's just following the batsman. You know exactly what batsman will going to do here. Is Venkatesh is shuffled across the line after delivery too much. And Varun Shanbag is not really mixing the opportunity to complete the formalities of taking a catch here. The great over there from Abhijit Kini comes to an end. I want to see the time. 4:29. They started 4:15. That means they taken 14 minutes. They taken 14 minutes for 3 overs. That means they still have got 5 minutes at least to start the over number final. 16 for the loss of 2 wickets. Sandeep Sandy is the bowler. Is brought into attack from the side of Arc Strikers to bowl the 4th over. So far Arc Strikers has managed to tighten up the screws here by bowling some good bowling, good line and length to the batsmen of GSP Yodas. So new batsman coming into the middle is the mighty striker of the ball, Gautam Pai. Is in non-strikers and Sandy will go into continue from the commentary box and 4th over of the innings of Yoda. Sandeep. This time top edge. Opportunity for the bowler to take the cotton ball and Sandeep caught that catch. Kedar is back into pavilion. He's not looking pretty comfortable in the middle. He's try to break the shackle in the negation. The intention is to clear the ground by hitting the ball down to deep long off. But he's not really getting that one from the middle of the bat because of that slower one there from Sandeep. And again that catch has been taken, caught and balled. And look at the celebration. Why not? This is the wicket what they really wanted in this situation. It's a 16 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. So new batsman in is Girish is slowly walking towards the middle. The looks like he's a left-hand batter. The left-hand batter always going to be useful as far as the powerful striking is concerned. They get so more power. As Sandeep starts well with the wicket and now is bowling second time in this over. This time outside the non-black batsman going for the pull shot and wide call by umpire, rightly so. Umpire no hesitation to call that wide. Viraj and the scoreboard now moves on to 17 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. This is just a loose delivery, isn't it? The batter Nagesh couldn't manage to capitalize that one. Girish led for correction. Girish Pandit fails to capitalize that delivery. Sandy balls full toss, drives and powerfully, but protection has been given in the widest long on so that the batter have to settle for the single. So 2 occasions Sandeep is survived from that delivery. Again that full toss as a fact that Girish Pandit just came in, need to get eye in, and that's why not really able to take the advantage of that one. Now Gautam just testing the quality of the ball. Well, it's going to be hard enough to get the distance, and now he is back to strike. Sandeep. Right above the wicket, he's just testing the ball and delivering the stroke here, and he got the distance. Much required big blow coming from the batter Gautam Pai. When he is walking towards the middle, I already mentioned about him. He's a tremendous striker of the ball, and he strikes the ball. Slower one attempted by Sandeep. But Gautam is just waiting for that slow delivery. Lofted that one down to deep long off for a huge 6. Just good camera work there from V4 24:7 channel. Just going with the ball. And Mr. Nagesh as a cameraman. Thank you very much for your good work. And the organizers... definitely is a very happy organizer we can see in a screen.
The match is running very smoothly today. Checking the stroke. Radhakrishna is underneath it. He completes the catch. Good comeback here by Sandeep. Really good comeback, isn't it? Just checking the stroke, Gautam. Because he's in aggressive frame of mind. Quickly realizing that's a very difficult length to hit the ball. Just checks the stroke last moment. Radhakrishna completes a very good catch. Just moving to his right to take the catch. It's not so easy having such a kind of heavy body. It's not so easy. But Radhakrishna has done a great job to complete that catch of Gautam Pai. 24 for the loss of 4 wicket. Team GSP Oda. There's a new batsman in. Nagesh and Girish are the two batters out there in the middle. So Nagesh will go in to be the striker. Sandeep away from us. Right over the wicket and drives that one. Almost drags the ball from outside the line of leg stamp, and not a good piece of fielding there by Saurabh Bhakta. And might be a little bit fumble in the field, so that Saurabh managed to get the ball and returns the ball, completes a couple of runs here. And with that couple of runs, scoreboard numbers as 26 for the loss of 4 wicket. This time is gone, and it was a healthy hedge off the bat. And Shanbag, Varun Shanbag is a busy customer behind the stumps, has picked up one more wicket, one more catch. The one more wicket here for Sandeep. One more good over, even though 1-6 which is considered in that over. Still he managed to pull the things back. There's a 4 overs completed. Of completion of over number 4. It's a 26 for the loss of 5 wickets. The last over remaining. Atul is the new batters walking towards the middle. Girish is back on strike. Girish Pandit. And Karthik who bowled the first over very well. Now he's going to complete that last over of their innings, opposition innings. Last over, Karthik bowling his second and last over of his quota. 26 which is the total score of Yoda. And they wanted more than that. At least 8 to 10 runs they desperately wanted in the final over. But at the same time, Arcus strikers desperately wanted to restrict them under 32-33. Karthik, first ball, right on the block out, beautifully bowled, but wicketkeeper fails to collect the ball. It's a bye call by umpire, frustration for the bowler, and lucky run came here for Yoda. With that single, scoreboard numbers on to 27 for the loss of 5 wickets. The 5 balls remaining. Atul is back on strike. Just like Gautam Pai, Atul also well-built personality with the jersey number 10. Will going to face Karthik. Has got a very good time in this particular match with the ball from the professional career end. Saving from the far end. Left arm round the wicket. Extra. This time I think the ball is got outside edge of the bat and the ball is in there for a while. Out of the reach of Karthik. He's tried his level best to take this catch. And just a single. So singles, and Karthik will not going to bother about that singles in this final over. Just look at that one. Ball is almost moving away from, going away from the bowler. So very difficult for him to take the catch. And with that single score, numbers on to 28 for the loss of 5 wicket. Last 4 deliveries remaining. Karthik to Girish Pandit. For him is 1 mid wicket and deep long on and deep backward score, like 3 fielders in the onside region. Long off an extra cover, the 2 fielders in the onside region. Again, lovely delivery, beautifully bowled by the bowler. And one more single has been taken in the form of leg by. The 3 singles in that last 3 deliveries of Karthik. And that man says handling the pressure very well. But the 2 batters are really trying hard to get some big shot in this last over.
but they are not really fails to get that big stroke which is required for GSP Yoda. Karthik taking his own time to deliver the ball from the professional career end. Seaming from the far end. Balls down the leg stump and going to be a wide. Shuffled across the line after delivery. That's why the bat bowler Karthik wanted to ball little bit around his legs to hit the stump. But by doing that, I think just misses the line which is going down the leg stump. Scoreboard remains on 30 for the loss of 5 wicket. 3 balls remaining of the innings of Yoda. Atul. Get ready to face the next ball from Karthik. Karthik charging in from the far end. Balls nicely driven right in the gap. The Saurabh Bhakta have to cover up ground a lot, but he's fell down. They will going to take the advantage of that one. The chance of run out and is gone. Even the Saurabh Bhakta is couldn't manage to control his body balance. He's fell down, but he's recovered very quickly to return the ball and returns the ball very quickly to the hands of the bowler. So run out has been taken place, but a couple of runs anyhow for Yoda. And with that couple of runs, scoreboard numbers on to 32 for the loss of 6 wicket. Now 2 balls remaining. The new batsman is Deepak. Girish Pandit is on strike now. Last 2 deliveries remaining of their innings. So far, Karthik bowled a very good line and length. 3 runs, of course, of 5 runs already conceded. Left arm around the wicket and over the wicket, in fact. And again, the lovely delivery. Absolutely perfect stop there from Karthik. Just a single 33. Last ball of their innings now coming up. Deepak Badal and will going to take the strike of this last delivery of their innings. 33 is the total score. Badal, the intention is very clear that you wanted to get at least the boundary or 6 in this last ball. But so far Karthik managed very well to bowl that line and length. So good. The final delivery, he missed it. Varun Shanbag trying for the run out. Now Viraj is calling for the third umpire, but anyhow the umpire says it's all over. Once it's called for the third umpire, then I think no question of going for the extra run. So 34, need to be correction, 33. If it is a run out, it's going to be a 33. If it is a not out, it's going to be a 34, which is the total score. But for that, you have to wait for the third umpire decision. And we'll take a short break here in the commentary box. Let's see whether the batsman is short of his crease or not. Then we're going to tell that exact target for team RK Strikers.
He's gone in the last delivery, and the total score remains on 33 for the loss of 7 wickets after completion of 5 overs. 34 the target. 34 the target. RK Strikers, the target for them is 34. In 5 overs they have to score. Next match, the qualifier number 1 match will be played between VV Warriors versus Saptami Warriors, and because of that I request the both teams captains to please report to the stage immediately for toss. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಮಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद सतीश. 34 रनों का लक्ष्य इस वक्त आरके स्ट्राइकर्स के सामने जीएसबी योद्धास ने रखा है और इस वक्त वक्त है 447 इनफैक्ट द टाइम, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहली गेंद 34 दे हैव टू गेट टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ दिस राउंड ऑफ दिस टूर्नामेंट. इनफैक्ट पहली गेंद चिप किया, मिड विकेट पर क्या छूट चुका है और बल्लेबाज यहां पर जीवदान प्राप्त कर चुकी. कंप्लीटेड वन. इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड रन. हल्के से गेंद को मोड़ दिया था और गेंद हमें में जरूर थी, लेकिन डीप मिड विकेट पर इस कैच को छोड़ दिया गया फील्डर द्वारा और बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर स्कोर रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. आरके स्ट्राइकर्स की ओर से 2 रन बिना किसी नुकसान के 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था. दाहिने ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया. सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए फील्डर को पहले भांप लिया ताकि फील्डर पीछे तैनात है. 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदलते हुए और एलिमिनेटर माफ कीजिए प्ले ऑफ पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस मैच को जीतना दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी बन चुका है. इस मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के प्ले ऑफ में प्रवेश करेगी. एलिमिनेटर मैच में कोडियाल सुपर किंग्स का सामना करेगी और इस वक्त संघर्ष जारी है. चतुर्थ स्थानी के रूप में इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इन दोनों टीमों के बीच 3 रन बिना किसी नुकसान के. और अश्वत्थ पई गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया. गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. जोखिम भरा रन पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाज. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. इट्स 4 for none इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. तो यहाँ पर वरुण शानबाग और अश्वत्थ पई आरंभिक बल्लेबाज, जबकि अतुल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रोफेशनल एंड की ओर से अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा. सिलिमिडॉन पर गेंद पहुंची, निशाना और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. सीधा निशाना दागा था नॉन स्ट्राइकर एंड पर और गेंद सीधे जाकर स्टंप्सों पर टकराई. गिल्ली अब बिल्स ऑफ होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. अश्वत्थ की पारी समाप्त. 4 रनों पर अपना पहला विकेट खो चुका है यहां पर आरके स्ट्राइकर्स. निस्संदेह बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर दिया था. मिड ऑन के फील्डर ने गेंद को फील्ड करने के बाद निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और इसी के साथ पहला विकेट खो चुका है आरके स्ट्राइकर्स का 4 रनों के योग पर. तो जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है आरके स्ट्राइकर्स का, तो इस वक्त उन्हें जरूरत है एक साझेदारी पार्टनरशिप की. और जहां तक सवाल है जीएसबी योद्धा के विजय का, तो इस वक्त राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देना होगा बल्लेबाजों को बांध कर रखने के लिए.
तो अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। विकेट से हटते हुए इनसाइड क्रिकेट खेला था इस वक्त। एक्स्ट्रा कवर फील्डर के बाईं ओर से गेंद को निकाला, वाइड लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की सीढ़ियों पर गेंद जा टकराते हुए और 4 रन यहां पर जुड़ चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को निकाला था, एब्सोल्युटली फाइन। और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन पर इस वक्त काफी लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद सीमा रेखा के अंदर इस वक्त लपक ली गई है। करीबन 3 रन बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। ऑफ द बैकफुट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से और काफी लंबा दौड़ लगाते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के 1 या 2 इंच अंदर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास समय था कि वो 3 रन प्राप्त कर सके। 11 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 11 for the loss of 1 wicket, except they lost their 1 wicket. They made a pretty good start. 11 runs they scored after the completion of 4 overs. So 23 required now in remaining 24 deliveries, and the asking run rate straight away coming down to exactly 5.75 runs per over. This is the last match of the second round of Panthers Super League 2023 is now progressing here. In this beautiful evening, it's already 50 past 4 and the battle is now continuing to qualify for the playoff of this competition. और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए पवन जो कि नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए, वरुण शानबाग जो कि 10 रन बना चुके हैं, सिर्फ 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पवन की ओर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार पटके हुई गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रन नहीं, मिसफील्ड वहां पर, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 for the loss of 1 wicket at the start of the second over. 22 to get now from remaining 23 deliveries. निस्संदेह एक बेहतर गेंदबाजी की सख्त जरूरत इस वक्त जीएसबी योद्धा के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए। ये गेंद ऑफ द टोज, गेंद को मोड़ना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट, लाइन पर गेंद टिप्पा गए और सीधे उनके पैरों पर टकराया, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई यहां पर उन्हें आउट घोषित करने में। दूसरा विकेट गिर चुका है 12 रनों के योग पर। आरके स्ट्राइकर्स कुछ हद तक अब संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। They are looking in trouble just a little bit. 12 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. Saurav Bhakta, the number 3 batsman, is now comes out to the middle and he is now going to face the right-handed bowler Pavan. और इस वक्त पवन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फुलर लेंथ गेंद, गेंद लगभग बल्ले के अति निकट टिप्पा खाती हुई गेंद को स्टंप्स को कवर करने के बाद इस वक्त खेल दिया था सीढ़ी मैदान पर और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर बोर्ड रुक चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड, राइट डिसीजन गिवन बाय द अंपायर। लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और अंपायर के द्वारा सही निर्णय इस वक्त दिया गया। 1 रन मिलेगा। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ जीएसबी योद्धा की ओर से, जिसमें अब तक सिर्फ 2 रन पवन प्रदान कर चुके हैं। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार फुल टॉस, ड्राइव किया हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में पैरों के जरिए और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑन पर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 14 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। हर गेंद पर रन बनाना जरूरी बन चुका आरके स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को और हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका है जीएसबी योद्धास के गेंदबाज और फील्डरों को। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ा, इस वक्त मिड विकेट पर फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन, जस्ट अ सिंगल रन। 15 नाउ and with this over with this delivery the second over has been came to an end. 15 for the loss of 2 wicket, 19 required
and 3 overs to go in their innings. 18 balls and 19 required for them. And a good over came to an end from Pawan, who conceded just 4 runs in this over. And one wicket lost in this over. And this time, as far as the victory of this match is concerned at this situation, still I must say the match is now in balance. So तो इस वक्त तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ. थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. 19 रिक्वायर्ड ऑफ 18 बॉल्स नाउ. दीपक का इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए. शाम का वक्त लगभग 5 इस वक्त बजते हुए. धूप का अस्तित्व मैदान पर इस वक्त मौजूद. सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है. और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी यहां पर कम होती हुई. पहली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया. मौका मिड विकेट फील्डर के लिए चूका. इस वक्त 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. थोड़ा सा मुश्किल सा मौका था. अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचने की कोशिश की, जीतोड़ कोशिश की कहना पड़ेगा, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए. और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है. 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार टॉप एज. इस बार मौका हो सकता है. मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल. ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा था. टॉप एज पर गेंद टकराई, काफी देर तक हवे में रही और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पास जो फील्डर खड़े हुए थे, आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की. तीसरा विकेट गिर चुका है. इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 17 रन बन चुके हैं. 17 रन और बनाने हैं और कुल मिलाकर उनकी पारी का तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर. 16 balls to go and 17 more runs now they have to score for victory. और एक बराबर का संघर्ष यहां पर जारी इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त करने के लिए चतुर्थ स्थानी के रूप में इन दोनों टीमों के बीच. और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ. कार्तिक नायक नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्ट्रेट फॉरवर्ड. ड्रॉप्ड दैट वन. स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन. गेंद सीधे पहुंची थी मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज इस गेंद पर जीवदान प्राप्त कर चुके. 18 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर. 15 गेंदें बाकी और 16 रन चाहिए विजय के लिए. 16 टू गेट फ्रॉम 15 डिलीवर. द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन. और गेंदबाज इस वक्त दीपक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए वरुण शानबाग का सामना करने के लिए तैयार. इस बार दिस इज एन क्लीन हिट. आई थिंक सो. यस इट डस. इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ ह्यूज वन. और इस छक्के के साथ इस वक्त समीकरण को काफी हद तक आसान कर चुके हैं वरुण शानबाग. 24 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर. He just got that one right from the mid of the bat and lofted that one in a style of a deep mid wicket for a huge one. 10 required now. Ugly गेंद. Full toss again. The same treatment. This time much straighter. Consecutive sixes for Varun Shanbag. And the scoreboard is now jumping up to 30 now. Just 4 required from 13 deliveries. और दीपक माफ कीजिए वरुण शानबाग इस वक्त जल्द से जल्द मैच को समाप्त करने की कोशिश में. 24 रन बना चुके हैं सिर्फ 9 गेंदों पर 280 स्ट्राइक रेट की मदद से. और निस्संदेह यहां पर एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए वो इस वक्त खेलते हुए. सिर्फ एक चौके की जरूरत विजय के लिए. दिस टाइम जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, बीटन कंप्लीटली. थर्ड ओवर हैज बीन केम टू एन एंड. और 3 ओवर के बाद आरके स्ट्राइकर्स लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन. 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. जस्ट 4 टू गेट to qualify for the playoff round. Pawan is now brought into the attack. अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार.
और इस वक्त 4 रन चाहिए. अब ऐसा कहना पड़ेगा जीएसबी योद्धास को. कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है. ओवर की पहली गेंद ड्राइव किया, एब्सोल्युटली फ्रंट फुट स्ट्रोक इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद, और गेंद इस वक्त पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला था, 1 रन का इजाफा. इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री. तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई. सिर्फ 3 रन चाहिए विजय के लिए. अगली गेंद पवन, वरुण शानबाग बैक ऑन स्ट्राइक नाउ, लेग स्टंप से बाहर, और इस बीच वाइड का इशारा, और 1 रन विजय के और निकट कर चुका है इस वक्त आरके स्ट्राइकर्स को. 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, जस्ट 2 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री. और पवन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए वरुण शानबाग के लिए, जो कि एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए यहां पर खेलते हुए. फुल टॉस, पुल दैट वन, एंड दिस टाइम इट टेकन इनसाइड डिफेंस. सो एट लास्ट अ फैंटास्टिक इनिंग्स गेम स्टूडेंट फ्रॉम वरुण शानबाग. और चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है 32 रनों के योग पर. स्टिल आरके स्ट्राइकर्स नीडेड 2 रन्स फॉर विक्ट्री. सो फैंटास्टिक इनिंग्स केम फ्रॉम वरुण शानबाग. और यहां पर उनका विकेट गिर जाने के बाद संदीप का आगमन हो चुका है एज अ न्यू बैट्समैन, एज अ नंबर 6 बैट्समैन. ही इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. जस्ट 2 रिक्वायर्ड फॉर आरके स्ट्राइकर्स. और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए पवन, दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस बार गेंद को छोड़ दिया था और भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स पर टकराई, स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार. Good one. Absolutely fantastic delivery. This time he got the hit of the batsman. Much straighter line. Defensive खेल खेलना चाहा था, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, और एक बेहतरीन गेंद के जरिए विकेट प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज. 5वां विकेट गिर चुका है. It's 32 for 5. So 8 balls remaining in overall calculation, and just 2 runs still they have to score for victory. So 2 to get now from 8 deliveries, and Pavan comes. New batsman Radhakrishna is now going to face. This time gone for a big one, misses. Extraordinary well delivery from the bowler. Two runs to get from 7 balls now. Full toss, and this time gone fine. Beating the wicket keeper, and it's crossed over the fence. 4 byes, और इस चौके के साथ, इस बाई के चौके के साथ, आरके स्ट्राइकर through to the playoff of this round, playoff of this tournament. And in the playoff they will meet Korea Super Kings in the eliminator match, and that eliminator match will play right after the qualifier match number 1. So that it's time for the qualifier match number 1, which will be played between VV Warriors versus Saptami Warriors, and that match starts within a short while. I request all the players of the qualifier match number VV Warriors and Saptami Warriors to please start the match immediately, please. And we'll be back right after the short break with Satish in English. Thank you.
art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Mangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Mangalore. Call 0824 425 2288. This big match between
These are very good teams. First ball of the qualifier number 1. And first ball swings and missed. And first ball itself, his intention is clear from the opening batter, Varun, that he wanted to take the advantage of that one. But Ratan is so experienced. In the previous match also, he's got a very good start from the ball. And he's now just continuing that form in this match as well. Ratan, right arm, round the wicket to Varun. Varun again swings and missed. Swings and missed. This is a good bowling there from Ratan. You know exactly what the batsman is doing here. And before he's delivering the ball, is Varun who almost shuffled across the line of the delivery. Then he's just following the batsman and bowled a fantastic outswing delivery, going away from the left-hand batter. Third time in this over. This time ball is in there. Fielder going back. Vignesh is underneath it. This time he's got a good position. This is what you call the learning from the mistake, isn't it? The previous match, same fielder Vignesh is missed the opportunity to take the catch. This time he's not missing that opportunity. This time first he took the position, then he's tried to get the catches. Just look at it on a replay. Going back, kept the eye on the ball and took very good position to take the catch. And Varun's wicket is back into pavilion. The VB cricketers have lost their first wicket. The Pawan the opening batter is back into pavilion, Pawan, and replacing him is Srinivas Pai, is slowly walking towards the middle. Once again, very good start has been given by the bowler Ratan. 2 dotted deliveries. Then Pawan tried to break the shackle, tried to hit the ball against a swinging delivery. Got a top edge and Vignesh completed the catch. 0 for 1. VB cricketers playing their qualifier number 1. And both the teams desperately doesn't want to take the next chance. In the first attempt only they wanted to be in the finals of this prestigious Panthers Super League 2023. Ratan. Right above all them, clean him up. What a delivery there from Ratan. And Srinivas Pai, the one more danger man, is back in the pavilion of VB cricketers. This is absolutely a shackling start without disturbing the scoreboard. The 2 wickets are back in the pavilion of VB cricketers, and this is now standing performance here from Saptami Warriors. The name what they got, Warriors. This is a battle between 2 Warriors, Saptami versus VB. And so far his Ratan has produced a very important breakthrough. Without conceding a single run, he picked up 2 valuable wickets. That means he is on hat-trick. Balakrishna is the new batsman in. You need to deny the hat-trick from Ratan, but Ratan desperately wanted to become the one more bowler to get the hat-trick in this tournament. 2 hat-tricks so far in this tournament, and probably the Ratan, if able to get 1 more wicket here, he will be the 3rd bowler to pick the hat-trick in this tournament. Ratan, hat-trick delivery. Round the wicket. This time, he's gone. This is a hat-trick. Can you believe this? Qualifier number 1, picking up the hat-trick. It's been outstanding performance here from Ratan. 3rd hat-trick of this tournament. Ratan, what a fantastic game he's having here. Ramakrishna is walking towards the pavilion. Fantastic outswing delivery. Look at that one. Just drawing the batsman to go for the drive. And batsman just got outside edge of the bat. The wicketkeeper behind the stump completes the job. The 3 wickets in that 3 deliveries without giving any single run. VB cricketers are in a serious trouble. 0 for 3. Unusual scoreboard. Two Deepaks are in the middle. One is a left-hand Deepak, another one is a right-hand Deepak. The left-hand Deepak is now the new batter just came into middle. And Ratan picked up 3 wickets in a row and now bowling away from us. Right arm balls. This time again nicely bowled. What a fantastic over. Made on 3 wickets. One of the best bowling figure ever seen in this Panthers Super League 2023. Without disturbing the scoreboard, without giving any single run, I picked up 3 valuable wickets. Made on 3 wickets here for Ratan.
and captain of and even the owner of Saptami Warriors definitely going to be happy with the performance of Ratan. The 3 wickets in the first over with the maiden over. It's outstanding performance there from Ratan. The BB cricketers are looking in a deep trouble. Look at that one again in the replay. What a magnificent piece of bowling there from Ratan. Saptami Warriors won the toss, elected to ball past, and they really won the first step, bowling a maiden over and 3 wickets. Now, very interesting to see this. There is a 3 Deepaks. Striker is Deepak, non-striker is Deepak, and even the bowler is also Deepak. And all 3s are Deepak Kamath. One more interesting to watch here in this match. And the first ball outside the line of off stump, and the run which is given in the form of extra. The first run for VB cricketers. For that they have to wait for 1 hour. Then they have to lose 3 wickets for that single run. 1 for the loss of 3 wickets. Deepak again from the far end. Saving in. Balls full toss delivery. Hits that one. But Vignesh there in the deep. Lovely piece of fielding there by the fielder. Lucky escape here for Deepak, isn't it? A juicy full toss outside the line of leg stamp. Swings that one. But a deep backward square leg fielder. So quick Vignesh. Very good athletic work done in the deep. And the batsman managed to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 2. Deepak is off the mark. The Deepak Kamath. All 3 Deepak Kamath. The batsman, non-striker, even the bowler is also a Deepak. So changing his angle, is now coming round the wicket because of left-hand batter is on strike. Deepak to Deepak. Beautiful delivery, but ball is going further away after spin. Rightly so, umpire Viraj. Exactly, ball has got the extra movement after ball pitched outside the line of off stump, and ball going further away with the swing, and that's why umpire called it wide. 3 for the loss of 3 wicket. Deepak once again bowling from the professional career end. That climbing onto that Deepak in the relegation with the extra bounce, and completed a single for that. The fielding of Saptami Warriors is so good in this particular day, number 2. Even yesterday also done a great job, and one more single is taken by the Deepak, and with that single scored numbers on to 4 on the board for the loss of 3 wicket. So Deepak again back to his bowling mark. Here is a bowler again from the far end. Bowls again is not really controlling that turn. Of course, when you are having that much of turn in your delivery, you need to see where to pitch the ball. If you're bowling a leg cutter, if you bowl outside the line of off-stump, ball definitely going further away. If you pitch in a midland leg stump, and that will going to be a better delivery, better line to ball. This time slashing it hard. Ratan is underneath it, but he's just a spectator. He's just a spectator watching the ball, hitting the views, trees out of the park. Just breaking the shackle in this right time by the batter Deepak in the relegation. Effortlessly played, isn't it? Just look at that one. The swing of the bat is so good, and he got it on right from the middle of the bat. It's not so easy to get the distance even in UCG ground towards extra cover. This time again swings that one, but this time mid-wicket fielder is in a right orthodox position, so that no question of more than single in the relegation for Deepak. The VB cricketers desperately required that kind of cricketing stroke, and Deepak just got that one right from the middle of the bat. Fantastic lofted extra cover right there from Deepak. Speed 12 for the loss of 3 wicket now. Deepak from the far end. Balls beautifully bowled. They're going for the quick run, chance of run out, but trying for the run out. Ball misses the stumps, but an opportunity of run out in the non-Tigers end. And the fielders trying for the run out in the Tigers, and they completed a quick single in the relegation. Much required runs came in the second over, even though it's a maiden over. The first over is a maiden, but 13 valuable runs conceded in this over by Deepak. Deepak to Deepak. This is a juicy full toss, and batsmen have to say thank you very much for the delivery. VB cricketers now enjoying the second over.
But it's not a kind of second over which is required for Saptami Warriors after getting 3 wickets without conceding a run. I think it's a really expensive over ball there by Deepak. 19 for the loss of 3 wickets. This is what you call the cricket. Absolutely, it's a beauty of the cricket, isn't it? Once it looks like when the Saptami Warriors got a flying start by picking up 3 wickets, it looks like it's going to be a low-scoring game. But in a second over itself, wicketers they back very strongly with some mighty stroking. Especially the Deepak is going after Deepak. Getting 19 runs in a 1 over. And the scoreboard is now 19 exactly. And they go at 9.5 runs per over. VB cricketers are strongly back into this game. Unbelievable comeback. But I really appreciate the brave and guts edition there by these two Deepaks in the middle, because it's not so easy when you're losing 3 wickets. Always the batsman is in a defensive frame of mind, because if you lose 1 or 2 wickets in a quick times, that might be more difficult for VB cricketers to get the big stroke. But even they lost 3 wickets, the Deepaks, the way that he's batted in the second over, absolutely fantastic. Now Anant brought into attack to bowl the third over to Deepak, left-hand Deepak. Starts with the beauty of delivery there from Anant, one of his signature bowling. The back of left delivery is bowled, a tossed up delivery and getting some extra turn and bounce in the negation. And there is no possibility of any run. Anant again bowls, batsman going for the swing, but this time wicketkeeper fails to collect the ball. At the same time, wide signal by umpires. That means 1 plus 1, 2 wides. With that, a couple of runs scored, but Namuzan to 21 for the loss of 3 wickets. Much required runs coming here for VB cricketers. What a journey what VB cricketers has got. The same team, they played the first match of the day number 1 outside the non-flag stump and going to be a wide. One more extra. It's not a good going here for Saptami Warriors after Ratan produced a dream start by picking up 3 wickets in the maiden over. But all we can see that they had lost the grip of this match. Absolutely fantastic one here from Anant in the negation. Just moving the ball from the good length spot outside the line of off stump. The perfect line to bowl when you're bowling the leg cutter. Deepak completely missed out delivery. Again Anant bowling away from us. Bowls the same one. Identical mirror display of previous delivery. Again Deepak wanted to swing that one against the turning delivery. Against the turn. And there is no chance of any run at all. Score remains on 22 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. Anant Isha trying his level best. Anant to put some break on the run. This time top edge. Wicketkeeper Vignesh will go to complete the formalities of taking that catch. This is a much required breakthrough here from Saptami Warriors, but not for VB cricketers. After seeing Deepak is settled down in the middle, hitting the ball very well. But Anantesh just playing with the mind game of the batter. After bowling 1 or 2 very good dotted deliveries, then he bowled 1 delivery which is inviting the batsman to go for the big shot. And he got outside edge of the bat, and wicket number 4 is back into the pavilion of VB cricketers. This is 22 for the loss of 4 wickets. Coming back to these teams, they play the first league match, the opening match of this prestigious Panthers Super League. In that particular match, VB cricketers able to win the match against Saptami cricketers when it's 6 runs required from the last over. Then magical bowling ball by the bowler Ramakrishna, and takes the match away from the opposition. This time lovely improvisation. What lovely, isn't it? Even it surprised everyone. Can you imagine that? The Vignesh just came into middle, and most of the batsmen took the time to settle down in the middle, try to middle the ball 2 or 2 deliveries. But here is, look at the level of confidence there for Vignesh. Facing his first delivery, but he's know exactly the bowler will go into bowl the leg cutter. So he's just exquisite footwork in the negation to get that reverse stroke to get the boundary. Then a good going here for VB cricketers. 26 for the loss of 4 wickets after completion of 3 overs. 27, let correction. 27 for the loss of 4 wickets in the over number 3 completed. They're going exactly 9 runs per over. So better over compared to that previous over. 19 runs which is came from the second over. 8 runs which is came from the third over.
First over, everybody knows that is a hat trick from Ratan, but I think that will not really affect the score for wicketers. They got 27 after that at the rate of 13.5 runs per over. Now Ratan, the man with the golden hand, back into attack. Once again asking him to bowl one good over for Saptami Warriors. But in front of Vignesh Naik Karkala, Vignesh Shanai of Karkala will go into face. Oh, full set one, handsome looking full shot. What a magnificent start there from Vignesh Shanai. If you go back to the international cricket, Rohit Sharma is one of the master of pulling the ball and playing that kind of pull shot. But here is Vignesh Shanai in a tennis ball cricket. What a fantastic puller of the ball. Absolutely terrific shot. The 6, which just came from the bat of Vignesh. He is on fire. The boundary and a 6. And hitting that ball against the Ratan, who picked up a hat-trick wicket in the first over. That shows the level of confidence of the batter. He not really bothered about who is the bowling in front of him. Ratan from the far end. Right over wicket, try to repeat that one. This time Vignesh Shanai just asking umpire to give the wide, but he just wanted to reach that delivery. He's just following that ball to fill that one. That's why the bowler Ratan bowled at outside the line of off stump. That's why umpire not interested to call that wide. Ratan. Again, this is going to be wide. This is definitely going to be wide. The ball is going over the head. One from the over, what umpire is called. If you repeat one more. If you repeat one more, there's going to be one more extra. That's what I was Vignesh just clarifying from the square leg umpire. Ratan once again back to his body mark. From the professional career end. Right over the wicket again. Swings that one. Not really getting that much of placement right as the ball went towards the mid-wicket region for easy single with that single score. But moves on to 35. Unbelievable recovery from wicketers. No one can imagine, isn't it? This is the beauty of cricket. Especially when playing the small format of games. I already mentioned that the wickets are always not coming into play. Because one big over, the always chance for the batting team to come back strongly. And that's what really happened here in VB cricketers. But absolutely it's an unbelievable comeback. It's 35 already on the board by losing 4 wickets after they got a shackling start. This time, lofted, high up in there. The fielder, misjudgment. Deepak was charging from the deep long on region to take the catch. Ratan is thought that it's not his catch because running back taking a catch is so difficult than when you are coming front and taking the catch. That's why he's left the chance for the Deepak to take the catch. But Deepak is couldn't manage to judge that one very well. And one more single. 36 for the loss of 4 wicket. Ratan once again back to his bowling mark. Vignesh Shanai is back on strike. Tremendous striker of the ball. Full toss. Guys, tell you what, it's a huge one. Ball is always traveling in a long way. That ball is hitting the branches of the trees. What a striker of the ball. What a striker of the ball. The spectators really enjoying his batting in this evening. It's a beautiful winning evening here in UCG ground. And Vignesh is enjoying his batting performance. He's batting on 18 in just 6 balls. 42 for the loss of 4 wicket. Again, this time, no ball. Rightly so. This is the second of the over. This is the second of the over. That's why umpire mentioning this is no ball. There is already one short pitch delivery that's going over the head. The second one which is going over the shoulder level. And rightly so, umpire called this no ball. It's a free hit delivery for Vignesh. 43 for the loss of 4 wicket. Saptami Warriors, the worries which is continuous for the Warriors. Ratan Boss, Vignesh tries, lofted, and he got the distance. One more huge 6.
Oh, look at that. The spectators and supporters of VB cricketers in the dugout. They're really enjoying the batting performance of Vignesh. Score jumps into 49 for the loss of 4 wickets. From 0 for 3. 0 for 3. It's a 49 for 4. Unbelievable recovery. And the Vignesh Shanai Karkal is batting on 24 in just 8 deliveries with a strike rate of 300. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ವಿವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ us. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. we understand your excitement because so 49 for the loss of 4 wicket. कापी जेव का स्टेजा मागची कापी व्यवस्था केलेला सर. धन्यवाद. So a cup of tea is available from our organizers. But here is the last over going to start from the commentary box end. 49 for the loss of 4 wicket. First ball down the leg stump. Vignesh wants a strike. That was a good thinking. But here, absolutely fantastic going here for VV cricketers. A wide call by umpire. 50 comes up. 50 comes up for VV cricketers. Never they're dreaming about this 50, isn't it? They're never dreaming about the 50. They're only dreaming about at least to get 30 plus runs once they lost 3 wickets in the first over without disturbing a scoreboard. Now they got a 51 already on the board. Saptami Warriors just losing the momentum what they got in the first over. They're losing the momentum in the second over when it's a 19 runs considered by Deepak. Then once the Vignesh Shanai came into middle, he's changing the complexion of this game. Beautifully bowled there by the bowler. Once again, Vignesh Shanai almost shuffled across the line of the delivery as the Deepak bowled that one a little bit outside the line of off stump and defeats the bat of Vignesh. It's a 51 for the loss of 4 wicket. Deepak once again back to his bowling mark. What innings is playing here? 24. This time definitely umpire doesn't want to give the wide because seeing that the batsman now almost standing on the 4th stump and that's why he's just trying to reach the ball, and now the very important dotted delivery from Deepak. Vignesh swings and outside edge of the bat, but again Vignesh thought that it might be the no ball, but it's below the waist level. The batsman almost tried to hit the ball on the onside edge and he can hit the ball towards extra cover and long off. But so far it's a good over there from Deepak. Now 3 balls remaining of the last over. Deepak again. Vignesh full toss, lofted. Opportunity for the fielder at deep mid wicket. And it completes the catch. But entertainment innings comes in and off for Vignesh Shanai. The 51 for the loss of 5 wicket. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ Vignesh Shanai after playing a magnificent knock of 24 runs, and it's definitely is going to be entertainment innings and play some enterprising cricketing strokes. So Deepak again, right arm over the wicket he balls, and this time outside the line of off stump again. Batsman tried to reach the pitch of the delivery. One more dotted delivery here from the bowler. So far it's a good over. Just 2 runs in 5 balls. The fantastic. Just look at that one. The first over is a maiden. Now it's the last over is a good one for Saptami Warriors. Drives that one. Not quite getting hold of that properly. They're running hard. Definitely coming back for the second. In comes the throw. Chance of run out. But now umpire will go in to ask for the third umpire to get the result. But
the fielders and batters will going to leave the field because it's the last delivery of the innings of VB cricketers. If they complete the two, it will go becomes 53. If it is a run out, it's going to be a 52. But we need to wait for the umpire decision whether it's out or not out. And after that, we're going to tell you the exact target for the Saptami Warriors. But outstanding last over. Is a very good last over there from Deepak. The 2 overs is good. First one is a maiden over. The last one is almost a 3 or 4 runs. But between that, the 3 overs, they considered out is a call. Just 3 runs in the last over. And it's absolutely good on. 52 is the total score. 53 is going to target for Saptami Warriors. And Gopi, welcome back. And of course, we have our respected MLA of Mangalore South constituency, Vedivas Kamath, one of the biggest supporter of cricket as well. And definitely it's going to be entertainment for him to watch this qualify number 1. And very interesting to see that, Gopi. In these 5 overs, first over is a maiden 3 wicket. And the last one is just 3 runs. Altogether, in 2 overs, Saptami Warriors conceded 3 runs and picked up 3 wickets. But 3 overs, the remaining 3 overs, the 14 runs which is scored by VB cricketers. And this is the beauty of cricket, isn't it? Something special in this particular match because after losing 3 wickets, it's unbelievable recovery. And of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. तो इस वक्त गेंदबाज लक्ष्मीश गेंदबाजी शुरू करते हुए और पारी इस वक्त शुरू होते हुए सपतमी वॉरियर्स के 53 रन बनाने हैं और यहाँ पर अवर रेस्पेक्टेड एमएलए सर श्रीमान वेदवास कामत इस वक्त हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है और हम सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनका स्वागत हृदयपूर्वक स्वागत यहाँ पर करते हैं। तो ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। .540 is the time and their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. Lakshmi Shabaliga starts the proceedings. 53 they have to score for victory to qualify for the grand finale of this competition. And their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. Lakshmish.
ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर बोल किया है, बैकवर्ड स्कोर लेग से बाहर। इस वक्त गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है और इस वक्त 6 रन हो सकते हैं क्योंकि गेंद सीधे फ्लेक्स के खंबे पर जाकर वहां पर टकराई थी। तो अंपायर इस वक्त कुछ पूछताछ करते हुए कि वहां पर चौका है या छक्का, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। जस्ट वी हैव टू लुक एट इन द रिप्ले। Six declared by umpire, and a fantastic start and a fantastic start for Vignesh Bhatt, hitting a 6 in his very first delivery और 6 रनों के साथ एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है। ऐसे ही घातक बल्लेबाजी यहां पर सप्तमी वॉरियर्स को इस मैच में वापस पहुंचा सकती है। लक्ष्मीश अपनी अगली गेंद लेकर तैयार विघ्नेश भट्ट के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार फुल टॉस ऑन साइड पर स्विंग किया, फ्लैटर मोशन, 1 more 6। 2 deliveries, 2 consecutive sixes, and the batsman is on fire. विघ्नेश भट्ट 2 छक्का इस वक्त झड़ चुके हैं और वो जानते हैं 53 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ऐसे ही बल्लेबाजी की इस वक्त उन्हें जरूरत है। और यहां पर 2 गेंदों में 2 छक्का झड़कर अपने इरादों को बुलंद कर चुके हैं विघ्नेश भट्ट। और इस वक्त लक्ष्मीश अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। सो स्ट्रेट अवे दबाव इस वक्त गेंदबाज के ऊपर और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करते हुए बल्लेबाज डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात ठीक सीमा रेखा के पास। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर लक्ष्मीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर। He bowled 2 for outside the off stump and conceded a wide. और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। क्वालिफायर मैच नंबर 1 आज का यहां पर खेला जाता है। इसे ढलते हुए शाम में दिल्ली पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीश 13 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। फुल टॉस हल्के से गेंद को पुश कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सो दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर देम। और करीबन पहले 2 या 3 ओवर में 35 से 40 रन अगर उनके बल्लेबाज बटोरते हैं तो लक्ष्य उनके लिए आसान हो सकता है। और उसकी कोशिश में इस वक्त बल्लेबाज और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए दीपक का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीश बाड़ीगा दीपक के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली। द बॉल kept low at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 14 for none in the over number first in progress. और फिर से एक बार लक्ष्मीश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। This time once again gone for a wide swing and once again a good length delivery from the bowler, kept at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. The scoreboard stays at 14 without loss. 2 लगातार डॉट गेंदें खेलने के बाद अब विघ्नेश ने यहां पर बल्लेबाज दीपक को बुलाया, कुछ कहा कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए उन्हें। और लक्ष्मीश इस वक्त अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, full toss, swings it away and he finds the gap as well. Boundary results, and with that boundary the scoreboard is now moving up to 18 now. So fantastic start, 18 runs scored और 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 रन। तो सतीश ये एक निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी और ऐसी शुरुआत की इस वक्त, ऐसी प्रगति की इस वक्त जरूरत है, तेज बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है सप्तमी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो। Exactly, Gopi. The kind of start which is given by to both the opening batters is outstanding, especially the Vignesh. And so far, Vignesh has got a very good tournament from the bat, isn't it? He's a man in form, and you know exactly this is only 1 hour they got opportunity to open the gate, and he got 18 runs. The comparison, Gopi, if you see the comparison after completion of first over,
Saptami Warriors 0 for 3. And here they got 18 without loss of any wicket. But after that, second over, they got 19 runs. And that means the both the teams has got opportunity to win this match, isn't it? After that, 18 runs, I think Gopi Warriors, Saptami Warriors, they open the gate here. But the remaining deliveries, 24 deliveries, they have to get another 35 runs to win this match. And definitely the one good over, which is badly recorded for the Warriors, VB Warriors. At the same time, sensible batting which is required here from the batsmen of Saptami Warriors. And all together, Gopi, this is a very good battle between two Warriors, VB Warriors versus Saptami Warriors. And wait and see which team will go into qualify for the big final of this prestigious Panthers Trophy, Panthers Super Trophy 2023. बिल्कुल सतीश, दोनों वॉरियर्स योद्धाओं के बीच इस वक्त संघर्ष जारी है और यहाँ पर पहले ओवर में 18 रन प्राप्त करने के बाद अपने इरादों को बुलंद कर चुके इस वक्त दोनों बल्लेबाज। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सूरज, जबकि सामना करने के लिए तैयार विघ्नेश भट्ट। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, रन के लिए दौड़ पड़े। इस वक्त शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। लेग बाई का इशारा और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, जबकि बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। तो लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा तैनात इस वक्त और डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर। तो सूरज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दीपक पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर चौका जड़ने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं, वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 for the loss of no wicket in the over number 2 in progress. 22 balls left in their innings and still they have to score 33 more runs for victory. 33 रनों की दरकार 22 गेंदों में और कम से कम 1 या 2 छक्का इस वक्त पूरी तरह सप्तमी वॉरियर्स को इस मैच में वापस ला सकता है। तो इस बीच गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज विघ्नेश सामना करते हुए गेंद इस बार गेंद को जाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट into the gap as well. One bounce and it might be cut off just inside the fence. The batsman come back for the second run and get it comfortably at last. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था खूबसूरती के साथ और आखिरकार एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। सप्तमी वॉरियर्स के बल्लेबाज अभी भी संघर्ष यहां पर करते हुए और 2 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 22 रनों पर। 21 गेंदें बाकी, 31 रन चाहिए। 31 टू गेट फ्रॉम 21 डिलीवरीज और इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद स्टीयर किया, बैकफुट पर जाने के बाद गली की दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को इस वक्त खींच लिया, देखते हुए कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है और इस बीच बल्लेबाज को रन यहां पर नहीं मिला। 22 रन, 22 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। विघ्नेश एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर महेंद्र स्टम्प्स। 1 मोर डॉट बॉल बाउल्ड और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर। 22 विदाउट लॉस एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर गेंदबाज द्वारा, जिसमें सिर्फ 4 रन इस ओवर में गेंदबाज सूरज प्रदान कर चुके हैं 5 गेंदों में और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार चूके डॉट गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी एंड अ फैंटास्टिक ओवर केम टू एन एंड। 2 overs completed, 22 runs on the board, 31 more run now they have to score for victory. 18 balls to go और निस्संदेह यहाँ पर मैं समझता हूँ सतीश ये ओवर बेहतर रहा और अंडर प्रेशर गेंदबाजी ने इस ओवर में सूरज जो गेंदबाज थे बेहतरीन गेंदबाजी की है। Absolutely, Gopi, just like the name what he has got, Suraj, and that kind of accuracy what he's got, isn't it? It's not so easy to keep this man quiet. And Vignesh, everybody knows his abilities and potential.
and hitting some big shots in this first over. It's not so easy handling the pressure, the bowling to Vignesh, but Suraj has done a great job to bowling that very good line and line, the tidy line and line. You know exactly what is the strength of Vignesh. You know exactly Vignesh always shuffled across the line after delivery to swing that one on the mid wicket on the backward square leg region. That's why he's bowling outside the line of off stump, and he succeeded to beat the bat of the batter Vignesh. But I think Gopi, 31 more runs required in 3 overs. The asking run is 10.33 runs per over. One better over is badly required of Saptami Warriors if they wanted to back into this game. बिल्कुल सतीश, इस वक्त एक बेहतर ओवर की जरूरत है सप्तमी वॉरियर्स को कम बैक करने के लिए। और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए रामकृष्णा, ओवर की पहली गेंद फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, नॉट मोर देना सिंगल, 1 रन का इजाफा यहाँ पहुंच चुका। V4 न्यूज़ 24/7 चैनल पर इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर। तो जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो विघ्नेश इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और तो वहां पर श्रीमान वेदव्यास कामत जो कि मिनिस्टर है, यहाँ पर टॉस प्रक्रिया करते हुए दोनों टीमों के कप्तानों के साथ अगले मैच क्वालिफायर मैच के लिए, माफ कीजिए एलिमिनेटर मैच के लिए। और यहाँ पर अगली गेंद फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला, बैक वाला स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, बेहतर फील्डिंग वहां पर। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रामकृष्णा अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, हियर ही बाउल्स, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल। और इस बीच गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहता, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, पैरों पर गेंद टकराई, लेग बाय के रूप में 1 रन उनके खाते में जुट चुका है। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। जाऊन आसिल वेदव्यास कामत सर एक मोमेंट देऊन स्वागत कोरका म्हणून। So 25 without loss in the over number 3 in progress। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, पैरों के बीच से गेंद निकली, निशाना चूका। और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 26 विदाउट लॉस। तो तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, रन से इस वक्त ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और चाहिए इस वक्त चौके और छक्के। और टीवी मॉनिटर पर दिखाई जा रहा है वेदव्यास कामत जो कि मान्य यहाँ पर मंत्री है, जो इस वक्त एमएलए है, मान्य एमएलए है, जो कि इस वक्त अपना मोमेंटम इस वक्त लेते हुए संगठकों से ये गेंद गेंद को इस वक्त तेजी के साथ विकेट चटका दिए। और इस बीच नहीं कहा अंपायर ने, हालांकि विकेट कीपर ने थर्ड अंपायर की मांग की, लेकिन यहाँ पर थर्ड अंपायर की अनुमति के अलावा थर्ड अंपायर को इस वक्त कॉल नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर स्कोर रुक चुका है 26 रन बिना किसी नुकसान के, 26 विदाउट लॉस। नेक्स्ट वन फ्रॉम द बॉलर, हियर ही कम्स, नेक्स्ट वन फ्रॉम द बॉलर ರಾಮಕೃಷ್ಣ। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ। Left it, and I don't think it could be gone all the way. In fact, it taken just inside the fence. First wicket fallen, and Ramakrishna got the breakthrough. So 26 for the loss of 1 wicket, and this is the third over in progress. 3 overs completed, in fact 27 required in remaining 2 overs.
27 रिक्वायर्ड इन 2 ओवर्स और रिक्वायर्ड रन रेट जो है ठीक 13.50 रन प्रति ओवर 13.50 द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज प्रोफेशनल एंड की ओर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज यहां पर तैयार। First ball, here he comes. Right arm over the wicket to lefty Vignesh. Gone for a loft, missing the line completely and collected by wicketkeeper behind the stumps. One dot ball ball, 27 required now of 11 balls. Again, the bowler comes. Vignesh Shenoy इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेला इस वक्त। गेंद बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान लगाया था उतनी ज्यादा उछली नहीं और गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में खेल दिया अजीब और गरीब ढंग से। और यहाँ पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 10 गेंदें बाकी हैं और रन चाहिए 27, 27 टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स। अगेन शॉर्ट बॉल, lofted that one and it taken just inside the fence. That is the end of Vignesh. और यहां पर विकेट गिर चुका है। सेकंड विकेट डाउन, इट्स 26 for 2। Next match, Harke Strikers will take over Kodial Super Kings in the eliminator match, and that match is now will play right after this match. And because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು। 9 balls left and 27 required। इस बार गेंद पूरी तरह सफल हो चुके थे, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। इस बीच सिर्फ बाई का इशारा, सही तरीके से अंपायर ने इसे बाई घोषित किया। गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर। इट्स 27 for the loss of 2 wickets now. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, रन्स नहीं मिलेंगे। एक और डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ। 7 गेंदें बाकी, अब 26 रन और चाहिए। 26 more runs now they have to score for victory in remaining 7 deliveries. So tidy bowling performance continuing here from the bowlers of VV Warriors at this situation. और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार रहा। इस बार गॉन फॉर अ माइटी, नॉट सक्सीडेड, अपीलिंग फॉर लेग बिफोर, नो सेज अंपायर। फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड फ्रॉम बॉलर। लास्ट ओवर रिमाइनिंग, 26 रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर इन रिमाइनिंग लास्ट ओवर। वीवी वॉरियर्स जो कि एक टाइम की नामचीन टीम अंडरआर्म क्रिकेट में जानी जाती थी, खासकर 90 और 2000 के दशक में अंडरआर्म क्रिकेट में उन्होंने अपना प्राबल्य स्थापित किया था। कई बेहतरीन श्रृंखलाएं उन्होंने जीती थी अंडरआर्म क्रिकेट में। लेकिन अब इस श्रृंखला में ओवरआर्म क्रिकेट में वीवी वॉरियर्स यहां पर एक बेहतरीन प्रदर्शन देकर अपने फाइनल, इस श्रृंखला के फाइनल प्रवेश करने के कुछ दूर इस वक्त रह गई है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार चूके गेंद सीधे पहुंची, विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 5 balls remaining, 26 runs to get. The bowler bowls now. Again the ball passed between the batsman's legs. Fantastic bowling performance. 26 required of 4 balls.
और अब ऐसा कहना पड़ेगा वीवी वॉरियर्स की विजय निश्चित है अगर इन बचे हुए 4 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो। अगली गेंद इस बार चूके, एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में गेंद, निशाना चूका, 1 रन मिलेगा। 28 नाउ। तो बाई का इशारा। This time, good one. Just missing of Sadio. Just wanted to follow that one. Missing the line completely. Dot ball bowled. So just 2 balls. 2 balls remaining in this over. और ऐसा कहना पड़ेगा वीवी वॉरियर्स अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका। ये गेंद चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, स्वीपर आउट देयर, ही गॉट जस्ट अ सिंगल, 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। That's it, bowled him, and VV Warriors through to the grand finale of this competition, defeating Saptami Warriors, and with that victory they are through to the mega final of this competition. And now Saptami Warriors will meet the eliminator winners, RK Strikers and Kodial. The winners of RK Strikers and Kodial Super Kings will meet Saptami Warriors in a qualifier number 2, and that match, qualifier number 2, will play right after eliminator match. Vignesh Karkala adjudged the man of the match of his 24 runs, brilliant sparkling innings from him in just 12 deliveries, including 1 4 and 3 sixes, and he bowled brilliantly also in the bowling. 1 over, 1 run he conceded, and 1 maiden in fact he conceded, and he captured 1 wicket. 1 over has got 1 maiden and has got 1 wicket also, so no run conceded by him, and because of this all-rounding performance he bagged the man of the match award. I request Vignesh Karkala of VV Warriors to please go on to the dais, go on to the stage and receive the man of the match award from our organizer. And now the next match, Kodial Super Kings, RK Strikers, the eliminator match is now going to start. I request all the players, please start the match immediately. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. RK Strikers ಹಾಗೂ Kodial Super Kings ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. And now we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the eliminator match going to begin within a just short while. Thank you. Dhanyavad. So congratulations, VV cricketers at last managed to qualify for the mega final of this prestigious the Panthers Super League 2023, and what an outstanding performance. The Vignesh is leading from the front, is judged as a man of the match. ದಯಮಾಡಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
So our proud MLA Vedabas Kamath having some chatting with the players of Arc Strikers and with the officials, and he will definitely going to never miss the opportunity whenever he's got opportunity to bat, especially in the Urva cricket ground. He loves to bat, and wait and see how Vedabas Kamath will go into the bat here and in a overarm format, and Varun Shanbag has bowled the ball outside the line of off stump, and Vedabas Kamath tried to push the ball on the offside region, misses it completely. He's a very good striker of the ball in the offside region. Varun Shanbag bowls a slower one. And Vedabas Kamath is saying that why you bowling that slow ball? If you bowl fast, I will hit very faster than the ball. Varun, right arm over the wicket, bounce, cuts that one beautifully. Oh, lovely shot. This is what you call the square cut. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Radhakrishna bowls a lovely shot. That was just over the top of infield, running down to deep long of boundary for 4 runs. The back-to-back 2 boundaries there from Vedabas Kamath. Again, down the leg stump, going to be a wide. Vedabas Kamath will go into face next delivery. This time lofted high up in there towards the long off region. This time is not really having enough power behind the stroke. Balls this time again, chip that one over the top of infield. The safe shot to play between cover point and extra cover. Running down to deep extra cover boundary. Again, this time again going for the cut shot outside the line of off stump, and again that one got outside edge of the bat. Varun Shanbag. Beautifully played that one. Look at that one. Wrist work comes into play. Beautifully played, and just working that one in the onside region, and just the kind of technical stroke there from Vedabas Kamath. Again, Varun balls copybook style. Look at that one. Front foot, stretching his front foot. Eye-hand coordination. Nevertheless, it's almost looks like it's the top order batsman playing that stroke. Outside the non-flex stump and going to be a wide. The left-hand bowler. Oh, beautifully bowled. Just missing the outside edge of the bat. Thank you very much, sir, for your the presence for this prestigious Panthers Super League 2023. You are spending your time here, but the fans of you wanted you to continue your batting, and now it's a under-arm cricket, and both the format Vedabas Kamath is superior, and look at that copybook style of pushing that one down to cow point region. This time going for the drive, not really getting that one from the middle of the bat. That is a sweep shot. That was a very good sweep shot there from Vedabas Kamath, and got that one very fine. It was a fine leg region.
Very good delivery indeed. And missed it. Ball just came along the carpet. And thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. Big round of applause required for V4NEWS Kamath, sir. Thank you very much for your great entertainment as a cricketer. Thanks a lot. We'll soon. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ V4NEWS ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸೂನ್ ಇನ್ GPL GSP ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ರಮೇಶ್. So welcome back for the master of eliminator and Arcus Strikers versus Kodial Super Kings, and do or die matches for both the teams. If they wanted to remain in this competition, they must win match for both the teams. Arcus Strikers versus Kodial Super Kings. After winning the toss, captain of Arcus Strikers elected to field first, and so that opening batters of team Kodial Super Kings came into middle. Padmanabh, a very good striker of the ball, and in the non-strikers end, Pranav Bhatt. And please note the time, and it's very important for fielding team to finish their 5 overs quota. The starting time is a 6:12 from umpire Shriniket, and which is noted. So bowler is going to start the proceedings from the far end, Karthik, as always, from the professional career end. The first over of the power play. Only 2 fielders outside the circle in the power play. A deep long on and deep backward square leg. The first ball nicely placed down to cow point region. Before the cow point fielder to run back. They're coming back for the second. In comes the throw, but throw is not good enough to make that run out. But I think it's bad enough for the batter to complete that couple of runs here. So Padmanabh starts well with a couple of runs for his team, and open the account as well. 2 without loss of any wicket. Padmanabh is a batsman. The only batsman who's got a 50 under his name in this particular tournament. The first match of the day, number 2, he scored a 50 against Ulal, Kings 11 Ulal. The left arm, oh, looks like something is going in his finger. The nails looks like, because try to something has happened when he was trying to deliver the ball. Oh, that means it might be. Okay. So while he was jumping, then was a chain which came into his hand, and that's why he's just stopping his run. So next chain is wearing the gold chain might be. Luckily that ball is went. That chain is went into his hand. Otherwise, it would be a big loss for the bowler. Everyone knows the rate of gold. It's more than 5,000 per gram. The Karthik once again back to his bowling mark. Bowling with a short run up. The right arm over the wicket, Padmanabh. Left arm. Pulls that one, but not really controlled that full dart, but quite enough to defeat the infield. 2 fielders behind the ball,
And I think the ball just winning the race against the fieldsman 9-6. So the boundary which is not signaled. It's signaled, yes it is the boundary. Even though Padmanabh is not controlled that pull shot, but it's quite enough for him to get that one past the infield. Radhakrishna running back. And one more fielder in short fine aggression. Abhijit Kini also runs quickly to their back, but not quite able to stop the boundary. So scoreboard is moving now, 6 without loss of any wicket. Karthik once again back to his bowling mark. Padmanabh is on strike. Karthik again, left arm. Round the wicket, full toss again. This time a fielder in the deep will going to take the wonderful running catch. Really good catch indeed. Now he's saying Padmanabh, I have not hit that ball from the sweetest part of the bat. It's the bottom of the bat comes into play. That's why the ball is in travel where he was looking for. Unfortunate dismissal here for Padmanabh. And the big wicket here for RK Strikers. But a good look at the effort there from fielder. It's a very good catch, isn't it? He need to cover the ground a lot to take the catch. Now Padmanabh is walking towards a pavilion, one of the leading run getter of this tournament. He is walking towards a pavilion in a very important match for the team. Sandeep Kamath has got a very good running catch. Almost is standing in the mid-wicket region, isn't it? When he was completed that catch, he is in a deep backward square leg. That shows how quickly he runs towards his right to complete the catch. But it's a lucky breakthrough for Karthik because it is a hittable delivery. The caliber of Padmanabh, it looks like it's not really missing everywhere, every time. But fortunately, that ball is not hit from the middle of the bat. 6 for the loss of 1 wicket. The new batsman in. Rakesh Shaw will go into face next delivery of Karthik. Left arm bowler's back. Beautiful driven. No need to run for that. No need to run for that. Ball went like a tracer bullet. This time the batsman is off the back foot. Rakesh. You know exactly where the two fielders outside the circle. One is wideish long on. One is mid-wicket region. So he is not exactly mid-on inside the ring. There's huge gap, isn't it? I don't really understand the fielding set. The huge gap. Now is a mid-on coming in a straighter version. There's no mid-on when he's played at Stokes. And quite deliberately hit that one right in the gap. 10 for the loss of 1 wicket. Karthik from the far end. Left arm around the wicket. Full toss, lofted over the top of infield. Once again looks going to be one more boundary here. Yes, it does. The back-to-back boundaries here. Even though they lost the wicket of Padmanabh, but taking the initiative by Rakesh in the division, hitting back-to-back 2 boundaries. And score jumped into 14 for the loss of 1 wicket. Rakesh fails to bowl as far as field, isn't it? When you are having all the fielders inside the ring, if you bowl that full toss delivery, without having ample pace in his bowling, and he is not having adequate field for that. The all reduction has been given in the onside region. If you ball the full toss delivery outside the line of off time, definitely it's going to be punishable. This time lovely delivery, well pitched up delivery for Rakesh in the relegation, but the 14 valuable runs was already conceded in that over. So Kodial Super Kings even the lost the wicket of Padmanabh. But they got runs what they really wanted. 14 runs which just came from that first over. And it's a very good start here for team Kodial Super Kings. Ashwath brought into attack to bowl the second over of the innings of Kodial Super Kings. Got a 14 valuable runs by losing a wicket of Padmanabh. Pranav Bhatt is on strike now. He's out of the strike. Please note the timings here. You need to complete your 7 minutes taken for the 1 hour. Please note that. It's going to be a little bit difficult for you only. And here is the second one.
Left arm over the wicket. Beautifully driven that one. Absolutely, it was a delightful stroke there from Pranav, but not more than a single. Even though he will going to get a single for that, but that stroke will going to give a lot of confidence for the batter. So it's a 15 for the loss of 1 wicket. Rakesh back on strike. Man who got a 2 boundaries behind his name in the previous over. As Ashwath once again bowling away from us. Left arm over the wicket. Went for the reverse sweep. Appealed for leg before wicket. Umpire not interested. Rightly so. Score remains on 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Ashwith once again back to his bowling mark. Tried to put some break on the run rate of Cordial Super Kings. Again nicely bowled right on the block out. Even a well directed stroke there from Rakesh, but not really getting that much of placement enough to get the more than single for that stroke. The fielder there in the deep long on will going to cut it off. And with the addition of that single, score numbers on to 16 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Ashwath again away from us. Using his feet, beautifully driven once again, nicely in the gap. But they're running hard, looking for the second, mix up. It's going to be a huge wicket. It's going to be a huge wicket here for RK Strikers. Total misunderstanding between the wicket. Fantastic piece of fielding by the fielder in the deep. Saurav Bhakta down at deep long off has got a good pair of hands. Not only fields the ball very well, but look at the throw, absolutely right over the bails to complete that formalities of out. It's a 17 for the loss of 2 wickets. RK Strikers desperately wanted to back in this game in the second over after that expensive over of 14 runs in the first over. So far Ashwath wanted to put some pressure onto the batsman. He succeeded so far. And Gaurav is a new batsman walking towards the middle. One more very good striker of the ball. Gaurav is a cool customer. Takes his own time to settle down. But so far he's not really having that much of good performance from the bat. But this is the one match Gaurav wanted to perform very well. If his team wanted to see in the eliminator in the next round. Qualifier number 2. This time, that was a shuffled across the line of the delivery, but the batter is so confident, Pranav, but even he shuffled across the line of delivery dangerously, but he played it very well with the confidence, and with that single score, Namuzan to 18 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Ashwath once again back to his bowling mark. Gaurav facing his first delivery. Ashwath. Left arm balls, and it was quite an unorthodox kind of kicking stroke, isn't it? Nothing a sweep, nothing a stroke, and he missed it completely from the bat. And one more good over, actually, it's a good over from Ashwath. The kind of over which is required for RK Strikers after 14 runs in the first over. He bowled a very good over, Ashwath. Just a 4 runs which came from that over. And after completion of over number 2, and looks like still Cordial Super Kings in the right position, good position. 18 in the 2 overs, 9 runs per over is the run rate progressing. Abhijit is a man who really changed the complexion of the game in the previous match for the team RK Strikers, but unfortunately they ended with a defeat. RK Strikers got some bowling department. Little bit correction is they won the match because of his outstanding performance. Abhijit has been a wicket taking and economical bowler for the side. This time first ball outside the line of off time. Batsman tried to reach that delivery, but he's not really understand what really happened. The batter Pranav Bhatt saying that the ball is full toss, but it was not that much of difficult full toss. Batsman just missed that full toss. Slow over one there from Abhijit. And there is no chance at all for any. Again, Abhijit simming in from the far end. Balls. Nicely walks it on the outside and then charging for the second. And in comes a throw from the deep end. What a throw there from Saurav Bhakta. What a time he's having in the field. One more big fish in the net here for RK Strikers.
Unbelievable piece of pace fielding there by the fielder. Look at the Saurabh Bhakta charging in from the deep. You know exactly the batsman will go into come back for the second, and look at the throw. Magnificent throw there from Saurabh Bhakta. And wicketkeeper complete the formalities of making that run out. Outstanding work there from Saurabh. Responsible for that second run out. It's 19 for the loss of 3 wickets. A big wicket. The Pranav Bhatt is back into pavilion. Surendra Pai is back, came into middle. One more fantastic all-rounder for the side of Kodial Super Kings. The 4 balls remaining in this over, just to complete it. Oh, ball him! Clean him up! Oh, wicket here for... wicket number 4 is back into pavilion. Abhijit Kini is striking for RK Strikers. What a fantastic performance here from Abhijit Kini. Justifying his appearance in this 2 important match for RK Strikers. He's been asked to bowl and he is just taking the challenge very well. And what a magnificent delivery that one. Absolutely Yorker land delivery. Dismissing the 1 more wicket of their opposition. It's 19 for the loss of 4 wickets. After that expensive over, RK Strikers are strongly back in this game. But after getting a very good start, I think they're losing the momentum. Kodial Super Kings 14 in the first over without losing a wicket. Of course, losing 1 wicket, the wicket of Padmanabh. Then there goes on losing a wicket. Rakesh is the one who is picking up that runs for Team Kodial Super Kings, but afterwards the downfall starts. Abhijit Kini bowls again, lovely delivery, beautifully bowled. The batsman looking for the improvisation. The batsman completely missed out. Damodar, the new batsman, just came into middle. Abhijit Kini, what a tournament he's having. Little bit underestimated his bowling, isn't it? He didn't got the opportunity to bowl the first 2 matches, but when he started to bowl, he becomes very effective for the bowling department. Again, all the ball's going down the leg stump, going to be wide, and Abhijit tried to bring the ball around the legs of the batsman, but by doing that, I think he's just missing that line. And Damodar tried to hit the ball on the onside region and misses it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Abhijit again, seaming in from the far end. Drives that one, ball is in there, and drops the catch, but good attempt there for the fielder. I think Karthik is the man who's charging in from the deep cover point region to take the catch. He's almost got there, but ball just looks like it came into him in the off fall. I want to see, oh my goodness, he got that one, but the ball is just slipped out of his hand. It's a 21 for the loss of 4 wickets. If it is able to take the catch, it's one of the best catch. Full toss, opportunity of cotton ball, but no one there in that mid-off region, so that very difficult for bowler Abhijit to run back to take a catch. But a very good over completed by Abhijit. Once again, he's justifying. Outstanding over. Just 4 runs came from that over. After completion of over number 3, Kodial Super Kings searching for the right track. 22 for the loss of 4 wickets. 17 minutes they take, and they have to make a little bit quick. Here. Team RK Strikers have to finish it off very quickly. So Sandeep need to make it quick. The 4th over will going to start from the commentary box, and Sandeep bowling away from us. Right arm over the wicket. They're taking it on time.
Please note that the time is not enough for you. The final going back. Deep long off coming inside the ring. Sandeep starts this over. Right arm over the wicket, he bowls. Full toss, lofted, down to mid-wicket region. They're looking for the second. In comes a throw, but not quite enough to come to stop the couple of runs. So with that couple of runs scored, now moves on to 24 for the loss of 4 wickets. Gaurav is taking the initiative of accelerating the run rate as Sandeep bowling away from us. Right arm over the wicket, he bowls. This time lofted, high up in there. Opportunity for the fielder and comfortably taken there by the fielder at deep long on. Vinayak Pai, who is standing in deep long on region, making no mistake at all. It's just a catching practice for him. Where he was standing is not really moved at all. This ball is came to him as Gaurav tried to get some acceleration, but not really getting the elevation he's looking for. And the distance what he's looking for is back into pavilion. Is a 24 for the loss of 5 wicket. It's a 24 for the loss of 5 wickets. And the new batsman in is Devdas Nayak. And now we can see that in LED screen, the beautiful view of this UCC cricket ground with underflood light. And it looks so beautiful, UCC cricket ground. Devdas Nayak is so experienced campaigner. A lot of contribution from him for cricket. As Sandeep bowling away from us. Alright, I'm over the wicket. Oh, lovely delivered there from Sandeep. Just drawing the batsman onto the front foot, and batsman wanted to kiss that ball, but missed that one. And wicketkeeper behind the stump did the rest. Good bowling there from Sandeep. Bowling 4 times in this over. Alright, I'm over the wicket, he bowls. Coming down the track, misses the line completely. Appeal for stump out, umpire says not out. Good piece of bowling there from Sandeep here. The last 2 deliveries left in this over. So far, RK strikers are back very strongly with some good bowling performance. Abhijit, Kini, Sandeep in this over so far. 5th time in this over. Cuts that one very nicely, win the gap. Not more than a single for that. And of course, the batsman Damodar doesn't want to make a comeback for the second. He wanted to deal with the final delivery of Sandy. It's a 25 for the loss of 5 wicket. The last ball of the over. Number 4, and Damodar is on strike. Sandeep bowling away from us. Full toss, going for the reverse stroke, missed it completely. One more good over is comes in, and after completion of over number, it's a 25 for the loss of 5 wicket. Last over remaining. Just 3 runs came from that over. It's a good over. And Sandeep quickly completed that over. The last over remaining. RK strikers back very strongly with some good bowling performance. And at the same time, Kodial Super Kings has lost their momentum once they got 14 runs in the first over. Now after that they got only 11 runs in remaining 3 overs. And that's only because of their lost the wicket of Padmanabh and Karthik. Here is a Karthik Nayak from the far end to Devdas. Nayak, oh, what a shot! This is the potential on his shoulder. Wallah, look at that stroke. Absolutely magnificent. One of the best stroke of the day. Look at the way. Transferring his weight onto the back foot. Standing deep on the crease. Lofted that one down to mid-wicket for a U6. 31 for the loss of 5 wicket.
This is a fantastic display of batting performance from Devdas Naik. Karthik is from the far end. Right arm over the wicket to Devdas Naik. Full toss outside the non-flag stamp. They're going for the run. Chance of run out in the non-striker's hand. Disappointment finish here for Devdas Naik. Wide signal by umpire. That means one extra run is added to total. The scoreboard is 32 on the board for the loss of 5 wickets. And a small cameo, 32 for the loss of 6 wickets. A small cameo of Devdas Naik is comes in. But he played an important stroke for his team to get the 6. And look at the crowd really appreciating, acknowledging that stroke which is played by Devdas Naik. It's E1 is very difficult to play for the youngsters. The kind of stroke he played in that first delivery of the final over. But he's sacrificing his wicket for his teammate. Damodar is back on strike. 5 deliveries remaining. 32 for the loss of 6 wicket. Karthik. Balls beautifully balled. Absolutely perfect line into the occasion. Seeing that Damodar is shuffled across the line of the delivery too much as he bowled outside the line of off-stamp. One more dotted delivery. The 4 balls remaining. The innings of Kodial Super Kings. After this match, another 2 matches remaining to qualify number 2 and as well as the mega final of the Panthers Super League 2023. Karthik left hand bounce, driven but straight to the hands of deep long on. Not enough power, not a good placement. Pays the penalty for that. Karthik bowled that full toss delivery. Batsman fails to take the advantage of that one. The wicket number 7 is back into pavilion of Kodial Super Kings. Vinayak Pai once again is a man in deep long on, taking his second catch. It's a 32 for the loss of 7 wicket. The new batsman in is Rajesh is walking towards the middle. He will be the striker. Young Rajesh need to deal with the final 2 deliveries of their innings. 2 deliveries remaining in this over as Karthik bowling from the far end. Left arm round the wicket to Rajesh. Left arm round the wicket. Nicely driven by Rajesh in the gap. They're running hard, looking for the second. In comes the throw from the deep. Chance of run out in the non-strikers and looks like the batsman is safe in his home and umpire says not out and 2 runs which is scored. And with that couple of runs scored, numbers on to 34 for the loss of 7 wicket. Now final delivery of the innings of Kodial Super Kings. They got a competitive total. Under floodlight always it's a 35 or 30, 35 under 40 is going to be a good score. Two left in correction, 2 ball left in this over, 1 ball which is balled as a wide in this over. So please make a little bit correction out here. Last 2 balls remaining. 34 for the loss of 7 wicket. Rajesh is on strike. Karthik is on attack from the far end. Left arm. Beautifully balled. Oh, Warren Shanbag missing the stump. Can you believe this? By call by umpire. By call by umpire. Warren Shanbag saying that I don't know how the ball is misses the stumps. I observing the 3 stumps, but I managed to miss the stumps. The batsman dealing with some luck. Each and every run is going to be very crucial in this eliminator. As a 35 for the loss of 7 wicket. Karthik again. Swings it out. We're going to be a maximum. And Kodial Super King finished the innings in a style. Sohan looks like he's a last ball hero for his team. Swings that one down to deep backward square leg for a huge 6.
And they got a 41 valuable runs and they set a target of 42 to win the match. RK Strikers might be thinking about that missing chance of that run out. Varun Shanbag missing the stamps and batsman grabbing that opportunity to swing his bat. 41 for the loss of 7 wickets. 42 going to be a target for RK Strikers. So let's take a break here, short break here, and but I think it's a good game. It's a very good game in front of spectators. After getting that 6 in the last ball, the match is definitely going to be more interesting. RK Strikers, of course, even 41, I think it's a manageable. If they bat well, they can get the runs. But Kodial Super Kings, the 6 which came from the last ball and 6 which came from the bat of Devdas Nayak, that will going to be a bonus, as well as it's a glucose here for Kodial Super Kings, and wait and see how well they're going to finish this match, and wait and see how RK Strikers will go into strikes here with some sensible batting which is badly required for them to qualify for the next round of this cricket. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. KSK at batted first. KSK managed to score 42 after being a slower start. They finished very well with 41 in the stipulated 5 overs and 42 the target for RK Strikers to qualify for the qualifier number 2 of this competition. 6:45 the time now. 6:43 the time now. And the innings of RK Strikers is now going to start under floodlights. So the bowler Pranav is now brought into the attack. Varun Shanbag and Ashwit Pai is the opening batsman. पहली गेंद इस बार वरुण शानबाग के लिए. So this is an absolute
और ऐसी शुरुआत की इस वक्त जरूरत है। और जहां तक सवाल है, पिछले मैच में वरुण शानबाग ने जिस तरीके की बल्लेबाजी दिखाई थी उसी तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त इस मैच में भी उन्हें दिखानी होगी। और वो जानते हैं 42 रनों का लक्ष्य का पीछा करना उतना आसान नहीं है इन हालातों में, तो क्यों ना पहले ओवर से पावर प्ले का फायदा उठाया जाए। और पहले ही गेंद को इस वक्त उन्होंने डिस्पैच कर दिया लॉन्ग ऑन सीमारे का जवाब छक्के के लिए, और पहली गेंद पर छक्के को रवाना करने के बाद अपना खाता खोल चुके हैं। अगली गेंद, यह गेंद पटकी हुई गेंद, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन मिले टीम को 7 रन बिना किसी नुकसान के। 42 दे हैव टू स्कोर इन 30 डिलीवरीज विद द रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 8.40 रन्स पर ओवर। और वरुण शानबाग इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का ये गेंद पटकी हुई गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला इस वक्त तक कमर सीमा रेखा के ऊपर, बेहतर फील्डिंग वहां पर, और जब तक गेंद को वहां पर रोका जाता 2 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, हिज इंटेंशंस इज प्रीटी क्लियर, जस्ट गो ओवर द टॉप एंड ही इज डूइंग द राइट थिंग अंडर पावर प्ले ओवर। तो 2 रन इस पिच मिले और इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड अब जहां पहुंचा है 9 रनों पर। वरुण शानबाग की उपस्थिति इस वक्त आरके स्ट्राइकर्स के लिए बेहद जरूरी है, जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है उनके लिए, और पावर प्ले का यहां पर भरपूर फायदा उठाते हुए गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट, पटकी हुई गेंद, ऊंधा उछाला इस वक्त, एक फील्डर के हाथ से कैच छूटा लेकिन दूसरे ने लपक लिया और यहां पर वरुण शर्मा की पारी समाप्त हो चुकी है। यहां पर वो काफी असंतुष्ट दिखाई देते हुए, काफी इस वक्त मायूस दिखाई देते हुए, लेकिन उन्हें जाना होगा। और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है। देखिए किस तरीके से एक फील्डर के हाथों से गेंद छूटी थी दूसरे फील्डर ने गेंद को लपका जो ठीक उनके पीछे खड़े हुए थे। तो यहां पर दुर्भाग्यवशात वरुण शानबाग का विकेट गिर चुका है एंड आई थिंक दिस इज अ बिग ब्लो फॉर आरके स्ट्राइकर्स, क्योंकि वरुण शानबाग की प्रेजेंस, उपस्थिति यहां पर जरूरी थी और दुर्भाग्यवशात एक करारा स्ट्रोक लगाने के प्रयास में वो अपना विकेट खो बैठे। अब देखना यह है कि उनका स्थान न ग्रहण करने वाले बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं। विनायक पई का आगमन यहां पर होता हुआ और कुल मिलाकर इस ओवर में गेंदें बाकी हैं 3, 9 रन बच चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो विनायक पई इस वक्त देखना यह है कि इस पावर प्ले ओवर में किस तरीके की बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं। फिलहाल प्रणव भट्ट गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और पावर प्ले इस वक्त जारी। दाहिने हाथों पर द विकेट, प्रणव भट्ट की गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद, ऑन साइड पर गेंद को बोड़ा, इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर रन नहीं मिलेगा। तो गेंद सीधे पहुंची थी इस वक्त मिड विकेट पर। जहां तक रनों का सवाल है तो रन से यहां पर नहीं मिले। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों के समर्थक तालियों के साथ, सीटियों के साथ अपने टीम का मनोबल यहां पर बढ़ाते हुए प्लेयर्स डगआउट में। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, पटकी हुई गेंद, ऑन साइड पर उछालना चाह चूके, बेहतर गेंदबाजी, लगातार 2 डॉट गेंदें और इस वक्त पहला ओवर के 5 गेंदें यहां पर फेंकी जा चुकी है। 9 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। एक गेंद अभी भी बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए फील्डर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, अपील, लेकिन गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी और अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। और इस भी 3 लगातार डॉट गेंदें यहां पर प्रणव फेंक चुके हैं और पहले गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन कमबैक वो कर चुके हैं। 4 लगातार डॉट गेंदें। इस बार देखिए किस तरीके से गेंद बल्लेबाज के बैक लेग पर टकराए थे और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती। ओवर की समाप्ति 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और वरुण शानबाग का जो विकेट गिरने के बाद जो दबाव इस वक्त तक क्रिएट हो चुका है आरके स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के ऊपर, देखना यह है कि इन बचे हुए 4 ओवर में उस दबाव को किस तरह हटाते हैं क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज। 42 the target, 33 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries। 24 गेंदें बाकी है और 33 रन चाहिए विजय के लिए। रिकॉर्ड रन रेट 8.25 रन प्रति ओवर, 8.25 द प्रेजेंट रिकॉर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन। और इस बीच अश्वत भाई
गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। लेफ्टी बैट्समैन विनायक पै जो कि एक और आक्रामक बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और ओवर की पहली गेंद लेकर विनायक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई शॉर्ट थर्ड पैड पर पहुंची। वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एलिमिनेटर मैच पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद को खेल दिया। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 11 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। फ्लडलाइट्स के खंबे के बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं और वो बत्तियां इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी हैं। और अंडर फ्लडलाइट्स इस प्रतिष्ठित श्रृंखला पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत यहां पर एक शानदार प्रगति करता हुआ। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। राकेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लंबे रनअप के जरिए कुछ हद तक रनअप में बाधा। और जैसे राकेश ने दौड़ना शुरू किया, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने वहां पर कुछ जोर से कहा कि फील्डिंग के जमावट के बारे में, तो गेंदबाज अपने रनअप में रुक गए और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। और इस वक्त तैयार अपनी अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद एब्सोल्युटली बेटर वन, फुल लेंथ गेंद को इस वक्त ट्राई करना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट चूंकि और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। राकेश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद को उछाला इस वक्त गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress. Still they have a long way to go and 30 runs more now they have to score for victory in remaining 21 deliveries. So absolutely fantastic match is now going on here, the eliminator of this tournament. और दर्शकों से लगभग मैदान भर चुका है आज रविवार की शाम। और यहाँ पर फुल टॉस, गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। 24 मिनट के अंदर 5 निर्धारित ओवर को पूर्ण करना जरूरी बन चुका है। दे हैव टू कंप्लीट देयर कोटा ऑफ 5 overs अंडर 24 minutes फॉर द बॉलिंग साइड ऑफ KSK। इस बीच ये गेंद उछाला, गेंद हवे में, गेंद इस वक्त खाली क्षेत्र पर टिप्पा खा चुकी है। स्वीपर गेंद पर पहुंचे, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और अपने ऊपर की ओर छलांग लगाकर बड़ी मुश्किल के साथ इस गेंद को फील्ड कर लिया। गेंदबाज ने इस थ्रो को फील्ड कर लिया, कलेक्ट कर लिया। 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Absolutely fantastic atmosphere we are just watching in this ground. फेस्टिवल एटमॉस्फेयर कहा जा सकता है, त्योहार का माहौल इस मैदान पर छा चुका है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत। और इस बीच बल्लेबाज अपना बल्ला बदलने के लिए इस वक्त दूसरे खिलाड़ी के पास बल्ला बदलने के बाद अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए राकेश दाहिने हाथ ऊपर द विकेट लंबे रनअप के जरिए गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा। गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड की दिशा में बल्लेबाज के कमर पर टकराने के बाद और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति, तो बेहतर ओवर जिसमें 5 रन मेरे ख्याल से प्रदान किए गेंदबाज ने। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs. 26 to get in remaining 18 deliveries with the required run rate of exactly 8.33 runs per over. और थोड़ी सी बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी सौंपी जा रही है हमसे दूर वाले छोर से यानी प्रोफेशनल एंड की ओर से। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए
प्रणव भट्ट, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 9 रन प्रदान किए थे, लेकिन उन्होंने वरुण शानबाग का बेशकीमती विकेट प्राप्त किया था और उसे देखकर इस वक्त उन्हें दूसरी ओवर की जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है केएसके के कप्तान द्वारा, और देखना यह है कि वो इस जिम्मेदारी को इस दूसरे ओवर में किस तरह निभाते हैं। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार प्रणव भट्ट, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया। इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में वाइड का इशारा अंपायर का, और फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गेंद की दिशा को देखते हुए गेंद को छोड़ दिया था विकेट कीपर के हाथों में। दिशाहीन गेंद थी और इस बीच रन मिले एक अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में। 25 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 18 डिलीवरी, स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। प्रणव भट्ट एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा। He's got a problem on his length of line at this situation. दो दिशा से भटकती हुई गेंद उन्होंने फेंकी थी और आखिरकार 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में इस वक्त प्रदान करते हुए सामने वाली टीम आरके स्ट्राइकर्स के खाते में। तो एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार प्रणव भट्ट, तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज विनायक पई सामना करते हुए कम से कम एक चौके या छक्के की इस वक्त सख्त दरकार और के स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को वापसी करने के लिए। उछालना चाहा, फॉरवर्ड शॉट लेके दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े और रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं बल्लेबाज। इससे पहले कि शॉर्ट स्कोर लेग पर गेंद को फील्ड कर दिया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 23 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री एंड इन रिमेनिंग 17 डिलीवरीज। बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन अश्वत इज नाउ कमिंग टू बैट और वो इस वक्त सामना करेंगे प्रणव भट्ट की गेंदों का। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद और हर गेंद के साथ कप्तान इस वक्त केएसके के फील्डिंग में बदलाव लाते हुए। और इस बीच प्रणव भट्ट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। गेंद उछाल लेते हुए बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे समचों पर जा टकराई, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। अश्वत की पारी समाप्त। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहा था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद थोड़ी सी उछाल लेकर थोड़ी सी तेज रफ्तार के साथ अंदर की ओर आई और गेंद को रोकने में सफल और गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे उसके उन दोनों के बीच निकलते हुए और टॉप स्टंप्स पर टकराई, गिल्लियां उड़कर गिरते हुए और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 19 for 2। कार्तिक द नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और निस्संदेह यहां पर अब आरके स्ट्राइकर्स को एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान केएसके के और इस बीच प्रणव भट्ट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद पटके हुई गेंद उछाला लंबा रह गई कि गेंद क्यों सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी है और लंगोन सीमा रेखा के अंदर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका फील्डर ने और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में यह विकेट गिर चुका है बल्लेबाज का। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को बेहतर तरीके से लपका था डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर खिलाड़ी ने। 19 for the loss of 3 wickets. Really a testing time now continuing here for the batsmen of RK Strikers. हालांकि पहली गेंद पर पारी की पहली गेंद पर छक्का झड़ने के बाद एक बेहतर शुरुआत वरुण शानबाग ने दी थी लेकिन उसके बाद उनका विकेट गिरा और उसके बाद 2 विकेटें कम अंतराल में गिरे। अब आरके स्ट्राइकर संकट की स्थिति में यहां पर नजर आते हुए अभी भी अपने विजय से 23 रन और दूर, 15 गेंदें बाकी और हैट्रिक का गेंद इस वक्त लेकर तैयार प्रणव भट्ट और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है सौरभ भक्ता जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। देखना है कि सौरभ क्या प्रणव का हैट्रिक रोक पाते हैं या नहीं। अपनी अगली गेंद लेकर प्रणव इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट हैट्रिक गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद उनके पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, 9 सेकंड पर बैकअप नहीं, वे अंपायर इस वक्त झुके, गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलती हुई और फाइनल सीमा रेखा पर इस वक्त लंग ऑफ पर जा चुकी है।
लॉन्ग ऑन पर इस वक्त 4 रन घोषित, 4+1 5 रन नाउ एडेड टू द टोटल, और 5 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहां पर प्राप्त कर चुका है आरके स्ट्राइकर। देखिए किस तरीके से हुआ था, यहां पर गेंद को उछालना चाहता, गेंद उनके बैकलेग पर टकराई, शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े और वहां पर पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, कोई बैकअप नहीं, अंपायर झुके, अंपायर के पीठ के ऊपर से होकर गेंद निकली, कोई बैकअप नहीं, लॉन्ग ऑन पर, और आखिरकार गेंद तक पहुंचे जरूर लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ काफी प्रयत्न करने के बाद भी गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 5 gifted runs, 24 for 3 now. 18 to get and 14 balls to go. What a terrific match is now progressing here. वहां पर इस वक्त चेक करते हुए कि गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकराई थी या नहीं, कुछ प्रेक्षक वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछताछ करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। 18 रन चाहिए 14 गेंद में, और इन हालातों में ऐसे रन न मिलना निस्संदेह सामने वाली टीम को उपहार के रूप में रन प्रदान करने के बराबर होता है। और जहां तक सवाल है आरके स्ट्राइकर्स का, तो रन्स उन्हें इस वक्त चाहिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। तो यहां पर 5 रन मिले तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में, और स्कोर इस रन पंचक के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 14 balls to go, 18 more runs now they have to score for victory. Still the match is in balance. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, 2 balls left in this over, और इस बीच गेंदबाज प्रणव भट्ट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट विनायक पई सामना करने के लिए तैयार, और लंबे रनअप के जरिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को स्विंग किया मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल, 1 bounce एंड ओवर द फेंस। और ऐसा कहना पड़ेगा, विद दिस बाउंड्री आरके स्ट्राइकर्स आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द मैच. So this is an absolutely magnificent slug. He's just got that one right from the spot and lofted that one in between deep mid wicket and a wideish long on and picked the gap firmly. हालांकि 2 फील्डर दौड़ कर आए लेकिन गेंद उनके बीच टिप्पा कर उन दोनों के सिर के ऊपर से निकल गई. डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए विनायक, और इस चौके के साथ अब इक्वेशन समीकरण देखिए. 14 रन चाहिए 13 गेंदों पर. 14 रिक्वायर्ड इन 13 डिलीवरीज. प्रणव भट्ट अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर, इस बार गेंद को उछाला है मिड विकेट के ऊपर से एंड इट्स अ बिग गेम. और इस छक्के के साथ आरके स्ट्राइकर्स आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द मैच. तो 34 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और 8 रन अब चाहिए. देखिए किस तरीके से इस छक्के को उछाला गया था. अब समीकरण बिल्कुल आसान. 8 रिक्वायर्ड इन 12 डिलीवरीज. अब ऐसा कहना पड़ेगा केएसके को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है. लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है. बाउंस बैक करने का मौका जरूर है कुडियाल सुपर किंग्स के गेंदबाजों के लिए. तो फिलहाल यहां पर तख्ता भारी लगता हुआ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಒಳಗಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ 8 required, 12 balls to go, and now first time the batsmen of RK Strikers are now looking right on top. The bowler starts the fresh proceedings from UTC end. Anup starts the fresh proceedings from commentator box end. और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सौरभ. और देखते हैं यहाँ पर इस ओवर में क्या होता है. तो निस्संदेह यहाँ पर कमबैक करना जरूरी है इस ओवर के जरिए केएसके के गेंदबाजों को. और देखना यह है कि यहाँ पर अनूप जो गेंदबाजी शुरू करने जा रहे हैं वो यहाँ पर किस तरीके की कमबैक इस ओवर में करते हैं. 8 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 12 बॉल्स. फर्स्ट बॉल फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज अनूप तैयार. पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट सौरभ के लिए. यह गेंद इस बार फ्लाइटेड. गेंद को हल्के से पुश किया. रन के लिए दौड़ पड़े. फील्डर काफी पीछे तैनात. 1 रन मिलेगा. 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा.
और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर. 7 required of 11 deliveries. So fantastic comeback made by the batsmen of RK Strikers in the last over. And all because of that 6 under boundary, 6 under 4 hit by the batsman Vinayak, and because of that they are strongly back in the match. 7 required, 11 balls to go in their innings. और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अनूप अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि डॉट गेंद शफल होते हुए गेंद को स्विंग करना चाहता ऑन साइड पर. नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज इस वक्त उनकी ओर बढ़े, उनसे कुछ कहा कि भैया इस वक्त सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है, आप किस तरह की स्ट्रोक यहां पर अपना रहे हैं. और इस बीच कुछ सलाह मशवरा करने के बाद अपने स्वस्थान पर इस वक्त बल्लेबाज लौट चुके हैं और रन से चाहिए 7 गेंदें बाकी हैं, 10. अगली गेंद के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, पुल किया है. इस बार मिड विकेट पर मौका हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. फुल टॉस गेंद थी, गेंद को उछाला था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, और गेंद डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा लपक ली गई. देखिए किस तरीके से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. टॉप एज पर गेंद टकराई थी और डीप मिड विकेट पर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को फील्डर ने लपका सीमा रेखा के अंदर. 35 for 4, 9 balls to go, 7 runs required. चंद डॉट गेंदों की इस वक्त सख्त जरूरत है केएसके के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए. और जहां तक सवाल है आरके स्ट्राइकर्स का, तो इस वक्त हर गेंद पर अगर वो सिंगल्स भी बनाते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. सेंसिबल बल्लेबाजी की इस वक्त उन्हें जरूरत है और संघर्ष अभी भी बरकरार. तो इस बीच अनूप नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. प्रताप नायक, one more good striker of the ball, is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अनूप की गेंदों का. अनूप दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद थी, स्टीयर किया, इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े. और जैसे ही बल्लेबाज के बल्ले से मेरे ख्याल से गेंद बल्ले से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी थी और आखिरकार गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाया. विकेटों के पीछे बाई के रूप में 1 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं. 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 6 to get, 7 balls to go in their innings, 8 balls to go in their innings in fact. और गेंदबाज अनूप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाज अनूप की ओवर की अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फील्डर काफी पीछे तैनात, 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर अपनाते हुए. Absolutely sensible cricket shown by the batsman in this delivery. वो जानते थे यहाँ पर कवर पॉइंट और पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए उनकी दाईं ओर से गेंद को अगर पुश करके खेला जाए तो डीप पर जो फील्डर खड़े हुए, डीप एक्स्ट्रा कवर पर काफी स्क्वायर है, डीप कवर पॉइंट पर कोई फील्डर नहीं है, और इसे देखते हुए हल्के से गेंद को पुश कर दिया. मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी और इस सेंसिबल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की बदौलत 2 रन बल्लेबाज बटोर चुके. 38 नाउ, 4 to get, 7 balls to go. तो इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, तो अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, रन के लिए दौड़ पड़े, यहां पर विकेट गिर चुका है. 1 more wicket ball on wicket number 5 down. It's 38 for 5 and now required runs is 4 and overs remaining last. 4 to get from 6 deliveries, and now let's see what will happen in their innings. So 4 to get from last over. तो इस वक्त अंतिम ओवर बाकी और 4 रन चाहिए विजय के लिए. तो 4 रन चाहिए अंतिम ओवर में, और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए.
तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। So the first ball of the last over of their innings is now coming up. Still some discussion going between the fielders in the pitch, in the middle of the pitch, and the match is now stopped for a while. अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ 4 रनों की दरकार और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट है। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद जाती हुई लंगोल की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। couple of runs added to the total. Fantastic running between the wicket और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर. It's 40 for the loss of 5 wicket and still just a couple of runs they have to score for victory. So 5 balls remaining, 2 to get. और ऐसा कहना पड़ेगा आर के स्ट्राइकर्स अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है इस वक्त. तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए एन राजेश सौरव भक्ता इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ा माफ कीजिए बल्लेबाजी के लिए तैयार. और इस वक्त सराउंडिंग फील्डिंग सजाई गई है. पॉइंट शॉट कवर फॉरवर्ड शॉट लेग इस वक्त मौजूद. शॉर्ट फाइन लेग हालांकि लेग स्लिप इस वक्त तैनात किया गया है. शॉर्ट मिड विकेट और सिंगल्स रोकने के प्रयास में. और अगली गेंद के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. अंतिम गेंद पर इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई धीमी ऑफ कटर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो इस वक्त 4 गेंदें बाकी है और 2 रन चाहिए. मैच में कशिश अभी भी बरकरार. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेकर तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया. गेंद इनटू द गैप. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर पर. दिस कुड बी टच. नो इन फैक्ट आरके स्ट्राइकर्स आर थ्रू टू द क्वालिफायर मैच नंबर 2 with this victory and what a fantastic match has been came to an end. तो यहां पर तो आरके स्ट्राइकर्स का मुकाबला सप्तमी वॉरियर्स के साथ होगा क्वालिफायर मैच नंबर 2 में. और वो मैच यहां पर चंद लम्हों बाद यहां पर शुरू होगा. तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच हैज बीन केम टू एन एंड एंड तो निस्संदेह बेहतरीन मैच यहां पर समाप्त हो चुका है. और यहां पर जहां तक सवाल है तो इस वक्त जहां तक सवाल है Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Teams really deserve the place in the big final. And wait and see. The first ball. Right now over the wicket. Varun Shanbag, as always, cuts that one pretty hard, and then he got that placement very well. Bound to deep backward point, boundary for 4 runs. So what a flying start here again from Varun Shanbag. He is a key player for the side of Arcus Strikers, and little bit short pitch delivered outside the line of off-stump, and batsman Varun Shanbag climbed onto that, and don't believe me or not, Gopi, because he is the one, Ratan, is bowled a maiden over the previous match. Not only bowled a maiden over, but he picked up a maiden 3 wickets, hat-trick wickets as well. And first ball itself, Varun Shanbag, look at the way he's cut that one. Again, going for the cut shot, is gone! He's gone! Wicket keeper behind the stump, complete the job here. This is what you talking about, the cricket is all about, isn't it? And look at the Ratan, Gopi. Even the first ball, which bowled the same line and length, the batsman Varun Shanbag is cut certain quite beautifully over the backward point region. But this time, little bit deviation, which is incoming delivery. Played the same delivery, inviting the batsman to go for the same cut shot. But this time he got a reward for that. This is the capability of good bowlers. After punishment, immediately very next ball he got a wicket off Varun Shanbag. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा था, पहले गेंद पर थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद फेंकी थी जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को उछालते हुए गेंद को खेला था कवर पॉइंट पर। दूसरी गेंद पर थोड़ी सी गेंद को अंदर की ओर उन्होंने लाई और आखिरकार गेंद को कट करने के प्रयास में चूके और गेंद उनके बल्ले के बाहरी सिरे को टकराने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो यहाँ पर वरुण शानबाग का विकेट गिर चुका है। तो मैं समझता हूँ सतीश, वरुण शानबाग का विकेट का पता निस्संदेह एक बिग बूस्ट इस वक्त कहलाएगा सप्तमी वॉरियर्स के गेंदबाजों के लिए। अगर वरुण शानबाग जितने ज्यादा ओवर टिकते तो उतना ही ज्यादा उनके लिए खतरा होता था, खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर उनका विकेट गिर जाने के बाद अब राहत भरी सांस यहाँ पर ले चुके। लेकिन ना यहाँ पर जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो मैं समझता हूँ आरके वॉरियर्स के बल्लेबाजों को इस वक्त एक साझेदारी पार्टनरशिप निभा रही है वरुण शानबाग के विकेट के पतन के बाद।
Absolutely, Gopi needed some partnership. Oh, just once again climbing onto that, plays it down just top of the infield. The three fielders behind the ball, and one fielder from the deep cow boundary region to cut it off before the ball is going over the boundary line. Just a couple of yards inside the boundary line, one of the fielders managed to pull that one. But in meantime, both the batters completed that couple of runs. Just look at it on a replay. Once again, the climbing of delivery, and batsman once again off the toes, is climbing on his toes and reaching to that short pitch delivery and plays it over the top of the cow point fielder, and got a couple of runs for that. 6 for the loss of 1 wicket. Ratan again bowling away from us. Right arm over the wicket. Vinayak Pai is the new batsman, just came into middle. Ashwath Pai is in onside Gazan. Ratan once again bowling away from us. Right arm over the wicket. Again the short pitch delivery, once again slashed that one over the top of infield. Once again the long chase here for the three fielders, and ball is just stopped inside the boundary line, just an inches inside the boundary line. They managed to stop that one, but meantime both the batsmen cross off for 3 valuable runs. Excellent running between the wicket. Ratan is not really learned from his mistake, isn't it? The first ball is a couple of runs, second ball he got a wicket for that same line. Third ball which is punished for the couple of runs. Even the fourth ball is the same line and length, and batsman capitalizing that short pitch delivery outside the line of off time to get past that infield. 9 valuable runs came for RK Strikers. 9 for the loss of 1 wicket. Ratan looking totally different bowler in this particular match. It's a 9 for the loss of 1 wicket. Again, Ratan bowling away from us, looking for some breakthrough. Of course, they got one breakthrough here, the big wicket of Varun Shanbag, but I think they needed more here. They needed more here. As again, right arm over the wicket, nicely turns that one down to mid-wicket region. The running guard looking for the second, but the fielder is very quick in the deep mid-wicket region. The Vignesh, one of the safest pair of the hands, done a great job in the previous match as well in the outfield. Needed such kind of energetic fielder in the outfield, and there's no question of second run at all. But altogether, it's a quick 10 runs which is came to the account of RK Strikers. 10 for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. The batsman is on strike now for Team RK Strikers. Vinayak going to face Ratan. Right arm over the wicket, again going for the big stroke, but not quite getting hold of that one properly. Got outside edge of the bat, ball running down to third man region. So third man region, one more addition to total. Addition of that single scored moves on to 11 for the loss of 1 wicket. 1 over completed, and Gopi, even they lost the wicket of Varun Shanbag, but nothing much different in that first over. Totally different. We can see that Ratan is in the previous match. He's been a very, very aggressive in his bowling. Picked up 3 wickets in maiden over. But here is 11 runs, even though he picked up 1 wicket of Varun Shanbag. But RK Strikers made a game plan that they need to capitalize that power play over. And they got a very valuable 11 runs. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त वरुण शानबाग का विकेट प्राप्त करने के बावजूद 11 रन इस वक्त बटोरने में सफल पहले ओवर में आरके स्ट्राइकर्स। और जहां तक वरुण शानबाग का विकेट प्राप्त किया था, तो विकेट प्राप्त करने के बाद जो दबाव उन पर क्रिएट हो चुका था, वो दबाव को कुछ हद तक क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज हटा चुके हैं बाद में कुछ रन्स बनाने के बाद। और इसी गति से रन्स बनाते हैं तो निर्धारित 5 ओवर में 50 का आंकड़ा वो पार कर सकते हैं, और 50 का आंकड़ा अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। लेकिन जहां तक सवाल है सप्तमी वॉरियर्स का, तो इस वक्त उन्हें कम बैक करना है एक बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए। Exactly, you need to come back as they brought Vinay this time lofted, and we're going to get the distance. Oh, once it looks like when one is taking an aerial route, it definitely is a little bit difficult to get the distance right. But ball is keep going and going. Look at that one on the replay. Once it looks like it's not really looks like he's controlled that stroke, but look at the way the ball is going. It's absolutely good camera work there from the V424x7 channel cameraman. Just look at that one landing point. Absolutely perfect catch here from the cameraman, but it was a fantastic 6 pitch came from the bat of Vinayak Pike. He's tried to swing that one again, missed it completely from the bat, and they're going for the quick single in the irrigation. Wait for the umpire signal whether it's going to be a by or from the bat, and the batsman saying it's from my bat. So that 1 run which is added to the account of Vinayak. Then 18 for the loss of 1 wicket.
It's a bowler from the far and Deepak from the professional career and bowling round the wicket to the left-hand batsman, changing his angle because left-hand batsman is on strike now. Ashwath Pai going for the cut shot, extra bounce here for the bowler in the delegation, Deepak Kamath in the delegation, bowled outside the line of off stump and he got a little bit extra bounce in the delegation. Of course, sometime in this pitch today we were observing that some deliveries is keeping low, some deliveries is getting some extra bounce. It's not so easy. And of course, batsman completely missed out the delivery. The wicketkeeper behind the stump, Vignesh did the rest and back to bowler. Seaming from the far end, Deepak Kamath, left arm. Balls to Ashwath once again steering it down to third man region for easy single. Intelligent cricket there from Ashwath. You know exactly that the kind of batting which is required after getting a flying start in the first over, and he won the good start. They got a good start in the second over. The rotation of strike that takes that scoreboard almost in the projected score almost 45 to 50 runs. It is going to be a very good score to defend against Saptami Warriors. Again, Deepak Kamath. Bowling from the far end. Right arm over the wicket. This time going for the big shot. Opportunity of caught and bowled. And that's it. Vinayak Pai's innings comes to an end. Looking for the one more big shot but not able to reach to the pitch of the delivery. Where he was standing, tried to hit the ball towards the mid wicket or wrong on revision is intention. But bowler bowled a little bit slower one. Look at that one now. How deep he is in the crease. He's almost going deep in the crease to hit the ball towards the mid wicket. But missed it completely from the middle of the bat, and the bowler himself taken at caught and bowled. It's a 19 for the loss of 2 wicket. Much required breakthrough here for Saptami Warriors. It's not so easy to play continuous cricket for 2 days. Of course, yesterday they played 2 or 3 matches. Today also they're playing some 2 to 3 matches. The level of fitness is going to be challenging for every team, especially the teams which is qualifying for the playoff rounds. The hero of the previous match. Every match is getting a promotion, Gopi. The first match he came as a number 6 or number 7 batsman. But every time when he is improving his performance, he's getting performance. Now he's coming as a number 3 batsman. Saurabh Bhakta. Bhakta got a promotion, but he is not really able to capitalize. It is a smart thinking, but it's a too smart from the captain of RK Strikers to call to send Saurabh Bhakta to bat in the number 4 position in the delegation. But he's tried to hit the ball, but not really getting the distance, and deep long on fielder takes a catch. That means bowler Deepak Kamath is on hat-trick. Over completed, he is on hat-trick for the next over. The hat-trick definitely will going to continue for the next over, Gopi, because when you bowl the second over, the first ball is definitely going to be, he's got a chance of getting a hat-trick. But now it's the over which is completed, 2 overs completed, 19 for the loss of 3 wicket and better over, Gopi, compared to previous one. I think it's 11 runs which came from the first over. Now it's 8 runs which came from the bat and that over. But more than anything else, 2 very good wickets in that over from Deepak Kamath. एग्जैक्टली सतीश पहले ओवर के मुकाबले ये ओवर बेहतर रहा जिसमें 8 रन प्रदान किए गेंदबाज ने और जहां तक कम स्कोर पर खड़ा कर रखने का सवाल है कम से कम 40 के आंकड़े के अंदर इस वक्त रोक कर रखना होगा आरके स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को यहां पर सप्तमी वॉरियर्स के गेंदबाजों को अगर उनके बल्लेबाजों को एक छोटा लक्ष्य अगर मिलना है तो उनके गेंदबाजों को इस वक्त एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी और आरके स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को 40 रनों के लक्ष्य के अंदर रोक कर रखना होगा। जहां तक आरके स्ट्राइकर्स का सवाल है इस वक्त 40 का आंकड़ा यहां पर उन्हें पार करना होगा। अंडर दिस कंडीशन अबव 40 टारगेट विल बिकम कॉम्पिटिटिव। इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहां पर आरके स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को एक बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। देखते हैं क्या होता है बचे हुए 3 ओवर में। Absolutely, Gopi, and Deepak is a new bowler. He came into ball and is appealing for leg before wicket, but I think ball pitched outside the line of leg stump. That's why umpire Viraj, rightly so, is not interested. Pitching outside the line of leg stump is the most probably when he is bowling round the wicket because the left-hand batsman is on strike, Gopi, and that's why the ball pitched outside the line of leg stump. Just a lovely presence of mind here from umpire as well, seeing that ball pitched outside the line of leg stump. He won the ball going to hit the leg stump, but the fact that ball pitched outside the line. 19 for the loss of 3 wicket. This time going for the big swing. Missed it completely. Good start there from Deepak. The one Deepak already completed a very good over. Now another Deepak Yach came into ball and bowled 2 very good deliveries to start with. That kind of
over which is badly required for Saptami Warriors. Third time in this over. Right arm round the wicket, he ball. Swings it hard. But fielder can't get there. He's trying his level best to make a little bit jump to stop that one. But still ball is just defeating that trying hands of the mid-wicket fielder. It's a much required blow coming from the bat of the left-hand batsman Karthik. Little bit correction, Ashwath Pai. Just look at that effort from the fielder. Just an inch that ball misses the trying hands of that fielder. It's 6 and score jumps into 25 for the loss of 3 wicket. Equal battle is on. Do or die situation for the both the teams. They wanted to do before die. Both the teams knows that the winning this match is so important if they wanted to get the place in the big final of this mega final of this Panthers Super League 2023. And lovely number of crowds watching this fantastic game of cricket here. And already one team which is qualified for the big final is the VV cricketers, VV Warriors. Already they came into the finals. They're waiting for the winner of this match. And so far it's a good cricket is going on. The over number 3 in progress. Already 25 huge score on the board for RK Strikers. Now, a lot of discussion is going on here. So need to be seen, I think, is the time which is noted in this particular match. Already 13 minutes which is taken by the bowling side to bowl 2.3 overs. Not a bad one, but needed a little bit quick work as Deepak once again back to his bowling mark. Ashwath, very useful cricketer, isn't it? Even after losing their trump card batter Varun Shanbag, he's just taking the initiative. This time, lofted and he got that flatter version 6. Ball is just hitting the gallery down at deep backward square leg region. So second sixer of this over. Deepak is getting some punishment from Ashwath. Look at the supporters of RK Strikers. They are really looking there on their feet. They're enjoying each and every runs which is scored by their teammates. Here is Deepak again. Ball swings hard, right in the gap. One bounce over the rough. We wait for the umpire signal, but it's a naked eye. It looks like it's going to be a boundary, but we wait for the umpire signal. It's a final decision from the umpire, the field umpires. But you need to check out whether it's a boundary or a 6. What a batting performance there from Ashwath. The 4 which is signal, and score jumps into 35 for the loss of 3 wicket. Ashwath is on fire. He scored 18 runs so far in just 8 deliveries. What a fantastic batting performance from him. After he starts well, Deepak starts with 2 dotted deliveries, then followed by 1 6 and 2 boundaries. 2 6 and a boundary. That means 16 runs which is scored in the last 3 deliveries of this over of Deepak. Now keeping one field in the deep backward square leg and deep mid wicket is very close together. Beautifully bowled, a Yorker line delivery. That is a comeback which is badly required for the bowler like Deepak in the negation if they wanted to survive. One more over completed. Over number 3 completed after completion of over number 3. It's a 35 for the loss of 3 wicket. And it's good going, Gopi. One more better over, isn't it? Deepak starts well, but not finished well. Of course, he finished well with the last ball, but between that 3 balls is really changing the complexion of that over, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर पहले बेहतर गेंद के साथ शुरुआत जरूर की थी, लेकिन अश्वथ ने 2 छक्का और चौका ऑन साइड पर लगाया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. उसके बाद वो कुछ हद तक महंगे साबित हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बन चुके हैं. द प्रेजेंट रन रेट इज नाउ गॉन the present run rate is now progressing here for them is exactly 11.66 runs per over. और इस ओवर में 17 रन बने. one more good over came to an end in the innings of RK Strikers. और यहाँ पर बचे हुए 2 ओवर में अगर कम से कम 15 से 20 रन भी बटोर लेते तो 50 का आंकड़ा वो पार कर जाएंगे. और अंडर दिस कंडीशन 50 प्लस इज अ कॉम्पिटिटिव टारगेट इन फ्रंट ऑफ सप्तमी वॉरियर्स. और सबसे पहले सप्तमी वॉरियर्स को यहाँ पर उनके गेंदबाजों को यह करना है कि 50 रनों के आंकड़े तक पहुंचने से बल्लेबाजों को रोकना है आरके वॉरियर्स के. और देखना यह है कि सप्तमी वॉरियर्स अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब होते हैं इन बचे हुए 2 ओवर्स में. Exactly, Gopi.
the worries which is not completely out of the Warriors, because how to stop them from the 50 runs, which is definitely going to be a psychological advantage once you're going to get that 50. When they're going to chase those runs, definitely it's going to be a big ask, and that's why they wanted to ball 2 very good overs, Gobi, if they wanted to restrict them. He's on a hat-trick now. Now ball is, which looks like excitement. Maybe he's got a outside edge of the bat. Seeing the excitement and the disappointment in the face of a bowler, looks like it was a hat-trick opportunity. And definitely it's a hat-trick opportunity. It's missed out by the wicketkeeper behind the stump, Vignesh. The bowler, Deepak Kamath. And probably becomes a 4th bowler to become the hat-trick, but he's just missed that opportunity. This time again, lovely delivery, good fouling there from Deepak, handling the pressure very well. The kind of over which is badly required for Saptami Warriors. It's been outstanding thinking there by Deepak Kamath. The back of length delivery, change of pace. The outstanding one here from the bowler. This is what's really required, isn't it? When the batsman is in an aggressive frame of mind, you need to little bit experiment, isn't it? Innovative thinking is so important as Deepak. Bowling from the far end, right arm over the wicket. Again, lovely delivery. The delivery which is very difficult for the batsman to go for any kind of big shot in the relegation. But I think the batsman did the right thing here to pick the single and give the strike as much as possible to Ashwath, who is looking pretty good in the middle. So far he is batting very well, scored 19 valuable runs in just 9 deliveries. And the scoreboard is now 36 for the loss of a 3 wicket. Over number 4 in progress. Now wait to see Ashwath how will going to bat from this end. Because probably that from that end he's scored so many runs. But in this end, I think it's not that much of easy for the left-hand batsman, and wait and see. Deepak bowls this time, almost climbed onto that and pulls that one down to deep backward square leg region for a single. The directed short pitch, slow short pitch delivery in the relegation there by the bowler Deepak Kamath, so that make a little bit trouble for the batter to pull that one quite from the middle of the bat. But he's not really able to hit that one very hardly, but he's just helping it down to square leg region for a single. 37 for the loss of 3 wicket. Again a bowler from the far end to Karthik Nayak. Karthik Nayak again swinging and missing. Vignesh stopped fumbling, but no question of any run at all. It was a fantastic going in this over there for Saptami Warriors. Just like I mentioned, even Gopi's mentioned about the first priority of Gautam correction for Saptami Warriors to that they need to restrict them not to get that 50. But so far I think bowlers succeeded, but job is not yet over. Again Deepak bowling from the far end, right arm over the wicket, swings and misses. It's not a good thinking from the batter point of view. Just a couple of runs, Gopi. Outstanding over there from Deepak. It's a 37 for the loss of 3 wicket. Once again, Saptami Warriors back in this game, Gopi. But 1 over which is required, which is going to be more crucial for both the teams, isn't it? After that economical over of 2 runs, even now RK Strikers just thinking about how to get that 13 runs, which is we are talking about psychological advantage of 50. At the same time, Saptami Warriors bowlers thinking about how to restrict them less than 50. But that's just a good over from Deepak Kamath. Exactly, Satish. Under pressure, this is a good over. Just 2 runs conceded in this over. और जहाँ तक इस पिछले ओवर के शुरुआत से पहले रन रेट था 11.66 रन प्रति ओवर, और इस ओवर के समाप्ति के बाद रन रेट उतर कर आ चुका है 9.25 रन प्रति ओवर. तो अंतिम ओवर में 13 रन बनाना है इस वक्त आरके स्ट्राइकर्स को. अगर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो 13 रन बनाने से यहाँ पर रोकना है गेंदबाजों को सप्तमी वॉरियर्स के. और देखते हैं यहाँ पर अंतिम ओवर में कौन अपने मकसद में कामयाब होता है और कितना स्कोर इस अंतिम ओवर में आरके वॉरियर्स के बल्लेबाज बना पाते हैं. Absolutely, Gopi. Anantappai is brought to attack, one of the most economical bowler as far as this particular tournament is concerned for Saptami Warriors. He is now bowling last over, but here is a batsman, Ashwath Pai is a well-settled batsman in the middle, and wait and see, it's a great battle between these two. Very good performance, chance of catch. Look at the effort there from Vignesh. Absolutely fantastic, isn't it? Even though he couldn't manage to take the catch, Gopi, but having that much of heavy weight in his body, the diving to front is not so easy, isn't it? But everyone need to appreciate his effort there from Vignesh, trying his level best. Just I want to see it in the replay. Look at that one. It's a full and dive. He strikes just spreading his right hand, but not really able to take that catch. But unfortunately, but he's tried his level best to take the catch. This time again, one more good delivery again from the bowler. I already mentioned this man Anantesh looks like he's bowling very simple bowling action, Gopi, but lot of variation in his bowling. Very difficult to judge his
line and length, and 2 deliveries, he able to defeat the bat of Ashwath again. Full toss. This is a punishable delivery. You can't do that mistake. You can't do the mistake against Ashwath, isn't it? Bowling that full toss is a juicy full toss, and Ashwath saying, "Thank you very much, my dear friend, for that full toss delivery. I'm just waiting for that one. I am just waiting for that one," and he's delivered that one down to deep backward square leg for a huge 6 and 43 is now total score. So sometimes it's happening in cricket, isn't it? After that 2 balls, maybe Anant is thinking about the ball that one little bit outside the line of off. No, or maybe he's thinking of that Yorker line delivery, but Ashwath picked that one quite very well. This time, once again, swings, and the fielder just as spectators. The one more 6. Now what we are talking about, go with the 50. Now it's a manageable because just one shot of 50. 49 for the loss of 3 wickets. What an innings is Ashwath is playing here. He's batting on quarter century. He's batting on 31. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ಡಗ್ಔಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. Please. So thank you very much, and 2 6s in a row. Will it go into a hat-trick? No, it doesn't. But Ashwath doesn't want to take a single here. He wanted to keep the strike for the remaining deliveries. The last delivery of the innings is coming up. He wanted to finish this innings with a one more big shot. Here is, but here is a bowler wanted to bowl one more, got dotted deliveries. A 49 already is a big score on the board for RK Strikers. Last delivery, 50 comes up. 50 comes up here for RK Strikers. The 50 for the loss of 3 wickets. Still they have to bowl one more delivery. You need to repeat that delivery. Anant bowling away from us. Right now around the wicket. Once again hits that one firmly. It's going to be a third sixer. Oh, what a way to finish that one. 56 is the total score. And 57 to win the match. And what an innings is played, Ashwath. Absolutely one of the best innings he's played for his team in this do or die matches. An outstanding finish, Gopi. What an innings Ashwath is played in. Absolutely unbelievable, isn't it? 3 6s, and it's definitely going to be one of the best innings we've seen in this particular Panthers Super League 2023. Exactly, Satish. There is no doubt about that. Absolutely fantastic batting performance came from the bat of Ashwath in the last over. 3 sixes hit by him. And because of that, they finished well with 56 for the loss of 3 wickets. 57 the target for Saptami Warriors. And as far as the required run rate is concerned, exactly 11.40 runs per they have to score for victory. Under this condition, Satish, it's going to be difficult but not impossible. If they batted bravely, right from the first over of their innings, it would have been possible for them. And let's see what will happen in their innings. We are just taking a short break, and we'll be back right after the short break where the innings of Saptami Warriors will going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
जो देश विदेश में इस क्रिकेट श्रृंखला का आनंद उठा रहे हैं उन सभी का स्वागत है। अभी तक आपको आंखों देखा सुना रहे थे सतीश और गोपी, और संघर्ष अभी जो चल रहा है इस वक्त सप्तमी वॉरियर्स और आर के स्ट्राइकर्स के बीच में। टॉस जीतने के पश्चात सप्तमी के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 57 रनों का लक्ष्य उनके सामने रखा गया है और दो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके। क्या कुछ होता है, शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। शानदार रोशनी, दूधिया रोशनी फ्लड लाइट की मैदान पर फैल चुकी है और इस दूधिया रोशनी में नहाता हुआ ये मैदान। इस छोर पर गेंदबाज तैयार हो रहे कार्तिक नायर और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर विघ्नेश। स्ट्राइक एंड पर कार्तिक की गेंद विघ्नेश को। विघ्नेश जो कि आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और विकेटों को लगभग मुझे लगता है कि शायद मिडिल स्टंप के साथ वो गार्ड ले चुके हैं और मात्र एक स्टंप उनका दिखाई पड़ रहा है। स्टांस कुछ ज्यादा ऊपर नहीं है। इस छोर से ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, ऑन साइड पर ब्लॉक, गेंद को लपेट कर खेल दिया। फील्डर वहां पर आ चुके हैं मिड विकेट डीप पे, उन्होंने गेंद को उठा लिया। हालांकि कैच का मौका जरूर था, उनके हाथ से गेंद छूट गई और जीवन दान मिला बैट्समैन को। तो विघ्नेश जैसे बैट्समैन का कैच ड्रॉप करना निश्चित तौर पर बहुत गफलत पैदा कर सकता है। ऐसा बैट्समैन जो परिस्थिति को बदल सकता है। काफी मजबूत शरीर के धनी विघ्नेश जाने जाते हैं अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए। शॉट ऑफ लेंथ थी, भटकी हुई गेंद जिसको ऑन साइड पर मिड विकेट के दिशा में उछाल कर खेल दिया और फील्डर लगा ऐसे कि शायद वो गेंद को कैच ही कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई प्रेशर की वजह से और बैट्समैन विघ्नेश को एक जीवन दान मिला। एक रन बगैर किसी नुकसान के। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर रतन आ चुके हैं। कार्तिक की गेंद रतन को। कार्तिक हमसे दूर जाते हुए ऑफ साइड पर दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। ऑफ साइड पर ऑन साइड पर अगर देखा जाए तो 4 खिलाड़ी दायरे को घेर कर खड़े हुए हैं। उर्वा के मैदान में आज कहना चाहिए कि मैदान के बाहर ढेरों दर्शक उपस्थित हैं शानदार क्रिकेट श्रृंखला का आनंद उठाने के लिए। बहुत अच्छा खासा एंटरटेनमेंट उनका हो रहा है। पैंथर सुपर लीग 2023 इस छोर से राउंड विकेट। ये गेंद कार्तिक की उछाल दिया हवा में, कैच हो सकता है स्क्वायर लेग में। फील्डर आ गए, गेंद को उन्होंने कैच कर लिया। उत्साह मना रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा विकेट लिया। पहला विकेट जो कि गिर चुका है। इसी के साथ सारे फील्डर से एकत्रित होकर उत्साह जश्न मना रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक के व्यक्तिगत योग पर मात्र 1 रन और एक के व्यक्तिगत कुल योग पर 1 विकेट जो कि बहुमूल्य गिर चुका है। बैट्समैन कार्तिक जो कि रतन आउट होकर लौट चुके हैं, जबकि कार्तिक की गेंद इस छोर से और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन दीपक आ चुके हैं। दीपक क्या कुछ कर पाते हैं, क्या वो विघ्नेश का साथ देंगे? विघ्नेश जैसे बैट्समैन को अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो निश्चित तौर पर ये रन्स बनाए जा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ जो कि समर्थक इस वक्त चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। इस छोर से कार्तिक का आक्रमण तैयार। ये गेंद ड्राइव कर दिया, जड़ से निकालते हुए फील्डर के दिशा में गई। रन चुराना चाहते थे दोनों बैट्समैन, लेकिन फिर अपने बढ़ते हुए कदमों को खींच लिया, क्रीज के दिशा में सुरक्षित कर दिया। कवर क्षेत्र में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया था। रन लेने का अवसर नहीं है। शानदार मौसम है और धीरे धीरे मुझे लगता है जिस तरह से कल भी हुआ था ओस पड़ने जा रही है। आकाश में धुंधले धुंधले सफेद जो आप देख रहे हैं, रंग आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओस पड़ रही है। कमेंटेटर बॉक्स छोर से गेंद को लेकर कार्तिक दोबारा तैयार हुए। उनकी गेंद राउंड विकेट बैट्समैन के लिए ऑन साइड पर घुमाकर खेलने के प्रयास में थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकले शफल करते हुए, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद काफी नीची रही और उसको घुमाकर खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए, क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगा रहे थे उसकी तरह से गेंद आई नहीं और टप्पा खाकर कुछ ज्यादा नीचे रही और इस प्रयास में वो विफल हो गए। कार्तिक कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बढ़त हासिल कर चुके हैं। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट अर्जित कर लिया कार्तिक ने और बहुत विश्वसनीय तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। मुश्किल से 10-12 कदमों का उनका रनअप है और मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं।
दीपक के लिए उनकी अगली गेंद। हमसे दूर जाते हुए कमेंटेटर बॉक्स छोड़ से ये गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड पर उछाल दिया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, फील्डर के पहुंच से दूर थी लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास, गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर की तरफ उन्होंने ढकेल दिया। जब तक वो गेंद को थ्रो कर पाते, दूसरा खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, बैट्समैन ने दूसरा रन पूरा कर लिया। जोड़े में शिकार कर रहे हैं फील्डर, आउटफील्ड में जितने सारे फील्डर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहा। एक ने गेंद को अंदर की तरफ रोक लिया, दूसरे ने गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया और संभावित चौके को रोककर बैट्समैन को मात्र 2 रन लेने का अवसर प्राप्त हो चुका है। 3 रन से 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी दीपक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से विकेटों को उन्होंने कवर कर लिया, ढक लिया है और फिर उसको देखते हुए थोड़ा सा ऑफ स्टंप को उन्होंने छोड़ दिया और कार्तिक की गेंद को कार्तिक की गेंद का सामना करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। राउंड विकेट इस छोर से ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर को मजबूर होना पड़ा। विराट जी ने हाथों को फैलाते हुए कहा कि वाइड है, लेग स्टंप के बाहर थी और कार्तिक कहीं ना कहीं इस प्रयास में लगे हुए थे कि गेंद को लेग स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आए, लेकिन गेंद थोड़ा बाहर की तरफ निकल गई और गति परिवर्तन में, कहीं ना कहीं दिशा परिवर्तन में, माफ कीजिएगा, बीट हो गए और विकेट कीपर गेंद को संभाल चुके हैं। रन्स बढ़कर 4 पर 1 विकेट के नुकसान पर एक बहुत अच्छा द्वंद्व संघर्ष देखने को मिल रहा है दीपक और कार्तिक के बीच में। विघ्नेश ने इस बीच जाकर अपने साथीदार को समझा दिया कि उनको क्या करना होगा। इस छोर से कार्तिक हमसे दूर जाते हुए राउंड विकेट, उनकी गेंद और इस बार उछालने का प्रयास किया, विकेट जी नहीं, विकेट कीपर के पास थ्रो आ चुका है। मिड विकेट की दिशा में फील्डर बहुत जल्दी गेंद के ऊपर चपलता के साथ आ गए, उन्होंने गेंद को उठा लिया और रही गई कसर जो कि विकेट कीपर ने पूरा कर दिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। ओवर की संख्या, हालांकि पहला ओवर समाप्त हो चुका है, पहले ओवर के समाप्ति पर 4 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। कार्तिक का ये ओवर काफी सफल और किफायती रहा, मात्र 4 रन वो खर्च कर चुके थे। अब जीत का लक्ष्य, जैसा मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर इस मैच को जीतने के लिए 57 रनों की दरकार है और सप्तमी वॉरियर्स, सप्तमी के योद्धा हैं जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों बैट्समैन, विघ्नेश खास तौर पर जो बहुत ही चिर परिचित हैं, उनके समर्थक बहुत ज्यादा हैं। अगर विघ्नेश का बल्ला चल गया, अगर बल्ले को उन्होंने तलवार बनाकर चलाना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर गेंदबाजों के विश्वास को वो तोड़ सकते हैं और इस प्रयास में विघ्नेश अपनी एकाग्रता को बना रहे हैं। दूर वाली छोर से नया ताजा ओवर लेकर अश्वत आ रहे हैं। अश्वत को सोचना होगा कि उनके सामने एक आक्रामक बैट्समैन मौजूद है तो वो किस तरह से, कौन सी योजना के साथ गेंदबाजी करेंगे और थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहते हैं कि फील्डर अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। फैला हुआ फील्ड का प्रदर्शन, एक श्वान बिल्कुल हमारे सामने मैदान पर गुलाटी मार रहा है और उस छोर से अश्वत आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। क्या कुछ होगा, बहुत ही संघर्ष देखने को मिल रहा है। अश्वत क्या बैट्समैन विघ्नेश को परास्त कर पाएंगे या विघ्नेश हावी हो पाते हैं? उस छोर से ये गेंद यहां से होते विकेट, इस बार फ्रंट फुट पर, क्या बात है, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया और दिखा दिया कि वो बहुत स्टाइलिश अंदाज में भी स्ट्रोक खेल सकते हैं। बल्ले का मुंह खोल दिया, फ्रंट फुट पर गेंद को धीरे से उन्होंने कवर की दिशा में ढकेल दिया। 1 रन के साथ ही कुलियों को बढ़ाकर पहुंचा चुके हैं 5 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अब दीपक स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दीपक को उस अदाकार की तरह भूमिका अदा करनी होगी जो हीरो को सपोर्ट करता है। हालांकि वो भी विश्वसनीय बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त परिस्थितियों की जो मांग है उसके अनुसार उसके अनुरूप अगर वो बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर जीत का स्वाद वो अपने टीम को चखा सकते हैं। दूसरी ओर आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाज अश्वत उंगलियों के बीच में गेंद को फास्ट कर तैयार हुए, उनकी गेंद हवा में खेल दिया, तैरती हुई गेंद हवा में, हालांकि थोड़ा सा बाहर निकलकर गेंद को खेलने के प्रयास में गेंद एक्स्ट्रा कवर डीप में गई। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, बैट्समैन के पास इतना समय कि वो 1 रन को बटोर लें। 6 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 6 for 1। और अश्वत ने अचानक, ये लिमिटेड ओवर्स के मैचेस का एक पैतरा होता है कि अचानक एक गेंद फुल टॉस या कदमों के तले या फिर ब्लॉक होल में कर दी जाए ताकि बैट्समैन इससे परेशान हो जाए, अनुमान न लगा पाए। ऐसे में अश्वत की अगली गेंद, उनके सामने विघ्नेश मौजूद है। विघ्नेश ने गेंद को उछालने का प्रयास किया, लाइन पर पहले आने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप को पूरी तरह से कवर कर लिया और गेंद को उछालने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद टपा खाकर थोड़ा सा स्विंग होकर विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। उस छोर से यह गेंद इस बार थोड़ा सा धीमा बाउंसर था जिसको देखते हुए पीछे हटते हुए विघ्नेश ने धीरे से गेंद को पुश भर कर दिया, बल्ले का सिरा देकर
फिसलने दिया जब तक फील्डर आकर गेंद को उठाते आसानी के साथ 1 रन पूरा कर चुके हैं। 7 रन बन चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दीपक स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक रोटेट हो रहा है। दोनों बैट्समैन इस बात से भली भांति वाकिफ है कि उनको अभी थोड़ा सा लय प्राप्त करना है। मोमेंटम अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। उस छोर से ऑफ स्टंप के बाहर निकली गेंद अश्वथ की और अंपायर को मजबूर होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दिया। हाथों को फैलाते हुए उन्होंने संकेत किया कि वाइड है। एक और अतिरिक्त रन बढ़कर पहुंच चुका है 8 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अश्वथ थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे। उनकी गेंद इस बार सही दिशा में, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को और हल्की सी यहां विकेट कीपर और अश्वथ ने निकाली, लेकिन इसका असर अंपायर पर नहीं है और रन लेने का अवसर वैसे भी नहीं है। थोड़ा सा पीछे हटते हुए गेंद को दीपक खेलना चाहते थे। गेंद उनके पैरों से टकराई, ब्लॉक होल में डालने का प्रयास था और ऐसी गेंदें जो निश्चित तौर पर बैट्समैन को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देती है। दीपक स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। उनकी गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, एक और वाइड गेंद। अश्वथ जो वेरिएशन करना चाहते हैं, दिशा परिवर्तन बार बार वो कर रहे हैं, उसमें वो खुद फंस रहे हैं क्योंकि जिस तरह से गेंद को उन्होंने इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकाला था, वो एंगल डिलीवरी जिसे कहते हैं, अगर स्लिप के एंगल को पकड़ते हुए गेंद करने वाली गेंद और वो दिशा से बाहर गई। अंपायर ने कहा कि वाइड है। उस छोर से अगली गेंद उछालने का प्रयास, बहुत जोरदार, जी हाँ, अपील हालांकि हल्की थी। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल के साथ उछल कर आई। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 2 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बन चुके 9, 1 विकेट के नुकसान पर 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और दोनों बैट्समैन आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा सारे फील्डर्स एकत्रित होकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। रनों पर अच्छा खासा वो अंकुश लगा चुके हैं और अब दोनों बैट्समैनों में से अगर एक भी बैट्समैन आउट हो जाता है, निश्चित तौर पर एक ब्रेक थ्रू अगर मिल जाता है तो बात बन सकती है। और इसी प्रयास में आरके स्ट्राइकर्स जो कि लगा हुआ है, कप्तान बार बार गेंदबाजों का चयन काफी सोच विचार करने के पश्चात कर रहा है। इस छोर से अब मुझे लगता है कि शायद कार्तिक इस छोर से आ रहे हैं। कार्तिक का आक्रमण पर, कार्तिक अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं और उनके सामने विघ्नेश ऐसा लग रहा है कि शेर को कुछ देर के लिए बांध के रखा हुआ है और वो थोड़ा सा डिफेंसिव बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अपनी एरियाज में गेंद मिल जाए और वो आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करें। और ऐसे में क्या होगा, कार्तिक गेंद को लेकर तैयार हुए, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर थोड़ा सा समय ले रहे, गेंद को पटक कर योजनाबद्ध तरीके से हमसे दूर जाते हुए उनकी गेंद ओवर द विकेट विघ्नेश के लिए। विघ्नेश ने ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर तैनात कर दिए गए हैं और विघ्नेश के लिए जानबूझकर 2 फील्डर्स ऑन साइड में डीप में रखा गया है ताकि विघ्नेश ऑन साइड पर जो लपेट कर स्ट्रोक खेलते हैं वो उसको रोका जाए या फिर कैच कर लिया जाए। इन रनों के साथ ही रन्स बढ़कर 10 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अंपायर ने, विराट जी ने संकेत किया कि नो बॉल है और अब अवसर मिलेगा बैट्समैन को कि फ्री हिट लगाएं वो, और फ्री हिट का ये अवसर बैट्समैन के पास क्या कुछ हो पाता है। बैट्समैन क्या इस फ्री हिट का लाभ उठा पाएंगे क्योंकि उनके सामने 57 रनों का लक्ष्य है और अब तक मात्र 9 रन बन चुके हैं, 11 रन बन चुके हैं, माफ कीजिएगा, 11 for 1, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो दरकार है इस वक्त चौक और छक्कों की और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त दीपक आ चुके हैं। फ्री हिट का अवसर है, जी हां। कार्तिक गार्ड बदलते हुए अब दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए वो ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए शायद आ रहे हैं। कार्तिक की गेंद, दीपक को फ्री हिट का अवसर, क्या इस बैट्समैन को रोक पाएंगे, देखने वाली बात होगी। इस छोर से कमेंटेटर बॉक्स छोर से ये गेंद कार्तिक की एकाग्रता बनाने के लिए वो बार बार गेंद को पटक कर तैयार हो जाते हैं। 7 नंबर के जर्सी में दौड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, हमसे दूर जाते हुए। राउंड विकेट है उनकी गेंद। ये गेंद ऑन साइड पर उछालने के लिए क्या प्रयास जरूर किया लेकिन मिस कर गए, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर लेग बाई के रूप में। कार्तिक ने बहुत चतुराई के साथ, चपलता के साथ, बड़े निपुण गेंदबाज हैं, उन्होंने गेंद को जड़ में डाल दिया और इस प्रयास में बैट्समैन थोड़ा सा शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। गेंद को खेलने के प्रयास में गेंद उनके पैरों से टकराई, 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन को मिला। 12 रन से 1 विकेट के नुकसान पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। विघ्नेश स्ट्राइक एंड पर और विघ्नेश
जिसके लिए जाने जाते हैं वो अभी शायद थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दर्शक, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक यही उम्मीद कर रहे हैं अगर उनका बल्ला बोल उठता है तो बात बनेगी। लेकिन कार्तिक रोकने के लिए अपनी तरफ से बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं और इस बार उछाल दिया। आखिरकार कब तक रोक पाएंगे इस बल्लेबाज को? विघ्नेश का ये स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के ऊपर से गया 6 रनों के लिए। शानदार छक्का और इस छक्के के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। आखिरकार शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया। जिस तरह से विघ्नेश ने स्ट्रोक खेला, हालांकि वो बार बार थोड़ा सा डिफेंसिव बल्लेबाजी अपना रहे थे, लेकिन अब उनको अपने एरिया में थोड़े से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली और टप्पा खाने के बाद उछल कर आए, उसका पूरा फायदा उठा लिया। थोड़ा सा पोजीशन बना लिया, गेंद को खूबसूरती के साथ मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। इस छोर पर दोबारा कार्तिक तैयार हो रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। उनकी गेंद ओवर द विकेट विघ्नेश के लिए फुल टॉस थी, एक और जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जी अंपायर ने कहा कि ये 4 रन हो सकते हैं और उसी के साथ नो बॉल का संकेत भी उन्होंने किया। 4 रनों के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 23 पर 1 विकेट के नुकसान पर 23 for 1। कार्तिक कहीं ना कहीं अपने विश्वास को खो चुके हैं। कप्तान विकेट कीपर आकर उनको समझा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत निर्णायक मोड पर इस वक्त खेल चल रहा है, तो कार्तिक को चाहिए कि वो बहुत सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें और बिखरे हुए आत्मविश्वास को एकत्रित करते हुए वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। विघ्नेश का क्या कहना, और विघ्नेश स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हुए। 2 जबरदस्त चौका, एक जबरदस्त छक्का, एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं। जब भी शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आते हैं निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अब कुछ आक्रामक स्ट्रोक लगेगा। फ्री हिट का अवसर है, क्या इसका लाभ उठा पाएंगे? ये गेंद कार्तिक योजनाबद्ध तरीके से योजना बना रहे हैं कि अब इस बैट्समैन को उसकी नाजुक नब्ज क्या है जिसको पकड़ा जाए। हमसे दूर जाते हुए ये गेंद ओवर द विकेट विघ्नेश के लिए बीट कर गई गेंद और विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और तेज कदमों के साथ विघ्नेश ने 1 रन पूरा कर लिया। लेकिन अपने आप को कौस रहे हैं कि अच्छा मौका उन्होंने गवा दिया। लेकिन इस बार प्रशंसा करनी होगी कार्तिक की कि उन्होंने बहुत अच्छी गेंद की थी। इस बार गेंद लगभग स्लॉट से थोड़ा आगे गिरी और बिल्कुल बैट्समैन को बीट करते हुए इस गेंद को न मालूम क्यों फुल टॉस लेकर खेलना चाहते थे और इस वजह से बीट हो गए। गेंद उनके पैरों के नीचे से निकलते विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। रन्स बढ़कर 24 पर 1 विकेट के नुकसान पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। विघ्नेश ने अपने साथीदार दीपक को समझा दिया कि उनको क्या करना होगा। पैंथर्स सुपर लीग 2023 नई योजनाओं के साथ, शानदार बड़ी उपलब्धियों के साथ बड़े पैमाने पर इस क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया गया और विघ्नेश जी और उनके साथीदार ने कमाल की क्रिकेट श्रृंखला बनाई है। जो फीडबैक मिल रहे हैं उससे लग रहा है, जो सीधा प्रसारण है उसको देखकर जितने सारे शानदार कमेंट्स मिल रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कार्तिक ने दोबारा गार्ड बदल लिया, राउंड विकेट वो दीपक को कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद दोबारा उन्होंने किया है और इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को पुल कर दिया बैट्समैन ने। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर मिलेगा बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 25 पर 1 विकेट के नुकसान पर 25 for 1। काफी लंबा ओवर कार्तिक का साबित हो रहा है। तो कार्तिक के इस ओवर में लगभग मुझे लगता है 16 रन अब तक वो खर्च कर चुके हैं। निश्चित तौर पर वो अच्छे प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं, लेकिन कभी कभार समय जब साथ न दे तो बात नहीं बनती है। दोबारा वो उनके सामने विघ्नेश आ चुके हैं, तो विश्वास को उनको एकत्रित करना होगा और कहीं ना कहीं उस नाजुक नब्ज को पकड़ना होगा। कार्तिक तैयार हो रहे हैं। हमसे दूर जाते हुए उनकी गेंद ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस थी और दोबारा गेंद को उछाल दिया सही दिशा में और गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई है 6 रनों के लिए। वन मोर बॉल टू गो। जबरदस्त छक्के के साथ ही 31 रन से 1 विकेट के नुकसान पर इस छक्के के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। कमाल का स्ट्रोक। कार्तिक बार बार वही गलती कर रहे थे कि फुल टॉस गेंद कर रहे हैं और विघ्नेश जैसे बैट्समैन को अगर आप फुल टॉस गेंद दे दो तो निश्चित तौर पर शेर के मुंह में निवाला डालने के बराबर है। विघ्नेश ने आक्रामक तरीके से उछाल दिया। कल मैंने आपको कहा था कि समय अगर आंखें फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है, लेकिन जब शेर अपनी पर आ जाता है
तो कुत्ता भी समझ जाता है कि शेर शेर ही शेर होता है। तो इस प्रकार विघ्नेश स्ट्राइक एंड पर बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, कार्तिक अब तैयार हो रहे हैं। जो गलती उन्होंने की उसको अभी उन्हें दुरुस्त करना होगा। आखिरकार जिस तरह से फुल टॉस गेंद उन्होंने की थी इस छोर से ओवर द विकेट, उनकी गेंद विघ्नेश को एक और फुल टॉस दे गेंद, लेकिन इस बार स्टंप्स पर जाकर गिरी और आखिरकार ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया है। गेंद जाकर स्टंप्स पर जाकर गिरी है। मुझे लगता है कि शायद बैट्समैन विघ्नेश बोल्ड हो गए, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, अंपायर अपनी जगह से जा रहे हैं। इसी के साथ विघ्नेश का ये विकेट गिर चुका है। कमाल की गेंद, इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कार्तिक भले ही खर्चीले क्यों ना साबित हुए हो, लेकिन आखिरकार उस बैट्समैन को चलता कर ही दिया उन्होंने जिसने नाक में दम कर रखा था। विघ्नेश का विकेट बहुत बड़ा विकेट है। अगर वो ज्यादा देर क्रीज पर रह जाते तो मैं समझता हूं कि आसानी के साथ वो अपनी टीम को यानी कि सप्तमी वॉरियर्स को जीत का स्वाद चखा देते, लेकिन उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया है। आने वाले बैट्समैन उस पर अगर रन बनाते हैं तो इस मैच को वो आसानी के साथ जीत सकते हैं। 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। After the completion of 3 overs, score is on 31 for 2, यानी कि अभी और 12 गेंदों में 26 रनों की दरकार। क्या बात है, गुरु का स्वागत है। और 12 गेंदों में 26 रनों की दरकार है और विघ्नेश ने आक्रामक धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए एक तरह से प्लेटफॉर्म बना कर दिया, लेकिन क्या उस रास्ते पर ये दोनों बल्लेबाज चल पाएंगे? दीपक अभी भी लंबे कदकाठी वाले दीपक इस छोर पर स्ट्राइक एंड पर तैयार हैं। उस छोर पर अब कप्तान के पास विकल्प क्या बचा हुआ है कि कौन से गेंदबाज को वो इस वक्त आक्रमण पर लगाएंगे? आरके स्ट्राइकर्स का एक और गेंदबाज चुनौती से अभिजीत तैयार होना है चुनौती के लिए, और उनके पास क्या शस्त्र हैं, अपने तरकश में कितने सारे जहरीले तीर वो रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आउटफील्ड में अगर आप देखें तो श्वान आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल अपनी दुनिया में खोए हुए श्वान बिल्कुल खेल रहे हैं। उस छोर से ये गेंद इस बार उछालने का प्रयास, ऑन साइड की दिशा में गेंद गई, मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ एक रन लेने का अवसर मिलेगा बैट्समैन को। दीपक ने छोर बदल लिया, इस एक के साथ रन बढ़कर 32 पर 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि लक्ष्य है 57 रनों का इस मैच को जीतने का। इत्तेफाक से दोनों बैट्समैन दीपक हैं और पीली टोपी पहने हुए स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन वो भी दीपक हैं। अभिजीत किनी जो की गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में वो मात्र एक गेंद अब तक फेंक चुके हैं अगर मैं गलत ना हूं तो अभिजीत योजनाबद्ध तरीके से तैयार हो रहे हैं। लंबा बॉलिंग मार्क है, 30 गज के दायरे से दौड़ना शुरू करते हैं और कितना असर वो दिखा पाएंगे, क्या इन बचे हुए गेंदों में वो बैट्समैन को बांध के रख पाते हैं। अभिजीत दौड़ना शुरू कर चुके हैं दूर वाले छोर से, उनकी गेंद प्रोफेशनल कोरियर बैनर छोर से लेग स्टंप के बाहर निकली। अंपायर ने वाइड का संकेत किया, अंपायर ने कहा कि वाइड है, टप्पा खाकर गेंद थोड़ा सा स्विंग होकर लेग स्टंप के बाहर गई और इसीलिए गेंदबाजों को काफी सतर्क रहना पड़ता है कि वो गेंदों पर नियंत्रण रखें। जिस तरह से दिशा परिवर्तन वो करते हैं, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर भी अगर गेंद निकल जाए तो बाध्य होना पड़ता है अंपायर को नियम के अनुसार कि उसे वो वाइड करार दें। उस छोर से अभिजीत की गेंद इस बार ऑन साइड पर ड्राइव कर दिया प्लेसमेंट के साथ, फील्डर गेंद को रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शानदार फील्डिंग है, कमाल की फील्डिंग आउटफील्ड में की है मिड विकेट के फील्डर ने। दौड़कर गेंद को संभावित चौके को उन्होंने रोक लिया और जब तक वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाते, बैट्समैन के पास इतना समय था कि वो 2 रनों को बटोर लें। 35 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदें शेष बची हैं और 22 रनों की दरकार है। अभिजीत की गेंद 22 रनों की दरकार, 10 गेंदें शेष बची हैं और क्रिकेट का जुनून रग रग में दौड़ रहा है। उस छोर से ये गेंद और विकेट इस बार उछाल दिया है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक फील्डर के पास गई है, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है, एक और बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली फंस गई जाल में। तीसरा विकेट गिर चुका है, 35 के कुल योग पर तीसरा विकेट और इस विकेट के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो जी एनिमेशन के एमडी आप जानते हैं गुरु, जो कि हमारे काफी खासे मित्र हैं और बड़ा पुराना परिचय हमारा, वो इस वक्त इस कमेंटेटर बॉक्स में विराज चुके हैं। उनका स्वागत है हृदय से और उम्मीद करते हैं कि ये क्रिकेट श्रृंखला उनको रास आएगी और शानदार क्रिकेट श्रृंखला जो कि अंत तक अगर वो रहे तो और भी रोमांचकारी मैच, नेल बाइटिंग मैच उनको देखने को मिलेंगे। 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर उस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे, लंबी दौड़ के साथ उनकी गेंद इस बार विकेट पर जाकर गेंद गिरी है और विकेट कीपर गेंदबाज जश्न मना रहे हैं कि आखिरकार एक और शिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। कमाल की गेंदबाजी है, एक और बड़ा विकेट गिर चुका है और विकेट के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। पैंतीस के कुल योग पर चौथा विकेट गिर चुका है। लक्ष्य 57 रनों का। इक्वेशन आपको बता दें, अभिजीत मानो कुछ जादूगरी गेंदबाजी कर रहे हैं और हैट्रिक पर वो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। आरके स्ट्राइकर्स के कप्तान ने जो जिम्मेदारी, जो विश्वास अभिषेक पर रखा है, न कहना होगा कि बिल्कुल उस विश्वास पर वो खरे उतर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। आप रिप्ले में देख रहे हैं किस तरह से गेंद को कैच करने के पश्चात, हालांकि आउट होने के पश्चात, बोल्ड होने के पश्चात सारे फील्डर्स गेंदबाज दौड़कर जश्न मना रहे थे कि उन्होंने एक बहुत ही बहुमूल्य विकेट अर्जित कर लिया। 8 गेंदें शेष बची हैं, 22 रनों की दरकार है। अभिषेक एक और शिकार के तलाश में, हैट्रिक का मौका उनके पास। ये गेंद उछालने का प्रयास किया, बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, स्टंप्स पर उन्होंने थ्रो कर दिया और विराट जो स्क्वायर लेग पर मौजूद हैं उन्होंने संकेत किया तीसरे अंपायर का, यानी कि अब देखा जाएगा रिप्ले में और सब तीसरे अंपायर नतीजा निकालेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या बात है, शानदार फील्डिंग, विकेट कीपर, गेंदबाज और फील्डरों में जो फुर्तीलापन दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल स्तर को उन्होंने बढ़ाकर दिखा दिया कि आखिरकार वो डिजर्व करते हैं जीतने के लिए। लेकिन अंपायर ने कहा कि जी हां, बैट्समैन आउट हो गए, इसी के साथ एक और विकेट। तो अभिजीत किणी ने लगातार 3 विकेट प्राप्त कर लिए हैं। क्या बात है, और मुझे लगता है कि तालियां बजनी चाहिए क्योंकि बहुत कम गेंदबाज ऐसे होते हैं ऐसी परिस्थितियों में जो कि परिस्थितियों को बदल देते हैं। 35 के कुल योग पर 5 विकेट्स गिर चुके हैं और इक्वेशन में आपको बता चुका हूं। अभिजीत दोबारा गेंद को लेकर दूर वाले छोर से तैयार हो रहे हैं। इक्वेशन आपको बता दें, कुल मिलाकर 7 गेंदों में 22 रनों की दरकार। उस छोर से यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा घूमकर झुककर ऑन साइड की दिशा में खेलने के प्रयास में बीट हो गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 4 पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हो पैंथर्स सुपर लीग 2023। आखिरी 6 गेंदें बची हैं, 22 रनों की दरकार है और ऐसे में क्या बल्लेबाज कर पाएंगे सप्तमी वॉरियर्स। वॉरियर्स का हौसला बढ़ाते हैं। वॉरियर्स योद्धाओं को कहा जाता है और योद्धाएं जो योद्धा होते हैं वो इतने आसानी से हार नहीं मानते हैं। आइए आपका हौसला बढ़ाते हैं। 6 गेंदें बची हैं, 22 रनों की दरकार है। आज का 2020 का युग है, कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो वो दमखम, वो जज्बा होने की जरूरत है, तब जाकर बात बनेगी। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो शायद बात बन जाए। लेकिन इस वक्त रोकने के लिए आरके स्ट्राइकर्स की तरफ से गेंदबाज आ रहे हैं। संदीप आ रहे हैं इस छोर से गेंद को लेकर। संदीप यानी कि सैंडी। संदीप ने, आपने देखा होगा कि संदीप ने जितने सारे ओवर्स, हालांकि कल भी आज भी जो किया था उसमें काफी पैनापन था। बहुत शानदार गेंदबाजों में गिने जाते हैं और उनको यह जिम्मा सौंपा गया है कि 6 गेंदों में 22 रनों को रोक पाए। इस छोर से यह गेंद, संदीप की गेंद दीपक के लिए। दीपक ने गेंद को थोड़ा सा घूमकर ऑन साइड की दिशा में उछालने का प्रयास किया, मिस कर गए। नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो, विकेट पर गिर चुका है और विराट जी को उंगली को उठाने पर बाध्य होना पड़ा। उन्होंने संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए। एक और विकेट गिर चुका है।
35 का कुल योग और छठा विकेट गिरा। आज विशेष तौर पर अगर कहें सप्तमी वॉरियर्स जो पीछा कर रहा है और परिस्थितियां उनके खिलाफ चल रही है, और ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा। 2 पल की ये रात है, कल फिर सुबह आएगा। मैं कहूंगा 2 पल की ये रात है, कल फिर सुबह आएगा। वक्त ही है ये यारो, आज तुम्हारा चल रहा है, कल मेरा आएगा। तो बात बन सकती है। 35 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे में नए बैट्समैन का आगमन हो चुका है, जो कि दूर वाले छोर पर मुझे लगता है कि दीपक स्ट्राइक एंड पर हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त पंचम नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। दीपक स्ट्राइक एंड पर और संदीप गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। पांच गेंदों में 22 रनों की दरकार। फुल टॉस थी, ऑन साइड पर पुल कर दिया प्लेसमेंट के साथ। अभी भी गेंद खेल में रोमांच बचा हुआ है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। दीपक ने अभी अपने हौसले को नहीं छोड़ा, हौसले को नहीं तोड़ा। अभी वो विश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। संदीप की वो गेंद, हालांकि वो ब्लॉक होल में डालना चाहते थे लेकिन फुल टॉस रह गई। दीपक ने गेंद को बहुत जल्दी जज कर लिया, पहचान गए, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गए और गेंद को घुमाकर मिड विकेट क्षेत्र के दिशा में लपेट कर खेल दिया 4 रनों के लिए। इस छोर से 18 गेंदों की और दरकार है। सैंडी की गेंद उछालने का प्रयास और क्या चतुराई के साथ गेंदबाजी की है। बड़े चतुर हैं संदीप। उन्होंने देख लिया क्या बैट्समैन ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर शफल कर रहा है, उन्होंने भी अपना लाइन बदलते हुए गेंद को ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर दिया और ऐसे में बैट्समैन परास्त हुए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। संदीप की अगली गेंद ओवर द विकेट, फुल टॉस से उछाल दिया है। कैच हो सकता है। मिड विकेट में फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है। बैट्समैन आउट हो गए। इस शानदार कैच के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। तो नए बैट्समैन का आगमन इस छोर पर जो कि डगआउट से आ रहे हैं। 39 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं और आखिरी ओवर प्रगति पर है। संदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, आमतौर पर अगर कोई और गेंदबाज होता तो निश्चित तौर पर दबाव में आ सकता था, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा खासा है और खासा अनुभव रखने वाले संदीप, जिन्होंने बहुत कमाल के साथ गेंदबाजी की। विकेट स्ट्राइक एंड पर संदीप की गेंद। 2 गेंदों में 18 रनों की दरकार, यानी कि अब औपचारिकता सिर्फ बची है। लेग स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने कहा कि वाइड है। संदीप को सोचना होगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या वाइड जरूरी है। लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी और 2 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, अब 17 रनों की दरकार है, यानी कि अतिरिक्त रन से 1 रन घट गया और अब नियंत्रित गेंदबाजी होने की जरूरत है और संदीप इसी प्रयास में लगे हुए हैं। ओवर विकेट उनकी गेंद, फुल टॉस थी, उछाल दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में। फील्डर गेंद के नीचे आ गए और न मालूम क्यों गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का रास्ता ही नहीं देख रही है। कैच कर लिए गए। एक और विकेट का पतन हो चुका है। बैट्समैन आउट हो गए। तो प्रताप ने शानदार कैच लिया, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास खड़े थे और एकाग्रित होकर उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। अगर थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती, गड़बड़ी होती तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी या फिर उनका पैर अगर बाउंड्री लाइन को छू जाता तो छक्के में तब्दील हो सकती थी, लेकिन वैसे भी जीतने का अवसर नहीं है। 40 रन 60 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि अभी और 17 रनों की दरकार है। आखिरी गेंद शेष बचा है। संदीप गेंद को लेकर तैयार। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन अनंत पई आ चुके हैं और संदीप औपचारिकता को पूरा करने के लिए तैयार हुए। उनकी गेंद इस बार खेलने के प्रयास में बीट हो गए और ओवरथ्रो के रूप में फील्डर शायद गेंद को बैकअप करेंगे बाउंड्री लाइन की दिशा में। इसी के साथ इस मैच को शानदार तरीके से आरके स्ट्राइकर्स ने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। और दूसरी ओर सप्तमी वॉरियर्स को, योद्धाओं के इन टीम को मैं अपनी तरफ से जाती तौर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया। बहुत फाइटिंग स्पिरिट के साथ उन्होंने प्रयास किया कि वो जीतें,
लेकिन जैसा मैंने कहा कि हार और जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी को जीतना है तो किसी को हारना पड़ता ही है, और आखिरकार जीत पैंथर सुपर लीग की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आगे के विवरण सुनाने के लिए आपको सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। VV Warriors captain and RK Strikers captain. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX,
VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
backbone of GPL as well. So warm welcome, sir, for this wonderful cricket tournament. We have a proprietor of a modern bread house, sir. Warm welcome for this prestigious Panthers Super League 2023 for the mega final. We have Vivek Prabhu, proprietor of Prabhu Sweets Bakery, Managuda. We also have Ramesh Kamath. We have Ganesh Mulke. And we have Deepak Malya, the chief guest for this mega final of this prestigious cricket tournament. We have a proprietor of Machili, Vicky, the big hand for Vicky for this mega final. So warm welcome, sir, for this wonderful cricket tournament, Panthers Super League 2023. And we have two teams, big hand for two teams which just came into the mega final. VV Warriors and RK Strikers. And we have VV cricketers because they are really memorizing their olden days. The VV cricketers, one of the best team in under-arm cricket during 80s and 90s. Once again, they performed in over-arm cricket as well. We have Shivanand Chennai, Raghavendra Pai, and we have Billare Ravindra Kamath, and we have Mohan Pai and Anant Urf Handy. So big hand for everyone for this mega final of this prestigious cricket tournament. After that introduction of the finalist, we have the next schedule. Definitely is going to be a tossing ceremony of this mega final of this prestigious Panthers Super League 2023. May I request two captains please come forward, and at the same time the chief guest Naresh Chennai as well as Kiran Kodikal. Everyone please come forward. I request that officials please come here. We have Suresh V. Kamath. And first of all, I would like to congratulate the two captains. So they came into the final. Congratulations now, Captain Radhakrishna. And congratulations for Lakshmish for qualifying for the big final, the mega final of this wonderful cricket tournament. Now these two captains, definitely they fought hard. It's not so easy. First of all, I would like to announce that these two teams, they came into this tournament as an underestimated team. But they played a magnificent game of cricket. And the prediction, whatever we did, but all prediction is gone wrong. And these two teams came into the big final. Big hand for the two teams. Now it's a time for the tossing the coin. It's a silver coin. Guru Sani will going to toss the coin, sir. So I just, yes, two captains, you're ready. Mentally ready, physically ready. Okay, all the best both the teams. And now is a toss. The call from head is a call from RK Striker, and it is head. That means RK Strikers captain won the toss. And just I want to, yes, congratulations first of all, you are won the toss, Radhakrishna. What you will going to do here after winning the toss? ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಲೋ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಎನಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಂತ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. RK ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ ಟೀಮ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಮ್ಸ್? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಬಂದಿರಿ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಫೈನಲ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಬಿ ಅವರು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಲ್ಯಾಂಬಿ ಅಂದರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರು, RK ಮಾಮ್ ಒಂದು ನೀವು ಟೀಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಏನಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು
ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಏನೋ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ರನ್ನಿನ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ನಿಮಗೆ? VV Cricketers ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ VV Cricketers. ಎಷ್ಟು ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. Congratulations and all the best for a big final. May the best team will go into win here. Now Lakshmesh is the captain of the side. Lakshmesh, toss ಸೋತಿದ್ದೀರಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಈಗ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರನ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಬಿಗ್ ಫೈನಲ್? ನಾವೊಂದು 70-80 ರನ್ ನೋಡಿದವ್ರು 40 ರನ್ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೋಡಿಬೇಕಂತ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಇದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 70, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 70ರಿಂದ 88 ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಸ್ 7, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ 70 ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ 5 overs. ಸೊ 7 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 80 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಅನಂತ್, VV Cricketers ನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ, ಆಲ್ ರೌಂಡರ್, ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡಿ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿದೆ? ನೀವು ಎನಿಸಿದ್ರೆ VV Cricketers ಫೈನಲ್ ಬರ್ಬೋದಂತ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಡೋದು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫೇವರ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಆಡಿ ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಯಾರು ಎದುರಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಟ್ರೋಫಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸಲ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ದೇ. VV Cricketers ನ ಆ್ಯಂಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಂತ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕೈಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ದ ಗೋಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಔಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿಸ್ತಿದೆ? ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸೊ ಅವರ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ, ಅವರ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಸರ್, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ದಿವಸ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ, ನಿನ್ನೆ 1.5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೀತು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಫೈನಲ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೀವು ಆಯೋಜಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ? ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರಣ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರೇ. ತುಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಈ ತನಕ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಈ ಟೀಮ್. ಅವರೊಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೇವರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ನವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರ್, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್? ಎಸ್, ಈಗ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ 2 ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತಂಡ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ?
ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಬಟ್ 2 ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಫೈನಲಿಗೆ. ಈ 2 ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮವರೇ. ವಿನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ತನಕ ಆಗಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ತನಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ವಿಶ್. ಸರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಫೈನಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೈಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಅವರು ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ದ ವಿಶಸ್. ಸೊ ಮೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಸಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ. ನಾವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಮೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್. Thank you very much sir for a wonderful support, because without your support it's very difficult to organize such a big tournament. Auto Fitness ಇದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. Now we have one more dignitaries, proprietor of Akrati Digitals, Mr. Naresh Prabhu. At the same time, we have one more dignitaries, proprietor of Shri Mahamai Traders, respected Chetan Kamath. So warm welcome sir for this wonderful mega final and for the prize distribution of this cricket tournament. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace. Match and please note the changes here. The both the teams captain 7 hours game and 2 hours going to be a power play and of course everyone knows that in that 2 hour of power play only 2 fielders are allowed to stand outside the circle, not more than 2 outside the 28 circle and 5 bowlers and 2 bowlers has got opportunity to bowl 2 overs. Please note that at the same time you need to see the timing which is given for you to bowl that 7 overs. Exactly the 30 minutes which is given for you to complete your 7 hours quota. Please follow that the rules and regulation because it's so important. The discipline is always important for the success of this cricket tournament. And Gopi, altogether the 2 days of 2 day and night of cricket is comes to, and it was a wonderful cricket tournament. It's systematically organized and there is a discipline as well from the players as well, always respecting the decision of the umpires. So important for the success of this cricket tournament. Altogether we are witnessing such a wonderful cricket tournament and the Panthers Super League 2023 once again writing the history in UCG Cricket Ground, one of the best cricket tournament which is organized by Deadly Panthers as they're celebrating their 15 years. Exactly, Satish. There is no doubt about that. What a fantastic tournament organized by Deadly Panthers in the celebration of their 15th year. And this is going to be very interesting. We have to just see in the final which team going to be a champion of this Panthers Super Leagues 2023. और मैं समझता हूँ सतीश, we are getting some exacting battle in this tournament. So 2 संतुलित टीमें जहां तक सवाल है, एक टीम है वीवी वॉरियर्स जबकि एक आरके स्ट्राइकर्स और दोनों टीमें बेहतर प्रदर्शन देते हुए इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं और फॉर्मेट यहां पर बदल दिया गया है. इट्स गोइंग टू बी 7 आवर्स फॉर्मेट एंड वी आर लुकिंग टू बी सम नेल बाइटिंग फिनिश इन दिस grand finale of Panthers Super League 2023 which proudly organized by Deadly Panthers in the celebration of their 15th year. So everything set and also यहाँ पर मैदान दर्शक लगभग मैदान दर्शकों से भर चुका है और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर इस ग्रैंड फिनाले में देखने को मिलेगा. इस उम्मीद अपेक्षा के साथ लेट्स स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू द कमेंटेटर बॉक्स एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपनिंग इन द ग्रैंड फिनाले ऑफ पैंथर्स सुपर लीग्स 2023. थैंक यू ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನ 2 ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Circle Bangalore. Call 0824 425 2288.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, the Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. For Atom Fitness once again for your heartfelt support for the success of this prestigious Panthers Super League 2023, and we are into the mega final of this cricket tournament. Fantastic tournament, no doubt at all. The last 2 days of day and night cricket tournament is organized very systematically by Deadly Panthers as they're celebrating their 15th year successful journey. And at last they at last their happy faces. We can see that the organizer definitely, it is definitely going to be, it was a satisfaction for all the organizer, because you are watching only 2 days night of cricket tournament, but I think more than 200 days of hard work which is required to organize such a big tournament here. But all we can see that the dreams which is comes true at last. The dream of organizing such a wonderful cricket tournament is a UCG cricket ground, and we are into the last step of the victory. Last step of the success is now going to start. That is a mega final of this prestigious Panthers Super League 2023. And two teams which just came into the big final, of course, deserve this place, where that they battle in the league matches, where they battle in the second round matches, where they battle in the playoff round, and deserve this mega final. But job is not yet over from both the teams. They doesn't want to see in the runner-up position. Both the teams wanted to lift. Both the teams wanted to touch what an attractive trophy of a Panthers Super League. That is a winner trophy. And wait and see which team will go into touch this trophy. The umpires saying that the time which is noted, it's a 9:14. And you need to complete your 7 hours within 30 minutes. Here is the first ball of the mega final. Left arm over the wicket, copybook style of defensive stroke. This is a big difference between playing in a 5 hours format of a games and 7 hours format of a game. All in sudden, Gopi, earlier stages, the batsman not really bothered about whether playing the first delivery or not. He only saying that he want to swing the ball. But as far as a 7 hours format of a game, look at the mindset of the batsman. Already we can see that the copybook style of a defensive stroke comes into play. And here is again a second delivery of this over. Bowler Karthik Nayak bowling away from us for the left-hand batter. Varun, useful left-hand batsman, a good striker of the ball, will go into face our next delivery. Left arm around the wicket, using his feet, and this time he lofted down to deep backward score. Like the fielder is there in the deep backward score and deep wicket, but both the fielders are seeing each other, but not trying to stop the boundary ball. Just winning the race. It's first boundary came here for VV cricketers. I think Varun is not impressed with my announcement, as I told that he is almost in a defensive frame of mind after playing that defensive stroke. He's just coming down the track using his feet and got the boundary for his team. And but the intention, the game plan, the strategy is very clear from these two opening batters that they need to utilize, they need to capitalize this power play over, because fielding restriction is on. The opportunity is a golden opportunity for the batter to get some good score in this 2 over of the power play. Bowler Karthik. So far, Karthik Nayak has got a fantastic tournament from the ball as he bowls left arm
Over the wicket, ball is swinging that one. Ball is in that. Fine leg fielder takes the catch. First wicket of VV Warriors are back into pavilion. It's a time for Pawan to Varun to back into pavilion. I think he couldn't manage to control that emotion after getting that bound. He wanted to repeat that one. Absolutely, Gopi. It's a short pitch delivery, isn't it? Hittable delivery. But the fact that the batsman little bit early into the stroke, ball which came very late to the bat, maybe one of the strategy from the bowler to bowl that slower one, backup plan delivery. That's why the batsman Varun completely missed out that delivery. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी इस वक्त, थोड़ी सी गेंद को उछाल करवाया था गेंदबाज ने और आखिरी मौके पर इस उछाल को समझ नहीं पाए, गेंद को पुल करना चाहा और गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद स्क्वायर लेग पर लपक ली गई। तो पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है और निस्संदेह इस पहले विकेट के गिरने के बाद अब वीवी वॉरियर्स को जरूरत है एक साझेदारी की अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो। Exactly, Gopi. Partnership definitely going to be key for the success. You need to get one good partnership if you wanted to get a good score here. As a new batsman, Balakrishna Naik came into middle and straight off the mark. Just a soft end comes into play. Sensible batting here from Balakrishna, saying that he lost the wicket of Varun and need to play as per the condition required. They try to wanted to, of course, the consolidation is very important here for the VB cricketers after losing a wicket of Varun there. And it's 5 for the loss of 1 wicket. Karthik has got a very, very important breakthrough from his bowling. Karthik Nayak changing his angle, rightly so, because right-hand batsman is on strike. First time he facing, and the batsman facing Deepak, and is one more very good striker of the ball and useful batter, especially when it's a power play is on. He's got a potential. He's got all the technique of getting big shots as far as the power play is concerned. That's why he's been sending every time to open the innings to capitalize that fielding restriction in the power play overs. Wait and see how the Deepak will going to capitalize this fielding restriction. Karthik again, left arm, changing his angle, appeal for leg before wicket. More than the confident, I think, is just looks like the excitement. Ball is just going down the leg stump. At the same time, bowler Karthik is coming right in front of umpire as well. That's what umpire is saying, that don't come in front of me. It is a protected zone, isn't it? At the same time, the ball is definitely going down the leg stump. The seeing that the bowler coming wide of the crease. When you are bowling wide of the crease, then ball is angling across, isn't it? And ball just going down the leg stump rightly. So umpire not interested to raise his finger. 5 for the loss of 1 wicket from the commentary box, and bowler bowling left arm. Round the wicket to the right-hand batsman Deepak. This time drives that one powerfully down to mid-wicket, clearing the infield, but long chase here for the fielder. I don't think the long on fielder, mid-wicket fielder definitely going to cut it off. And before he will going to reach there, the batsman has got ample time to complete that couple of runs. And with that couple of runs, Gobar now was on to 7 for the loss of 1 wicket. And first over completed. And Gopi, equal result, isn't it? 7 in the first over. I don't think it's going to be a bad over because they got one valuable wickets of Varun. And altogether, Gopi, it's a good start for both the team. 7 is a good run. At the same time, 1 wicket is definitely going to be the very good start for the bowling side, RK Strikers. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, दोनों टीमों के लिए ये यहाँ पर एक अच्छा शुरुआत है। 7 रन बन चुके डेडली वॉरियर्स के, जबकि 1 विकेट प्राप्त करने में सफल आरके स्ट्राइकर्स। और जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो डेडली वॉरियर्स को इस वक्त कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा, क्योंकि ओवर्स के फॉर्मेट जो कि बदल दिए गए, 7 ओवर्स का फॉर्मेट है, तो एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है। अंडर दिस कंडीशन if they have to score a good total, they have to cross at least 50 mark. और जहाँ तक सवाल है आरके स्ट्राइकर्स का, तो 50 रनों के आंकड़े के अंदर इस वक्त रोक कर रखना होगा वीवी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। अगर आरके स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के लिए लक्ष्य आसान होता है तो उससे पहले गेंदबाजों को इस वक्त बल्लेबाजों पर दबाव डालना होगा। तो देखते हैं आने वाले ओवर्स में यहाँ पर क्या होता है। Exactly, Gopi. That strategy, the game plan is so important when we are playing a big final, the mega final. It's a different ball game, isn't it? Handling the pressure is so important in this mega final. So Ashwath Pai is a very important player for the side of RK Strikers. Is important attack from the professional career, and is bowling. Then that batsman tried to pull that one. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Varun Shanbag behind the stump fails to collect the ball. But here is umpire not missing the opportunity to getting some evening exercise under floodlight to signal the wide, and 9 on the board for the loss of 1 wicket.
Ashwath Pai usually is a very good bowler, but sometimes it's happening, isn't it, Gopi? When it's a left and right combination, it's not so easy for the bowler to change the line and length, isn't it? Definitely, it's a good ball for the right-handed batsman if the right-handed batsman is on strike. As the fact that left-handed batsman is on strike, that ball is just going down the leg stump, and rightly so, umpire called that wide. 9 for the loss of 1 wicket. Ashwath again, seaming in from the far end. All right, I'm over the wicket to Deepak. Deepak, Chow, lovely shot, lofted that one. Handsome looking shot. Ball is just clearing the ground. That's what I am talking about, the potential of this man. He is such a good striker of the ball. When he hits clinically. And what is a neat throw coming from the bat of the batsman Deepak there. Ball is, of course, is almost in the slot. But he need to deliver, isn't it? Timing is perfection in that occasion. And the flow of the bat is so good in that occasion there from Deepak. And he got the distance for that. And 15 for the loss of 1 wicket. First sixer of the mega final came from the bat of Deepak. Ashwath now is a little bit under pressure now. After that 6. Wait and see what he will going to use that weapon. This is the best weapon to use, isn't it? Not to ball around the bat of the batsman. Deepak is never going to miss the opportunity to ball to into the slot, so that the batsman bowler quickly realizing that and bowl outside the line of off time. Good comeback from the bowler's point of view as he bowled outside the line of off temp and dotted delivery. 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Left arm over the wicket, going for the big shot. Ball is in there. Chance of caught and bowled, and is stopped. Not a drop, but he's not really able to reach that catch. He's tried his level best, but not really able to reach that catch in the occasion. Ball just falling short of that trying hands of the bowler. And Deepak just dealing with some luck here as he was trying for one more big shot. Not quite getting hold up that one properly. And luckily that ball didn't carry to the fielder. 16 for the loss of 1 wicket. 70 runs, what VV Cricketer's captain is told when he's questioned how many runs you want to score. And he's told that 70 I want to score so that I want to put some pressure on to the opposition batsman. Now, the bowler Ashwath Pai. This nicely driven, nicely placed that one down the square leg region. I think it's a bowl batsman doing a great job in the other end. And I think the batter Balakrishna just wanted to play the acting role. This is so important in cricket, isn't it? When you wanted to get the partnership going, one batsman need to be defensive and one batsman need to be offensive. And that's what really those two batsmen is doing in the middle. A right job. 17 for the loss of 1 wicket. Again, lovely delivery outside the line of off stump. Just an excitement behind the stump, but not a confident. One more dotted delivery. Now Ashwath just learning from the mistake. This is so important for the bowler, isn't it? After that punishment which came from the bat of Deepak, he's just quickly realized what kind of mistake he did, and he's just bowling outside the line of off stump to defeat the bat of Deepak. Again, left arm. Over the wicket, lofted, but ball definitely going to be, oh my goodness, the fielder is trying his level best to top that one, but ball once again defeating that fielder, ball just hitting the one of the spectators who is sitting in that deep long off region, and the second sixer came from the bat of Deepak in the particular over. Just look at that one in the replay. Again, the batsman making a premeditated that he knows that now the bowler will go into bowl outside the line of off stump, little bit moving towards off stump and getting that one right from the middle of the bat, lofted that one handsomely, and he got the distance at 23 for the loss of 1 wicket. And Gopi, just like what captain is told that my team wanted to get the 70, they're going in the right way, they're going in the right track. That 23 runs which came from that power play over, that means the power play which is going in favor of batting VV Warriors. Exactly, Satish. जिस तरीके से कप्तान VV Warriors के कप्तान ने कहा था कि कम से कम 70 रन हमें बनाना है निर्धारित 7 ओवर में, और अपने इस योजना को यहाँ पर कार्यगत लाते हुए उनके बल्लेबाज 2 ओवर में 23 रन जोड़ चुके पावर प्ले के 2 ओवर में, और निस्संदेह द फर्स्ट 2 पावर प्ले ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बैट्समैन ऑफ VV वॉरियर्स. लेकिन यहाँ पर मौका जरूर है आने वाले ओवर्स में स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का, और देखते हैं आने वाले ओवर्स में किस तरीके की गेंदबाजी वो यहाँ पर अपनाते हैं बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए. Exactly, Gopi, and bowling change in from the commentary box, and starts with the warm-up delivery of the night by the bowler Abhijit Kini. 137 sixes, Gopi, so far in these 2 days of cricket tournament. It's been, that means a raining of sixes, isn't it? 132, in fact, let me correction, 132 sixes which just came so far in this particular tournament of this prestigious Panthers Super League 2023.
Abhijit Kini. Balls again, that going to be wide ball. This is not the Abhijit Kini who watched in previous two matches. He's been outstanding so far in the tournament because of his bowling. His RK Strikers came into this big final, but might be the little bit under pressure situation in the big final. In the last match, Gopi, he took the hat-trick wicket, and Abhijit Kini needed such kind of performance in the big final as well. Abhijit Kini bowls this time nicely bowled. This is a perfect line to ball, but look at the batsman here. Sensible batting there from the batsman Balakrishnan. You know exactly, without any effort, big effort, he got 2 runs. Then why can't I to pick the single and give the strike as much as possible? This danger man, Deepak, so far is batting so well. 15 runs which is scored in just 7 deliveries. Strike rate is more than 200. Abhijit, this time something is going behind the stump, and Varun Shanbag behind the stump just shouting there because he's not satisfied with the field set. But I want to once again remind for the fielding team, 30 minutes, you need to complete your 7 overs, and that's that point to be noted here. Already it's 17 minutes they've taken, so need to be a little bit quick here. As again the bowler Abhijit Kini. Right arm over the wicket. Beautifully driven, but lack of placement. Bhakta there in the deep extra cover is one of the safest pair of the hands in a deep extra cover. Not it's so easy catch. Almost ball looks like going to carry to the fielder, but ball just came into him in the off volley. But he's tried his level best to take the catch. If he's able to take the catch, definitely it's going to be a big fish in the net. But unfortunately, Saurabh Bhakta. Just I want to see it in the replay. Let's just look at it on a LED screen here and look at the effort there from Peter. Absolutely perfect, isn't it? He couldn't manage to hold that catch again. Abhijit Kini bowls. Yorkerland delivery. What a fantastic delivery there from Abhijit Kini. Looks like I think it's a little bit excitement there from behind the stump, and for Abhijit Kini is saying something here for the umpire. Maybe he's telling that ball maybe the kissing the leg stump here. Not really very far from the leg stump. I want to say that ball might be the brushing the leg stump, but bails are not uprooted. That was a little bit disappointment here for the bowler, isn't it? 27 for the loss of 1 wicket. Abhijit balls beautifully bowled, equally well played there by the batsman. Sensible batting from these two batters in the middle. After getting a valuable runs in the first 2 overs of the power play, they now exactly knows that the fielding is spreading out. So many bodies out there in the deep. It was difficult to get the bounties and sixes. Then now they're just rotating the strike. This is a great strategy from these two batters in the middle, and the partnership is really building very well for VB cricketers. Again, away from us, right arm over the wicket, balls. Full toss, lofted, but the fair fielder is in the deep long on. Can he able to take the catch? No, he drops the catch. No, he drops the catch. Will it going to be a costly year? Why not? Sandeep is a fielder in the deep long on. Is known to be one of the safest pair of the hands. But look at that one in a replay. We are not having that much of good view from the commentary box. What really happened? But a fielder from the deep long on, little bit is in a wide-ish actually. It's a little bit squarer, so he couldn't manage to reach there quickly. But he's just drops the catch. And the batsman got a single here. 29 for the loss of 1 wicket. Ground free corn देऊ का ते सकल बेसिल पुरा वैर बाई सुका म्हणून विनंती. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again, lovely good placement there from Balakrishna. What a innings is playing, absolutely perfect, isn't it? He is picking up the singles, and other end Deepak is getting some score in the form of big strokes. So 30 runs scored in just 3 overs, Gopi, and they lost only 1 wicket. That means 10 runs per hour, still progressing. Just like you mentioned, Gopi, when they lost the wicket of Varun earlier, and we are talking about the 7 overs format of the game, it's definitely going to be a good move there by the organizer to have a 7 overs format of a game. Then look at the way, the time they got to adjust, the time they got to recover, and they recovered very well, isn't it? Both the batsmen now playing very well. Now, RK Strikers desperately wanted to break this partnership. They wanted to restrict them less than 70 what they are targeting here. बिल्कुल सतीश, पहले वरुण का विकेट जब गिरा था तब ऐसा लग रहा था आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाज छा जाएंगे, लेकिन जो फॉर्मेट को इस वक्त बदल दिया गया है, जैसा कि आपने फरमाया 7 ओवर का फॉर्मेट है. यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी की शैली
बदल जा चुकी है। यहाँ पर बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए, और वो जानते हैं 2 ओवर ज्यादा है, यानी 7 ओवर का खेल उन्हें खेलना है, तो पहले 3-4 ओवर देखकर खेले, विकेटों की सुरक्षितता पर ध्यान दें और उसके बाद आक्रामक स्ट्रोक लगाए। तो वक्त की नजाकत को समझते हुए ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए और अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करते हुए, और विकेट जहां तक कमबैक करना है तो आरके स्ट्राइकर्स को इस वक्त इस जोड़ी को तोड़ना होगा। देखते हैं आने वाले ओवर्स में क्या होता है। Exactly, Gopi. The breaking the partnership is so important, but both the batsmen are settled down, isn't it? They settled down in the middle. Now they are very difficult for the Arcus strikers to break this partnership again from the far end. Balls, and this time going for the kick, single chance of run out. That if it is direct, it is going to be a close one, but ball misses the stumps, and Deepak once again dealing with the luck here. Of course, the ball is tried his level best to make that run out. Just look at it on a replay as the batsman tried to drive that one, not really having enough bat onto that, but then bowler on his follow through tried to hit the stump but misses the stumps, and Deepak survived from that run out. 32 for the loss of 1 wicket. Grabbing the opportunity is so important, isn't it? Opportunity is not really coming to your way regularly. When it's opportunities offered in front of you, you need to grab that opportunity. One is a catching opportunity, is a tough one. The second one is a run out opportunity. This is on also a very tough one, not an easy one for the fielders of RK strikers. Look at the crowd here, absolutely fantastic crowd. All we can see that in UCG ground, the good number of crowds enjoying the game of cricket of this mega final of this prestigious Panthers Super League 2023. This time driven that one powerfully down to deep long on, but not more than a single. Protection has been given in the deep. Just like I mentioned, after that power play, we can see there's so many bodies out in the deep. One deep long on is there, one deep mid wicket is there, deep backward square leg is there, and one at the deep long off and deep mid wicket. Now strikes rotated. Left hand batsman back on strike now. VB cricketers definitely the supporters enjoying the batting of these two batsmen. Even RK strikers desperately wanted to see 1 wicket here. This time they're going up. Why not? They got the wicket. This is a wicket. What I want to say, Gopi, this is not a wicket-taking delivery. This is not a wicket-taking delivery. This was a hittable delivery. This is the beauty of cricket, isn't it, Gopi? Sometime you are not getting a wicket for the good balls. Sometime you will going to get the wicket for the bad balls. This is a perfect example, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त ये गेंद जो हिटेबल गेंद थी, इस गेंद पर चाहे तो गेंद को डिस्पैच कर सकते थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट हुआ बल्लेबाज द्वारा और गेंद को पुल करने के प्रयास में चूके और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो निस्संदेह सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, कभी कभी बेहतर गेंद पर गेंदबाज को विकेट नहीं मिलता है और कभी कभी खराब गेंद पर बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और बेहतर गेंद पर गेंदबाज को कभी कभी विकेट नहीं मिलता है। तो यहां पर खराब गेंद थी और बल्लेबाज अपने स्वयंकृत गलती की वजह से यहां पर विकेट खो चुके हैं और जहां तक इस साझेदारी को तोड़ने की जरूरत थी, यहां पर इस साझेदारी को इस वक्त तोड़ चुके आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाज। अब देखना है कि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर वो किस तरह इस वक्त दबाव बढ़ा पाते हैं। Absolutely, Gopi. The partnership which is broken, but headache which is not complete over because one more big striker of the ball is just came into middle. He's got a fantastic tournament from the bat and ball, and he's just the biggest contender for the man of the series as well. It's none other than Vignesh Shanai Karkal. This time again outside the line of off stump, missed it completely, and wicketkeeper behind the stump did the rest. So 33 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. The bowler is introduced from the far end. Ashwath Pai is able to broke the partnership with the one short pitch delivery outside the leg stump, inviting the batsman go for the pull shot, and batsman has got an inner part of the bat and wicketkeeper behind the stump did the rest. It's a 33 for the loss of 2 wicket, and bowler once again Ashwath Pai getting to bowling to the right-hander batsman Vignesh Shanai Karkal. Ashwath balls, looking for the big swing of the bat. He loves to play that kind of cricketing stroke, but this time again Ashwath handling the pressure very well, isn't it? It's not so easy when you're having a batsman like Vignesh Shanai in front of you. They needed some kind of game plan, needed to have some kind of innovative thinking, and so far I think is the 2 deliveries which is bowled by Ashwath Pai. He exactly know what kind of deliveries is needed to ball to this man. Vignesh Shanai is yet to open the account. It's a 33 for the loss of 2 wicket. Ashwath again bowling from the far end.
Again, swings and missed. 3 consecutive deliveries. Fantastic over is comes in. Just 3 runs came from that over and 1 wicket as well for Ashwath Pai. And this is a comeback over, Gopi. This is absolutely comeback here for RK Strikers, isn't it? And just like the captain is mentioning about the 70 runs they wanted to get, now because of this over, I think getting 70 might be a little bit difficult one, but I think RK Strikers captain is told that he wanted to restrict the opposition less than 60, and definitely the game plan is working out for the fielding team as well. एग्जैक्टली सतीश, ये ओवर कमबैक ओवर था आरके स्ट्राइकर्स के लिए। 3 रन सिर्फ अश्वथ भाई ने प्रदान किए और इस ओवर की बदौलत यहाँ पर जहाँ तक सवाल है आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों का, तो इस मैच में वो वापस आ चुके हैं। अब 70 रन बनाने की योजना थी इस वक्त वीवी वॉरियर्स की। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 33 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब ऐसा कहना पड़ेगा 70 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी यहां पर अपनानी होगी। तो इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए तो इस वक्त अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से यहां पर रन और गेंद के बीच में, बल्ले और गेंद के बीच में कड़ा संघर्ष जो कि जारी है। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। So 34 for the loss of 2 wicket, 4.1 overs gone और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और पहले और दूसरे ओवर में बेहतर रन बने थे, तो उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए इस वक्त गेंदबाजों ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में किया। अब कुल मिलाकर वो सीधी और सदी लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद इस वक्त अपील जा रही है, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो जहां तक सवाल है वीवी वॉरियर्स यहां पर रनों के लिए कुछ हद तक अब संघर्ष करता हुआ। पहले 3 ओवर में 30 रन बन चुके थे, तब ऐसा लग रहा था वीवी वॉरियर्स के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन वापसी करते हुए आरम स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने यहां पर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने में सफल। अगली गेंद और इस बार फुल टॉस एंड हिट दैट वन इन अ स्टाइल। इट्स गॉन ऑन द इनटू द कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड एंड इट्स अ ह्यूज वन। विघ्नेश के बल्ले से यह छक्का इस वक्त लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। He just caught that one right from the pit of the bat and lofted that one in a style. Have a look at that one in the replay. Lofted and firmly, and he's got the distance straight in front of commentary box. और छक्का इस वक्त जुड़ चुका है विघ्नेश के खाते में। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद फुल टॉस टॉप एज, गेंद इस वक्त अवे में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए मिड विकेट पर बेहतर कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द फील्डर। 10 से 12 कदम दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। तो 42 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। छक्का लगाने के बाद एक बेहतर पारी की मुनसूचना यहां पर दे चुके थे बल्लेबाज। अगली गेंद पर उनका विकेट गिर चुका है। यहां पर टॉप एज पर गेंद टकराई और एक बेहतर कैच शॉर्ट फाइन लेग से दौड़ते हुए स्क्वायर लेग पर 10 से 12 कदम यहां पर फील्डर लपकते हुए। तो 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड दिस इज द 5th ओवर इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कॉम्पिटिशन पैंथर्स सुपर लीग 2022 is now progressing here और इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का खिताब दर्ज करने के लिए इस वक्त मुकाबला जारी है आरके स्ट्राइकर्स और वीवी वॉरियर्स के बीच में। तो आरके स्ट्राइकर्स के कप्तान ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और यहां पर अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहां पर आगे
बढ़ाते हुए ये गेंद फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर की तरफ में, ओह इस बार रन आउट हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन, और यहां पर विकेट गिर चुका है, और इस विकेट के पतन के साथ मैं कहूंगा यहां पर आरके वॉरियर्स आर नाउ बैक इन द मैच. At one stage, they were 30 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs, and now they are 42 for the loss of 4 wickets. That means they lost their 3 wickets for adding just 12 runs on the board in between 30 to 42. And this is an outstanding comeback made by the bowlers of RK Strikers. Kyo Satish? Absolutely, Gopi. Needed such kind of comeback, Gopi, because VP cricketers looking quite dangerous in the middle, especially the wicket of Vignesh Shenoy, Gopi, because he's after hitting a 6, it looks like he's a danger man. And if he continue that one, definitely it's going to be a very difficult for stopping him. It is unstoppable once he gets his rhythm back, is unstoppable. And a good comeback, especially the bowler, I think the previous over, which is bowled by Kinney. And so far he's got a wonderful cricket run, but it's not so easy, Gopi, when the batsman hitting you for the 6. Your level of confidence almost coming down. And it's not so easy to handling the pressure, but he handled the pressure very well. Immediately, very next ball, he picked the wickets. And we can see now RK Strikers fans are alive. And of course, happy faces we can see here in our owner of RK Strikers. And Pratap and his family is enjoying the game of cricket here in our commentary box. Definitely they wanted to see their team to lift this prestigious Panthers Super League 2023. At the same time, look at the dugout of VV cricketers. They're all for a long time they're seeing that their team in the big final. They also doesn't want to miss the opportunity to lift this prestigious title. Exactly, सतीश. सबके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान दिखाई देती हुई बैकफुट पर गए, गेंद को इस वक्त कट किया खूबसूरती के साथ, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 43 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. रात के इस वक्त 9:45 बज चुके हैं, और घने अंधेरे को चीरती हुई इस वक्त फ्लडलाइट्स की प्रखर रोशनी मैदान पर गिरती हुई इस मैदान को चकाचौंध यहाँ पर करती हुई, और इस फ्लडलाइट के रोशनी के तले यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई, क्लाइमैक्स इस श्रृंखला का यहाँ पर प्रगति पर. और इस वक्त मुकाबला जारी है आरके स्ट्राइकर्स और वीवी वॉरियर्स के बीच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का खिताब अर्जित करने के लिए. अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज, ये गेंद बैकफुट पर गए, इस बार गेंद को पुल किया इनटू द गैप एज वेल, इट्स गॉन ओवर द फेंस, एंड दिस टाइम इट्स गॉन ओवर द फेंस. जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल, and it's a boundary. It fell just short of a fence at the widest long on area, and the batsman got boundary for that. बेहतर स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ श्रीनिवास पई के बल्ले से. शॉर्ट गेंद थी, थोड़े से छफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला, और खूबसूरती के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर भेजने में सफल आफ्टर फर्स्ट बाउंस, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर. इट्स 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. तो यहां पर अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया इस वक्त, खूबसूरती के साथ तो नहीं लेकिन कट जरूर किया, और गेंद 1 रन इस बीच मिलेगा. नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. इट्स 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. द इक्वल बैटल is now continuing here. गेंदबाज की गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर गए, चूके बेहतर गेंद थी, ऑफ कटर गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक डिविएट होकर अंदर की ओर आते हुए, और इस बीच गेंद स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला. 48 द स्कोर बोर्ड स्टेज इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार गेंदबाज सौरभ भक्ता गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और अगली गेंद इस बार गेंद तक पहुंचे, गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, 1 रन मिलेगा, निशाना चूक चुका है, थ्रो को रिसीव नहीं कर सके. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, इनकम से दिस कुड बी एक्लोटाइज्ड, लेकिन यहां पर अंडरआर्म थ्रो किया था, बैकहैंड थ्रो सीधे स्टंप्स को बिखेर कर ले गया. और अब अंपायर श्रीनिकेत ने थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है. सो जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी. जब विकेट चटकाए गए थे, गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब क्या बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं? दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स एट दिस सिचुएशन. तो दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल इस वक्त बढ़ाते हुए, और इस बार पहुंच चुके हैं, नॉट आउट घोषित, और सब कुछ सही सलामत इस वक्त
बल्लेबाज के लिए और 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और इन 2 रनों के साथ द 50 कम्स अप फॉर वीवी वॉरियर्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार सौरभ भक्ता अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पटकी विकेट, इस बार स्कूप किया, स्कोर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट की फील्डर सिर के ऊपर से 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन मिल चुका है, तीसरा रन ले जाते हैं, दौड़ पड़े हैं, थ्रो पहुंचा, काफी धीमा थ्रो स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। Absolutely fantastic running between the wicket. Just played that one, just scooped that one, square of the wicket down to a cover point, and gets in 3 runs for that. And with that 3 runs, the scoreboard moving up to 53 for the loss of 4 wicket after completion of 6 overs. 6 ओवर की समाप्ति। और सतीश 3 ओवर में 30 रन थे, उसके बाद बेहतर कमबैक किया गेंदबाजों ने आरके वॉरियर्स के 2 ओवर में, लेकिन इस ओवर में कुछ ज्यादा रन्स बने और अब कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 53, 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम ओवर बाकी, तो अंतिम ओवर में जैसा कि वीवी वॉरियर्स के कप्तान ने कहा कि 70 का आंकड़े तक उनको पहुंचना है, लेकिन यहां पर 60 का आंकड़ा भी अगर वो पार कर जाते तो इन हालातों में अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिटिव टोटल। Absolutely, Gopi. They got a 53 in 6 overs and one last over remaining. And I want to see the which bowler is going to bowl that last over. And I think Sandy is got a ball in his hand. The very interesting move because the 2 bowlers can bowl 2 overs each, I think. And I think that just wanted to see why the 2 bowlers, I think, is a completed 2 overs, I think so. That's why they need to bring one new bowler to bowl that last over. That's why the captain of RK Strikers wanted to Sandy to bowl that last over. Not a lot of responsibility in the shoulder of Sandeep Gopi because you need to restrict at least at least by 60 runs, within 60 runs, because the opposition team has got a good bowling department and that's so important for RK Strikers to restrict the opposition less than 60. एग्जैक्टली सतीश, पहली गेंद बॉटम एज, गेंद सीधे पहुंची है विकेट कीपर के हाथों में। 30 मिनट स्टिपुलेटेड टाइम उनके समाप्त हो चुके हैं और 1 ओवर इस वक्त वो पीछे हैं, तो 31वां मिनट उनके कोटे का यहां पर चालू हो चुका है। तो 5 गेंदें अभी भी फेंके जाने बाकी हैं और देखते हैं कितने ज्यादा मिनटें यहां पर वो लेते हैं अपने कोटे के 7 ओवर को पूरा करने के लिए। गेंदबाज संदीप उर्फ सांडी अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार धीमी गेंद को खेल दिया मिड ऑफ पर, थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहां पर, 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। सो कपल ऑफ रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 55 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 55 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 4 balls remaining in their innings, 55 the score for losing 4 wickets. संदीप अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, फुल लेंथ गेंद थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। That was an absolutely sloppy. मैं यहाँ पर मॉनिटर पर देखना चाहूंगा एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड देयर। ये गेंद को इस वक्त डिलीवर किया था, गेंदबाज ने गेंद को ड्राइव किया और अंतिम क्षण में वहां पर गेंद तक पहुंच नहीं पाए फील्डर। तो जहां तक सवाल है, फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थोड़े से सीधे थे, उन्होंने गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचने में सफल। 59 रन बन चुके हैं, 59 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक atmosphere we are just observing in this ground. This is an absolutely festival atmosphere कहा जा सकता है, त्योहार का माहौल इस मैदान पर छा चुका है। इस पैंथर्स सुपर लीग 2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत संदीप इस बार फुल टॉस, गेंद को हल्के से खेल दिया, इस वक्त गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पर इनकंसिडर थ्रो, दिस कुड बी इन ट्रबल एंड अप गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर। तो दूसरा रन न लेना चाहता जो कि काफी जोखिम भरा साबित हो सकता था और हुआ भी, और इससे पहले कि स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ एक्स्ट्रा कवर फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट यहां पर विकेट दिए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर हल्के से गेंद को पुश किया था, 2 रन लेना चाहते थे, वो जानते हैं फील्डर काफी पीछे तैनात है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, पहला रन तेजी के साथ पूर्ण किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन इससे पहले कि बल्लेबाज पहुंचे नॉन स्ट्राइक रेट पर सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिए। तो 6.4 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 59 for the loss of 5 wickets, 6.4 overs gone in there, just two deliveries left। और देखते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार संदीप, तो
The new man is now comes out to the middle at the non-striker end. Number 7 batsman संदीप अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, खेल नहीं पाए, पैरों पर गेंद टकराई, पॉइंट पर गेंद पहुंची, एक रन का इजाफा. And with that single, the scoreboard is now moving up to 61 now for the loss of 5 wicket, and just a last ball remaining in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी. The last ball now remaining in the innings. और देखते हैं इस अंतिम गेंद में वीवी वॉरियर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. अगली गेंद लेकर उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर सैंडी तैयार. ये गेंद इस बार उछालना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में, रन के लिए दौड़ पड़े. ये विकेट गिर चुका है और इसी के साथ their stipulated overs are completed, and VV Warriors finished with 61 for the loss of 6 wicket after the completion of their 7 overs. तो बिल्कुल सही बात सतीश, 70 रन के आंकड़े तक पहुंचे की बात की थी VV Warriors के कप्तान ने. तो यहाँ पर जो बात उन्होंने की थी उससे 9 रन उनकी टीम कम बना पाई, और यहाँ पर बेहतर कमबैक मैं समझता हूँ आरके स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने की है. पहले 3 ओवर में 30 रन प्रदान करने के बाद इन द सेकंड हाफ ऑफ द गेम दे कम बैक वेरी वेल एंड कंसीडर जस्ट 31 इन द नेक्स्ट 4 overs एंड कैप्चरिंग 5 10 wickets of VV Warriors, and this is an absolutely fantastic comeback. 62 the target, just under 9 runs per over they have to score for victory to clinch the prestigious Panthers Super League title. और देखते हैं 62 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो किस तरीके